Good morning. You are listening to Change of Pace Live, the home of Pakistani cricket commentary. We are with you live from Southampton for the third test match between England and Pakistan, day 2 of what has been a tough test match so far for Pakistan. They've battled winds, battled cold weather, and they've battled Zach Crawley and Jos Buttler. Crawley 171 not out, Buttler 87 not out, who is going to be facing Shaheen Afridi as he leaves this one outside off. Tough day for Pakistan yesterday, but not really to the lack of their effort. They bowled fairly well. You could argue that Shaheen with the old ball was a bit off color, and Abbas was not as accurate as he usually is. But I spent a little bit of the evening listening to the Sky Sports podcast and the post-match conversations between the analysts, and from Shane Warne all the way to Wasim Akram, as Shaheen continuing your left arm over the wicket, left alone by Jos Buttler. And Wasim Akram, Shane Warne, and all the greats that Sky Sports had on their panel, they were all alluding to the fact that bowling under these conditions that are so cold and also so windy, it's extremely difficult to control the way you're bowling. It's extremely difficult to keep at, the consistency that test match cricket requires, that the consistency that the Pakistani bowling lineup actually showcased in that first test. So I would give a little blame to the Pakistani bowlers and a lot of credit to the likes of Zach Crawley and Jos Buttler that took the opportunity. And it's the first day of the test series that we actually saw a full day of sunshine. And with me I've got AZ Khwaja. Khwaja, how you doing? Assalamu alaikum Musad, and welcome to all our change of pacers and paciers and paciyat. It was a tough day in the office for Pakistan yesterday. I think I was just reflecting, आप भी जैसे वो देख रहे थे पोस्ट मैच शो, और मैं भी सोचा था यार कि हमारा मेन इशू क्या था. Our main issue was the mid overs, the second and third session bowling. Yeah. और तब that is where you need reverse swing into play. And I was thinking यार overhead जो conditions है 16 degree 20 degree, that's like peak summer for England, और हमारे लिए हम तो स्वेटर में होते हैं. Yeah, so obviously we're not going to get a sweat on, we're not going to get the shine on the ball. So that's why the ball is going gun barrel straight and we don't have many answers. Yasir Shah bhi उनकी जो length है up and down रही है, कभी back over length होते हैं, कभी ज़्यादा मुंह में दिया, तो Jos Buttler went after him over the top. So it's been a tough grind, but I don't think we did too much wrong. We just lacked something extra to dismiss England. I mean, I also would argue the case that sweat doesn't always have to do with how cold it is outside. It might have to do with the amount of work that's happening. लेकिन वही अब saliva मना हो गया ना, तो फिर किधर से वो produce करे? That's an issue. 332 for 4 after the full 90 overs that we got. The one day that Pakistan fans were hoping for a little bit of rain, a little bit of overcast conditions, and they didn't get any. England have been extremely lucky this series में definitely यार. Yeah. They've always had the rub of the green in terms of the conditions or the match situation. Something has always fallen their way. ठीक है, उन्होंने कुछ कैचेस भी छोड़े हैं, वो हमें थोड़ी किस्मत मिली थी. True. But overall match ground conditions के हिसाब से they've had a bit of luck, but that's the nature of test cricket. ऐसे ही होता है. One day it's, some days you're up, some days it's the other team. And अभी Chris Wokes भाई भी इंतज़ार में बैठे हैं after that brilliant innings in the first test. So he'll be feeling himself. He'll be in a good frame of mind. Good channel from Shaheen in this first over, just outside off, and we saw one of the key attributes of England's onslaught yesterday was the quick run rate. That last session, Khwaja, they went at about 5 and over. Zach Crawley, after getting to his 100, those 71 runs have come at a very brisk pace. There's been something that's missing from Pakistan's locker besides that session after lunch on during that first test match. It's important to keep things tight this morning because, again, Buttler is a kind of batsman that if he's not getting runs freely, he might give his wicket away. Definitely, हम पाकिस्तान का अगर प्लान नहीं होता है कि जी हम अटैक करेंगे विकेट्स नहीं मिलेंगे, if that doesn't succeed then we should be bowling dry, और वो हमसे कल नहीं हुआ. We couldn't bowl dry at all, couldn't get the run rate down at all. In fact, they counter-attacked us really beautifully before the new ball. उसके बाद जो फेंटा पड़ा है फिर that really demoralized the bowling lineup, और उसके बाद उन्होंने फील किया कि यार अब मैच थोड़ा हाथ से निकल रहा है. Yep. Abbas is going to continue from the other end as he's right arm over the wicket, and he continues outside off for no run. I think the plan should be today to make Crawley drive outside off. उसको straight bowling बिल्कुल नहीं करानी है. हमने देखला he's so strong on the legs and down the ground. अब अगर वो off पे आपको through the covers या point के through चौके मारता है ठीक है, but you bring your slip coordinate into play, bowl a bit wider of off stump, make him chase the ball. उधर ही शायद हमें थोड़ा success मिले, वरना as such में glaring weakness इसकी नज़र नहीं आ रही थी कि भाई ये बंदा उधर आउट हो जाएगा या इसको इधर हम पकड़ सकते हैं. I think we'll have to just restrict bowl like a ring field on the off and hope that he makes a mistake.
Boston now continuing, and Umair coming in saying, "Good morning, people." Musad yesterday was Morning. talking about the alternative game plan. I really hope Azhar has something planned today. Yeah, I don't think it's just going to be Azhar. I think it's a whole think tank from Pakistan that has to really get in there and understand what needs to happen today for Pakistan to rip through these final 6 wickets for England. And Umair is also saying that 1 wicket will bring 2. बिल्कुल सही बात है यार, बस ये पार्टनरशिप ब्रेक करने की बात है. फिर आई डोंट थिंक दे विल शो दैट मच रेजिस्टेंस दैट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मिडिल ओवर ऑर्डर, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मेंटली रिलैक्स भी हो जाता है बड़ा स्कोर हो अगर ऑन द स्कोरबोर्ड ऑलरेडी. गुड डिलीवरी फ्रॉम अ बास राइट आउटसाइड ऑफ एंड क्रॉली प्लेज इट डाउन कंफर्टेबली. काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए यार, हमें उसको भी दाद देनी चाहिए. जैक क्रॉली, हिज फर्स्ट एवर 150 स्कोर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, एंड ही प्लेड सच अ फ्लॉलेस इनिंग्स, सच अ attractive innings. बंदा कह भी नहीं सकता कि यार हमने इसको चांस दिया. He took the game away from us pure and simple. Yeah, it was an incredible innings. I was listening to his interview with Sky Sports in the Players Lounge last night. Such a humble guy, 22 years of age. I think England have found a gem of a batsman here, especially in the middle order. And again, it's very early days, but he's got a couple 50s in this mammoth 100 now. And I know that we talked a lot about yesterday about Pakistan kind of laying out the red carpet for new batsmen and batsmen that are out of form. But at the same time, for Zach Crawley, 22 years of age, he's had a pretty decent county season, to come in and get 171 on just 1 day of cricket against Abbas, Shaheen and Naseem. And again, a turning-ish Yasir Shah. That's a pretty big achievement. बिल्कुल सही बात है यार, हमारा bowling attack इतना भी बुरा नहीं है as we are, you know. Would you? I mean, it's clearly better than the West Indies bowling attack that we saw earlier this summer. Variation तो definitely है उसमें, Yeah. कि they're not all four right arm fast medium type नहीं है. Ghost of Kagawa saying Pakistan are struggling with those bottom 5 wickets. That's what changes Test match results. And again, I completely agree with that, because you need those 20 wickets to seal the game. हाँ, for 4 for 5 हम इनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद बस यार Yeah. वही है ना, जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो then we're struggling to get wickets. दैट्स वाई यासिर शाह भी ओवरसीज़, ये तो चलो पिंडी, इस्लामाबाद या दुबई शाह जाता तो यासिर शाह इज इन द गेम, बट हियर इट्स द फास्ट बॉलर Edged, and it just drops short of point. Zach Crawley, I think that's the first time across yesterday and this morning we've seen a genuine edge fly off of Crawley's bat. That's how good he's been. But unfortunately for Pakistan, that's fallen short of point. नहीं हुआ यार. Sarosh is joining us. Good afternoon. Good evening. Good uppish try, but well short of unfortunately. Another Europa League title for Sevilla? My goodness. The Juventus fans are absolutely milking it. यार तुम लोगों ने हर जुबान में लिख दिया है. हर लुगात में हमने congratulate किया सेविया को, क्योंकि भाई जब बर्लिन, तुम्हें भी उर्दू में लिखना चाहिए था ना अपने. बर्लिन और कार्डिफ में जब हमारे साथ हैंड हुए थे तो ये बड़ा बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे. तो जब ये and they haven't won a single trophy of any kind since 2011. Wow. That's cut away, got on top of it, Butler. And those will be the first runs of the morning for England. Should come back for a comfortable couple, and he'll move on to 89 off 155. But yeah, that was some good trolling. और Conte साहब के ड्रामे शुरू हो गए as always. So, Kosov Kagawa saying the Lukaku own goal was hilarious. Did it go down as an own goal? I don't think they gave it as an own goal, but it is an own goal. But because the header was going out. No, the rule on officially उन्होंने goal दिया है उसको. The rule on own goals is that if the shot is on target, it wasn't on target. Regardless of how big the deflection, it stays. It wasn't on target. It wasn't on. बाहर जा रहा था. So it's definitely. It was still hilarious though. यार बेचारा. 334 for 4. Shaheen Afridi this time into the right. लेकिन अगर आपने मैच देखा हो पूरे 90 मिनट्स बहुत डिफेंसिव खेला इंटर ने, सारी गेम सेविया ही बना. But it was entertaining. जबरदस्त मैच था, मजा तो बहुत आया. I was watching it passively. I wasn't like attentively watching it, but the goals were flying. I mean 2-1 and then first half तो बहुत ही जबरदस्त. Exactly. But I mean, as an Italian team, I didn't expect Inter to just blow out the block. अगर आप स्क्वाड नेम्स देखो तो कंपैरिजन ही कोई नहीं था. उसके अलावा फिर भी सेविया ने उनको ऐसे धोया है. Sevilla, I mean, are probably the best team in the history of the Europa League winners. Exactly. They won it back in the mid 2010s 3 times in a row. तो वो तो beast है Europa League के. In fact, it But I still felt it's reductive कि हाँ भाई सेविया फाइनल में आ गई, वो जीत भाई. इंटर बहुत स्ट्रांग टीम थी. नहीं इस तरह नहीं होता, किसी भी चीज में नहीं होता. ये तो नहीं है कि भाई आप आ गए तो जीत गए. भाई उन्होंने एक टफ टीम को हराया था, वो पहले साल क्लॉप की लिवरपूल था. उसके अलावा वो छोटी मोटी एस्पेनियोल थी, डिनिप्रो थी. Yeah, we beat them in the semi-finals when we beat Arsenal in the final. But the other thing about this is, Khwaja, whenever Sevilla win the Europa League, and it happens to be more often than not, reminds me of the Man United press conference that Mourinho did. And he talked about the fact that
Sevilla. 3 times. You know, not just that, but he talked about the fact that Sevilla have such a rich history in Europe. They have a good scouting system. They keep winning this title, and especially because I pay attention to English football media. I'm not sure what happens in Italy, but in English football media, if any of the top 4 or top 6 English teams are facing Sevilla, the narrative will be that they're favorites, that the English team is 100%, favorites. 100%. However, in the past 7 years, they're more successful in Europe than United and For Arsenal. Arguably even Chelsea if you take away the Champions League, but the Champions League is pretty big. So, and definitely more successful than Spurs. वो तो जाहिर सी बात है. You know, more successful than Man City. सिटी क्या जीता है? Exactly. सिटी भी कुछ नहीं So, जीता. I think media narratives do matter in football. You can't walk into a double-legger game match with Sevilla and think you're better than them 100%. because you have more fans or a more expensive squad. भाई This is a मुझे स्पेशली machine. याद आता है पहले साल जब क्लॉप का पहला साल था, वो जो फाइनल था, वो स्टरिज ने बहुत ही क्लास गोल मारा था. उसके बाद सेकंड हाफ में आके उन्होंने ऐसा धोया उनको 3-1 on the day. Absolutely smashed Liverpool that day. I'm like ये इनको Early हुआ क्या Klopp हाफ days, के yeah. बाद? I remember that. Kloppo. Saad 007 on the YouTube chat. Saad, I'd encourage you to come over to changeofpacelive.com/matchday. हाँ, आप हमारी वेबसाइट पे आएँ और लाइव लिंक दबा के हमारे साथ इधर ज्वाइन करें. इधर काफ़ी अच्छा खासा क्राउड बैठा हुआ है, तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे चैट को. Sarosh is alluding to the fact that the extreme pace comes in handy in situations like these. We've got Shoaib Akhtar, Waqar, Wasim were playing even 5 down. They had the pace rip through the bottom order. यार एक्सट्रीम पेस तो चलो ऑफ कोर्स दैट्स ऑलवेज एन एक्स फैक्टर, लेकिन वो ये मूवमेंट ही नहीं मिल रही ना. अब देखें कैसे सूरज निकला हुआ है और ज़बरदस्त पिक्चरेस्क एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वॉलपेपर वाला माहौल बना हुआ है इस वक्त. ऐसे दिन हमें It भी was कभी actually मिलते हैं. raining an hour ago. अजीब ये कमिलियन लाइक इधर वेदर है. Because I was looking at और Michael Vaughan's और Instagram. इसमें कोई शक नहीं है इस बात में कि इन्होंने पिच भी ऐसा ठंडा बनाया है कि भाई सीरीज हमारे गिरफ्त में ही है. They just need We to don't draw. want to lose it. Yeah, they just need to draw. ऐसी गेम्समैनशिप चलती रहती है. And it's not been the kind of test series where England have dominated at all. So they knew even the second test, अगर 4 दिन भी होते ना तो पाकिस्तान ने ले जाना था वो भाई टेस्ट. हमारी बॉलिंग ने इनको हर इनिंग्स में शुरू में तंग किया. ये बिल्कुल हमसे Gosif डरे हुए हैं. Kagawa is upset about Conte. He's saying he's one of the least emotionally intelligent managers I have ever seen. I respect him wanting to manage tough men, but he is such a whiner at this point. सही बात है. उसका एक ये एक्चुअली एक गिमिक बन गया है कि कुछ भी हो मैं मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा. Yeah. और यू नो इट्स नॉट मी. ब्लेम डिफ्लेक्शन करता रहता है, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता रहता है. अब वो है कुछ लोग हैं बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग हैं चेल्सी जैसे उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं तो हम तो बहुत कम लोगों को बर्दाश्त करते हैं. Good ball once again on middle and off, just punted down to mid on. Steady start from Abbas, but not much movement. They're trying to get something to just deck off the pitch, something to catch the edge. और हमने देखा था 2-3 एज इतने जेन्युइन एज नहीं थे, बट दे फेल वेल शॉर्ट ऑफ द स्लिप कॉर्डन. तो मतलब इस पिच में इतनी पेस भी नहीं है कि आप बैट्समैन को तंग कर लो. सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर बैट्समैन, स्पेशली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, द डबल ए बैटरी जो है हमारे, कि कुछ रन्स कर लें, हम थोड़ी अपनी इज्जत बचा लें. वरना इस मैच में इन कंडीशंस में फेल हुए, सो देयर इज नॉट गोना बी एनी फॉरगिवनेस. Hassan Butt saying hello boys. बट साहब की हाल है. Crawley falling into our one unknown player per series quota One that we are legend we going to create in make a every star. series. Hashtag charity, hashtag bada dil. यार लेकिन उसको भी क्रेडिट देनी चाहिए, उसने बहुत अच्छा खेला और पिछले टेस्ट में भी अच्छा खेला था. You rarely see an innings that lasts around 300 balls where there's literally no chance. वाकई And Crawley has given us literally no chance. The first genuine edge that's come out of Zach's bat has been this morning, and it fell short of point. वो भी कोई slips में नहीं गया. So again, it's a testament to how well he's done across these 2 days. Oh, what a ball there from Abbas, a big leg cutter. Zach Crawley tried to get to the pitch of it and completely beaten. Lovely ball there from Abbas. अभी भी कुछ ना कुछ अगर पिच में 0.001% भी कुछ है तो अब्बास निकाल लेता. Look at that ball. Unbelievable. Position of the seam. Wonderful from Abbas. बल्कि अगर कीपर हमारा आगे खड़ा होता तो स्टंपिंग चांस भी हो सकता. I was actually just going to talk about that, Khwaja, because Zach spent a lot of time in the players' lounge last night after his innings, speaking to Nasser Hussain and the likes from Sky Sports, and he was talking through how he had planned to play against the 3 Pakistani bowlers, the 3 horsemen of the Pakistani pace attack, as Abbas will continue here outside. Good ball, leaving good that carry on once again. Yeah. And what he was saying is that I think one of the gentlemen asked him, were you surprised that Rizwan is not coming up to the stumps? And he said, yes, I am, because he did that a couple of times yesterday, not consistently enough. And Crawley's actually
batting 3 or 4 meters, 3 or 4, or at least 3 meters outside of his crease to Abbas, which is quite spectacular in Test cricket. It's never. I think it's quite off-putting for the bowler and the slip cordon, to be Yeah, quite frank. but the इतना thing, आसान नहीं होता ये but करना. the thing is, Zach batting at that distance is helping him a lot. So if you bring the keeper up, he's not going to do that anymore. Oh, good ball hitting the upper edge of the bat. Good spell, good mini spell here from Abbas. थोड़ा तंग कर रहा है क्रॉली को, फंसाया हुआ है उसने. Of course, it's a new day. You always have to restart, so it's not easy. But Abbas is bowling fantastically well. Look at that, 23 overs bowled, only 52 runs given away. यार बिल्कुल, he's a machine, a precision machine of a fast bowler. 334 for 4 after 94 overs. बहुत ही healthy run rate है इंग्लैंड का, 3.55. So they won't be bothered कि यार थोड़ा आधा घंटा हम अपना time लगा के खेले. Butler's gotten off today. He's got a couple of runs, only 11 runs away from his 100. What a priceless 100 will be for his Test career. बहुत सवाल जवाब हो रहे थे. 2 years. Match by match basis पे ये basically खेल रहा 2 था. years England have stuck with Joss Butler, and I don't think the question of Ben Foakes is still outside of the algorithm. बेयरस्टो भी उधर बैठा हुआ है इंतजार में, वो भी कभी भी टीम में I आ think सकता Ben Foakes is still a shoe-in for Test cricket. उसकी keeping भी बेहतर है Butler से. Shaheen just pegging away outside off, trying to make Joss Butler play those uppish drives, extra cover drives he likes so much. कि भाई हमारा slip cordon तैयार है, अगर तुम चौका मार सकते हो तो good for you. Well, now we're going to be here to debauch the ball. The debauch. But Hassan Butt saying this is also a good practice for the change of pace team for the UAE Pakistan Test series. You mean in terms of the amount of runs that are being scored? Yeah, you're probably right if that's what you mean. 334 for 4. I told Khwaja before we started this series, because we usually do the T20s in a little bit of हमारा one day. actually plan था we will just do the last session of every day, थोड़ा हम जमा हो जाएंगे, लेकिन इतना hype था और इतना हमने Yeah. response मिला, हमने कहा यार अब तो टेस्ट पूरे पूरे करने पड़ेंगे. Khwaja, I posted this on my Twitter and let the listeners know we've covered the PSL 2 seasons now. Obviously, the first season we were very new, हाँ. and we've covered a little the World Cup as well. And the UAE series जो the हुई UAE थी. series. The most traffic we've ever gotten was for that first Test match of the series. So Test cricket is well and alive, folks. 100%. It's not going anywhere. If it's happening in England when the ball is moving and Pakistan are getting wickets and they're getting some runs, सही बात है. people will flock to it. It's just that we don't like seeing 500 runs being scored against us. यार एक्चुअली मजे की बात है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इसके रिवर्स टैक्टिक्स करता है. वो गैबा पे अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, फुल बैटिंग पिच, उनके फिर बैट्समैन आके थाड़ 550 मार देते हैं. It's not entertaining though. I just don't understand. what's यार going- if you're winning then it's of course it's entertaining. Okay, but उनका formula they demoralize your fast bowlers early in the series. yeah, but let me argue that, right? When we were playing in Rawalpindi earlier this year, when Pakistan's number 5 was not getting to bat because they would just bat 4 and declare, that's how many runs Pakistan were getting. Was that really entertaining? यार entertaining is something else, but at Was least that really a contest? but if you're winning then you're winning. Oh, yeah, I know, but like, I don't know. I just feel like this is why English cricket, English Test cricket is the pinnacle of this game. हाँ, it's a bit more balanced. उनके बैट्समैन भी थोड़े अंडर फायर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन यार आप अगर आप टेस्ट क्रिकेट का ट्रेंड देखें पिछले डेकेड का, यही है, घर पे यही लोग है, डोमिनेट करते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल. बाहर जाके जलील होके आ जाते हैं. Left alone, 94.4 overs gone, 334 for 4 England. Butler's hanging in there, 89 not out. इसको ही आउट कर लो 100 से पहले यार, कोई तो हमें एक कोई चीज़ हमारे फेवर में जाए, वरना इसका 100 भी अगर सुकून से हो गया फिर Well, I mean, last time Butler got 100 against Pakistan, Pakistan won the game. Butler's never got. अच्छा वो वनडे मैच The World Cup. वनडो में 2019 game. that was a crazy यार, match. कल मैंने आपको इतना video सीसॉ मैच था वो, crazy. That was a great game to cover. Oh, Oof, good coming in swinger into the there. कहाँ है right-hander. यार mid on. But good running, good match awareness there from Joss. Moves into the 90s. 335 for 4. कल मैंने last आपको ball of video the भेजी थी. 95th over. कौन सी? शोएब अख्तर वाली. यार मैंने देखी नहीं है अभी यार, तक वो शायद देखने वाली WhatsApp. अच्छा अच्छा. शेबी, अच्छा हाँ वो जो आप बता So रहे he थे. made a vlog about हाँ, some kids that work around the area he trains, and he was like, "You come train with me, so you gotta run 10 laps, and I'll even pay you some." उर्दू में समझाओ ना, इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? He was उर्दू like, में बोलो. he was like, "आप आए मेरे साथ, अब आओ तुम भागो," हाँ. because I think they were street children. रैंडम बच्चे थे. Street children. हाँ. And he was like, तुम ये काम ना करो, मतलब मांगने वगैरह का. तुम आओ मेरे साथ ट्रेनिंग करो, हाँ. 5 राउंड लगाओ, 10 राउंड लगाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा ट्रेनिंग के. Kind of cool. अच्छा. It's nice, हाँ, ना? हाँ. अच्छा, पर वो बात हो रही है ना, तो उसे दोनों को बिठा लिया. 95 was gone, 335 for 4. दोनों को बिठा लिया, एक लेफ्ट पे एक राइट पे. हाँ. 2.5 minutes into the video, he goes like, तुम्हारे गोडे कैसे हैं? तुम्हारे गोडे कैसे हैं? तुम्हारे गोडे दोनों से पूछ रहे हैं. And then he goes like, मेरे गोडे तो खराब हो गए हैं. ये देखा. And the guy who's staying in the camera, he goes like,
जरा मेरे घोड़ों पे कैमरा मारो. And he goes like, ये देखो ये पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करा के जरा मेरे घोड़ों का हाल हो गया. घोड़ा पानी. And then for the last 30 seconds of the video, just all he talks about is his knees, his goats, and his goats. Oh man, शेवी की जरा पता नहीं दिमाग में घोड़े चलते हैं. यार लेकिन बंदे ने एक बात तो सेक्रीफाइस तो बहुत किया. और आप उसके एक रीसेंट आर्टिकल आया था क्रिकेट पर, उस पे डीप डाइव हुई थी करियर की. यार ही हैड अमेजिंग Man, he's so much more than a speedster. 100%. That's the thing, right? क्रेडिट नहीं दिया जाता उसको कि कितना इंटेलिजेंट और कितना I mean, that's to his own fault, जिस तरह की वो बातें कभी कभार कर देता है. But no, he's one of the great Pakistani fast bowlers, no doubt. Played away onto the offside. मतलब Bretley was he's not even close to him as a test bowler. Bretley इतने numbers wise, no, not even करीब close. भी नहीं है उसके. वनडे में बहुत अच्छा था Bretley. भाई मैं तो आर्ग्यू करूंगा कि जॉनसन भी उससे करीब नहीं है. हाँ जॉनसन क्या है यार. जॉनसन स्ट्रगल्ड फॉर लाइक half of his career he was struggling. उसको तो मीम बना हुआ था वो तो. बस उसकी एक समर लगी है ऑस्ट्रेलिया में जब उसने बी फाड़ दी बेसिकली इंग्लैंड की सिंगल हैंडेड. Yeah, but as an Australian fast bowler, that's kind of all you need to do. हाँ वो एक दफा वही लेगेसी बन जाती है. सही बात है, लेगेसी बन जाती है आपकी. 335 for 4. Butler now into the 90s. As Abbas now straightening in line, just defended away to the leg side for no run. Some criticism over Azhar Ali overnight. As always. Well, fair enough. You're not always doing the best. You're going to get criticism. Bowling management about Yasir Shah. People are saying that Yasir's been used incorrectly by the Pakistan Test captain. I don't see it. Do you see it? भाई 4 आपके पास बॉलर हैं, उसने 20-25 ओवर तो करानी है. बस अनलकी हम ये हैं कि फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच है, फ्रेश पिच है और वो भी डेड पिच है. तो उस पर ऑब्वियसली उसको टर्न नहीं मिलनी. देयर इज नो रफ, देयर इज नो नथिंग. फिर भी उसने 2 विकेटें अच्छी निकाली थी. Inside edge. Yeah. Butler just playing onto the leg side, squeezes it to square leg for a quick यार जितना एग्जामिनेशन जॉस बटलर के टेक्निक का हुआ है ना इस सीरीज में, और जितना ज़बरदस्त अब्बास ने उसको तंग किया है. हैजंट बीन लकी इनफ टू गेट हिज विकेट बट अनबिलीवेबल स्टफ. लोग शेन वॉर्न 290s 86 यार ब्रिस्बेन में. एक तो वही मैं बता रहा हूं ना, गैबा में ये फ्लैट पिच बना देते हैं, आगे फेंटे लगाओ हमारे बॉलरों को, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं बाकी सीरीज के लिए. फिर अपने दरिंदा पिच पर्थ वगैरह और सिडनी में उधर 2-2 स्पिनर खेलते थे एक ज़माने में. मैगिल और वॉर्न इतनी टर्न होती थी. तो उधर इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल एंड एनालिटिकल वे ऑफ मेकिंग अ टूरिंग टीम सफर. सो दैट्स पार्ट ऑफ द माइंड गेम्स. गुड बॉल वंस अगेन राइट ऑन ऑफ. Lovely bowling. Abbas पर ज़बरदस्त स्पेल करा रहा है सुबह. Special day in Pakistan cricket history today, Khwaja. 4 years ago on this day, Misbah Haq's men became the #1 test side in the world. What a day that was. The first time and the only time in the history of Pakistan cricket. Second time. We did it once with Imran as well in the 80s. Test match के हिसाब से. हाँ test match के हिसाब से बात कर रहा हूँ. वो जो टेस्ट का त्रिशूल वो जो पकड़ाते हैं. Yeah, exactly. That's so cool. I really like that trophy. यार मुझे तो कुछ और ही लगता है लेकिन छोड़ो वो थोड़ा. Okay, Abu Dhabi is going to be under the helmet here. Oh no, Rizwan's coming up to Abbas. Finally. We talked about this last night, Crawley. He's very uncomfortable when the keeper comes up, so maybe it's unnerving for sure. Yeah, maybe somebody was listening into that Sky Sports telecast. Do you think change of pace उन्होंने लगाया है वकार भाई ने उधर. Do you think they watched the post-match analysis? I think खुद ही करते होंगे. शायद इतना नहीं देखते हो. आई गेस अपना उन्होंने डेटा सेटअप बनाया है. स्पेशली क्रॉली का तो सुनना चाहिए. समवन लाइक क्रॉली एंड ये क्या हो रहा है? जस्ट इट्स रेनिंग यार एंड इट्स सडनली स्टार्टिंग टू pour down. आज पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आनी थी. बारिशें शुरू हुई यार. कितने चालाक है ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड. 9D चेस खेल रहे हैं हमारे साथ ये यार. एंड द hover covers are out. 336 for 4 after 95.4. अच्छा आपने इनका नाम ढूंढ ही लिया आखिर. पहली दफा मैं दे लव सुन रहा हूं. That's just what I'm calling them from now on. They look like I think यही नाम होगा. आप सही कह रहे हैं. अच्छा. But 336 for 4 as rain has stopped play temporarily. इतनी जोरदार बारिश तो नहीं लग रही. I think hopefully it will be done in dusted. ओह ये देखो. Those are some dark clouds. एकदम ही यार. सीन सारे बदल जाते हैं. Who would want to live in England, honestly? वाकई यार. What is this weather? Chris Wokes. लेकिन क्रिस वोक्स तो सुकून में बैठा. फिर आप कहते जी आके रिवर्स स्विंग हो ये वो उनको पसीने कैसे आएंगे 15 डिग्री में. हम तो 3 सूटर लगा के बैठे होते हैं उसमें. पर इंग्लैंड की तो रिवर्स स्विंग हो रही है ना यार. वो तो इस क्लाइमेट को यूज्ड टू है ना. ये लो ये यूनुस खान और वो बाल फेटिश फिर शुरू हो गया इसका यार. बट looks like we'll be in for a short delay here, so we'll join you very soon. Stay with us as soon as the cricket resumes. We'll be right back. Stay tuned on Change of Pace.
back live on ENGvPAK.com, your home of Pakistan cricket commentary. We had to stop for a momentary rain delay, but we're back now. It's going to be a delayed lunch as well. It's going to be at 6 p.m. Pakistan time, and we've had a tweet come in that says, "ये कोई time है रोटी खाने का ख्वाजा?" सही बात है यार. And Mohammad Abbas has finished his over for no runs, and Shaheen Shah Afridi has continued to bowl this morning. 3 balls in, no run given to Joss Butler, who's on 91 off 171 deliveries. Hopefully the pitch will be a bit more spicy after a bout of rain. थोड़ा सा you know मिल जाए हमें movement assistance off the deck, वरना हमने देखा था बहुत ही placid था, काफ़ी flat wicket चल रहा है. I'm also worried about the fact that, yeah, it might not offer any movement. It might not offer movement now, but then the problem is that if there's overcast conditions when Pakistan come out to bat, that's. I think, but it will be post lunch, तो थोड़ा you know थोड़ी गर्मी शर्मी होगी Yeah. शायद, तो शायद कोई scene बन जाए हमारा. But yes, it's gonna be a challenge with a big English score. We're fighting to stay in the series, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि थोड़ा दिलेरी दिखानी पड़ेगी. दलेरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा घुटनों का जूस निकालना पड़ेगा, थोड़ा Gouda juice. मेहनत करनी पड़ेगी. During the rain break, the English commentators were ripping into Wasim Bhai for bowling no balls in that 2001 test, I think. भाई अगर हम अगर नो बॉल करा रहे हैं तो आप पकड़ो, वो तो आपका अंग्रेज अंपायर खड़ा हुआ था, हमारा तो नहीं था. So it's your fault, buddy. But that was a memorable test. स्पिनर भी नो बॉल करा रहे थे. बेचारे डेविड शेपर्ड का करियर ही खत्म हो गया था after that series. He really had a nightmare in that match. And England, a wonderful collapse. Massive appeal from Pakistan here. Shaheen Shah Afridi to Joss Butler, and Azhar Ali has gone upstairs immediately here. Oh यार कुछ हो ही जाए अब. Let's see what that's going to bring for Pakistan. It's an appeal for leg before, I reckon. Ooh, that looks close यार. Yeah, I think that's a bit high. थोड़ा सा knee roll का scene हो रहा है. And Butler's not as tall as the crawler, but still an option. Night crawler है खबीस. But here we go. And I think it's going to be... Oh, it's missing. It's too high. And that review is going to be a waste for Pakistan. That's their first review wasted, Khwaja, I think? नहीं दूसरा है, I believe. Yeah. But close enough. That was a decent shout. चलो बॉल पे थोड़ी शेप तो मिल रही है शाहीन शाह अफरीदी को. Hasn't got the wickets that he's deserved in this test, in this series in fact. Series, yeah. But look at that definite movement of the deck, and of course Butler. यार अंपायर आउट ही दे देता, क्या जाता तेरा बेगैरत. अंपायर आउट तो रिव्यू कर लेते वो. वो कर तो लेते, लेकिन हमारी एक मोरल विक्ट्री तो हो जाती. Moral victory, I think. 336 for 4 after 96.4 एक ही review overs. अब रह गया यार. Butler now into the 90s, left alone outside off. बॉलिंग ठीक कराई, लेकिन वही है बॉल अब थोड़ा सा you know it's not as fresh as it was last night. Bit of that hardness has gone away. But पाकिस्तान ने ठीक है फिलहाल ठीक बॉलिंग की है, ऐसे कोई बात नहीं कि जी हम चौके खा रहे हैं or something like that. So still hanging in there. Maybe the pressure will tell. A false shot. क्रॉली साहब लग तो नहीं रहे कि कोई गलत शॉट मारेंगे, लेकिन उम्मीद है कि कुछ वो कर लें, हमें चांस दे दें. It's been a pretty flawless innings to be quite honest. एंड बटलर ने भी बहुत ज़बरदस्त खेला है. 120 for 4 पे ये दोनों आए थे और 336 तक स्कोर ले गए यार. अनबिलीवेबल स्टफ. गुड बॉल देयर फ्रॉम शाहीन शाह वंस अगेन. ही इज़ बीन वेरी एक्यूरेट विद द न्यू बॉल. यार ये हमने देखा है कि एक यंग बॉलर है जो न्यू बॉल ज़ाया नहीं करता. ठीक है कभी कभी वो मैजिक डिलीवरीज हमें देखने को नहीं मिलती, बट कंसिस्टेंसी एंड स्टेमिना इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट एट दिस लेवल दैन बॉलिंग मैजिक डिलीवरीज. हर कोई आसिफ वाली बॉलें नहीं डालता, हर कोई वसीम भाई लेवल जीनियस नहीं होता. And he's only 2021. He's going to get stronger. He's going to get fitter. He's only going to improve. So the signs are very promising. Naseem Shah bhi हमने देखा थोड़ा सा struggle कर रहा था कल with the wind and all that. But he's very young in his career. He's only 17 years old. Barely played any first class cricket. Barely played any test cricket. And he's bowling in England against the Abbas winning bowling side. to the keeper up. Rizwan's now up to the stumps. There's 2 slips and a wideish third slip, or a gully you can say, Khwaja. हाँ definitely. अब लेकिन वही है. We need some mistakes from the Angrez to get back into the game. Yeah. Starts off with a couple of dot deliveries. Abbas, typically known for keeping it tight. But this partnership has gone at a pretty decent rate. 209 now, the partnership, at a run rate of 3.6. So again, the runs have come quite freely for England. Over freely. Over freely, yep.
Left alone, a good take from Rizwan. It's difficult to keep to a fast bowler up to the stumps. Pakistan's body language towards that evening session yesterday was looking a little lackluster. And again, Mushtaq Ahmed after that in the press conference last night was saying that the wind made it extremely difficult for the bowlers. Same thing that Shane अब Warne लोगों was को saying. फैंस पाकिस्तान फैंस को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें सुनना कि भाई आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो बट फैक्ट है These यार are facts. These are just. This is just how it is. This is how cricket's played. And there's a lot of elements that go into what you see on the field. It's और not, अगर हम जूम आउट करके देखें कि भाई इस नए मैनेजमेंट स्टाफ ने क्या परफॉर्मेंस दी है आई थिंक वी कैन बी क्वाइट सेटिस्फाइड काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं बैटिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को आई है फील्डिंग हैज़ बीन वेरी गुड बॉलिंग हैज़ बीन वेरी वेरी गुड फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज़ आई थिंक ये जो मेज़बान एक सुपर टीम अपने इर्द गिर्द बिठा ली आई थिंक वी शुड बी सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस सो I don't think. So I wouldn't use the word satisfied. I would say we're okay with it. I don't think at the standard of cricket. Oh, beautiful delivery outside off a boss. मतलब एक पॉजिटिव Seemed to ट्रैक get- पे तो जा रहे हैं It's in कम the से कम। right direction. I wouldn't complain about it. I wouldn't go like there's some people calling for heads. I definitely wouldn't do that. हाँ, But I also think the word satisfied should only be used with Pakistan cricket when we win, because यार, this वो बात culture ठीक of है। complacency is a dangerous precedent to set. नहीं कंप्लेसेंसी नहीं बट आप अब एक्सपेक्टेशंस भी अपने थोड़े मैनेज करें ना अब आप Yeah. चाहते हैं कि 20 साल के बॉलर आपको इंग्लैंड में सीरीज जिता दे दैट्स आस्किंग क्वाइट अ लॉट Well, I mean, honestly, like my quarrels lie with the experienced batting more than the inexperienced bowling. I have to say. I mean, the pace trio has been pretty on the money. I अब reckon. वो ये ना नाउ दे हैव नो रूम फॉर एरर अब वो अगर कुछ करते हैं तो फिर एक्सपोज हो गए ना भाई अजहर और असद अब कहीं छुपने की जगह नहीं रहेगी अब हम ये नहीं कह सकते बॉलिंग खराब थी फील्डिंग खराब थी Under these conditions, if Azhar or Asad, or at least one of them, because again, I always go back to what Rashid Latif said, that even on a good day of cricket, you're not going to get every single batsman to get a big score. We don't need both of them to work every single time. We just need one of them to work 1 out of 2 innings. That's it. आप देखें जब हमारा जो हाईएस्ट स्कोर है इस इनिंग में 350 या 400 के करीब जो आ गए थे हम उसमें 2 बैट्समैन ने रन किए हाँ ऐसा ही होता है उसमें शान मसूद ने 150 किए हैं और बाबर ने 70 किए हैं ऐसा ही होता है फिर शदाब ने भी ज़बरदस्त 40 बनाया था Yeah, नीचे से yeah. पार्टनरशिप्स पे इनिंग्स बनते हैं एक इंडिविजुअल इनिंग्स पे कोई बड़े स्कोर Exactly. नहीं बनते 98 overs gone. It's another maiden for Pakistan. Tightening the screws here. No runs have come off that post rain break. और शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा 20 मिनट बाद ही हम लंच ले लेते हैं कि भाई टाइम हो गया Yeah, I was actually thinking of this the other day that we are fans of such an archaic game that we're actually celebrating the fact that they allowed us to start 30 minutes before, and managed to push a break by an hour, and it बस seems as यार। if it's raining again. Some यार, droplets in the अजीब। sky. चलो जी एंड देयर ऑफ अगेन Yep, they're going off immediately. Sean Masood. उन्होंने घंटा लगाया मैच को तैयार करने में उतनी देर में फिर बारिश शुरू हो गई है मतलब आप अपनी ये स्पीड तो डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो यार जो ग्राउंड क्लीन करने की और देखिए something हर like बंदा that। श्रीलंकन ग्राउंड स्टाफ नहीं होता आधे घंटे बाद वो इंस्पेक्शन करते हैं फिर आधे घंटे बाद वो ग्राउंड साफ झाड़ू पोछा मारते हैं उतनी देर में हमारे लिटरली 2 ओवर हुए हैं और I 3 have to say, पर Khwaja, this is a serious concern for me because I think of it as in the sense that when Pakistan will come out to bat, if there are rainy conditions around, if there are clouds around, England had sublime batting conditions throughout the summer. एक दिन I- 90 ओवर मिले उनको। Exactly. I've been watching the West Indies series as well. उसके अंदर भी ऐसी conditions नहीं थी. हाँ और वो तो बल्कि मैच भी पूरे हुए थे वी गॉट अ फुल रिजल्ट ऑफ द गेम Yeah. बट फिर से वो हवर कवर आ गया फिर हम बैठेंगे फिर हम इंतज़ार करेंगे And Labs immediately saying, "Do you think it'll rain again?" LOL. Never mind. Yep. It's back. ये तो लोल ही हो गया वाकई यार बट वंस अगेन एन इंटरप्शन वंस अगेन वी इन फॉर अ लॉन्ग डिले अब वो लंच अभी ले लेंगे आई बिलीव Sarosh 4 is, बजे Sarosh is saying this Pakistan 11 is probably the least experienced 11 by Pakistan for more than a decade. Even the first class games are not enough with these guys. We need to be a little वाकई bit patient. 2010 की टीम इतनी इनएक्सपीरियंस थी वो भी इंग्लैंड गई थी सो इट्स लाइक अ रीसेट इन सम वेज Sure, yeah. I definitely in the bowling department. लेकिन मेन I wouldn't say that about the batting though, Sarosh. I wouldn't say that about the batting. बट ओवरऑल हम कह सकते 7 बंदे पक्के हैं मोर और लेस इन द साइड 2 ओपनर बाबर Bowling आपकी पक्की है 4 की 4. 3 वो पक्के हैं और रिकी 4. भी पक्का है यासिर भी पक्का है. यासिर उससे भी बेहतर पक्का, लेग हाँ। स्पिनर कौन है आपके पास? बस आपको मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इशू आ रहा है एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम आपके पास ऑप्शन I think the lack of a bowling all-rounder is a problem.
यार वो But I ठीक really, है। I genuinely think Shadab can solve that problem. And again, मैंने कल रात को एक tweet लिखी जो misunderstand हो गई काफ़ी लोगों से. I actually wrote about the fact that Zach Crawley's selection, I said that he would have not been selected if we look at just his first class stats. 33 का average है उसका. इंग्लैंड में उससे बड़े player हैं in terms of just the average. उस पे लोगों के जवाब आए थोड़े तो काफ़ी तल्ख जवाब भी आए जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं PSL पे सिलेक्शन करने की और आप सपोर्ट कर रहे हैं कि लोग BPL खेलें जाके और कायद आज़म ट्रॉफी ना खेलें. पहली बात तो ये, इफ़ यू बीन लिसनिंग टू अस, आई हैव बीन क्वाइट एडमेंट अबाउट द फैक्ट दैट दैट इज़ नॉट ओके. But at the same time, Khwaja, it's enabled by the board. No Pakistan contract player can go play outside of Pakistan without an NOC. तो NOC दी गई है तो वो जाके खेला है. ऐसा तो नहीं कि उसने कोई abscond करके खेला है. तो पहली बात तो ये है. लापता हो गया. Exactly. He didn't do a Zulkarnain header. He actually got an NOC and did and went and played that cricket. So it's by his employer that he got that permission. और भाई ये भी आपकी गलती है, आप उसको इंसेंटिवाइज करो कि वो फर्स्ट क्लास खेले. पैसे दो लोगों को. आपने नहीं, आप उसको बोलो, बासत अली को रख लिया है, मोहम्मद वसीम को रख लिया है, रज़ाक को रख लिया है. आप उसको 20 साल के लड़के को बोलोगे कि शदाब, you are in our plans as our premier leg spinner in red ball cricket. You think he's going to go play Bangladesh Premier League cricket? No. I doubt it, Khwaja. I doubt he would do that. Definitely. I doubt he would do that. Now again, I don't want to talk about anyone's intentions or not, but अब जब आपने उसका तीसरा टेस्ट था ये इंग्लैंड में, 2 टेस्ट उसने पहले खेले हैं और ये तीसरा टेस्ट था. उसके स्कोर आप देख लें, 2 50s हैं, 147. यार वो लेकिन आप इट्स नॉट इन अ वैक्यूम ना, आप उसकी वनडे क्रिकेट फॉर्म भी तो देख रहे हो ना. Of course. अब ऐसा नहीं यार जी बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो कि भाई I just think he shouldn't have been dropped after that first test. नहीं कल 10 ओवर या 5 ओवर फवाद आलम को क्यों कराने पड़े हैं? तो ठीक है ना यार, वो भी इमरजेंसी में कराया उसने. ऐसे थोड़ी था वो 120 पे 4, हमें ये उम्मीद थोड़ी थी 336 पे स्कोर ले जाएंगे. यही बात है. वो भी जस्ट ही बोल्ड अ फ्यू ओवर्स बिफोर द न्यू बॉल, बिफोर द it was a bit of a transition और ये सब चीज़ें. बट वही है, मेन थिंग इज़ यू हैव टू इंसेंटिवाइज 4-day क्रिकेट. यार इंडिया में उनको इतने अच्छी वो अर्निंग उनकी हो जाती है कि वो अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, जो वसीम जाफर ने जिंदगी भर रणजी ट्रॉफी खेल के अभी भी खेल रहा है. आई थिंक पिछले साल ही रिटायर हुआ है. तो वो कुछ चेतेश्वर पुजारा जो हैं वो नहीं खेलते. वो कोई पीसी IPL शाईपीएल आई थिंक 1-2 साल ही कभी मुश्किलों से खेले. 2 साल खेले हैं, फिर उसमें इतना कुछ खास नहीं किया. बट फर्स्ट क्लास कॉन्स्टेंटली प्लेइंग द रणजी. फर्स्ट क्लास में ये लोग आप मुआवजे नहीं दे रहे लोगों को, फिर आप ये हाई प्रोफाइल कोचेस रख रहे हो जिनका पता नहीं कोचिंग आती भी नहीं है. आपने बस उनको चुप कराने के लिए पोजीशन दे दी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर. NCA का नया नाम रख के कह रहे हैं जी हम बड़ी कोई तब्दीली ला रहे हैं. I'm going to refer back to that conversation that we had with Bazid. Because people are judged by radical change, they have to pander to the crowd. सही बात. Because when a government ends, whether it's sports or political, we won't get into that, but you with these 4-year terms or 2-year terms or however long your term is, if it's to a limited time, immediately the question is asked, जी आपने अपने टाइम में क्या किया? जी नसीम अशरफ ने क्या किया था? और सेठी साहब ने क्या किया था? दुनिया भर में जो सबसे कामयाब लीग्स हैं या सिस्टम्स हैं वो प्राइवेटाइज्ड हैं. हम और सेंट्रलाइज कर रहे हैं. हम जी सारा कुछ PCB के जोर पे डालें कि जी आप चलाएं. यार आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स लाओ, उनको वो पैसा लगाएं. जैसे ये डिपार्टमेंट्स थे वो पैसा लगा रहे हैं, क्रिकेट चला रहे हैं. आप उनको सिस्टम में डालो, आपने उनको और बेदखल कर दिया. बट डू यू बिलीव इन अ प्राइवेटाइज्ड फर्स्ट क्लास सिस्टम इन टर्म्स ऑफ 4-day क्रिकेट? यार NBA क्या है, एक प्राइवेटाइज्ड लीग है. काउंटी क्रिकेट तो नहीं है ना प्राइवेटाइज्ड. उन्होंने फिर G लीग बनाई है कि भाई आप उधर जाके ट्रेन कर. अब तो लड़के कॉलेज भी नहीं जा रहे, वो तो अब्यूज है, स्लेवरी है. कहते हैं जी आप फ्री में खेलो, हम आपको पढ़ा रहे हैं. तो उन्होंने एक G लीग सिस्टम डाल दी है. No, but what about the things like the county system, the Ranji system, Australia का first class यार system? बाजिद हमें बता रहे थे ना, काउंटी बोर्ड का कुछ नहीं सुनते, वो अपने मर्जी से काम चलाते हैं. But it's not private. इट इज़ सेमी प्राइवेट. चलो एक कोलिशन है, उनकी अपनी अर्निंग्स है और उनका अपना रेवेन्यू सिस्टम है, वो सब वो खुद ही मैनेज करते हैं. और वो ज़्यादा गोरिश मतलब आउटसाइडर्स भी 1-2 ही रखते हैं, बाकी उनके अपने लोग ही खेलते हैं. Yeah, exactly. अभी actually I was looking at the county success rates. Essex is one of the most successful counties of the past 3 years. बहुत अच्छी टॉप क्लास काउंटी है. आमिर के अलावा उनकी कोई बड़ी ओवरसीज साइनिंग नहीं है. कोई भी नहीं है. ये टेंडिश काटा वगैरह ये 2-3 लोकल प्लेयर्स के साथ every year they've got nice local talent that's winning them county games. सही बात है. और आप इंग्लैंड को जितने मर्जी आप कहते हैं आप उनका मजाक उड़ाओ, वो ओवरसीज नहीं जीतते. कौन जीतता ओवरसीज? कौन जीतता एग्जैक्टली? मुझे ये बताएं. I think the best touring side in cricket right now is probably South Africa. इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी खत्म हो गई टीम. अब क्या रह गया? रबाडा और डिकॉक ही रह गए. एग्जैक्टली. फाफ डू प्लेसी भी किसी भी दिन छोड़ देगा. वो जो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, आई वुड पुट अ बिग फैट एस्टेरिस्क. बिग फैट. प्लेयर्स तो लोगों के इंजर हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, वो अलग बात है. मुझे सिर्फ ये बता दें
कि Khwaja, if I am a touring team and I'm gonna tour Khwaja land, okay? ख्वाजिस्तान I'm gonna tour, okay? I'm gonna come over and you have 4 venues. One of these venues you've never lost in, and you go to me. You know what? I'm not gonna play a game there. Why didn't they play at the Gabba? वो यार प्लानिंग चलती है. Why didn't they play at the Gabba? यार मतलब मजाक है. I mean वो ये ना BCCI का इतना जोर है कि वो venues भी change करवा सकते हैं. वो वीडियो आई थी ना कि हम मूवमेंट नहीं है पर मतलब वो वाली बात है. Exactly. Like it's come on, like don't lie to us about this. लेकिन यार even if the PCB did that, I wouldn't mind. I want my team to win and have the maximum chance of success. तो वो you know visiting board should not be allowed to dictate where you're playing your series. वो ये ना man. पैसा बोलता है ना यार. You know money talks. That's what it's all about. अब वो सब BCCI के टूर के लिए मरले उतरा है तो मेगा बम्पर उनकी कमाई होती है. उनके टेस्ट मैच ग्राउंड सोल्ड आउट होते हैं, वनडे T20 सोल्ड आउट होते हैं, तो ऑब्वियसली वो केटर करेंगे, थोड़ा पैंडर करेंगे उनको. But at the same time, like I don't want to take anything away from the likes of especially Pujara. I mean he's a top class test batsman. यार एंड ऑफ द डे इन सब यार इतने बड़े हर्डल्स के बावजूद हम नंबर 1 हुए हैं. 6 साल हम बंजारे होके खेले हैं यूएई में. हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. अब होम क्रिकेट आएगी हम भी बड़ी बड़ी सीरीज आराम से जीत जाएंगे. हाँ, वो आपने देखा नहीं श्रीलंका का क्या हाल किया हमने. श्रीलंका का क्या हाल किया. वही बात है, श्रीलंका बांग्लादेश दे कुडंट रियली कम्पीट विद अस. उधर बाबर आबिद इनसे आउट ही नहीं हो रहे थे. तो आपको क्या लगता है हम अंग्रेज बॉलर्स को थोड़ी छोड़ेंगे उधर? हम भी उनको कुट लगाएंगे. Zakaria Khalid is echoing the thoughts of Basit Khan, saying department cricket में अगर department cities के नाम पर हो तो चल जाएगा. रेलवेज वर्सेस पीआई का मैच कौन देखता है यार? वो वैसे यार अभी सेंट्रल और साउथ का कौन देख रहा था? हाँ ये भी है, सही बात है भाई. आप बासित वाली बात है कि मैं आपसे पूछूं where are you from? You go I'm from Pakistan. That's okay. Where are you in Pakistan? You go like I'm from Lahore. You don't go I'm from Central Punjab. I'm from Federal. You don't do that. Nobody says that. I don't say that. मतलब आप वो नाम रखो जो आप एसोसिएट कर सकते हैं. लोग ब्रांड बनाओ उसके इर्द गिर्द. व्हाई डू यू सपोर्ट लाहौर कलंदर्स? नॉट बिकॉज यू आर अ सैडिस्टिक पर्सन, इट्स बिकॉज इज इट लाहौर एंड यू आर लाहौरी. आपको मैं अभी तक याद है वी स्टार्टेड वाचिंग द PSL टुगेदर ख्वाजा, एंड PSL 1 से पहले आपने कह दिया था आई एम अ लाहौर फैन. व्हाई? बिकॉज यू आर फ्रॉम लाहौर. इट्स सिंपल एज दैट. इट्स नॉट अ जीनियस. इट्स नॉट अ नॉर्दर्न कोई जगह नहीं है, सेंट्रल पंजाब कोई जगह नहीं है, सदर्न पंजाब कोई जगह नहीं है. दे आर जस्ट आर्बिट्रेरी रीजंस. Ahmed Junior is a die hard Karachi fan. Why? कराची से के फैन है. सल्लू भाई को भी वो माफ करने को तैयार है. मल्लू, हाँ, वो उसका कराची का नाम है. I don't care who the owner is. हाँ, of course. I couldn't look past that, so I'm a Quetta fan. But हमारा कराची का प्रिंस है वहाँ, सरफराज. ऐसे प्रिंस होने से बेहतर के किंगडम ही ना हो. Is this अहमद अफजल और मुसाद को जुकाम हो गया यार? मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है आज, पता नहीं क्यों, but we'll be back. यार स्कोर ही इतना पड़ा हमारे गले पे. कह रहे मैं देख रहा था सेंट्रल वर्सेस साउथ. यार मैच कोई देखे ना देखे, प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए ताकि वो लीग्स खेलने जाएं. क्या कह रहे हैं? ताकि वो लीग्स खेलने ना जाएं. हाँ, अगर listen, the money is good enough in first class cricket, nobody's going to go. आप मुझे बताएं जेम्स एंडरसन ने कितनी लीग्स खेली हैं जाके? सही बात. Because he's got a salary, he can live a very good life. हमारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी ख़राब है इन मामले में. हम सोचते हैं कि जी हमें प्लेयर बनाने. सबसे पहले आपने क्रिकेट को एक थ्राइविंग इंडस्ट्री रखना है. आपकी जो चलो किसी का घर चल रहा है उस पर यू नो जैसे कहते हैं वो जो चूल्हा जल रहा है, that's the expression के important man. That's the most important thing. Again, that Basit conversation, he goes like, if somebody's good at cricket. इंग्लैंड की ये जो सारे टॉप प्लेयर्स हैं ये फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है. ब्रॉड, एंडरसन कोई नहीं खेलता. दे आर प्योरली ऑन इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स. वो जो थोड़ा सा ट्यून अप के लिए इनको अपनी काउंटीज में जाना पड़ता चले जाते हैं, वरना ये बिल्कुल नहीं खेलते. हम चाहते हैं जी आप जाओ उधर रगड़े खाओ. अजहर अली को क्या जरूरत है सेंट्रल पंजाब में जाके खेलने की? What does he have to prove? He doesn't have anything to prove, but like they don't play cricket all year round. We don't get as many test matches as England. यार वो बात तो ठीक है, लेकिन उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है एक हल्के बॉलरों के खिलाफ रन्स बना के? You're not improving yourself. ये भी है. थोड़ा ट्यून अप के लिए आप जाओ. बेसिकली आपकी वो फर्स्ट बल्कि असद और अजहर के लिए तो जो आपके वर्किंग क्लास क्रिकेटर हैं और जो थोड़े अप्रेंटिसशिप है, यंगस्टर ब्यूटीज जो हैं आपके, उनको ट्रेन आप कर रहे हो, और जो वर्किंग क्लास क्रिकेटर्स हैं वो अपना घर चलाएं. दैट्स इट. टू बी ऑनेस्ट यार, फिर आप एक PSL बना देते हो, ठीक है, दैट्स योर क्रीम ऑफ द क्रॉप फॉर T20. और फिर आप एक ODI टूर्नामेंट बना देते हो फॉर द क्रीम ऑफ द क्रॉप. आप चाहते हो कि भाई ख्वाजा, let me this is a bit ambitious and maybe it's incorrect, but if you were to do a 4-day tournament just like the PSL, obviously not the dhamakas and the fun and all of that and the you know the vanity that goes with the PSL, which is fun sometimes, but if you were to do a 4-day tournament in Pakistan distributed like the PSL is in terms of the cities, would you not watch that?
यार At least a little bit more. At least a little bit more. मे बी अ लिटिल बिट मोर, बट जितने आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इट्स नॉट वर्थ द रिटर्न ना. अब देखो काउंटी चैंपियनशिप चलती है, टीवी पे तो नहीं आती, वो अपना ही चला रहे हैं सब, अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम. पैसा ही नहीं है. स्काई स्पोर्ट्स जितना पैसा लगाता है क्रिकेट पे, वो क्यों नहीं दिखाता सारे मैच? थोड़े फ्लैगशिप मैचेस दिखाते हैं. इट्स नॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट. जैसे लोग कहते हैं नहीं आईपीएल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और ये दैट्स सो डम. नथिंग बीट्स इंटरनेशनल क्रिकेट भाई. T20 वर्ल्ड T20 जो था उससे मजेदार कोई टूर्नामेंट नहीं है. The IPL has, and again, I don't speak about the IPL very often, but I'm going to be very clear about this. There's no, there's no hullabaloo around this. There's no cloud around this for me. It's very clear. The IPL, the organization, I'm not talking about the players. I have nothing against the Indian cricketers. The organization and the people that run it have no intentions, positive intentions for cricket. Their simple goal is to turn the IPL into the NBA of cricket. So 10 years down the road, or 15 years down the road, or whatever years down the road, international cricket, like international basketball, is not paid any attention, and all cricket revolves around this organization called the IPL. And you can already see it happening, Khwaja, this year. On the excuse of a pandemic, tours are being rescheduled so players can play IPL. यार मसला ये कि टॉप लेवल बास्केटबॉल की ओरिजिन ही एनबीए थी. टॉप लेवल की क्रिकेट ओरिजिन पीएसएल आईपीएल नहीं थी. But can you not see this happening? टेस्ट क्रिकेट थी. Tell me you cannot see this happening, Khwaja. यार क्योंकि can you not see the attempt to make this happen? अटेम्प्ट तो ठीक है, सब अटेम्प्ट करें हैं, इसमें क्या बुराई है अगर आप डोमेस्टिकली अपना लोकल प्रोडक्ट इतना पैसा बना रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी पड़ती. अच्छी बात है. अगर आप अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है. आपके करोड़ों लोग इंडिया में देखते हैं, कोई गलती नहीं है. इफ यू आर डूइंग इट at the expense of international cricket, it's a problem. At the expense की if बात you are, आप वही बंदा अपने बीसीसीआई में बिठाते हैं, 2 बंदे आप अपने लगाते हैं आईसीसी में, यार हर बोर्ड यही करेगा. बोर्ड ट्विस्ट करके कहते हैं कि मेरी लीग इधर उधर करो. जिसके पास पावर होता है वो यही करता है. पीसीबी भी करता है, वो यही करता है. This is the first time it's happening in the history of cricket. So why are we? मसला ये कि हम आईसीसी को इंडिपेंडेंट नहीं करते. उनकी जो रूलिंग्स हैं वो मतलब वो सब ऑन पेपर सब एग्री करते हैं, लेकिन वो बीसीसीआई का पत्ता नहीं काट सकता, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का पत्ता नहीं काट सकता. The people running the IPL should not be able to subliminally dictate the international cricketing calendar. अब मसला ये है कि उनके आईसीसी का यही बात है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है. उसका स्ट्रक्चर ओपेक की तरह है कि जी ये कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, हम ही सब कुछ डिसाइड करेंगे. It's just a round table, that's what it is. वही है, उसकी वैल्यू नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है वो. अगर ये पैसे देना बंद कर दें आईसीसी टूर्नामेंट में, इंडिया नहीं आए तो इनका दुबई का ऑफिस बंद हो जाएगा, बत्तियां बंद हो जाएंगी. Ghost Kagawa with a comment saying privatization is better. State and federal run governments are too corrupt in India. So pathetic that Indian Home Minister's clown son is being sucked up by Ganguly. Plus privatizing, they don't have the efficiency, वो profit motive नहीं है. Plus privatizing legitimizes other leagues like the ICL, which wasn't great competition, but it was competition nonetheless. Monopolies suck. So he's I mean, he's not as explicit in nature, but he is saying that the IPL being government funded and being this monopoly of cricket, why was the ICL cancelled out? Why? Can you give me a legitimate reason? It was business that was run. एक competitor आ गया था उनके पास, उन्होंने कहा भाई ये हम भी organize कर सकते हैं, इनको हम क्यों? I think it was cancelled because Lahore Bachas destroyed everybody in that league. Of course एक factor था कि जी लाहौर की टीम आके Indian, which was basically Pakistan 11, Lahore Bachas. Labs is saying, और उनकी अभी भी इतनी fan following है यार. Man, that was a great team. Great team. It was fun to watch too. Legend team. I think Inzi was a captain. Bullying Indian domestic cricket. भाई आप बात करते हैं, सियालकोट स्टैलियंस ने मुंबई इंडियंस को सीपीएल में हराया है. भाई लाहौर लायंस ने मुंबई इंडियंस को हराया. It was the Lahore Lions, sorry. Sialkot नहीं, Lahore Lions थे, sorry. The Labs is saying CC Hassan Minaj's episode on cricket. Yeah. बिल्कुल सही. That was a good one. भाई आप, if you want to really get into that La Visa, there's actually a good documentary called Death of a Gentleman. हाँ, वो which is a little bit more in depth because वो थोड़ी सी आइडियलिस्टिक है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज रिकॉग्नाइज नहीं करते. बट द पॉइंट इज कि डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, वो आर विलिंग टू इन्वेस्ट X amount of crores in cricket, तो आप क्यों ऐसी रिसोर्स इग्नोर कर रहे हो कि फॉर द सेक ऑफ पावर? व्हाट इज पावर यार? एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेटर्स चाहिए. इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, फलाना ढमकाना, सब डिपार्टमेंट खेल चुके हैं यार, उधर से ही आए हैं. और जब आपने उनको सबको निकाल दिया, वही कामरान अकमल टॉप पे है, वही ताबिश खान टॉप पे है, वही सोहेल खान टॉप पे है, वही फवाद आलम टॉप पे है, तो नाम तो नहीं बदले. तो आपने कौन से कोई नया फार्मूला लाए हो? प्लेयर तो वही है जो प्लेयर है. It's just a rebranding. That's all there is. Rebranding, और आपने उनके पैसे one quarter वो पैसा उनको मिल रहा है जो उनको पहले मिल रहा था यार. And again, the other issue is, and we'll go back to that conversation with Bazid, is that मोहल्ले की टीम से कहानियां शुरू होती हैं, फिर जाके शहरों जो है वो डिस्ट्रिक्ट की टीम आती है, फिर शहर आते हैं, फिर प्रोविंस आते हैं.
आप जाके, और अगर मैं अपने स्कूल का ही आपको एग्जांपल दे दूं, अगर इतना छोटा सा शहर, इट्स इन सऊदी अरेबिया. Saudi Arabia, again, it's not known for its sporting culture. It has many issues, Khwaja. A small American school in a small city in Saudi Arabia, Yambu, no, most people have never even heard of it. We were a big volleyball school. What does that mean? That our volleyball teams were always good. So 2008, 2009, all the way till I graduated, we used to host all the boys and the girls volleyball tournaments for our school district, which mean Tehran, Jeddah, Riyadh, Dammam would all visit us to play to play volleyball there. We would host the players, all of that, etc., etc. The entire gymnasium would be full. I'm talking 300, 400 people that are coming out to play to see Assad play volleyball. Why would you do that? Why would you do that? अब NBA का सबसे क्लियर एग्जांपल है भाई, मैं लेकर्स के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं रॉकेट्स के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं टीम यूएसए के लिए थोड़ी खेलना चाहता हूँ. No, and why would a bunch of Pakistani, Indian, Filipino, American, Canadian expats come to watch the Yambu Stallions play? Because they're their people. शिनाख्त है ना. There's their people. ये अपने बच्चे हैं, अपने लड़के हैं. और भाई प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, होम एंड अवे एटमॉस्फेयर होता था. हाई स्कूल की वॉलीबॉल मैच हो रहा है और ऐसा होता था कि it was like cutthroat. और हमने पीएसएल में देखा है, शुरू होने से पहले जी लाहौर कराची एक आर्च राइवलरी बन गई. इट ब्रोक टीवी रिकॉर्ड्स इन पाकिस्तान क्योंकि इट एग्जिस्ट. अगर आप उसको लैच ऑन नहीं कर रहे और उसको आप प्रॉफिट उस पर मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, आप उस पर कमा ही नहीं रहे उस राइवलरी पे, तो फिर आप कर क्या रहे हो? उस सेंट्रल और साउथ कौन देखेगा भाई कि भाई बड़ा कोई करारेदार मुकाबला है. पंजाब सिंध इस लेवल पे लोग थोड़ी सोचते हैं. और मसला भी वही है, 200 मिलियन पीपल आपकी पॉपुलेशन, आपने 6 टीमें बना दी हैं. अब बंदे को कितने हर्डल से गुजरना पड़ेगा, कितने ऑब्स्टिकल्स आप डाल रहे हो. आप कम से कम 12-16 टीमें एक लीग बनाओ. लाहौर लाइटनिंग बनाओ, सियालकोट शेर दिल्स बनाओ, कराची केकड़ास बनाओ, कोई भी टीम बनाओ. आपने हमें प्रीमियर लीग की केकड़े दे दिए हैं. वो यार एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मर्जी आप 12-16 टीमें बनाओ हर शहर की, इसमें क्या बुराई है? Fair enough, yeah. The cream will always rise to the crop. It doesn't matter कौन सी competition होती है. Ghost Gawa saying, ultimately it will come down. It will come to demand for international versus domestic. It is a demand of format, and it comes down to fandom. Personally, IPL season 1 was the best cricket I enjoyed because of the mix of international cricketers. I enjoyed that too. Got to see Tanveer and Shoaib and all that. International cricket is nice to watch in ICC tournaments and the test format, but ultimately there needs to be a demand for it. Let's not go out of our way to save things that do not make commercial sense. And I think it's a good point because not a lot of people are watching bilateral ODIs. इसलिए तो उन्होंने कम कर दिए हैं वो पहले से, क्योंकि T20 वो स्पेस खा गई है ना bilateral ODI. I would have पहले सिर्फ एक रेड बॉल और वाइट बॉल, दो ही चीज़ें, अब 3 हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है T20 3 घंटे में मैच खत्म. उतना ही मज़ा आता है, उतनी छिक्के चौके देखने को मिलता है. I would have a lot fewer issues with the IPL if they were not openly discriminatory towards Pakistan. And if they were not clearly twisting the arms of other international cricket यार boards. वो तो है ही ना, वो तो चलता है. These two things are definitely, and I'm very open about them. These are, I don't think anybody would twisting disagree. the arms भी क्या हो, the foreign players get a percentage of the earnings they pay to their boards for the NOC. खिलाओ पिलाओ प्रोग्राम है हर जगह, straight forward. वो क्यों न्यूजीलैंड क्रिकेट अपने प्लेयर्स भेजता है, साउथ क्रिकेट साउथ है, उनको परसेंटेज मिल रही है IPL earnings से अपने फॉरेन प्लेयर्स की. I think it's like 10% or 5%, जितना भी परसेंट है, to give them the NOC. Yeah, if you are joining us now, we are in the midst of a rain delay here, and the start should be in 4 minutes actually. अच्छा हमने बातों में ही सारा टाइम गुजार दिया. Yes, in 4 minutes. I think we're 3 hours ahead, Khwaja. Yeah, it's 3 hours. Yep. 1:15. Yeah. Let me check अगर हमारी. I think we're 4 hours ahead in Pakistan. नहीं सही है. छोटा सा ही ब्रेक था, thankfully. हमने we're back in 4 minutes. Passionate discussion में ही निकाल दिया, अच्छी बात है. And I think BN has just given up on the test match because they're still not showing anything. Let me check उनका क्या सीन है. BN वाला भी सो गया होगा, कहता क्या है यार, बारिश, इतनी बॉलिंग इतनी बैटिंग नहीं देखनी मैंने इंग्लैंड की. I'd be worried if he even knew enough about cricket. Al cricket. Big Champions League final tonight, Khwaja. यार छोड़ो यार. I think it'd be a good game though. I'm still bitter. Don't you think we've got some very good attacking footballers on display tonight? Got Lewandowski, Götze, Mbappe. Project Mbappe. Neymar. हमें भी शुरू करना चाहिए Project Babar. वाकई यार. लेकिन वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी थ्राइविंग है अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं मतलब एक और.
हाँ उसके आसपास कोई नहीं है ना. But now we can see Mr. Crawley coming out. अब मुझे लग रहा है थोड़ा clear up Be हो nice to गया see him finally. go back in. यार खुदा के वास्ते भाई जान छोड़ दे हमारी. Azar, lot of pressure on him in this test match to redeem some of his lost reputation के भाई one used to be one of our elite batsmen, was on the cusp of being in that Fab Four. मुझे याद है एक ज़माने में conversation चल रही थी कि भाई अजहर और पुजारा उसी डोर स्टेप पे आ गए हैं. Yeah. बस उनको एक और सीज़न अपने एक एनहांस करनी है. Yeah. लेकिन पुजारा ने किया और अजहर 2 साल ज़ाया कर And दिए. again, for now, if you mention Azhar and Pujara in the same sentence, you'd laugh. People will laugh at you. सही You'd बात laugh है. because Pujara has been scoring runs everywhere in the world. 4 पता नहीं कितने 300 मारे थे उसने on that tour of Australia. He was unbelievable. Out ही नहीं हो रहा था उनसे. Zakaria Khalid is skipping ahead. He's asking, what are our chances in the T20 series? यार इंशाल्लाह उम्मीद तो है because इंग्लैंड हमने देखा एक्सपेरिमेंटल साइड्स काफ़ी खिला रहे हैं. Yeah. ये सैम बिलिंग्स और बैंटन और Bants. और क्या नाम है इस किस्म के प्लेयर्स जेम्स विंस टाइप प्लेयर्स. Tommy आई थिंक वी कैन Bants. नॉक देम ओवर. बड़ा अच्छा चांस है यार. व्हाई नॉट. Yeah, yeah. आगे Back live BN now. आगे. 336 for 4. We're going to switch over. हमारे बीएन वालों को भी होश आ गई फाइनली. Match भी चल रहे हैं इधर. मैच आत. Defended away for no run. Good start from Pakistan. Just got to keep it tight, make sure the score doesn't turn into one of those 550s and you're just looking out to save the test match. यार ऐसे तो ना को यार. हम 400 कुछ पे इनको अभी भी कर लें बुक तो आई थिंक वी कैन बी इन द गेम. टाइम बहुत है. I just think Khwaja, after they've got this score, Pakistan are just looking to draw this game now. There's very little chance Pakistan can win यार this. अभी बहुत टाइम है यार. ऐसे नहीं शुभ शुभ सोचोगे तो शुभ शुभ होएगा ना यार. It's all about the positivity. Yeah. Just manifest, as they like to हाँ say. of these days. course. Speaking of किसी manifestation, चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है. We Oh have to my have God. that What kind is of happening? mentality. what is Butler happening? on 91 not out. Shaheen Shah steaming in. Left arm over. Down the leg side, that's going to be four. Yeah, there's. Oh, no, नहीं, there नहीं, is a fine सिंगल, leg in सिंगल. place. अब तो फील्डर हमने फैला दिए हैं. Let me tell you the win viz. You're not going to like this, Khwaja. क्या कह रहा है? 74% England, Fair enough. 25% draw, 1%. 1% Pakistan. ये इन पहले ही 84% पाकिस्तान पे ये जलील हो चुके. दिलविज क्या कहता है आपका? ये पूछते हैं. That's the real. Dilviz. हाँ. Let's talk about Dilviz, and we'll get the average of both of our Dils. दिलजे. I will say 70% England, इतना करीब है विनविज के आपका भी यार. 70%. थोड़ा तो पॉजिटिव हो. 70% England, 20% draw, 10% and चांस दे रहे 10% for हो. Pakistan. I don't know where the 20 wickets are going to come from, Khwaja. यार 20 विकेट्स. हाँ ये बात तो है. Yeah. मैं तो कहता हूँ अभी भी 50-50 है. अभी भी इट्स स्टिल इन द बैलेंस. अभी भी हम कुछ कर सकते हैं. You mean 50 to England, 50 to Pakistan? हाँ यार क्यों नहीं यार. चलो 30 पाकिस्तान कर लो. 20% ड्रॉ. एंड आई एम फेवरिंग ड्रॉ. बट I think I we would say have one 30 good draw batting and innings. 20 Pakistan if you're being really Here honest. comes the KG. The Kalai God. Kalai God. Wow. Look at that lovely suit, lovely shirt, lovely Kalais. But यार उन्होंने ये wrist watch पहन लिया वो मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया. 98.3. For the nude wrists. Yes. Zakaria is saying मेरे ख्याल से हमारी टीम थोड़ी बेहतर है T20 की बात करें. I wouldn't हाँ discount definitely England. बेहतर है यार. नहीं I wouldn't automatically say और- that. उनकी टीम देखें. Morgan, Butler, Moeen Ali, Adil Rashid. मॉर्गन भूल गया था मैं. मतलब कोई मॉर्गन खेलता है T20. Yeah, he captains his side. लेकिन अगर स्टोक्स बटलर नहीं है तो काफ़ी इनएक्सपीरियंस हो जाएगा. बेयर्स तो कम है. अबे यार मुझे बताएं रॉय भी है. उनकी टीम की वीकनेस किधर है? आपके प्लैटिनम प्लेयर खेलते हैं उनके लिए. प्लेटिनियम प्लेटिनियम प्लेयर खेलते हैं उधर. वाकई यार मैंने सोचा ही नहीं था रॉय और बेस्टो के I बारे think this is England's T20 side is better than Pakistan's right now. में. लिस्ट टीम उन्होंने अनाउंस कर दी है. 17 अभी अनाउंस किया ना, 11 तो नहीं. अच्छा उन्होंने कर दिया. 337 for 4. स्टोक्स है. Shaheen Stokes Shah तो नहीं Freedy होगा. now coming in. And it's Way. clipped away. It'll beat mid wicket. Should go all the way for 4. That's well timed from the crawler, Zach Crawley. Another boundary, the first of the morning for थोड़ी him. सी ज़्यादा फुल दे दी लेकिन अच्छी बॉल थी यार. उसको प्रोटेक्शन ही दे दो आप लेग साइड पे अगर वो इन स्विंग बॉल करा रहा है यार. Zakaria again, Bobby 250 not out. यार अल्लाह करे यार. आई होप सो. And Ghost Kagawa is predicting a draw because there's a little bit of rain on Monday and Tuesday. अच्छी बात है यार. भर भर के बारिश हो लेकिन जब आदिल रशीद तो 100% होगा. विली भी होगा आई एम गेसिंग. स्टोक्स और बटलर हैं. बस ठीक है. बस काफ़ी है यार. और इतनी ब्रेक हमें मिल जाए. बिलिंग्स आप देखिए इस्लामाबाद के लिए खेलते हैं. You've और seen him. यार छोड़ो यार. He's- ये उस किस्म के प्लेयर नहीं है. पाक बैशर्स नहीं है. बेस्टो खतरनाक है Chris Jordan. यार. बॉलिंग को तो हम मार ही लेंगे.
Oh, That big was appeal, bad, big and it's appeal. just pitching outside leg, and I think it's a little too high as well. Crawley's a tall man, so if it hits above the knee roll, it's usually not out for him. Butler on 92 not out. Crawley 175 off 295. कितना तेज मसला है कि उसने 100 भी बहुत तेज मारा है 341 for 4 after 99 शाहीन शाह still plugging away अब्बास को भी ये है 2 ओवर करा रहे हैं फिर लंबा ब्रेक मिल रहा है 3 ओवर करा रहे हैं लंबा ब्रेक मिल रहा है so they're relatively fresh not much cricket being played so far only the 9 overs so hopefully Abbas can So Roche is optimistic, saying Imad और Shadab दोनों संभाल लेंगे English batsman को. Imad is actually underrated in T20s. यार उनके लेफ्ट हैंडर्स कितने मॉर्गन वो तो उसको मारेगा हाँ. बाकी राइट हैंडर्स है I बाकी think Imad got him in the World Cup too, right? नहीं Hafiz got Hafiz got it. Hafiz or Malik one of them Malik got Morgan It was a spinner. It was an Ah, off. spinner It was an tha, off. spinner You tha. got him. Abbas now bowling. The keeper's back to Abbas now. हफीज ने उसको आउट किया था रॉय को he was sweeping and he fell over And immediately I think because he opened the bowling. ऐसे कुछ हुआ He था opened the bowling. That was a fun game to cover, Khwaja. वो That and the Afghanistan game was not. The Afghanistan game was not fun. हमारे विंस तो सारे मजेदार थे No, but Afghanistan was not fun. वो तो बहुत ही उसमें तो- इंटेंस गेम थी यार Actually, the game we lost against India was pretty fun to cover. We had a huge crowd for that game, so. it wasn't that much fun लेकिन बस ये है कि यार the frustrating thing was we only needed to bat one more hour फिर बारिश हो जानी थी और हमसे वही नहीं हुआ हफीज और मलिक ने जो गंद मारा है Edge taken! There's the wicket that बस एज नहीं लगा Oh, what is happening here? व्हाट अबे यार यार कोई अपील तो करो. अपील भी नहीं हो रही. यार इतनी स्विंग हो गई ऑफ द पिच शिट यार मैं को स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट हो गया यार Let's have a look here. What happened? Hit the seam. Oh, it's hit the back thigh. यार एक तो I heard the noise as well, Quaj. I thought it was definitely out. मनोज की टांग आ गई रास्ते में बट गुड स्टार्ट देयर फ्रॉम अब्बास राइट आफ्टर द अनदर रेन ब्रेक मैंने कहा चलो जी सीन ऑन है यार कोई बंदा अल्ट्रेज ही लगा देता है एक मतलब. अल्ट्रेज स्क्रैम्बलर ही कोई लगा दे गुड बॉल वंस अगेन आउटसाइड ऑफ बटलर को चैलेंज करें ये जो 8 रन उसको चाहिए आराम से नहीं हम देंगे थोड़ा फाइट करके ही देंगे बट वंस अगेन अ बिग ब्लस्टरी विंड कमिंग इन मुझे लग रहा है फिर अनकरीब बारिशात शुरू हो जाएंगी बट अ लवली डिलीवरी देयर फ्रॉम अब्बास जस्ट हैड नो लक इन दिस इनिंग्स एट ऑल अभी क्रिस वोक साहब भी तैयार बैठे हैं ट्रॉट साहब तो फुल चिल माहौल सिगरेट लगा रहे हैं कॉफ़ी लगा रहे हैं अब कहते भाई मेरा काम हो गया है सीरीज़ बच गई है उन्होंने पिच बना के सीरीज बचा ली है. exactly 341 for 4 after Bloody Engrays. 99.3 overs. Day 2 of the third test match between England and Pakistan. Left alone, good movement there from Abbas. Rizwan is not keeping up to him now. पीछे चला गया आई थिंक शायद थोड़े पिच पे भी थोड़ा सा बारिश के स्प्रिंकल्स पड़े तो थोड़ा फ्रेशन अप हो गया हो होपफुली वरना इट्स बीन एब्सोल्युटली डेड It was covered overnight. 341 for 4 Crawley 175 Butler 92 this partnership has just taken the series away from Pakistan to be quite honest Yep. especially Butler तो मुझे लगता है मैन ऑफ द सीरीज When you put it like that, that's actually very true. मैन ऑफ द सीरीज कैंडिडेट होगा आराम से और वो कह रहे थे कि भाई इसको सेलेक्ट नहीं करो सो पाकिस्तान वंस अगेन रिस्टोरिंग एंड मेकिंग करियर्स बटलर साहब और आपको याद पता नहीं है या नहीं बट 2010 में एलिस्टर कुक वाज अंडर सीवियर प्रेशर फॉर हिज ओपनिंग स्पॉट एलिस्टर कुक उन्होंने कहा था भाई इसको निकालो ये स्कोर नहीं कर रहा एंड वी प्रॉम्प्टली गिव हिम 100 इन वन ऑफ द टेस्ट्स दैट्स ऑल शी सेड 341 for 4. उसने उसके बाद भी कितने 6-8 साल और खेला है when he was right on the verge of being dropped for good and in fact became captain Yeah, 120 at the Oval. So Roche is remembering that innings. Defended away from Butler. 341 for 4 after 100 overs it's been a grind for Pakistan लेकिन अभी भी 6 विकेटें हासिल करनी है अभी भी हम मैच में अगर जिंदा रहना है तो we have to keep fighting hard फिर उम्मीद करें कि हमारी बैटिंग finally comes through Shan Masood after that brilliant 156 only made 1 run in 2 innings after that For the life of me, यही हमारा सबसे बड़ा मसला है हम एक बड़ी इनिंग खेलते हैं फिर उस पर बिल्ड नहीं करते कि हम एक वी डोंट पुट अ सीरीज टुगेदर besides Babar, बिसाइड्स बाबर ऑफ कोर्स लेकिन वही अब वो but he's the exception to many rules in Pakistan. The what I cannot wrap my head around, Khwaja, is how, and again, people will be like, you sound like a Pakistan fan, and obviously we are, but how unlucky Pakistan have been in this series. They were 91 for 4 in that second test match, Khwaja.
And I know it was raining around, but Pakistan's 230, 250 after the Yasser blitz in the first innings made that score look a lot better than it was. Definitely, yeah. Because the pitch was moving, the bowlers were right in the good areas, and I think if we had at least 4 days or even 3.5 days of cricket, Pakistan would have had a proper chance. अच्छा खासा हमने फंसा लिया था इंग्लैंड The sun has only come out for England in this series, and I mean that physically. biased sun है And I mean that physically and metaphorically. 3-4-1 for 4. 100 overs are up here. Shaheen has been toiling. It's been tough on these young lads. 23 bowlers that have bowled now, and they've gone only for 79 runs for his wicket. Crawley's still out there battling for what is a elusive landmark for a test batsman, double 100. And coming so early in his career could be a proper game अब्बास भाई कह रहे हैं changer. यार ये क्या हो रहा है It's raining again now. क्या अजीब ड्रामा चल रहा है यार The bearish नहीं वो तो सुकून से बैठे हुए हैं I guess they're not that concerned लेकिन the hilarious thing is all over England उधर कह रहे हैं जी full गर्मी और It's a heat wave. it's a heat wave वाला माहौल हुआ है और हम इधर आके साउथ ऑफ इंग्लैंड में इधर बैठे हुए बारिशों में बैठे हुए the quirks of the game 175 now. और 2020 में अभी तक हमसे वेदर प्रेडिक्ट नहीं होता ये क्या सीन है What यार do you mean weather predicting? Driven well from Crawley off the back foot, but it would go straight to मतलब point आप for एक single. महीने की अभी भी ये फोरकास्ट नहीं बना सकते क्यों नहीं हो सकता बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाते ये but they're not 100% accurate. यार इतनी इनएक्यूरेट किस लिहाज से inaccurate कह रहे हैं? मतलब आप किसी रीजन में जाओ जस्ट 0% बारिश है Yeah. I don't know why. I think you can only predict up to like a week in advance or something. Yeah, my meteorology skills are nil. कोई होगा चेंज ऑफ पेसर होगा नॉलेज Any meteorologists on the डेफिनेटली on the chat? डेफिनेटली I think actually Ghost Kagawa हाँ does a little meteorology on his own time, so it might. साइड हॉबी Yeah. Driven beautifully from Zach Crawley, and it's a good Yeah. diving effort from the captain there. He's going to चलो, keep it चौका to तो just बचाया। 2. Yeah, save a couple runs for his team. मूविंग ऑन तीन भागे हैं दो You a astrology person or an astronomy person? यार आई एम नॉट दैट इनटू स्पेस एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा चलो एक शुगल के लिए बंदा पढ़ता था एक्चुअली माय मदर यूज्ड टू लाइक कि हर वीकेंड मैगजीन आता था Yeah. खलीज टाइम्स में कि जी मुझे पढ़ के बताओ Yeah. क्या है मेरा लिब्रा शी वाज अ लिब्रा Yeah. शी इज अ लिब्रा कि क्या भाई ये लिखे हैं और वो इस तरीके से लिखते हैं इट्स वेरी वेग और वो पॉजिटिव स्पिन देते हैं Yeah. फिर कहता हाँ यार ठीक ही होगा Yeah, true. क्योंकि कोई नेगेटिव Applies to everyone. 345 for 4. 100.4 overs gone. been a tough grind for Shaheen in this innings. Good drive again from Crawley. This time might Piche find the there, gap, yeah, and the fat man at cover, Yasser Shah, is going to give up chase. That'll be 4 more for the crawler. Moves to 180 now as England go 349 for 4. Lavisa coming in with a fun fact about the weather, saying because of the COVID-19 pandemic and suspension of flights, the weather prediction has been very inaccurate because a lot of the data about the weather was collected by planes. अच्छा fair point that you know, makes and sense. cruise ships as well. वो तो सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है Yeah, we आजकल। forget how important the oceans are to weather जी, जी। and large scale water bodies. That's a very good well described point Yeah. with proper logic. Shout out यार 222 की पार्टनरशिप यार This is the highest 5th wicket partnership for England versus Pakistan in test matches. ये देख लो Previous best between Collingwood and Morgan. अब मसला ये जो हमारे आर्मचेयर एनालिस्ट हैं टीवी पे जो आते हैं वो जी पकड़ लेंगे जी ये क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है फजूल का So I क्रिटिसिज्म put out a tweet this morning, Khwaja, from the Change of Pace account celebrating. अच्छा आप चलाते हैं अच्छा हाँ मैं हाँ दिया जी. अच्छा अच्छा नहीं हमने एजेंसी एम्प्लॉय की हुई है. अच्छा अच्छा Um, कौन सी रॉ या CIA कौन सी Mossad. 349 for 401 overs bowled. I actually put down saying celebrating the 4-year anniversary of us bringing the number 1 test team. A couple of comments came in saying, and I asked the people, I was like, is this the best ever Pakistan test side in the history of the game? And some people immediately, I asked the question, it wasn't a definitive statement, immediately were about saying 80s that की वो team they don't, no, they didn't reference anything. Oh, beautiful shot from Butler. That might just take him to 99. And it should go for 4. Yep. 1 run away from 100 and some much needed one for this man. He's struggled all the past 2 years, but obviously against Pakistan, it's been showtime for him. कमाल है यार बंदे ने 2 backs against the wall innings खेली हैं that has really resurrected his test career his reputation
He was on the verge of being dropped. I'm sure Ben Folks right now is cursing Pakistan. बेस्टो साहब भी सोच रहे होंगे यार मुझे चांस मिलता तो मैं भी 20 रन बना के आउट हो जाता. 353 for 4 now. 350s come up for England. Small milestones are now racking up now for the men in blue. But bit of a loose delivery there, too slow and too wide. Of course, Abbas doesn't have the pace of Shaheen to get away with that. Nicely punched by Joss. लेकिन player है यार ये तो माने. I think he has like 4 or 5 different hundreds against Pakistan. He's got especially against Pakistan. He's defended away. Abbas fields off his own एक bowling. तो उसने मुझे याद है दुबई में मारा था, एक वर्ल्ड कप में मारा है और एक ODI सीरीज में भी मारा था. Man, the World Cup match they lost, Khwaja. They had 2 centurions in the game. 200s. And they lost. And frustratingly, Hafiz, that was the best innings Pakistan he played. had no centurions, I think. 83 मारे थे Hafiz ने उस मैच में. He played really well, then got caught. How underrated is Harish Sohail's inning against New Zealand, man. That is a World against Cup. New Zealand and against South Africa. And South Africa as well. He changed the match with that innings. The 84 उसने South Africa के खिलाफ किए थे. South Africa के खिलाफ किए थे. I mean, the pace of that innings. बहुत ही आते सारे उसने मारना. जी, मतलब he was better than Babar Azam in that game. 100%. I think that's one of the great Pakistani World Cup innings. Cameos के हिसाब से तो no doubt. यार 84 cameo तो नहीं होता. मतलब जो वही है ना 100 नहीं था तो याद नहीं रहता. हाँ यही बात है. लेकिन जैसे इंजमाम का 60 of 36 वो तो हम कभी नहीं भूलते. This was right up there, to be quite honest. And again, I think Amr Naqvi, seasoned cricket analyst, said that the 2019 beats the outside edge immediately to Zach Crawley. Rizwan's come up to keep. Amr Naqvi ने कहा था कि the 2019 World Cup for Pakistan was the best World Cup they've had since 99. 90 no doubt. The 2003 or 7 तो बिल्कुल फिर 11 भी काफी अच्छा था 11 ठीक था. 11 भी But I actually asked him that on Twitter that day when he said it, and he said that the opponents that we beat in that tournament Canada, were not Kenya as वगैरह tough. थोड़े फारिग थे. Windies को हमने हराया था, Canada को हराया था, Kenya को हराया था, India को हराया था पर उन्हें माना नहीं. श्रीलंका को हराया था host को. That was a good win. हाँ. लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था यार. ऑस्ट्रेलिया को हमने एंड की थी स्ट्रीक. The Umar Akmal, the Undertaker. So that, I think that's debatable. I think फिर वही KCCA माफिया आपका शुरू हो जाता है ओवर हाइप करने. 2011 हम वही we would have won that World Cup. 2019 में हमने न्यूजीलैंड को हराया, टॉप टीम, फाइनलिस्ट. इंग्लैंड को हराया, फाइनलिस्ट. साउथ अफ्रीका को हराया. इंग्लैंड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ गोइंग आउट. आप भूल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको मारा था. वो तो इंडिया ने उनको फेवर दिया था. हाँ वो प्लानिंग हुई है ना, वो अलग बात है. नहीं बट सीरियसली 2019 वर्ल्ड कप वाज अ गुड वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान. यार जो वेस्ट इंडीज द मैच वी लॉस्ट that was horrible. अभी भी चुभता है यार. That was the start of the tournament. आपको याद है हमने कितनी प्रिपरेशन की हुई थी उस मैच की. Oh yes, it is gone. Come on. Yes. Oh, it's gone for 99. That is an unfortunate side in cricket. You don't want to see that happen even as a Pakistani. रिव्यू कर दिया उसने फौरन. यार थोड़ा सा बुरा लगता है. 100 होना चाहिए बेचारे. जहन्नुम में जाए बुरा लगता है. हम क्या करें भाई. दे एक रन दे देना उसको. लेकिन जॉस की जो बॉडी लैंग्वेज है, he looks fairly relaxed. No, I think he looks very परेशान. पता नहीं. बट अल्ट्रा एज भाई, मेड इन इंग्लैंड. अल्ट्रा एज है, कुछ भी हो सकता है. Oh, there's daylight man. इतनी daylight है. ये आउट किस तरह दिया एम्पायर ने. यार कभी देखते हैं अल्ट्रा एज क्या कहता है. Is there an edge? Yes, it no, is! there's not. That's not enough. That's not enough to give out. यार why not? No. It's the Out bat. है भाई. It's the bat scraping the pad. Oh हाँ, shit यार. See what the on-field umpire. Fuck. Yep, that's not out. यार चलो अपील तो अच्छी थी. It's funny you said that the 2011 World Cup was यार भी better because उसमें भी सरोज जिस तरह कह रहे हैं KCCA के ही कैप्टन थे शाहिद अफरीदी. ठीक है, no doubt कि वो अफरीदी ने बहुत बड़ा. That was actually अफरीदी should have retired after that World Cup. To be He would have had a great legacy. बहुत. यूनुस खान भी वनडे छोड़ देता. Even a bigger legacy than he has now. बिल्कुल यार. लेकिन वही है जी, नहीं हमने करियर घसीटना है. जो रूट साथ ही छुप गया. ये ऑली पोप क्या एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर बना हुआ है. नहीं, the 11 World Cup was very nice. It was a good one. 11 यार, we would have won it. 100% we would have won it. There it is, 100 for Joss Buttler on his return to Test cricket against Pakistan. Beautifully punched through the covers, screams away for 4. No, not for 4. In fact, just the 2 or maybe 3. Fawad Alam cleans up, and a brilliant innings by Joss Buttler. 108, 102 not out of 189 deliveries.
backs against the wall. His second test 100 in 47 test matches and his first against Pakistan. If you're not getting runs in Test cricket, if you're new to the game, if you seem like you're going to get dropped, give us a call, 800 Pakistan, and we'll get you back into the Test side. We'll get you back into form, and we'll make you a bit of a cult hero, a bit of a legend. Unbelievable stuff from Joss. He's a top player. He struggled in red ball cricket, but he silenced his critics once and for all. A very important innings, a landmark innings in his career. After that first century he made against India, now Pakistan की बारी आ गई. ये तो full East India Company का कोई सबूत लग रहा है जो हमारे देसियों को ही जलील कर रहा है बार बार. But a top innings for a top player. White ball में तो हमें पता he's such an elite talent. Yeah. So fair enough, well played young man. Not such a young man in fact, but a top player no doubt. Well played. No comments. इतनी बस जितनी तारीफ मैं कर सकता था मैंने कर दी. No, it's been a great innings, and again, batting against the likes of Naseem and Shaheem for such an attacking batsman like Joss Butler, he has to kind of battle his instincts as well. We always talk about players, जी आप जाए अपनी natural game खेलें. वो खुद कहता है, I thought my test career was over back in 2018 when he got a recall. Exactly. But this summer, look at him, 52 average. Yeah, he's made 250s and 100 in 6 test matches. Look at that, brilliant stuff. दोनों might prove to be match winning, especially the one against Pakistan. This is the kind of number 6 that Pakistan have been dreaming of for a while. वो तो यार अब छोड़ दो यार, ऐसा कीपर बैट्समैन हमें मिल जाए तुम कहाँ पहुँच जाए दुनिया में. 356 for 4 now England. This total now is becoming increasingly dangerous as Shaheen is continuing here. And again, even this morning, Pakistan's bowling has not been poor. बिल्कुल सही बॉलिंग करा रहे हैं, बस थोड़े से लूज बॉल्स अब्बास और शाहीन ने अभी डाले हैं आफ्टर दिस रेन ब्रेक. थोड़े से चौके वाले बॉल दिए हैं, चौकात. बट क्या कह सकते हैं यार, they've batted really well, not really given a sniff. Yeah, going back to the point about a lot of coaches and a lot of analysts saying bat your natural game. Test cricket, you might need a little bit more than that. You might need to be against your instincts. You might need to fight that need to score runs quickly. 100%. And Butler, yeah, he's और under pressure था क्योंकि इसने catches भी छोड़े हैं series में. Exactly. But he's responded really well. Well twice. left there, outside off. It's a dangerous one from Shaheen Shah. But Sarosh makes a good point, Khwaja. If Afridi had retired that early, we wouldn't have had that Asia Cup. यार The couple of sixes against Ashwin and कितना आप sliding doors वाला that innings against Bangladesh is a nice one. मजे की बात है उसमें, उस मैच में हफीज ने विकेटें भी ली, कैचेस भी लिए, रन्स भी किए और उसको किसी पूछता ही कोई नहीं उसको. Actually, that's probably one of the greatest performances of his life. It is. But an unpopular opinion about the 2 sixes that Afridi hit against Ashwin. He actually screwed that match up. And then went on to save it. And then went on to save it. Fair enough. तलहा और अजमल और उनको स्ट्राइक दे देके. नहीं और आउट शुरू में स्लो भी खेल रहा था ना फिर आपको याद हो. And it was fair enough that happened, but मतलब hindsight is ये रखना चाहिए दिमाग में. तो यार अफसोस ये होता है कि वो वनडे टीम काफ़ी अच्छी थी और उसको हम ले नहीं पाए कि यार उसके बाद इरफान आया था, यानी वी जस्ट नीडेड टू ऐड सम पीसेस और वो टीम कंप्लीट. 2011 का स्क्वाड आप रिकॉल करें जरा. कमरान अकमल और आई थिंक हफीज ओपनर थे. नहीं, अहमद शहजाद ओपनर था. हाँ, फिर वो ड्रॉप हो गया था. अहमद शहजाद और इन्होंने कितनी वर्ल्ड कप्स खेली हैं, हफीज ने कितनी खेल ली हैं यार. 11, 15, 19 आई थिंक 7 भी खेली हफीज ने. एंड ही प्लेड द 2010 वर्ल्ड T20 एज वेल. यस, 2007 भी उसने खेला था. 2009 T20 भी खेली उन्होंने. 9 में नहीं था वो, 9 में बेंच पे नहीं थे. नहीं 9 में नहीं था. शहजाद और बट ओपनर थे उसमें. Driven beautifully. That is a good shot from Butler. He's just growing in stature after that 100. Comfortable boundary through the covers, and the 360 comes up for England. Beautiful shot, extra cover drive, just threw it up, invited the drive, and he said thank you. क्या था हमारा optimal starting 11 2011 World Cup में क्या था? यार बाद में तो कामरान अकमल और हफीज ओपनर हो गए थे. हाँ. फिर वन डाउन यूनुस खान आ रहा था. Which is a great player to have one now. नहीं सॉरी, वन डाउन असद शफीक आ रहा था. फिर 2 डाउन यूनुस. 2011 में? Yes. Are you sure? असद शफीक ने अच्छा स्कोर किया था. हाँ वो खेल रहा था. वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अच्छा स्कोर किया था. नहीं मुझे याद है, मुझे ज़ुबानी याद है पूरी टीम. 5 पे मिसबा होता था, 6 पे अफरीदी था, 7 पे रज़ाक था, फिर वहाब एंड अजमल एंड ऑल द रेस्ट. The bowling was pretty good too. गुल और वो सब. Gul was in form. और उमर अकमल भी था of course. 6 पे. Do you remember that Wahab Riaz delivery to Yuvraj Singh? Oh yes. Oh man, that was and Yuvraj was in hard form in that Man of the series था उस World Cup का. Scoring 50s for fun during that tournament.
Sarosh is saying, actually, talking about Butler, English players don't have as much of pressure as Pakistanis. Butler knows if he gets dropped, he's financially settled and will stay in the white ball plans. यार लेकिन वो थोड़ी वो Yeah, ये मैटर करता है. अब वो ड्रॉप हो गया तो घर बिजली थोड़ी बंद हो जाएगी. आई डोंट बाय दिस यार. इस लेवल पे आप ऐसे नहीं सोचते. मेरी बात सुने. मेरी बात सुने. मैं कोई यार PSL भी आप वो कमा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार. क्या हो गया? Financial security is important, Khwaja. You do better at a job when you know that. Cricketers are the most well paid प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान यार. उसके अलावा कौन है जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं? Yeah, but that's not the argument. The argument that there's very few of them, and if you fall off of that pedestal, it's all gone. यार उन पे प्रेशर इसलिए कम है क्योंकि वो एज अ गेम लेते हैं. जिंदगी मौत का फैसला नहीं लेते. वो तो कल आके 10 साल IPL खेल ले. वो ख्वाजा सिंपल एग्जांपल है. मोहम्मद अब्बास वाज अ वेल्डर. यार सबकी हम यार मेरी बात सुनो. इधर से पेंडुलम इधर हो जाए. मेरी बात टू वेल्डिंग. मैग्रा वाज अ ब्रिकलेयर. मिचेल जॉनसन वाज अ प्लम्बर. वो उधर एक वो स्पोर्टिंग की दुकान में काम करता था. स्ट्रगल तो सबकी होती है कहीं ना कहीं लाइफ में यार. ऐसे तो नहीं. स्टीव स्मिथ इज स्टिल अ मैट्रेस सेल्समैन. कौन? स्टीव स्मिथ. वही मैट्रेस सेल्समैन. सबकी हम्बल यार स्टार्ट होता है. स्टेट क्रिकेट में उनको इतने पैसे थोड़ी मिलते हैं. उनको फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है. Humble in Australia and humble in Pakistan is very different. Oh, big appeal? No, it's too high on the pads. वो अलग बात है. वो तो अब इकोनॉमिक्स की आप चले गए हो ना उस राह पे. When you're playing cricket to like Bazid said, chula janale ke liye, if you're working as a mattress salesman in Australia, वो जाहिर सी बात you might not have the new iPhone. वो घर थोड़ी चला रहा है मैट्रेस. You might not have the new iPhone, but you'll still be all right. हाँ. So again, perspective is important. Mr. Arsenal is agreeing with you. आपको पता है वो कभी गलत बात नहीं करते. इजी ख्वाजा. Asad Shafiq scored 40 odd against Australia. Sarosh is reminding. That was a very good World Cup game. That was probably our biggest win. After then we beat South Africa in 2015. That was a good win. एक मैच मुझे याद नहीं आ रहा. आपकी याददाश्त अच्छी है मेरे से इस लिहाज से. 2014 में वर्ल्ड T20 हो रहा था. And Pakistan were down and out against Australia in a match. अकमल ब्रदर्स ने उनको फेंटा लगाया था. तबाही मैच हो गया था यार. That was an absolute insane. और वो भी जाके एंड में फंसा था क्योंकि वॉटो ने बहुत. We won, I think. We won. स्पिनर निकाल गए थे बाद. Exactly. हमने ये I think हमने एक I was going to university here and we had like closed down one of the classrooms. We were watching it on the projector. Everybody was just down and out. We were like, there's no way we're going to escape from this. I think we were actually it was basically a choke from Australia in that match. वो जीता हुआ मैच पहले हमारे से चोक हुआ था ना. 4-5 विकेटें हमारी बड़ी जल्दी गिर गई थी उस मैच में. वही हफीज और ये वो लूजर्स. 4-5 आउट हो गए थे and then it was Kami and Umar who really बहुत मारा था उन्होंने. I think 93 मारा था उमर अकमल ने. Junior can pull out that scorecard for us. Pull that up, Jamie. 2014 World T20 Australia versus Pakistan. फिर 16 तो ऑल टुगेदर ही डिजास्टर रहा है बेचारा. हालांकि टीम हमारी अच्छी स्ट्रांग थी. Driven well, straight to the man at extra cover or mid off actually for no run. 180 off, 304 for the crawler. अब इंग्लैंड भी सोच रहे होंगे भाई we need to step on the gas because we might need time to bowl Pakistan out on this flat wicket. 103 overs already batted. Run rate तो उनका काफ़ी जोरदार चल रहा है. I think if they bat another 20 overs then Sarosh is remembering that Bilal Bhatti conceded 30 runs in 1 over versus Maxwell. वो जो स्क्वायर लेग के ऊपर से वो मारी जा रहा था उसको. Imagine man, हमारे पेसर बिलावल भट्टी होते थे. भाई बिलावल भट्टी और अनवर अली ने आपको मैच जिताया हुआ साउथ अफ्रीका में. जी, और आपको यूएई में भी वनडे जिताए हुए उन्होंने. यूएई उसने वो श्रीलंका में उन्होंने T20 सीरीज जिताई थी अनवर अली ने विद दैट फ्रीक इनिंग्स. श्रीलंका में तो बड़ी यादें अनवर अली की. आफ्टर स्कॉल यूट्यूब लेजेंड. वो भी श्रीलंका में ही हुआ था. Zakaria Khalid saying didn't watch the first innings of the India versus Pakistan semi-final. मेरा केमिस्ट्री का पेपर चल रहा था 9th का. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगाकर चले गए थे. यार वैसे कौन पागल है उस दिन आप पेपर रख रहे हो. 1000 टेंशनें और थी. बट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट मैच यार. जो लाहौर में माहौल था. इट वाज लाइक अ कार्निवल एटमॉस्फेयर. Were you in Lahore that time? I was in Lahore at that time. एंड फिर जो उसके मैच के बाद इट वाज लाइक अ घोस्ट टाउन यार. ऐसे उफ 360 for 4. बस यार. एंड I don't like talking about. I distinctly remember the expression on Afridi's faces. His eyes were like this big and like he was almost gonna shed a tear यार. वो बस tough losses यार बहुत. You know how we have something, you know how Chelsea fans have something called proper Chelsea? When we brand a player proper Chelsea. Afridi was proper Pakistan. यार right? Don't you agree with that?
यार he underachieved for what he was No, I'm not his talking about- gifts was. Forget his skills. Forget what he did. When he's on the pitch, when he's on the ground, he's proper Pakistan. यार I don't like because he was basically a B tier player जो अब वैसे मसला ये है कि उसके stardom overshadowed. Ability की बात नहीं कर रहा ना. यार आप फिर सही Body on the line, career on the line. ये लोग भूल जाते हो because नहीं this तो guy. उनको कौन भूल रहा है? They're also proper Pakistan. Those were proper Pakistan ना वो बात आप फिर आओ ना. नहीं अफरीदी यार, body on the line, match on the line, he's your man. और यार प्लीज इतनी दफा वो चोक कर चुका है यार. चोक हजारों मैच उसने मैं चोक किए हैं. ability की बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि he is. What is proper Pakistan? कि आप चोक कर जाएंगे. So let me explain. जीता हुआ मैच हार. Let me explain what proper Chelsea is for you. Proper Chelsea. Reading versus Chelsea in the early 2000s. Goalkeeper gets injured. The second goalkeeper gets sent off. John Terry grabs the gloves, goes into net. Oh यार प्लीज. Okay, that's proper Chelsea. ये symbolic चीजों पे नहीं जाओ. That's proper Chelsea. John Terry Champions League और title Let me में tell you- उसको कोई थूकता भी नहीं उसके मुंह Let पे. me ये tell you, होता है नहीं, proper ये Chelsea. बात- he's one of the great, Success. one of the greatest center backs in the world. Come on, man. और यार Come भाड़ on, में ऐसे ना- कौन सा in the world यार. ऐसे ना बोलो यार, इस तरह की टॉप बात 10 में मुश्किलों से आता है. How are you? इस तरह की बात ना करो ख्वाजा. He under. भाई इटली में उससे 8 सेंटर बैक में आपको अभी गिना देता हूं. इटली में तो वो दरख्त लगे हुए तो center फिर backs आप की टॉप अलग 10 बात कहां आ गए हो ना है. फिर. कार्वालियो और टेरी की पार्टनरशिप की आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें. फिर चेल्सी टार्ड हो जाए तो फिर बंदा आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें. They wouldn't concede at all. Oh, what a ball there from the Nassim is into the attack. Bowling change for Pakistan, first of the day. 104. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ठीक है वो दलेर था, वो फाइट करता था, वो खड़ा Let me रहता tell you था. what's not proper Chelsea. Morata and Courtois. Okay? और भाई ऐसे ही प्लेयरों से ही आप जीते. And let me tell you what's not proper Pakistan. Mohammad Amir and red ball cricket. अब वही है ना यार, अब क्या करें. That's वैसे उनको ये भी सोचना चाहिए था, should we even give him a central contract? उसको आज़ाद कर दो. हसन अली को आपने दिया नहीं, उसको आपने दे दिया. सही बात है यार. Defended away to point for single. The runs are still coming here for the Englishman. Runs तो रोक ही नहीं रहे Runs. यार उनके. मसला ये. Raja, let me take you to that wonderful day in Mirpur. 2014 World Cup match, T20 match. Pakistan scored 191. Amber Shahzad 5 रन करके आउट. हफीज 13 रन करके आउट. मकसूद 5 रन करके आउट. Pakistan were 7 for 1, 25 for 2, and then 121 for 3. बहुत मारा था. उमर अकमल ने 94 और 54. ख्वाजा कोई तबाही है यार. बहुत मारा था यार. The biggest wasted talent in the history of the game. Oh, beats the edge once again. Nassim, beautiful bowling, getting a bit of shape on that ball off the deck. लेकिन यार कितनी दफा हम इसका एज बीट कर चुके हैं और बटलर का बस. Just similar arc of the Australia innings. They were also 8 for 2, and then the third wicket fell at 126 between the partnership between Finch and Maxwell. यार फिंच तो यार बड़ा खौफनाक प्लेयर है. Maxwell got 74 off 33. My goodness. बहुत मारा था यार उसने. And Shahid Afridi got that wicket. एक्चुअली हमारी टीम अच्छी थी उस वर्ल्ड T20 में, बट ब्रावो ने हमें एक वो सिंगल हैंडेड कैमियो खेल के हमें हरा दिया था. We lost the semi-final, right? We lost ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे. We lost to India, of We course. lost to India, of course. And we lost to West Indies in the key match. हमने उनको फंसाया हुआ था. फिर ब्रावो ने कैमियो खेला और फिर हम तहस-नहस हो गए. There was one T20 World Cup where we lost again in the semi-finals against Sri Lanka. श्रीलंका 2012 वाला. No, 16. नहीं 12 था वो. 12 था? That was the last time we genuinely could have been world T20 champions. 14 में हम बाहर हो गए, 16 में हम बाहर हो गए. 16 में किस खिलाफ बाहर हुए थे हम? वही ग्रुप स्टेज में ही. नहीं. ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, न्यूजीलैंड से हार गए थे. Oh, that's a dangerous leave by Butler. Just missing that off stump. We only beat the Bangla Bros in that tournament, I believe. Yeah. यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम 82 ऑल आउट हो गए थे. आप फर्स्ट इनिंग में देखे ना ब्रावो कब आया था. हमने उनको आउट कर लिए थे सारे, आधे इनकी टीम. बट 82 पे आउट होना कोई मजाक है? वो तो फिर हम स्कोर ही इतना पड़ गया था हमें कि हम गिर गए बिल्कुल. इसमें ripped through. Narayan got 3 wickets. Badri got 3 wickets. ऐसा पिच था. Santoki got 2 wickets. आई थिंक पहली बॉल शहजाद आउट हो गया था शायद उस मैच में. हफीज या शहजाद फर्स्ट बॉल आई थिंक. Yeah, both of them got in for not. बस फिर बंदा क्या बोले यार अब. Pakistan for we're 1 for 2. हाँ. What is Khwaja, let me ask you something. There's been times, as Pakistan fan, आपने कल बड़ी अच्छी बात की actually about when you were asked between Juventus and Pakistan. You said we don't choose Pakistan. It's just what it is. You got to stick to it. Played away into the leg side, the inside edge square leg for a quick single.
there's been many times as a Pakistan fan where you just वही वाली बात है कि your heart sinks and you're like, that's it, I'm done with this game and I'm never gonna watch a match again, but then you're back at it within 5 days. What was your breaking point match कि यार इसके बाद मुझे तुम्हारा दिल इतना खराब मैं हुआ है? आपसे पहले ये पूछ रहा हूँ ना. अच्छा मुझसे मैं पूछ आपसे रहे हो? पूछ रहा हूँ कि what's that match where you were like, Wow. I am done, I'm plugging the cord here, I'm unplugging Pakistan cricket out of my life, I'm done. Good one. It's over for me. I know the मुझे तो मैच नहीं पता. I remember my exact moment. हाँ तो वो मैं आपको बताऊंगा. पहले आप अपनी मुझे बताएं. यार सिडनी 2010 एंड दैट माइक हसी मैच, उसके बाद तो बिल्कुल ही मैं माइक हसी वर्ल्ड कप वाला सेमीफाइनल. हाँ माई वर्ल्ड कप वाला सेमीफाइनल 2010. हाँ, हाँ दैट वाज वेरी वेरी टफ यार. वो बहुत still hard to even talk about those matches यार. बहुत Let us know in the दिल खराब comments हो what जाता was the moment where you gave up on Pakistan cricket. You almost gave up. Momentarily, obviously. Almost gave up. कि मैंने कहा यार अब No, the मैं Hasi one is a good mention, but I wasn't watching that game, so I got lucky. यार वो मैच बहुत मैं देख रहा था तो मैं छोड़ देता. बहुत ट्रॉमेटाइजिंग मैच था यार. वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग. मसला है कि आखिरी ओवर में हुआ है ऊपर से था भी कमेंट्री पे हर्षा बोगले. यार. उसकी तो मैं 363 for 4. For me, Quadra, the exact moment. I'll tell you now, boss coming और out. ये वाले ये जो हम अभी सरफराज की कप्तानी में हारे हैं, न्यूजीलैंड वाला टेस्ट बहुत बुरा था यार. वो that was बहुत really बुरा. awful यार. But I'll tell you my exact moment. Again, in Saudi Arabia, we don't get a lot of cricket. So I called up OSN for the 2015 World Cup, paid a good sum for it, I think 250 reals or something. Got the TV running and everything. The matches would be around 2 to 3 a.m. I they think would start. I know which way Okay. this is going. So my dad Is a maroon team involved? Exactly. My dad gave up on cricket after '99. So in cricket in my household now happens because of us, because we pushed it into the household again, and we woke up. The whole family is up, stayed up to watch this game, and Pakistan यार Pakistan 0 for 1, 0 for 2, 1 for 3, 1 for 4. 2 for 4 थे. 1 for 4. 1 for 4. 1 for That 4. was a Pakistan hilarious 1 match, for 4 और फजर की अजान हो गई, and I was like, my dad was like, चलो मस्जिद ही चले जाते. And that was it. I remember going to pray that morning, and I'm like, I'm done with this game. That was a You bad know what the awful toxic relationship looks like? I'm going to pray. I'm going to pray Fajr. Pakistan are 1 for 4. And I'm like, I'm done. I'm never watching a single throw of the cricket ball again. Fajr पढ़ के वापस आया हूँ. शुएब मकसूद यार कुछ कर सकता है खबर. शुएब शुएब और उमर अकमल लगे हुए थे. मकसूद और अकमल हो सकता है फंस जाए कुछ हो जाएगा. I was like, man, this toxic relationship, वही है ना, man. हमारे ब्लड में है ना यार. कुछ नहीं कर सकते. मैं आके बैठ गया और यार कोई कुछ हो सकता है, मकसूद और अकमल का कुछ हो सकता है. I was like, the two biggest frauds. I swear to God, to believe in them too, to have the audacity to believe in them too. Yeah, that was a bad match. भाई हम तो जिम्बाब्वे से मर के जीते थे उस वर्ल्ड कप में. बस एक अच्छी विन थी हमारी, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ. 367 for 4. कमेंट्स में क्या बता रहे हैं उनके भी. Sarosh is saying Andre Russell blew us away that day, bat and ball. 07 final, yeah, man, that was a breaker. Yeah, That was a heartbreaker. But honestly, क्योंकि हम 09 पे जीत गए थे, I don't have that, stinging memory in my mind. You know what I don't like about that? It's the reason the IPL exists. Oh, that is a good take, man. Rizwan has been phenomenal. We haven't used that in a while, Khwaja. I slightly Behind the disagree stumps. क्योंकि उन्होंने देख लिया था वर्ल्ड T20 is a real thing. IPL बनना ही बनना था. हम कहते हैं कि जी मिसबा ने क्रिएट किया है with that shot. Yeah. But भाई यार BCCI stupid थोड़ी है. उनको नजर आ गया था भाई this is the real deal. I'd argue that, but yeah. Sarosh is saying hardly experienced such depression in life since after the 2011 semi-final. Yeah, that was a dark day. It's not showing on the live match day chat. But yeah, of course, Mohali was a heartbreaker. But for me, the 07 World Cup was worse than Mohali. We were one shot away, man. He doesn't need to play that shot. कौन? Misbah didn't need to play that shot. यार, we were out of that game, यार. बस कर दो यार. भाई 4 रन चाहिए थे, क्या मतलब out of that game? भाई कहाँ से वो मैच रेस्क्यू करके लाया था, वो देखो. भाई तो खत्म भी तो करो. वो तो मिरेकल ही था ना. It was against all odds के वो खेल रहा था. हम क्या करें? आपने वो thank you for almost rescuing us. नहीं, वो थैंक यू नहीं. आप रियलाइज करें कि अब मैच आपके हाथ से निकल चुका था and you just managed to pull back. If you had won, it would have been a miracle, but you had already lost that game, more or less. 367 for 4.
भाई तुम तो यही बकवास करोगे. Plenty is going on in this service. रॉब की सुअर. Whoa! The sword. 106 ओवरों में 400 रन मार दिए. बातें कर रहा है plenty going on. लेकिन वही है, अब उनके वक्त आके हमें ऐसे ऐसे आउट स्विंगर इन स्विंगर पड़ेंगे कि हमारे होश उड़ जाएंगे. Little word for Rizwan's keeping again this morning to Abbas up to the stumps. He's been very good. And we're I think 10 minutes away from lunch now. अब वो फिर वो बारिश हुई थी तो पता नहीं कितनी देर खेलेंगे. I'm not sure. I don't think we lost any overs during that break. Maybe possible. 367 for. So we've got the West Indies 1 for 4. We've got the 07 World Cup final. We've got the 2011 semi-final. We've got Michael Hussey in 2010. The Sydney Test, the New Zealand Test in Abu Dhabi. Was it Abu Dhabi? I think Yeah, it was so. Abu Dhabi. Yeah. Abu Dhabi, yeah. उसके इन सब चीजों के लिहाज से तो ये पहला टेस्ट कुछ भी नहीं है. Seriously यार. 106 overs gone, 367 यानी for 4. 130-36 करने थे और हमसे नहीं हुए यार. That's ridiculous. Unbelievable stuff. और the most मैं वही कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा. The most frustrating thing was हमने उनको second test में इतना बुरा मारा था. I think 90 all out कर दिया था यासिर शाह with 8 wickets. Yeah. We enforced the follow on in fact and we won comfortably. फिर third test में आया फिर हम जलील हो गए. And We didn't lose in the UAE, man. तरीका थोड़ी था ये. इसलिए मैं सरफराज को जो है ना जो That's a big dabba बहुत ज़्यादा on his legacy. 367 हालांकि for वो 4. बीट ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी अचीवमेंट थी लेकिन वही Yeah. पानी हो गई क्योंकि हम इतना बुरा आ रहे हैं बाद में. Oh, beautiful ball there from Naseem once again. I think कह रहा है एज मार दो बगैरत. Where's Naseem from? He's in Upper Dir, but apparently when he was like 12, he moved to Lahore to work in Abdul Qadir's academy or something. What language did they speak in Upper Deer? पश्तो ही बोलते पश्तो हैं. बोलते क्या हो गया? खैबर का बॉय है. ये शाहीन शाह याद है इमरान को ऑल पख्तून फास्ट बॉलिंग अटैक था. Yeah. Yasir Shah is also Pakhtun. He is from I don't remember the place. I am sure किसी और को याद होगा. But कौन से शहर का था यार? याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त. हाँ चेक कर लो. स्वाबी का है. Yes, he's from Swabi. Good line from Naseem again. Well left from Crawley. He's now eyeing that 200. Massive innings that would be. स्वाबी का है ना. 34 साल का हो गया. इसने भी अच्छा खासा करियर बना लिया यार. लेगेसी बना ली है इसने. Where does he rank in the all-time great spinners of Pakistan? It's not an That's a easy. good question. It's not an easy list to tackle, right? Abdul सही Qadir, बात है. लेग स्पिनर्स में स्पेशली. yeah. आई थिंक ओवरसीज की वजह से इसके नंबर्स खराब हो गए वरना इज राइट अप देयर. Saqlain Mushtaq Ahmed, Abdul Qadir. Edged! And he'll go through the vacant cordon between gully and point. It's the kind of test match Pakistan are having. Naseem Shah on his knees. He can only muster up a weary smile as Crawley will take the free runs. 186 for him, 371 for 4 for England. So unlucky, but that was a ball deserved to be hit. If you slash hard, upish, and right between gully and point. Nobody there, nobody home. Another 4 for Crawley. बेचारे नसीम ने इतना बेहतरीन ओवर कराया लेकिन फिर भी no luck for him. But it's been England's 2 days so far. But बस England's यार, series. rub of the green has been their way. अब वही बात है हम कुछ साल बाद ये स्कोर कार्ड्स देखेंगे यार पाकिस्तान ने गंद Oh, look how bad Shaheen was. Look how bad Naseem was. उनके एवरेजेस निकालेंगे, स्टैट्स निकालेंगे, but that won't tell the real story. No. या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो अब इंग्लैंड के साथ सीरीज करके तो हमने नहीं कुछ मेजर अचीव करना तो शायद एक मैच हम निकाल लेते. VK is asking, is Naseem really 17? Well, we actually had a conversation with somebody who went to school with him हाँ on the chat earlier, and तो he's वाकई उसकी यही है. actually he is around that age, so and he looks the part too. बच्चा ही लगता है यार चूचा सा. Again, Michael Holding on air saying the same thing, Khwaja, that Naseem and Afridi both bowling well in this series, just not getting the results. Good leave from Mr. Crawls. The crawler. इस मनूस ने भी यार आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा. चिपकू सही. सिबली और ये क्रॉली और ये सब इनको अच्छे प्लेयर मिल गए हैं यार. लंबी रेस के घोड़े हैं in my opinion. And it will allow Root to go back to number 4 where he likes to bat. फिर स्टोक्स भी आएगा 5 पे. पोप साहब भी हैं. 7 पे बटलर है. They just have to decide between कि हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं या बेस्ट को खिलाना है. And England team is looking in good. और बर्न्स का of course
वो भी एक इशू है कि वही बर्न्स रन्स नहीं कर रहा. But Nassim now continuing. Oi! Oh, what a leave. That is dangerous at best. Just ask people that are listening in if you can see the chat on our website. Seems to be a technical issue right now. थोड़ा सा पानी घुस गया कवर्स के below the covers. Yeah, exactly. लेकिन चलो Take a look at that, Quadra. The average when you're batting against a boss outside of the crease gets higher and higher. It's the only way to bat against him. So I feel like the keeper crease now, पे खेलने का फायदा नहीं है उसको. सही कह रहे हैं. the keeper now might just be a permanent fixture for him. You don't want the batsman going forward. बट लेकिन अगर आपकी तरफ तो चैट लोड होगी तो आई थिंक इट्स फाइन वी कैन मैनेज. 371 for 4 after 107 long tiring overs for Pakistan. Abbas still in the attack. अभी भी एक long spell करा रहे हैं because of the constant breaks. Well left. And good keeping from Rizwan keeping up Rizwan. to him. बट वही है पाकिस्तान के वक्त देखना होगा कि भाई बैटिंग कैसे डिलीवर करती है. क्या वो डिलीवर करती भी है? क्या वो घुटने टेक देंगे? विल दे बी गोइंग विद स्लम्प्ड शोल्डर्स that यार this series has gone out of our hand. But I wonder what the attitude will be. Will they go in to get runs, or will they just? I look think to that should bat be the time? mindset. That should be the mindset कि भाई थोड़ा सा अपने लिए खेलो, थोड़ा कि भाई I want to boost my numbers, especially someone like Babar and Azhar and Asad especially really need to do something in this innings. वरना बहुत सवाल जवाब उठेंगे उन पे. Down the leg side this time, and they should come back for a couple. Nassim will do the work at square leg. अब मसला ये कि हमारे अब वही वनडे मैचेस आ रहे हैं. Zimbabwe is supposed to tour Pakistan, then we're off to South Africa for more ODIs and T20s, so we cannot allow their lack of performance to be forgotten. हमें भाई याद दिलाना पड़ेगा. तब डोमेस्टिक सीजन लग जाएगी, फिर ये उधर जाके 100-200 मार देंगे, उधर सुकून से रन्स कर लेंगे, हम भूल जाएंगे कि भाई ये कभी आउट ऑफ फॉर्म भी थे. It also has to do with the amount of priority Pakistan places on Test cricket, because I think all good cricketing nations, that's the most important thing for them. बिल्कुल. Maybe after the World Cup, but it's right up there. Flipped away to the leg side. No run there now. 107.4 overs gone. 373 for 4. Crawley 186 of 315. Butler on 113 not out. It's been a very good innings for him. A career-saving innings for him. But good to see Abbas in good spirits. अभी भी enjoy कर रहा है अपनी bowling को. अभी भी batsman को challenge कर रहा है. ये give up कर घुटने नहीं टेके. ऐसी कोई बात नहीं कि भाई we'll stop trying to get them out. They're still running in hard, looking for wickets. Good ball Good once defense. again. लेकिन वही है, pitch is very easy paced, not much bounce, not much movement. Occasional ball थोड़ी सी seam कर रही है, but nothing major. That'll just happen when we come out to bat, won't it? हाँ, तब जाके फिर landmine बन जाएगा. Let us know if the chat is working for you. If you're listening to us and the chat's not working for you, tweet us at ChangeOfPace414 so we can take आपकी तो chat खुली हुई है ना? मेरी तो चल बस रही है ठीक है. chat. Zakriya के अभी comment भी आए हैं. बस सही But है. for any new people that are joining, if the chat's not working for you, tweet us so we can see what the problem is and fix it. Good defense there from Butler. .373 for 4. अब ये देखना है कि ये सेशन कितनी देर चलता है. इट्स अबाउट 2 PM लोकल टाइम. आई थिंक थोड़ा मे बी आधा घंटा एक्स्ट्रा खेल लेंगे बिकॉज ऑफ दैट्स माइनर इंटरप्शन और समथिंग लाइक दैट. आई डू बिलीव. Problem is we didn't lose any overs in that interruption, which means that they won't Ah. change the playing time. हमारे लोकल तो आई थिंक 10-11 बजे तक ये खेलते रहेंगे. द वे द वेदर पैटर्न्स आर इन इंग्लैंड राइट नाउ. 373 for 4. Good ball. again getting in the line of delivery, Butler. So no wickets for Pakistan this morning, and that'll be lunch taken on day 2. उन्होंने कहा भाई That's cricket for you. And I don't think Pakistan will mind that break. If you take a look at Abbas's pitch map after that second new ball, Khwaja, you'll notice that Pakistan have been on the money. All the bowlers have been bowling well this morning. A couple of edges, some false shots, and a run rate of just 2.28 this session for 41 runs for no wickets, the most important column for Pakistan. We're going to take a 40-minute break here. We'll be back for the post-lunch session.
373 for 4. Welcome back everyone to Change of Pace for the second session of the day. काफ़ी लंबे चौड़े तवील अरसे के बाद after a few rain delays and of course the lunch break we are back. Naseem Shah is back into the attack. Thank you to everyone for joining us. Hello everyone, Zishan is on the chat. Thank you for joining us, Zishan. And we were just having some minor technical issues जो हमने ठीक कर ली हैं chat पे. Roshan Faiz भी आ गए हैं. Welcome Roshan. Hey boys, on a little late today. Got a revise for my exam. How you guys doing? यार हम तो ठीक हैं लेकिन पाकिस्तान के bowling attack unfortunately has been very down on their luck in this test match so far. एक Winwiz का actually एक tweet आई थी कि the way the Pakistanis have bowled, the average score or the ideal score would have been 309, England all out. So we've been really unlucky. We've beaten the bat several times. Line of length काफ़ी अच्छी रही है हमारे bowlers की, लेकिन बस क्रॉली और बटलर ने जैसी पार्टनरशिप लगाई है, it's almost 250 runs now. उनको full credit जाता है. They've played an almost chanceless innings for the most part and they've taken the game away from Pakistan. And let's see Naseem Shah now continuing balls on middle and leg, played back to mid-on. Crawley on batting on 186, a mammoth innings, and Butler also gone past 100, batting on 113. तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी तरफ से तो फुल होल हार्टेड एफर्ट किया लेकिन बस किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और बैटिंग भी बहुत शानदार हुई टू बी क्वाइट फ्रैंक. Fala Tahir says, yo, welcome bro, welcome to the chat, welcome to Change of Pace. And Pakistan now striving for wickets, trying to dismiss England early. Abhi bhi thoda bahut opportunity rahe. Beautiful drive there from Crawley through extra cover, and that's gone away for 4. And Musad back on the stream with us. Kya haal hai Musad? यार हाल तो इतना अच्छा नहीं है. Crawley moving into the 190s. Pakistan struggling for wickets this morning despite bowling well. It's been the story of the summer for them. Been in the right areas, in the right lengths, in the right lines as well between Shaheen, Naseem and Abbas. Very easy on the eyes, elegant cover drive from Crawley. Yeah, but this has been a masterclass from Zach, hasn't it? I mean, we've seen a lot of English batsmen in the middle order struggle this summer, but he looks like the solution to it all. Look at this partnership now, 250 off of just 421 balls, and the equal contributions too, Khwaja, between the two of them. Clipped off the pads this time and was complimenting his leg side game yesterday. He's equally good this morning on the offside. And you see that you're bowling 109 overs, even the bowling side will get frustrated and those lines and lengths will start to become a little bit looser. The bowling will become a little bit wayward. They'll try to do things, they'll try to manufacture a wicket, and it's very easy to sit in the comfort of our homes and say that's not how they should go about it and they should stick to their lines and lengths. But it's a frustrating business test cricket when the wicket's not going or just nothing is falling in your favor, to be honest. Even this morning we saw Naseem and Shaheen particularly, Abbas as well, creating those chances, finding those edges, beating the bat, just completely evading luck as well. Again, a beautiful delivery from Naseem, beating the outside edge of Butler. What's remarkable here is that you've got a batsman batting on 191, the other one batting on 113, but they're constantly still swinging and missing. They're still missing the outside edge of the bat. You won't see that very often with a mediocre bowling attack. Zishan पूछे, are we officially out of the match? और इन जूनियर ने बड़ा एक इमोशनल जवाब दिया कि we are never out of the match. But it seems like a win for Pakistan is becoming more and more unlikely. We start to favor a draw or of course the dreaded loss. Unfortunately, the draw is still not good enough. This will still go down as a series loss for Pakistan, which would be such a unfair result considering the way they've played. But yes, Shah coming on to bowl. The first that we're seeing of him this morning. Today, yeah. And again, we had a couple of rain delays in that morning session. 378 for 4. Zach Crawley 191, Butler 113. Yasser will toss it up, driven well, and it'll go straight to the man to cover for no run. Kafi spread out field, he was just a single slip there, a point there, and of course extra cover the captain. तो fully I think वो बस run conservation mode में है पाकिस्तान इस वक्त. Yep. कि भाई मैच बिल्कुल ही हाथ से ना निकल जाए. Driven again. This time it beats a diving Yasser shot, and there's a, what do you call that position, Khwaja? It's not a long off. It's not fully into the deep. Zakaria Khalid भी कह रहे हैं, in the last 10 years we've never lost a series in England. Unfortunately, it seems like that run is coming to an end. And it's not going to be a fair depiction of how well this team has played this summer. And again, we can talk about the frailties of Azarelli's young captaincy.
अब यंग कैप्टनसी की बात है, कितनी देर हम लेके चलेंगे if Azhar's personal performance doesn't improve, ये भी सवाल अब That's देखना another पड़ेगा. issue. मसला ये कि मिसबा ने अभी अभी उसको अपॉइंट किया है, and we have 2 one-day and T20 series coming up. Then we're touring New Zealand. That's going to be a very tough examination of his technique and his form as well. In New Zealand, we already got hammered there in the last tour back in 2017-18. तो उधर भी जाके हमारे चांसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जीतने के, आई डोंट थिंक. तो उधर भी जाके अगर हमें प्रॉब्लम होती है, अजहर उधर भी स्कोर नहीं करता, जो जितने ग्रीन पिचेस होते हैं, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी आर ऑलमोस्ट अनप्लेएबल इन दोज कंडीशंस. देन वेयर आर वी स्टैंडिंग एज अ टेस्ट टीम? हमारा फ्यूचर क्या होगा? अजहर और असद को हम और कितनी देर लेके चलेंगे? I think the future of Test cricket is becoming increasingly lopsided to home sides, Khwaja, and we discussed this before the lunch session that not very many teams, if any, are getting any wins abroad. In fact, Pakistan in England is one of those few combinations where the away team actually has not an advantage, but at least parity, as they don't lose in England. That might change now in a few days. But as a Pakistan side who are placed around 5th in the world in the Test rankings, the ideal situation is that you first get 100% win rate at home, which looks increasingly likely with the likes of Abid Ali and Shan Masood. अब कोविड की वजह से हमारा होम स्केड्यूल भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, ऊपर से आईपीएल अब यूएई आ गया, तो सारी टीमें उधर बिजी हो गई हैं. I think the COVID thing might actually help Pakistan. कैसे? Because there was stigma around teams coming to Pakistan and getting locked in and getting kind of locked up in a hotel for a certain amount of time. But now, wherever you go to play cricket, you might have to do that. So, it's not really an exception. फिर आपको एक बायो सिक्योर बबल क्रिएट करना है, वो भी एक सिक्योरिटी के ऊपर एक और चीज़ अभी आ गई है कि भाई आपने बायो सिक्योरिटी भी आपने देनी है, तो वो भी एक चैलेंज होता है. ऑफ कोर्स इट्स द फैसिलिटीज़ एंड प्रोबेबली द ग्राउंड आर नॉट एज प्रिपेयर्ड एज रेडी एज दे आर इन इंग्लैंड. भाई वो तो रहे ही उधर रहे हैं ड्यूरिंग द मैच. बीटन अगेन, नसीम शाह बीट्स द एज ऑफ जॉस बटलर. काफ़ी दफ़ा हमने देखा इस टेस्ट मैच में ये हो चुका है, बट पाकिस्तान जस्ट हैवन हैड एनी लक व्हाटसोएवर. जो एज छोटे मोटे निकले भी थे, डिडंट कैरी एट ऑल, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम वी बीन बीटिंग द बैट अ लॉट. मुसाब कह रहे हैं Azhar shouldn't have been made captain in the first place. I think that's a very fair argument कि भाई उसकी फॉर्म भी नहीं थी, वो सिर्फ एज अ सीनियर स्क्वाड में था. he didn't have any form to back his claim to captaincy. और सरफराज को बस इन्होंने हटाना था, तो एक बस पॉलिसी बना ली थी कि he couldn't remain in the side. तो रिजवान के लिए उन्होंने रास्ता क्लियर करना था, and they probably felt Babar was a bit too young, hadn't performed enough in test cricket. अब तो ये जो उसका सीज़न गुजरा है, he is very much the top dog in our team. But अब शान मसूद का of course वो record नहीं था कि आप उसको captain बना लो. So they took the safe choice of making Azhar captain. But now that choice feels very unsafe. We talk about a lot of other captaincies. Rizwan actually does a lot of captaincy in first class cricket. हाँ, खैबर की काफ़ी देर, पेशावर की भी captaincy करता रहा है. It's a fair shout. And he's increasingly looking like Pakistan's first choice keeper by some distance, especially with him keeping up to the stumps to Abbas, and you can see that encouragement from Yasser to Naseem. And जब उसको सरफराज की जगह रिप्लेसमेंट रखा था, he was the vice captain of the side. अब फिर उन्होंने बाबर को बना दिया. Yeah. तो थोड़ी सी muddled thinking from the PCB think tank, to be quite honest. I don't, and I was actually very keen on watching Rizwan's press conferences after he got that 70 odd in that last test match. He came to do one of the talks, and he doesn't speak English, but his responses are very good, and they're very well articulated and politically correct as well. So I think even in terms of, because I know modern cricket media is important, he's pretty good in handling that as well. 380. हाँ, नहीं, मैच्योर प्लेयर है और काफ़ी साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, बल्कि मिसबा के साथ फर्स्ट क्लास खेलता है. सो ही नोज द कैरेक्टर ऑफ द मैन एंड हिज वर्क एथिक. काफ़ी देर इसको इंतज़ार भी करना पड़ा. He's been around few better captains to shadow. 2015-14 से ये इन एंड अराउंड द पाकिस्तान टीम है, तो काफ़ी देर से इसको अपने मौके के लिए इंतज़ार करना पड़ा है. जिशान पूछे who is better as captain between Sarfraz and Azhar? I think Sarfraz currently, which is not a high bar. Sarfraz had some very big failures as well. Yeah, he did, but alongside some wins as well. Which wins? The Australia series was a good one. वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो आप साउथ अफ्रीका में हारे हैं, आप एट होम श्रीलंका और न्यूजीलैंड से हारे हैं, that were very tough losses to swallow. Yeah. But no doubt about that. यार टेस्ट कैप्टनसी का मसला है कि एक बंदे पे सारा कुछ नहीं होना चाहिए. It's all about the team think tank and the management. जो रूट
एज एन इंडिविजुअल इतना कोई हाई क्लास कैप्टन नहीं है, लेकिन पूरी क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट उसके Look साथ at है, the तो वो मैनेज कर resources he लेता है. has, you know. Look at the resources that he has. भाई एग्जैक्टली यही बात Got है. Ben Stokes and Ben Stokes. Yeah, look at his replacement is averaging over 200 in the series. So 192 for Crawley, 114 for Butler, 111. मतलब टिम पेन ऐसा कोई इंस्पिरेशनल फिगर तो नहीं है, Nah. लेकिन वो एशेस रिटेन करके आया Right, है, he's got, सब कुछ कर रहा है. but again, the resources. He's got Pat Cummins, Ah. Mitchell Stark. सही बात. Actually, this is something that I wanted to talk to you about. I was thinking of this in the lunch break, Khwaja. I was listening to Roy Keane. रॉय कीन. Roy Keane, Sky Sports pundit, an ex-Man United player, जी, captain. जी, जी. Very outspoken personality. हाँ जी. You love to watch him. And he was ripping into United. He was ripping into his own team. He was saying, He loves bashing them. he does, but I mean, out of love, good Ooh, delivery good on the ball. back foot immediately. Crawley to Yassir. He was saying, Yasir? yeah, he was saying, if I'm an 18-year-old in the Man United dressing room right now, who do I look up to and say that in 10 years I want to be this guy? He Sahi says, baat when we were at Man United, and we I mean by Roy Keane, he said we had Giggs, we had Keane himself, and then even later on they had the likes Beckham of bhi tha, Neville, Scholes bhi tha. Beckham, Scholes, Ferdinand, Ronaldo. I mean, these are all-time great players. Sahi baat hai. These are just so. Let me take that conversation to Pakistan right now, Khwaja. You're Naseem Shah, 17-year-old. You're Shaheen is even has a little bit more experience, just 11 tests. You're Shaheen Shah. All of these young guys. In 10 years, who do you want to be? There's no role models. Very fair point. Because in 10 years, you don't really want to be Asad Shafiq. You don't really want to be Azhar Ali. Maybe Abbas and Babar Azam and Shan Masood की भी मेहनत वो देख रहे होंगे. Rizwan is a good role model as well. Listen, role models in terms of personality, we don't have very many bad personalities in the squad. I think everybody is very wholesome and together, and even the coaching staff is gelling well. I'm talking about cricketing career. Who do you want to be as a cricketer in Pakistan? When Shoaib came to the side, Shoaib Akhtar came to the side, he remember his quote about Wasim and the bowlers from his feet and 100 of them, all of that. There was this folklore. There was like, wow, I can be Wasim Akram. I can be. Yeah, now this partnership has become the highest fifth wicket partnership of all time for England in Test match cricket. Unbelievable stuff, yaar. If you had told me Crawley and Butler would make 100 partnership, even I would be shocked. But 255, तो बंदा अब क्या ही कह सकता है यार. You can't really blame the bowling at all. कोई इतनी कोई लूज बॉलिंग खास कर नहीं हुई, बस उन्होंने बैटिंग इतनी शानदार की है. एंड बेचारा यासिर के भी अब numbers. Oh, good defense. So once again, you debut for Australia. You've got Steve Smith and Pat Cummins, Mitchell Stark to look to. हमारे seniors ही हमारी weak link है. You debut for India. You've got Virat Kohli, Chiteshwar Pujara, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma to look forward to. Even if you debut for New Zealand, you've got Bolton Southey to look forward to, Kane Williamson to look forward to. Even in West Indies, I would say their captain Jason Holder is a role model on and off the field. In Sri Lanka, Angelo Matthews is on and off, but again, he's got runs under his belt. So for Pakistan, who are Naseem Shah looking up to? And no one. इस वक्त हमारे senior players ही हमारे weak link है, तो फिर ऐसे team तो नहीं चल सकती. You don't model how many kids. Accountability की बात. How many kids in this dressing room are going to look up and be like, I want to be batting like Azhar Ali in the next 10 years? As much as I love Azhar, that's not true. It's just not going to happen. This has been a hard pull towards square leg. Just a single for Joss Butler. वो भी 115 पे चले गए हैं. 193. Crawley might be even looking at a triple. कुछ जो जैसे वो बैटिंग कर रहा है. Yeah, true. He's again. And he is a very Pakistani type story. भाई सिर्फ low 30s इसकी first class average थी. उसको उठा के उन्होंने chance दिया based on talent, based on potential. But it's a very rare occurrence के यार कोई proven performer England अपनी टीम में नहीं लाए. But just still look at the accuracy from Naseem Shah this innings. बेहतरीन bowling की है यार बस. You can't really ask more from a 17-year-old. He's missed that spitting fire delivery that worked for him in the last couple wickets that he got. Clipped away. Wow. Beautiful from Crawley, and he's getting closer to that 200 mark. Now he's on 197. Creaming this through mid-wicket. Zakaria Khalid ने debate settle कर दी, कहते हैं दोनों ही बुरे टेस्ट कैप्टन हैं. Sarfraz, however, is miles ahead in limited overs. वो तो यार of course अजहर बेचारा यार उसको टीम भी बहुत कमजोर मिली थी. Also, we didn't give him enough time. हाँ एक साल बाद ही हम impatient हो गए थे. सही कह रहे हो. एक साल में हमने I think 2 या 3 सीरीज खेली थी इतना कुछ. मिक्की ने कहा भाई सरफराज I'm going all in on that. That worked, I guess. Roll the dice, won the Champions Trophy, fine. यार 387 for 4. कुछ disappointments थे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया. वो तो चलो हमने सारा कुछ ही एक मलिक को कैप्टन बनाया हुआ था, तो बंदा क्या कर सकता है. Naseem continuing. Beats the outside edge of Crawley.
कितनी दफ़ा हुआ है बेचारे के साथ यार. एंड यंगस्टर है, उसका सर नहीं गिरना चाहिए कि Yasser looks like he's being instrumental in that he's constantly in his ear, maybe helping with the language as well. We were on our way out of the World Cup had we continued with Azhar. लेकिन यार आप उसके resources भी तो देखो कौन था. उसका main spinner इमाद था, अनवर अली, राहत अली और इरफान उसका fast bowling lineup. Which World Cup is he talking about? 2019 because we had to beat Zimbabwe in that must-win series. नहीं, उससे पहले सरफराज कैप्टनसी मिल गई थी. नहीं उससे पहले नहीं मिली थी उसको. 2016 के समर में मिली. नहीं, कब मिली थी? Oh, well left. हाँ 16 समर was his. नहीं, तब भी अजहर ही कैप्टन था. When was सरफराज appointed? 17 से पहले कैप्टनसी हुई है. सरफराज को मिली थी 2016 के एंड में. न्यूजीलैंड का टूर था और द वेस्ट इंडीज. नहीं, तब भी अजहर था. When did he get it? 387 for 412.4 overs. 2017 के विंटर में सरफराज को was captain. I think we went to New Zealand for that series, I believe. हमारे Feb 2017. So after that tour, हाँ अजहर था उस टूर पर. You're right. Edged! Oh my goodness, Yeah. Pakistan. That is going to be double 100 for Zach Crawley. Take nothing away from this young man, 22 years of age, and he scored his top score across all first-class cricket that he's played. Not just international cricket, Khwaja. This is a mammoth innings from Crawley. He has made his way to an end. And the only chance that he's really given is from that shot that took him to 200, that leading edge that just beat the man at second slip. It's a well-deserved 200. And just as he got there, you could see Naseem Shah falling to his knees. Not much more than the Pakistani bowling can do. And that too at a strike rate of 60. यानी तेज इसने score. That's not bad at all. 25 boundaries. 450 बॉलें लगा के बनाया. But flashed at it, flashed past second slip probably. And yeah, it's a diving Babar Azam, but he couldn't really do much there. And remember, Ollie Pope is yet to come. नहीं, Ollie Pope तो out हो गया. Sorry, yeah. Chris Wokes is yet to come. Musab कह रहे हैं Azhar and Asad need to be dropped after this match, and we need to try youngsters for the New Zealand tour. What's the worst thing that's gonna happen? I wouldn't try new youngsters in the New Zealand tour. No, I wouldn't do that. Because you know what happens? I'll give you an example. You bring in the likes of Saud Shakil or maybe Sami Aslam, and you go like, all right, trial by. यार इमाम भी तो है. Imam is not a new customer. तो वही हम कह रहे हैं ना कि replacements हैं. Imam और Haris, definitely a conversation to be had. Imam, I remember one down खेलता था under 19. New Zealand में पाकिस्तानी बैट्समैन को डेब्यू नहीं कराना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में. यार इसलिए हम कह रहे हैं इमाम और हारिस को ले आओ. That's fine. ठीक है. I think that's a good change up. But where you बाबर को कैप्टन बनाना, that's the real question. Youngest England Test match batsman to get the double 100, Zach Crawley, number 3 on that list. Unbelievable. And he's thereabouts. And I think David Gower might have made this on debut or something like that. ऐसा कुछ सीन था. Len Hutton, Bill Edrich, कहाँ से उठा के ला रहे हैं. With David Gower and Zach Crawley. बस यार 2020 यार. Wow, Bill Edrich getting it away in South Africa when. तब तो apartheid में कर रहे थे. Yeah, true. 391 for 4. But Shaheen Shah Afridi coming back into the deck. Yasir यार अच्छी bowling करा था क्यों हटा दिया? I don't get it. Maybe they want to switch ends or something. Yeah, Sarosh is saying मुसाद और दिल खराब कर रहे हैं पोप को फिर से बैटिंग करवा के. यार seriously उसको डबल बारियां लगवा इधर. But Shaheen Shah Afridi. This has now been definitely the best innings of the series because Sean had a couple of chances. Yeah, no doubt. Zach's not really given any. Zach भाई तो पीछे ही पड़ गए हमारे. Zishan कह रहे Shan should be our next captain. Interesting. That is a conversation that we can have as well because we say this about cricket captains. You need to be the first name on the team sheet. भाई मैं तो कहता हूँ let's go all in on the Babar and Imam era. उसको बाबर को बनाओ और vice captain. I disagree with that. इमाम को बनाओ. क्यों? I completely disagree with that. क्यों? I'll ask you this before you get into this conversation. Do you think Virat Kohli is a good captain? यार ठीक है रिजल्ट्स ला रहा है. doesn't matter if he can हर कोई military genius थोड़ी होता है. Fair enough. I think Babar. It's all about plans. You're not going to like this, Khwaja. I don't think Babar is the established great that we're making him out to be yet. He's at the cusp. Don't get me wrong. आपके पास think tank है ना बहुत strong. Yeah, but he's at the cusp, and don't get me wrong. Don't take nothing away from his greatness, but he's not the great that we're making him out to be. Yeah, he's just done so much that's. यार हमारा सिर्फ issue ये है कि वही कैप्टनसी का burden उस पे उसकी runs तो नहीं affect करेगा. सिर्फ ये एक सवाल है. ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि उसके अलावा और कोई runs ही नहीं करता.
तो वही है ना, वो ये देखा छोटा जाएगा। सवाल नहीं है कि ये करेगा तो लेकिन वो 3 और बंदा बैट्समैन खुद कर बहुत, लेंगे। हमने देखा था वो हर्षा के साथ जो उसने इंटरव्यू किया था, ही एक्सपेक्ट्स टू बी कैप्टन। वो He- ये no, नहीं no, सोच no, रहा no, कि he जी- doesn't expect to be captain. He holds नहीं, himself नहीं। to a high batting standard. वो यार आपने पूरा दूसरे घंटे का इंटरव्यू था, उसने कहा था कप्तानी इज अ नेचुरल थिंग फॉर मी, आई एम नॉट गोना शाई अवे फ्रॉम He इट। said मैं करते हुए आ रहा हूँ, तो फिर वो कू नहीं करना चाहता। करते हुए यार उसका क्या मतलब है? अब वो क्लियरली बोल दीजिए अजहर मेरे हेल्प पे है, मुझे बुरा। It's cut away. It's straight ऐसे to the थोड़ी man, कहेगा, cover. वो ढकी चुपी बातों में ही कहेगा। So you think Babar Azam is orchestrating a coup against Azhar Ali? नहीं ऐसी कोई In the बात नहीं ranks, है। the roti group coup? ये कौन सा कू है कि आप 3 साल से 20 एवरेज पे खेल रहे हो? ये कौन सी 10 भाई डी इसीलिए चेस तो खेल coup रहे होते हो? हैं जब सिविलियन गवर्नमेंट कूप होते हैं, कूप। इतनी वीक हो जाती है तो फिर गिरानी पड़ती है। Crawley is just left भाई no. उसको भी एक जर्नैल नहीं लगाया है अजहर को, हाँ, जर्नैल मिसबाह ने। ये भी है। Crawley has scored runs all across the park. Well done mate, you bloody bastard. Anyway, well played. Zach Crawley, अब हम थोड़े salty हो गए ये innings देख के। Yeah. उसका Oh, एक है, beautiful. Left that बाबर alone भी- outside off. ईंट का जवाब ईंट से देख, 250 मारे। Musab is saying, I agree with Musab. Babar still has some to prove in Test match cricket. He hasn't won us a game with the bat yet. यार what does that even mean? It means Means you have to win. टेस्ट win. मैच बॉलर जिताते हैं आपको यार। तो फिर क्यों नहीं खिलाए 5 बॉलर? वो अब 5 आपने कहा तो है, विनविज कह रहा है 309 पे इनको ऑल आउट हो जाना हाँ, चाहिए ये तो था। है, 309 विनविज भी एक फ्रॉड है, वो अलग बात है। दिलविज ही सिर्फ सच बोलता है। दिलवीज क्या कह रहा है फिर आप ये बता दें। 391 for 4 after 113 overs. Shine sharp. Good ball defense on the there, just length played- once again. But there's nothing in the pitch, nothing in the air. Completely gun barrel straight. अब ये मसला है कि हमारे टॉप ऑर्डर को स्विच ऑन करना पड़ेगा कि भाई इंग्लैंड विल प्रोबब्ली हैव अ डैश इन दिस सेशन। 100-150 रन और मारेंगे फिर हमें बैटिंग पे लगा देंगे। सो वील हैव टू बी केयरफुल। जकरिया कह रहा है बाबर आजम जो है सबको कोविड बबल में कुरान पे कसमें उठवाएगा। यार the coup is building. पहले सैनिटाइजर देगा, वुजू करो, फिर सैनिटाइजर बल्कि सैनिटाइजर में ही नहा के आओ। यार Would you think England will declare at 450? मुझे नहीं लगता, क्यों? They'll just want to bat us out of the game. They're in no They've already batted us out of the game. they're in no hurry for it to get us back in to get that dub. But look at that 200 from Zach Crawley. आते ही उसने जो वो क्लिप मारा था, हमने कहा था भाई खतरनाक बैट्समैन आ गया। 25 फोर्स यार, आधे रन ही उसने बाउंड्रीज में मारे हैं। सो इज अ वेरी फ्री फ्लोइंग प्लेयर, एलिगेंट प्लेयर, गुड ऑफ द बैक फुट, गुड ऑफ द फ्रंट फुट, गुड थ्रू कवर, कैन प्ले इवन दैट रिवर्स स्वीप यार। एक तो ये नेक्स्ट जेन बैट्समैन है ही खतरनाक। लुक एट दैट लवली कलाइयों का उपयोग, एंड देन फाइनली दैट बिग स्लैश, बट हैड नो चांस, नीडेड द थर्ड स्लिप देयर, जस्ट रन्स अवे इन ज़ैक। उतना ही फ्रेश लग रहा है जैसे एलिस्टर कुक नहीं लगता था 500 मारने के बाद भी। Just doesn't sweat at all. 392 for 4 after 114 overs. Pakistan being made to toil, being made to work hard for the wickets that just haven't come after the post-lunch session yesterday. मुसाब कह रहे हैं we'll be 37 for 3 at stumps. यार क्या हो गया, इतने accurate बात तो ना करो for God's sakes. Lumsum figure they lumsum. 392 for 4. Yasir Shah continuing. Just bowled a couple overs this afternoon अच्छा, after नसीम उधर lunch. बॉल बीट करा रहा था, फिर आपने चेंज एंड उसके एंड से हटा दिया, उसको शाहीन को लगा दिया। Don't understand what Azhar is thinking here, but let's see what Yasir Shah gets from this end. Driven this time, it'll beat the man, and it'll just go for Easy a two. easy two, man. The और हम speed. देख रहे हैं थोड़ा रफ क्रिएट हो चुका है around that leg stump and a bit outside that off stump maybe. Dombes के लिए. डॉम्बेस भाई इस यूटिलाइज कर लेंगे, वो भी बगैर है अभी। और फवाद आलम भी हम भूल रहे हैं यार, अनदर सब प्लॉट टू दिस टेस्ट। व्हाट विल ही डू आफ्टर हिज ब्रिलियंट डक इन द 0 off 4. in the second test? 394 for 4. Crawley on 201. Wow. Can you put a hand to heart and say that Pakistan are now out of this test match? यार A win I is think pretty much a win I is think definitely a win सिनेरियो अब काफ़ी हद तक डिफ्यूज़ हो चुका है, अब ड्रॉ ही कर सकते हैं। इस सिचुएशन से ड्रॉ भी करना बहुत बड़ी दिलेरी होगी यार। Oh, the D थोड़ी word. जहरीली बैटिंग करनी होगी। Look at that. Oh, that's gonna Half hit. tracker that's hit him in the balls. But he's missed out Jossie. Surprising to see Butler miss out on that. Yeah, he doesn't miss those balls at all. 394 for 4. थोड़ी गंदी बॉल थी यासिर शाह की डाउन लेग साइड, बट बटलर साहब भी सोच रहे होंगे यार मैं भी 150 पौने 200 कर लूँ आज। On the back foot this time, driven a good fielding from Yasser. I think just got a hand to it.
or come through for one और regardless. वही इशू है कि we couldn't get any reverse swing at all out of the pitch. It's very easy paced. मुझे लगता है इन्होंने कुछ पसीना ही नहीं आया मुझे लगता है इन्होंने यूएई की तरह क्लाउड सीडिंग कराई हुई है और जब इनकी बॉलिंग आती है इन्होंने बादल लगवा देने हैं ड्रोन्स के वो रिमोट कंट्रोल के साथ भेज देते हैं. Exactly. Wouldn't put it past them. How much truth or how much actual sincerity does the claim that England have made this a dead wicket have? 100% यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. इतना डेड विकेट हम इंग्लैंड थोड़ी बनाते हैं. Of course they were 1-0 ahead in the series. They couldn't lose it, so of course they just want to make sure they don't lose. ये तो standard tactics है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है. I agree. Wild sweep from Zach Crawley. It'll beat the man at fine leg and go for 4. He's doing it all, this man. Playing on both sides of the wicket. Playing behind square, in front of square. I think Azhar will be contemplating at this stage, when do I give up the ghost and go to my B and C bowlers? Fawad Alam Shan Masood Himself. I think we might reach that stage very soon, that बेतुका काम हो जाएगा bowling करवाना हमारे main bowlers से. 400 now, creeping up. 399 for 4. What a Yasir partnership Shah this as has well been. losing his line a bit. और ज़करिया खालिद तो कह रहे हैं 373 for 0 करेंगे हम. भाई क्या बात है. अब्दुल्ला अमीन कह रहे हैं ये वो ट्रॉट एंड ब्रॉड पार्टनरशिप जैसी पार्टनरशिप लग रही है. नो चांसेस गिवन एंड अ शिट लोड ऑफ रन्स. यार वो अब 10 साल पुरानी बात है, उसको भूल ही जाए तो अच्छा है. बट nice shades from Rizwan. He's keeping shades. Nice lime green accent to them. ग्रीन green है. England now looking to get that 400, and they don't. Driven away to cover for no run. That's the end of the over. 1:15 gone. England 399 for 4. You are listening to Change of Pace Live, the home of Pakistani cricket commentary. And finally at long last हमारे colleague अहमद हसन भी has joined us और वो तड़प रहे हैं commentary करने के लिए, तो फिर I'll just hand it over to him. Please describe the passage of play. I feel like Emma's just woken up. Good morning. It's been a horrible morning and night for me. What's- I've been dealing with a lot of AC issues, so just had those corrected. यार एक्चुएटर उसका Oh, that Hard just again. that happened to us last week, man. Yeah. That is not a good place to be Yep. in the middle of summer. so it's been a wonderful. But did you get it fixed now? They went to buy it, but they couldn't find the 3-way one, so they've switched to direct for now. So let's see how long that lasts. But we're on standby for now. 399 for 4 after 115. Haven't watched a lot of cricket today, thankfully. No, you didn't miss much. I haven't missed much either. And haven't missed much in terms of Pakistan. To be honest, Crawley's batting's been good, but I think that might have that doesn't hit much. And Shaheen resorting to that short ball. Nowhere near the bat. 399 for 4. I think it's time to say goodbye to Mr. AA. Wait, एक ही तो series हुई है अभी इसकी. What the? Why? Goodbye to isn't what? Goodbye to what? that Everything. Everything. The captain, the batsman. Everything. The captain, the man, Wow. the myth, the legend, if you can call him that. Oh man. I think it's early days for that. I think as a batsman, though. As a batsman, he's serious introspect. 100%. Yeah. But if you're not there as a batsman, what are you there for? But yeah, that's the problem. We're again in that position that we were with Surfraz. It's not a singular entity as See, a player. I think we made Azhar captain thinking that okay, he's a shoo-in in terms of the side. He wasn't at that point. That's the thing. He was scoring runs in Pakistan. When we made Azhar captain, it was simply because of his experience, and we wanted stability. Azhar offered you that because we've all known that he's a stopgap between Babar and the captaincy. If this series, Why is that such a given? Why do we have to go the Virat Who- Kohli route? No, okay. If India was not making Virat Kohli captain, who's their captain? Rohit Sharma. In test matches? No, not in test matches. Give me their But test. I'm saying you don't have to be a Wait. I've even- heard the argument. Give me their test match captain. Pujara. What? Chiteshwar Pujara. Does he captain in any level of cricket? I'm not sure. But Okay. why? He's a senior batsman. So that doesn't matter. You give people who are captains. Even Ashwin could be captain. Ashwin could have been. Yeah, Ashwin could have been, but Ashwin But he doesn't play outside overseas. of India, yeah. So this is the whole point. If Yeah. you don't have someone who's going to play in all conditions, all countries, all formats, then he's not going to be your captain. Why? Why Babar Azam? Babar Azam's now the captain of his domestic side in the first class structure. Yeah. He's made the point that he's been captain of other levels. Under within 19. cricket. He thinks of himself as a leader. That's also very important. You can't just be a guy who's batting and not saying anything or doing anything. He considers himself a leader. True. And he's now the captain of your limited overs cricket, right? So it's a natural progression to have a 3 format
captain. Let me offer you a wild card pick as Mohammad Rizwan as captain. Mohammad Rizwan was vice captain Right. a couple of series And he ago. does KPK captaincy. Right. But again, Mohammad Rizwan is less settled in this lineup than Babar Azam is He doesn't right have now. competition. Let's be honest. Fine, but he still only had what 2 series as a wicketkeeper. Yeah, right? nobody is as settled as Shaheen and Babar. So if he fails in the next 2, and he's no longer your first choice keeper, will he be the guy that you keep in the Yeah. lineup? No. I don't want to be in that position Babar again. Azam is probably the only batsman who's axe free at this moment. Half an appeal from Shaheen with this going down leg side and over the leg stump. And maybe Babar's captaincy in the beginning is not there. We can understand that. The issue is Azhar's had the captaincy in Yeah. limited overs cricket. He's Yeah, had yeah. the captaincy at different levels within Pakistan as well. Remember, he was the Lahore Punjab Qalandars as well. He was the Lahore Qalandars T20 captain at one point, That was a but it was disaster. the wrong fit. He's not the right guy to be there. So if that's the case, why are Although you going to persist? that's not fair. Lahore has other problems. They do have other problems, But he was Punjab captain too. but he couldn't bat, right? If Azhar Ali could have batted for the Lahore Qalandars, not been captain, they might have stuck around with him. But he's yeah, not. if That's he had not the something case. to give, that's the problem. Yeah, he did- doesn't, and he's not offering that in Test match cricket either. So the thing with Babar being captain, and again, I have nothing against that decision. For me, Babar, the batsman, is more valuable than Babar, the captain. So we need to safeguard that. Right, but look at Virat Kohli. Who for else is going to get example. runs for you? We're looking at these best case examples, and if Babar's coming into the conversation with the Fab Four and the Fab Fives. Yeah. So if you look at Kane Williamson, if you look Captain, at Steve Smith, if captain. you look at Virat Oh. Kohli, Steve Smith is Was not the captain. captain Was. now, but he was right, Yeah. and it didn't affect their batting. So why is it a given that this would affect Babar Azam's batting? And I'll plus tell you you've why. had great batsmen in the past as well, like Graham Smith, like Stephen Fleming, who were made captains Inzamam early Haq. on in their. Inzamam was also actually Inzamam batted better as a captain in Yeah, the yeah. latter stages of his career than he did before. Oh, what a delivery beauty. that is from Yasser Shah. I think that was the flipper, or no, just a Just conventional leg straightened off spinner. the Yeah. pitch slightly, but Zach Crawley was playing back to it again, and it's beaten the outside edge by a fraction. And the off stump. Yep. Goodness me. One The didn't thing take about either. the thing I'm worried about with Babar, and I think it's just me being paranoid to a certain extent, is that when you've got Virat Kohli and your Williamsons and your Steve Smith down the track this time for no run, but they have some sort of cushioning around them. Steve Smith's got Marcus Lasagna, Williamson's got Ross Taylor, Root's got Ben Stokes, Sure. Virat Kohli's got Pujara, Darwin Rucker, all of those guys. Yeah. Who does Babar have in terms of that cushioning? No, not much really. Yeah, but you're now looking at a settled top order in terms of the openers, right? Yeah, So the if top three are settled. Yeah. Right, so if Babar's coming in behind Shan and Abid Ali, who've been batting decently, and if they continue, They're settled, produce but they're those not runs. great. because they have, again, you look at the number of matches that these guys have played, but it's signs for the future. Yeah, Babar Abid, Azam as well especially Abid, yeah. is still making his way in Test match cricket, but the last couple of years he's been producing the runs, so he's showing that I'm there as your reliable guy, as your number one batsman. Yeah. You need to find someone at 4 and 5 still. If Asad Shafiq and Azhar Ali aren't cutting it, No, yeah, Babar at 4. no, I'm just saying generally you need to find guys at 4 and 5 because essentially Babar could move up and play one down, like Williamson does, like Joe Root I think has, that like it- Steve Smith has. In Test cricket, your best batsman needs to be at 4. One down or 4, it doesn't. For me, it's not a huge difference because if you have the ability, you've had some of the greatest players in the history of the game playing at one down, and that's ideally the role that's given to the best batsman. Yeah. It's not 4; it's actually one down. No, but why do you want to expose Babar to the new ball? I'm not saying expose him, but I'm saying if he's going to be the rock of that batting lineup, then he has to be the one to face all conditions. That's where you have to step up and raise your hand and be like, I will see off the new ball. Ponting And did also not. play the Ponting spinners. batted at 3 Ponting batted at 3. Lots of great players have batted at 3. It's the position as captain. yeah, that's the position that many greats bat at. You know, Rahul Dravid was the spine of that India lineup in the 90s, in the Yeah. late 90s and 2000s, and he batted at one down. And it was because he could face the new ball, but also he could score runs against the spinners. Babar was as good as an opener, to be honest. He could stand around for the majority of his career. Yeah. Babar Azam plays as an opener when it comes to limited overs cricket, so he's already T20 there. cricket, yeah. He's a one-down batsman in ODI cricket. It's not a huge change for him to come into this position. The Yeah. point is, though, if you're going to make someone captain, at this point it has to be Babar. You could go with someone like Shan. Maybe you could Or say Rizwan. fine. Or, Rizwan, I could see Whose position in the side is more secure solidified right now. compared? Shan right now. Because he's Imam is breathing down his neck as well. Why? How? He's breathing down Abid's neck, if anything. No, you get 156 and then a 0 and a 1. Yeah, but he's only had 3 test matches. Shan has now given you 3 good series in a row. So if you're looking at someone who's solidified the spot, it's more Shan than Abid Ali.
Yes, Abid's got the record behind him in terms of those 3 matches. Yeah. But this England series, Very early days for Abid. that's what I'm saying. So it's been a new turn of events for Abid when it comes to England and the moving ball and all the conditions that he's facing now. But he's still doing well. He's got a half century to show for it. Rizwan is still making his way into the team. No, again, in terms of all of those things, it's more about paranoia around safeguarding Babar the batsman. But I think it'll eventually end up. Oh, that's a weird attempted guiding it over the wicketkeeper's shot from Crawley. I think he might If he's just got the skimmed wide. Wow. yeah, I think it was a bit too short. If he's got the mental fortitude and he's displaying that in other forms of the game, if ODI cricket doesn't affect his captaincy, then it's a sign that he can take on the role. The one thing that's He's a very natural reassuring successor. about Babar Azam Yeah, is that he doesn't care for his critics because he holds himself to a very high standard. yeah, absolutely. And the So- consistency is now coming into the game. This is the thing. Yes, people are making points about him not having won a match with the bat in Test match cricket, but that doesn't always happen. You need to have a mammoth score, and that will come too. And he doesn't need to make it in England, by the way. He can make it in Pakistan. I don't care. Yeah, he just needs to get going. Yeah, it's about runs. Good Yes. back foot punch by Zach Crawley, but there is a deep cover in place, so they'll pick up 2. England 406 for 4. 405 for 4. It's a mammoth innings from Zach Crawley as a maiden 100 to go to a double century. Did you Or- expect this? Look, this is what I've always mentioned, right? And I brought this point up about Joe Root before as well. You pick guys based on potential. Domestic numbers don't always tell the entire picture. Right. Fawad Alam is a example of that for many people in the past. Yes, you might have an average of 56. Rohit Sharma is an example of that. He has an average of 57 in first-class cricket, but it doesn't translate to Test cricket. Whereas guys like Joe Root, who were picked up at 19, 20, averaging 32, 33, went on to score All shot. That is massive from amount of Crawley runs. straight to the man at deep point. And there's that man, Fawad Alam. Zach Crawley is an example of that. So then what is that criteria? Because I put out a tweet about this, and we had a conversation with Freddie about this on Twitter as well. So I said something about how Zach would have actually not been selected based on his stats because his an average of 33 is not that great. Yep. There's English batsmen in the county game that have better numbers than that. And Freddie again tweeted later on in the day saying that It was his people are... numbers in the last year, though. Yeah, again, he had a good That's year. the difference. He had a good year. Yeah. But there are, quantitatively speaking, if we're just looking at cricketing statistics, batting statistics, there are people that might be ahead of him in the pecking order. Yep. He still got picked because of his ability and his application Yep. and his personality and all of these things, that the intangibles that we don't quantify. As Shaheen now steaming in left arm over the wicket, driven, and it'll go to cover for a single. Now the question is, if it's obviously not just statistics. It's obviously not just, I like the way this guy looks like in terms of how he's batting. Yeah, but you don't. Yeah, that's So what I'm saying. what It's not exactly is potential. that? Because selection Yeah. for international cricket, especially if you're selecting for Pakistan, it needs to be a tangible. It needs, because if you're a selector, I'm going to hold you accountable. So if you're being held accountable to a decision, how are you going to prove that this is the process behind my decision? So as a selector, what is the process of modern cricketing selection? Okay, look, again, it goes beyond the statistics like you mentioned, but it also comes into actual performance. It can't be a guy who's made 35 in every game across the season, and I can be like, but no. he just looks good. Yeah, but that's not the point. Maybe Zach Crawley in one of the matches against a strong lineup in difficult conditions was scoring good runs, and those 90 or 80 runs might have meant more to the people watching than perhaps 400s in a row. Although not discounting that either, because that's consistency, and you want that ability to score big hundreds. But over the last year, if Zach Crawley scored the runs, which he might not have throughout the course of his career, then that's what matters to him. That's what matters to the selectors. They're going to look at recent form. I think that's what matters most. Fawad Alam, when he was being asked to be brought into the lineup, was scoring an insane amount of runs. He was scoring doubles and triples and whatever, and that was the time for him to be in the lineup. If you bring him in a year and a half later based on that form, that might not be there. Again, That's form true. On a lot of occasions is temporary. It's literally monthly sometimes. You can have a purple patch. Marnus Labuschagne, when he played against Pakistan in the UAE, didn't have a great series. He was dropped. He went on to make a huge amount of runs when he went to England, and he was selected as a backup in the Australian lineup, he was a right? substitute. Exactly. He came in as a concussion substitute, went on to score consecutive 50s in every match he played after that. Then he destroyed Pakistan.
So it's that temporary phase in which you need to be brought in, and that's where you need to be tested at the international level, because you've done enough in the domestic circuit. Playing across 10 years and scoring those runs is great, but across 10 years you might be facing the weakest bowlers. Think about the number of international matches that are going on during that domestic season. Some of your best bowlers are already not in that. Oh, what a shot this is from Crawley. Swept from outside off into mid-wicket for 4. He's doing it all now, and Yasir Shah can only stand and watch. मुझे लग रहा है यूनुस खान इनका बैटिंग कोच बन गया जिस तरह sweeps खेल रहे हैं. Remarkable sweep shot. And again, the taller you are, the harder it is to play that shot sometimes. Yeah, he gets down really low. He's 6 feet 5 inches. Exactly. He's not a short man by any chance. Some of our biggest or tallest bowlers in the past have been much shorter than him. Yeah. He gets down low really well, extends the arms, and he's able to sweep, and So, Yasir can just look at him. You would be the anti-Imran Khan selector. You would care for statistics. You would look at recent form. You wouldn't be like, yeah, No. this guy looks good in the nets. Let's pick him up and go. Look, that doesn't work the way that... Okay, Imran Khan, yes, has picked guys based on Obviously, he has the eye. that. He had the eye, fine, but those guys also... some of them had the numbers behind them. There might have been a few guys who were just brand new off the street, but that's not exactly the case anymore. Sometimes these stories are also presented in a way, wow, what a shot inside out over cover, and it beats That's his 6. diving Abbas, I think. On cover, it's going to go all the way for That 6. is a magnificent shot by Zach Crawley, this time showing the other side of his game. Comes down the track, and he's lofted this with the spin over extra cover. That's a huge 6 for him. And England are That's a stepping on remarkable the shot. That is a accelerator. shot of the innings, I think. Yeah, I think that's the shot of the innings for me. And it just shows how confident he is now. Easily playing with the spin. He knew he could get through with the shot. Long handle. And remember, his captain and Ollie Pope couldn't read this exact spinner, Yep. who he's now coming down the track to. And they were affecting his batting too. Good, valiant effort by Abid Ali, but he was never going to haul that in. Would have been a decent catch. It was always beyond the boundary. 220 now for Crawley, 418 for England. He struggles there, just going to the back foot sometimes, as he looks a lot better coming forward to the spinner. Yeah. But if you look again, if we're talking about someone like Shadab Khan now, he's come on to the international circuit in the last 6 to 8 months. He's shown batting credibility in the T20s. He came on and made a nice 45, 47 in the first game. He was showing signs of being a decent batsman at this level. Yeah. Why do I need statistics at that point? He's doing it at the stage on which I wanted, right? Statistics work or don't work in your favor if the batsman fails. This is where it really comes into play. That's where people start nitpicking. But if someone works, then it's potential, then it's these intangibles. You don't have anything to hold on to at that point. Yeah, listen, first-class statistics should not matter if you're performing at the international level. Obviously, that performance should take priority. Yep. Comments coming in. VK saying the series is gone, but it's not a bad series at all. Playing after a long time, almost won the first test and rain in the second. I think that also needs to be taken into consideration. There's been a long gap between test matches for Pakistan. No, I mean, we're not here to discredit the performance of Pakistan or the overall just the high score by Kent batsman. Yep. And he's beat Rob Key, I think. And he was talking about it yesterday 2-2-2. at the Sky Sports Lounge. Yeah. That Rob Key's highest score was 221. Yeah. So they were just asking him to just please, whatever you do, just get that 222 so we can tell. Yes, We can rub it in, He Rob. could be solid for 300 the way that this flat wicket is playing out right Yeah, now. there you go. His average has suddenly jumped up to 48.7. Rob Key, mediocre batsman, 15 matches, 775 runs, a best of 221. Did you know who that came against? South Africa or something. So you're like, yeah, some. Definitely not an Ashes 100. Otherwise, we would have heard about it a lot more. He wouldn't shut up about it. Mm-hmm. 421 for England. 119 overs gone. There's only been a couple of bad patches of sessions for Pakistan where the series kind of went away from them. Yeah. Again, we talked about that first match. They dominated for the first four and a half days, and then just a couple of sessions in which they went tits up. Take a moment and feel for Naseem. 22 overs on this pitch, which is not really giving him much. It's a backbreaker. But he's kept his lines and lengths accurate. All good shot. Oh, what a Beautiful shot. drive from Crawley. Baiting mid off, and he'll go to the straight boundary for another 4. 226 now for him. मैं तो कह रहा हूँ आप सबको जो है बाउंड्री पे खड़ा कर दो. उन्होंने चौके छक्के मारने हैं ना. Yeah.
The thing is, they don't realize yet, because usually you go to plan B and C when you think there might be an end in sight. I don't think there's an end in sight for England's batting. I think, given the forecast right now, they might just continue to bat until the end of the day, if possible, get 600 up, or get 600 whenever. If they want to win this test match, they also have to get 20 wickets. But that's the thing. For them, it'll be more important, or the scoreboard pressure will be enough for them to get 20 wickets, because as Pakistan, what are you doing if there's 600 on the board? True. What's your And game 600 plan? looks really likely right now. Right now, yes, it could be. I'd be very 500 happy. at least is Yeah. a very doable target for England. If we can bowl them out under 500, that's an achievement at this point. It's a bit of a win, yeah, because the way that these two are going right now, 550 looks on the cards, and England might go to that extent. 'Cause you know these guys have been out there for 2 days under the sun, batting. They've been batting brilliantly, England, so far. So you never know. Looks like the wind is picked up again in Southampton, and this is thwacked to square leg for a single. But they are stepping up the scoring pace a bit, so maybe there's been a message that's been sent out. Why not? What's there to lose now? Let them play their natural aggressive game. Ibad is saying ये क्रॉली वाकई 22 साल का है. मुझे लगता है एज कम लिखवाई है. यार वो फिर पाकिस्तानी मसला होगा. But highest maiden test hundreds, Tip Foster in 1903 made 287, Wally Hammond 251 in 1928, and Rob Key against the West Indies at Lords for his maiden 100 made 221. I don't think he made 100 after that. And Zach It's an Crawley average now, of 30 with a 200 innings in it. Yeah, and he's only paid 15 tests. exactly. And Zach Crawley now on 227 can possibly go second in this list. If I'm him, I'm at 300. Right? Naseem Shah now coming in right arm over the wicket, bowling to Joss Butler, and it's defended well for no run. We have some tweets coming in saying, talking about Azhar's captaincy. भाई जब एक बंदा nervous 190s में है तो आप एक दो over ले लो third slip, but we know how pathetic Captain Azhar Ali is. उसकी मेहरबानी से series हार रहे हैं. Who said that? We don't need to drop names. It's about the content. और वो 200 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और ये आज रिकॉर्ड बना है. I mean, look, there's a lot of armchair critics when it comes to the game. Being in the ground is definitely different. When we're talking about the think tank, though, when we're talking about this massive backroom staff that you have, all these big names, there needs to be more, though. There needs to be more delivered. Yeah. And you have 5 major coaches sitting in your dugout, plus the analysts, plus the statisticians. It's a huge innings for Buttman Butler, though, because 300 up for England now in terms of this partnership, 301 runs. They were 127 for 4 if you can't do the math, and they're now 428 for 4. A very unlikely and unexpected 300 partnership between Butler and Zach Crawley, but kudos to them for making full use of these flat conditions. It's been a road that they're batting on. Zach Crawley's contributed 160 from this 300, while Joss Butler is 126 of 247 deliveries. But I think that's been one of the signs of Zach Crawley's innings, that he hasn't slowed down. No, he hasn't. It's been chanceless. It's honestly been a chanceless innings, besides that slash for 4, but even that was easy when you don't have a third slip in place. Yeah, I think at this point even Pakistan are just waiting for them to do whatever they need to. Yeah, exactly. मतलब हम भी कह रहे हैं अच्छा बस करके फारिग होके चले जाना. Paddle sweep this time. You'll pick up 2. It's Shaheen Shah collecting. Yeah, at this point you might as well just bowl Fawad Alam. Give the young men a rest. You know it's not going to be their day. They've bowled well. They've bowled well in spells. They've had consistency. They've had movement, accuracy. It's just that it's been an unlucky day and a half of play for them. Down the track this time. Lands safely in front of long on. They'll pick up a single.
But you can see the intent now. They're going down the track and attacking every delivery. Zach Crawley especially. Maybe he's been given only an hour in this session to score as many runs as he can before Joe Root decides to declare. There is rain expected on days 4 and 5 here. So maybe that's playing on their mind right now. Catch! Oi! That would have been a spectacular catch had he hauled that in with his left hand, but I think it was always just going away from him. Picking those up in your follow-through is never easy. Butler played it uppishly off the back foot, just past the left hand of a diving Yasser Shah. And I think he was a little bit late to react, but would have been something amazing, something memorable for him in this match. Walaikum assalam. सोचो ये टाइमलेस टेस्ट होता और ये बैटिंग करते रहते बस. ज़करिया, वैसे आप खुश हैं कि आपके हमनाम ने जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की फेंटी लगाई हुई है? A little bit of energy. Could have played this test match. Oh, it's the Googles. Yeah, I could have just put him on and forgotten about the rest of the lineup. AZ Khwaja is a bit despondent right now. He's crying that they found the next Alistair Cook and Zach Crawley. A lot of similarities there in terms of their height. Both tall men, both quite posh. Pulls out the reverse sweep. It's aerial, but it's going to go past point. And I don't think this is going to be cut off. That's another boundary for Zach Crawley, who's now raced away to 236. If you remember, he was only at 180 once lunch was brought up, or nearabouts. He's made a quick number of runs after that lunch session, so he's getting a move on here, Zach Crawley. Football was quite great, yeah. Twos to Sevilla. It was a good match to begin with, but what was Conte doing with that Inter lineup in that second half? You didn't feel that it was the right way to go? No intent. It's a very Italian way of football, Also, though. when you have just backing up, when you're closing up bringing shop. Victor Moses, Alexis Sanchez off the bench as your saviors. No, Alexis Sanchez is not somebody that's bad to come off the bench. I mean, he's been out of form. I think he's gone at this point. This afternoon session, 13 overs bowled, 65 runs at a rate of 5. In the morning, Pakistan bowled 18 for 41 exactly. Joss Butler's barely scored runs. I think it was Butler in the morning, and now Zach Crawley's taken the role as leader. The think tank, Shaheen Shah, Naseem Shah, Babar Azam, and Mr. Azhar Ali getting together, trying to figure out what they can do here. Just maybe start bowling some Yorkers, but you can see how much effort it's taking Naseem to bowl right now. His pace has dropped into the low 80s at this point. He's just out there trying to bowl the best that he can, but it's too much to expect him to continue to bowl at the pace that he normally does. I think Pakistan desperately need a wicket now, not just to keep themselves in. For their own I morale. think they're out of the game, yeah, but for the morale, for just like the remainder of this 3-day series. Yeah, putting in the work. They can finally push through it. I think it's important just to have something to show for your efforts. Yeah, too. for sure, exactly. And I Especially mean, these for the figures are young not men. flattering at all. No, not at all. I mean, centuries coming up for all the bowlers at this point. Exactly. What do you make of this new fielding position Yeah, a there? little short mid-off in place next to the bowler on the left side. Babar Azam's there. I think they're counting on Butler driving down the ground, maybe doing so uppishly. Yeah. It's always nice to have these kind of innovative fields. Maybe something that should have been done a lot earlier in the test to mix things up. There was a But- couple of positions like this weird fielder between gully and slip. Yeah, and a between short. gully and slip is usually third slip or fourth. No, it slip. was like behind that area. It was थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ था वो. It was Yeah, maybe it was it was like a fly slip. Exactly. Bit And looser in terms of the positioning. Yeah, but that's what I'm saying. You need to have these kind of weird ploys and plans when things aren't going right with the pitch. The lack of reverse has honestly been more frustrating than anything else. It's been you just keep bowling outside the off stump because you know nothing's going to happen. You can either stick a wicket to wicket and risk runs off the pads because you might stray in line, or you continue to bowl outside the off stump and make them manufacture shots. And that's what we're doing right now. We've got a deep point in place, mid-off cover,
a shortish mid-off, you might call it. And yeah, they're just going to continue bowling outside the off stump. The inside half of the bat, yeah. He's still trying hard, Naseem. 87 miles per hour, that one. He's a young man, doesn't know really when to give up. He knows the situation is out of hand, but when you love the game as much as these young cricketers do, they don't stop trying. Yep. Yeah, he's into his 24th over. Yeah, he's into his 24th over of the 3rd consecutive match that he's played in this test series, so he's bowled his fair share of overs at this point. Yeah, I don't think we need to. I think we've got the depth without him. I don't think he needs to. Maybe he could just stick around for the sake of being around the team, but he doesn't need to be the one in the lineup bowling those overs. Yeah, maybe just protecting him from the situation and just keeping him with the boys. But yeah, average movement for seamers in this series. Wow. Yeah, in this current test match, Pakistan are getting 0.8 degrees of seam and swing movement, whereas they were getting 1.2 percentage in the last 2 degrees, in the last test match, where we saw the ball was tailing away from both right-handers and left-handers. So the conditions. Yeah, but it's a game of angles, right? So if you're getting even the slightest of movement, remember, too much swing is actually bad, and this is what England suffered from in that first match, where they were bowling too well. The ball was moving around way too much, and they were beating the edge rather than getting it. So getting another 0.4 degrees of swing might be the difference between a wicket and 236. Yeah. Yeah, he's still got his chance to score 150, possibly 200 here on the pads. Good delivery, good over by Naseem Shah. He's bowled well to his field there. It's a maiden from him. Very rare in this test matches, the maidens. I think it's been a back-breaking innings, not just for the bowlers, but also for the comms box. Because watching England do this to us is not ideal. We don't want to see them scoring a 300-run partnership. Australia series, yeah. Absolutely. We're together in the misery. Yeah. 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 Absolutely. Yeah, and the support that everyone's giving is, tremendous, given the fact that it is a much bigger commitment from your side as well to stick around and, comment and be around with us. So thank you for that. And hopefully, in the T20 series to come, because now I'm just looking forward, looking ahead. And I feel like that might be a bit more of a balanced approach for Pakistan, given the fact that we have had success in T20s. England are one of the best limited over side in the world. But they have literally a second team of guys who don't even play in this squad. Yeah, absolutely. We'd take any of them in our current lineups. 5 तो उनके wicket keepers हैं. They've got a lot of variety. Plunkett's not been selected, but you have Jordan, you have Tom Curran, you have don't rate him, but you have Saqib Mahmood. Those guys are going to come into the attack, and also David Willey has had a resurgency in terms of limited overs cricket. David Willey? No, David Willey is still slow, but he's got the swing going for him, and also his batting suddenly showing, because he's always been a decent batsman. Yeah. You have Adil Rashid, you have Tom Curran, who are good batsmen. The number of all-rounders these guys are producing is crazy, whereas Pakistan are producing none. Some of the shots in this mammoth 311-run partnership between Butler and Zach Crawley, all around the ground. They've attacked the spinner, they've attacked the fast bowlers. Butler brought up only his second 100 in Test match cricket. They haven't needed too much luck either. They've played safe shots.
down the ground. And Zach Crawley with a shot of perhaps the innings. A lofted 6 over extra covers. Hundreds now. The Pakistani batsmen. Forget about the scoreboard. Just go out and get some runs. Zakaria, if there's a problem with my mic, I think it should be fine now. Zainab is saying, Yaar, Fawad or Abid se bowling karwani, let them get to 600 if they want to, as quickly as they can. The longer we field, the more we'll be tired and the more pathetic our batting will be. And Zahur Raza is saying, Saj Sadiq is taking out his 92 DVD out again. VK is contemplating a Crawley 300. I think a lot of us are contemplating a Crawley 300 at this point. And Zainab is saying, I have a radical idea. Bowl part-timers from both ends. Bowl wide 6-stump full tosses. Basically declaration bowling. Important to protect young Naseem and Shaheen from this mental torture. Yeah, I think it's important at this point. Just wave the white flag and just high trigger. Sarfraz Ahmed bringing on drinks. How could he? 438 for 4. There's plenty of actual issues Yeah. to discuss rather than this There he is. Shan Masood. What's it gonna be for you, Shan McGraw? Shan McGraw, yeah. Shan I McGraw's think good? that works best. Oh yeah, Sean Pollock, yeah. Sean Pollock also works. I think Sean Pollock flows better. Yeah. Got huge 2 wickets in the 23 matches that he's played. One of Aiden Markram, I remember that. It kept real low. Yeah, he got bowled. I mean, our best bowler has not bowled a single delivery in this test match so far, Azhar Ali. Bas, kya kare? Gotta criticize something. Down the leg side, good take by Moriz. Decent delivery from Sean there. On the pads, just defended by Zach Crawley. यार 400 बनाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, वरना टेस्ट क्रिकेट में जो है वो 300 से ज़्यादा जो है आपके बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रन बनाए हैं, 20-25 ही हैं. Azhar Ali is one of them. I mean, you could Google how many 300s there are. Yeah. How good delivery from Sean, hits him on the pads this time, but going down the leg side. Karan Nair made 331, I think, in India. You're looking against England, but look at against England in England. In England, yeah. Not English batsmen, in England. Gooch, Graham Gooch. Yeah. But that's what I'm saying. It's not more than, where you have Chris Gale has 2, Sehwag has 2, Bradman has a numerous amount of them as well. So Gale has multiple triples too. In England. Well, it's a bit of a fail there against the West Indies in West Indies. Longest innings of perhaps any cricket game. He said he played over 1,000 balls in that one.
Yeah, England, by winning this match, will go second in the Test Championship, just behind India, the home track bullies. We're just going to pull out those stats of number of triples made within England. Oh, we can recount the hash making that triple. Pakistan. Naseem Shah's continuing from the other end. So not a double change. On off stump, dab behind point. They will only pick up a single. It's a bit difficult to run when the bowler is following through and you also have this short mid-off in place. Butler might have to run around to the other side. As Masad Afzal is trying to fix his mic. A bit of technical difficulty. Never far at the change of pace. Our stats guru, Mazhar Khwaja, 364 for Len Hutton, which was the record score back in the day. Don Bradman, 334 in England. Grew 333 against India. Hashim Amla, 311. Bob Simpson, the Aussie. John Edrich, 310. Of course, the Don comes in twice in that list, 304 for him. Yeah. I think Alistair Cook has a 290 in there too. Zahir Abbas has made 240 here as well. I know that Mohsin Khan has a double here. Yunus Khan has a double in England. Mohsin ka mujhe yaad hai as opener he had a double. In Lords, yeah. If you recall that 2006 series, Muhammad Yusuf was so close. What a glorious drive by Zach Crawley through the covers. He's punched it with the full face of the blade. 443 for 4 now. England, Zach Crawley's 240 off 3. Javed Miadad has 260. So some good performances from Pakistani batsmen in England in the past. I'm just recalling that 2006 series where Muhammad Yusuf could have had 3 triple hundreds. But he missed out on all 3 of them. He missed out on all 3. Yeah, I think he missed out. He got out in the 190s on 2 occasions, I think. एक बनाया था और शायद 2 में रह गया था. इस तरह का था. It was a remarkable summer for him. Remarkable year for him. Remember Shane Warne's 335 versus Pakistan? Shane Warne? Sorry, I'm losing it. David Warner? Yeah. That was recent. Yeah. Yeah. Now we've given up our fair share of 300s. Guys, my mic should be back. Let me know if you can hear it. I think that's a depiction of how this game has gone. Even our mics are starting to just slowly... Oh no, it disconnected. Seymour. I think I wouldn't be opposed to just seeing a Zach Crawley triple here. I don't care. Might as well get a record. I mean, just get him out, get some batting in, get some batting time, get some Bobber 100 at least in England. Just want it to be the last... I think it's a good time to introduce my inside edge onto the pads LBW rule. Sure. Just for this innings. Yeah, sure. Just for Zach. Even if it hits the bat, up out. Bat in front of wicket, out. Bat in front of the wicket, you're out. Yeah. 240 not out. My goodness. Just to remind you, England were 127 for 4, and I just remember. You remind kar rahe ho tum. I remember Khwaja lying back just a tad bit. Relaxing in stance. Yeah, 346 all out kar denge. 346 all out kar denge. That one kept low from Naseem. Yeah, he's bowling the slower deliveries now too, Naseem. Just trying to... Mazab is straight up asking, when will the pain and suffering end? Never. Welcome to the life of and Pakistan Umair Shirazi is saying, I miss Stokes. Why were we celebrating his absence from the squad? Yeah, maybe, if Stokes was here, could have been out for a good 5 or 6, like he was in the first couple of matches. So screw you, Zach Crawley. Stokes की याद आ रही है. पता नहीं क्यों यार अपनी फैमिली को इतनी प्रायोरिटी देते हैं. इधर आए खेलें 10-15 रन करके आउट करें, आउट होएं. ठीक है यार, आप फैमिली से मतलब पूरी जिंदगी मिल लेते हैं. एक आप दिन टीम को नहीं दे सकते. रिप्लेसमेंट देखो यार, 250 रन कर गया यार. वो लड़का जिसकी उम्मीद भी नहीं थी लाइनअप में होने की. Like again, a replacement player. It's like the crazy thing about all of this is it's not like a superlative, Yeah. कोई replacement आके आप 50-60 कर देता है, 100 कर देता है,
100 नहीं 200 250 रन जितनी पूरी टीम उनकी करती है. भाई हम यही बात करते हैं ना कि ऐसे लोग जिनकी जगह या तो क्वेश्चन होती है या उनको आउट ऑफ फॉर्म पाकिस्तान मिल जाता है, हमारा मतलब वो रिप्लेसमेंट किलर्स वाला काम यार आप 100 कर लो, मना किया किसने? 250 कौन करता है यार? 300 कर लेगा, कोई इंसान बनो. and it's his first century. This is highest score in the history of his first class That's cricket. what I'm saying. It's his first century in Test cricket, his highest ever first class score, and all coming against Pakistan. मुझे तो डेविड वार्नर वाली ट्रिपल पे भी इसलिए तप है, उसने 8 या 9 टेस्ट इनिंग्स खेली थी इंग्लैंड में उससे पहले. हाँ. स्टुअर्ट ब्रॉड वो घर पे शेर है. only let him score 80 runs across those. He Yeah. comes in and he scores like 3 times the amount of runs in one innings. बट वो घर पे शेर है ना, उस तरह. घर पे क्या यार, उसने इंग्लैंड में भी बहुत रन्स बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है. इस सीरीज में नहीं है. डेविड वार्नर ने he's made centuries within sessions in England. अबे वहाँ पे भी बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है. He's had 1 or 2 series, but when he was playing with Last Ashes he was horrible. Mr. Rogers. When he's batting with Mr. Rogers, he was okay. But yeah, Zainab he's is definitely a lot immediately better saying Lara's 400 is in danger. Zainab's thinking ahead, 160 Jab. runs still to go, Zainab. वैसे इन्होंने हमारे. Have some faith. Speaking of 444, that's what England got against us in ODI. We're not talking about that. In a couple. We're not talking about that. But only went on to better that Yeah. with 481 against 481 Australia. That was a listless Australia side. It's part of the test if you watch that. Yeah, yeah. It's in there when उनको पैंटी पड़ी होती है and they're just clueless. Yeah. Driven. This is another good drive. Beats the man at cover. Will Azhar Ali cut this off? Or it's Abid Ali actually. Yeah, Abid I Ali, just yeah. feel like it's Abid who's been running around the entire field. He's everywhere where the ball is gone. He is following the Little ball. pudgy man. Bhola mara. Bola. Pola. 446 for 4. वैसे मैंने ये बात कही थी कि देखो मिसबा को इनिशियली जज ना करो. जस्टिन लैंगर को भी जो है उन्होंने इतना टाइम दिया. It took him that long to become a proper coach. And Oh, first the team. air. Oh, what a shot. That's a great shot by Zach Crawley. He just sat in his crease and he's lofted this over mid-off for That's an easy gotta be 4. He knows there's no one back there. He's raced on to 246 now. England 450 up for 4. And there's no end in sight to this. मैं तो कह रहा हूँ मिड टेस्ट सबको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए. कहो हम खेल ही नहीं रहे, हम खेलते ही नहीं है, आप किसके खिलाफ मुझे ये बैटिंग समझ नहीं आ रही है. Can you continue on what you were saying about Misbah Ahmed? आमिर ने कहा है, ट्वीट लिखिए 10 असद के 12 अजहर के 4 फवाद के 26 रन तो पक्के इंशाल्लाह, बाकी 500 ऑड की टेंशन है बस. हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो मैंने आके कहा था कि जस्टिन लैंगर को टाइम चाहिए था to establish his team, pick the right kind of guys. He needed a year. We're now edging closer to that time for Misbah as well. He's had about a year. क्रिकेट नहीं हुई ना इतनी. ठीक है जो भी है, but he's had about a year to see who the guys are. These are the best players that he's selected, and there are question marks there, of course, between Azhar and Asad for Yeah. sure. That's pretty much it. Can't take that away. If we have another series coming up and it's a similar result for Pakistan overseas, perhaps, do the questions not start pouring in for Misbah as a coach? No. Not for you. Questions should be asked of the senior batsman first. Okay. Because But if Misbah is placing his faith in them, he's doing so rightly because they have 1200s. असद के 1200 है भाई. कितने असद के मतलब 200 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है ना, खेल रहे हैं ना. That's what I'm saying. So if he's failing, that's on him. Yeah, but who's picking him? That's also the point. यार इतने You're picking them. No, I agree with you. Yeah. It's on them. It's on the batsman. But why are they being picked if they can't play? Or like there's a record or there's a trend in which they're failing. First question when you're dropping someone is who's going to replace them. Fine. Okay. अजहर को अगर आप 3 पे खिला रहे हैं तो उसके बदले में आप इमाम को खिला लें. That's a risk. We both know it's a risk. Sure. And Haris instead of Asad, that's a safer bet. There is risk and there is confirmed. Right? This is Yeah. the thing. So if you know that these guys are failing and those guys Confirm might come in and fail as well, if you're gonna get the duck from a settled batsman versus a new batsman, it's still a तो duck. ठीक है. इमाम न्यूजीलैंड में के साथ मैं न्यूजीलैंड में आप इमाम और हारिस को खिला लें. I'm okay with that. क्यों नहीं? नहीं इमाम को इमाम वन डाउन one खेले down और खेल हारिस को सकता है. 6 पे खिलाए ना आप जहाँ असद किसी खेलते हैं. opener 5 पे को खिलाए. वैसी न्यूजीलैंड में खिलाएं क्योंकि आपको पता है आपका ओपनर एक तो जाएगा शुरू में. जब पक्का. हाँ, फवाद तो वैसे ही आपको पता है वॉकिंग. नहीं देखिए Fawwad's gonna be at least Walking Fawwad's gonna L. play at least 2-3 series because they cannot drop him this quickly. 2-3 सीरीज. Yeah. भाई अगर वो इस टेस्ट मैच में नहीं खेलता ना इस रोड पे उसको लात मारो. यार इतनी टाइम बाद वापस आया उसको ऑलरेडी निकाल दिया. Oh, what a flick by Zach Crawley, but this might go to hand. It's safely put away from the creepy man, and that's 250 up for creepy.
He's brought it up with a glorious flick through the leg side. We've seen a lot of those from him. He's a wristy player, and it's a maiden score of 250 for him, and it's just his 8th test. कोई बीमर वगैरह मारो क्या हो रहा और है ये जस्टिन बीबर का जो चहीता है शायद 300 बना जाए आज. 32 fours, 1-6, a strike rate of 67. That's not bad either. It's not bad at all. That's how you know this wicket is extremely shite. यार अगर 250 इसने बनाए तो बाकी बैट्समैन की फेलियर्स पे है ना कि उनका सिर्फ 450 स्कोर बना है. वो देखो बच्चा का लोरी बर्न्स तालियां बजा रहा है. सोचो ऐसा बैट्समैन है जो आउट होने के बाद स्लेज करता है. Honestly, like the audacity, What is this? the caucasity. मेरे भाई नहीं देखे आपने आर्चर आके मारेगा आपको. 455 for 4. चलो जी. Is Khwaja suggesting that we break Archer's back by bowling 40 overs? Archer ने जो express करवानी है ना. He has a point to prove. He has a chip on his shoulder now. Joe Root और ये. Do you think that's what Pakistan are missing? Do you think Pakistan are missing that, the 155 plus bowler? यार इस पे हमारे पास जो बच्चा है जिसने ऑलरेडी आपको 90 miles per hour पे करानी है, उसकी हालत ये हुई हुई है. आप अगर वहाँ भी किसी को खिला रहे होते तो वैसे ही 6 ओवर के बाद कहता था कि जी मेरी एंकल में मसला हो गया है, उसमें मसला हो गया. If I was in this lineup, I would have just faked injury by this point. I'm not gonna be out there for 125 overs. Screw this. I don't need this. I would Shoaib Akhtar my way out of that. Wow, there it is. Driven this time and a beautiful great shot. shot again. Good fielding. But why do you want to be there for 125 overs? Who are you talking about? Like, me as a bowler. If I'm bowler. bowling out there, if I'm Naseem, I'm faking injuries. Oh shit, yaar, ghutna. Oh shit, twist ho You're gaya. still playing test match cricket for Pakistan, man. Come Slept on. on the wrong side of the bed today. Messed up my back. I'm not coming out there to bowl garbage overs so they can score runs against me. What am I, a bowling machine? Screw that. Chan ko lagao. At this point, you might as well be. मजलूम को देखो मिस्टर बीन को कब से लगा हुआ है. यार कोई इनसाइड एज ही मार दो स्टंप पे यार. कोई शर्म होती है, कोई हया ये होती कोई है. क्रिकेट होती है. What is this cricket? ये खेलने के लिए बुलाया था गोरों ने हमें. A change of pace. Wheels are coming off. 5 hours into today's broadcast, England 456 for 4. Let's take a look at some of the comments now. Umair Shirazi echoing your thoughts, Ahmed. If Fawad fails in this wicket, he's definitely out. Mayor seems like a very intelligent man. And Zahura is saying if scoring pointless runs is an art, Shafiq is the Picasso. भाई आज शफीक के 300 पक्के हैं. आप सोच लें इंग्लैंड 700 बनाएंगे, शफीक 300 बनाएगा, पाकिस्तान 350 Mr. Arsenal saying Crawley to pakka ho gaya for next 2 Ashes solid. This is now going to pose a question for the English selectors because at this point the weakest batsman in this lineup is Joe Root. Rob Key's practicing his golf swing. क्या करें यार, वो भी बोर हो गए हैं बैटिंग. And he's unlike us being paid to watch this. Yeah. And Zainab is asking, Umair is asking a good question. He's asking, is Crawley England's answer to Marcus Labuschagne? I think it's a bit too soon to say that. Yeah, Labuschagne had a long string of runs. But देखें, he's Khwaja with the hot takes. वो तो अभी माइक नहीं आया ना उसके पास. But the thing about Zach Crawley that's been very impressive for me is that there's actually been no technical flaws. Yeah, exactly. He hasn't looked like Dom Sibley who has an issue with the ball going down the leg side, doesn't drive very well. Yeah. Crawley's an all-round player all around the ground, and maybe someone that could even look into the limited overs side because he's got the scoring ability. Yeah. He's got the shots even in test match cricket. So you look at Shan Masood's 156, take nothing away from that innings, but he was falling over onto the offside. There was a couple of edges yeah, to he the capitalized slips. on a lot of mistakes Yeah. too. I mean, it was still a huge innings from him in the context of the game at the point. But given the fact that he had chances, this has been a masterclass from Zach Crawley. And again, the kid's only 22. He's only played his 8 test matches so far. So I'd like to see how Crawley plays in the subcontinent. I mean, they are touring India later this summer. he's played Yasser Shah quite well. He's swept the Exactly. ball really well. So it might be a But when he positive goes on sign the for back them. foot against Yasser, it's a problem. I think most batsmen here have struggled against Yasser on the back foot because they're not reading him off the hand too well. But for everything that's been pitched up, he's met him with an equal amount of grit and strength. The chips are coming out as the intern. यार कोई बोतल का कैप लाओ, कोई सैंड पेपर लाओ, कुछ करो. ये थोड़ी होता है. यार कसम से यार, मतलब कोई खरोंचे शरोंचे मारो बॉल पे. कोई जिप शिप निकालें आप अपनी, कोई हिडन जिप उस पे बॉल मलें, कोई फैफ की तरह जो है वो च्विंगम का थूक लगाएं, कुछ तो करें. उसने क्या किया था, टॉफी खा के उस पे टॉफी का वो नहीं लगा रहा था कलर शलर. बाद में वैसे हम Painting भी कर रहा था. डॉक्यूमेंट्री बना लेंगे उनको अच्छा दिखाने के लिए. हमने उस दिन किसी ने ये कहा था, मिस्टर आर्सेनल आई थिंक हम पीटीवी को बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. अच्छा वो पूरा
No one- 1950 की डॉक्यूमेंट्री, हाँ। बट मिस्टर अर्सल ने पॉइंट ही दिया था कि भाई एक ही बार रख के थूक लगा लो, मतलब ढेर सारा क्या जाएगा, 10 रन पड़ेंगे, मतलब व्हाट्स 10 runs in 460? That's a fair point. And it's 5 runs, not even 10. 5 तो एक बार पड़ेंगे ना, आप एक बार ले लो पेनल्टी हाँ, 5 की, हर उसके 80 बाद ओवर बाद ना हाँ। एक दफा थूक लगा लो. फुल पूरी टीम को बुलाओ, उसमें जो है वो लुगी अटैक हो जाए. Zainab is saying, I have nothing but sympathy for Abbas, Naseem and Shaheen. If we had Wahab and Sohail Khan, we'd already be 700 for 4 in 700 for 4 वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे होते भाई, मैं बता रहा हूँ. If I was Sohail Khan, I would have faked injury like 3 overs into this innings. Sohail Khan doesn't need to fake injury. Like, oh shit, मेरा एक जो मूव है उसमें पुल आ गया, मैं नहीं करा सकता बॉलिंग, मैं जा रहा हूँ. यार MCL. पुल मूव MCL. ये मुझे बताएं कि कल थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी रात को about Imran. All clipped away this time to find leg for single. MCL की वो बस, और MCL की बात में कर रहा हूँ. बात ये हो रही आपका भी टूटी है. थी कि इमरान खान जूनियर and Sohail Khan have, because there's been a lot of conversation about these teenage bowlers breaking their backs on this wicket, and it's been tough. बुड्ढों को And तोड़वाते it's हैं. been so some people are suggesting maybe we should have gone with experience. The For what? The experience of going the- for bad experience. Are we going for bad experience? What are we they going are for? the experience of Sohail Khan and Imran Khan Jr. I'm telling you, Sohail Khan would have faked injury. उससे 5 10 ओवर overs में in. 10-15 ओवर नहीं वो होते. सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग ही नहीं करा सकता. ये ऑलरेडी जो है वो इस इनिंग्स में they bowled 2 innings worth of overs. Sohail Khan would have given up on life. Yeah. वो शान मसूद की पेस से कम उसकी बॉल हो रही होती. मिस्टर आसिफ कह रहे हैं गोवा पान मसाला खा के ना बॉल पे लगाओ. हाँ कुछ तो करो यार. और ज़हूर भाई कह रहे हैं यार इस पे वैसे पान की अगर आप पीक लगाएं एक साइड पे तो कितनी शाइन होगी. पता भी नहीं चलेगा लाल के ऊपर लाल है. That's my point. क्या बात है. New tactic. फवाद आलम भी है टीम में. The edge goes between says, hey, I can make that joke easy because I'm from Karachi. भाई इतने Don't smile कराची like वाले- that. पान सिर्फ कराची के लिए नहीं है, बट आपने लाहौर में ऐसे पान खाया लिटरली नान पे रख के आता है. उनकी सारी चीजें नान पे ही आती है, कुछ भी हो वही कह रहा हूं। नान पे. डिजर्ट भी नान पे आता है उनका. मैं गया था पान लेने, वो भाई उसने मुझे पान दिया अफगानी नान के साइज का. hell, मैंने कहा man? मेरे लिए पूरी फैमिली के लिए. उसने कहा, नहीं पेट भी तो भरना है आपने. Yo, portion sizes in Lahore are insane, man. Oh goodness, man. Lahore portion sizes in Lahore is insane. But ये है कि मैंने जो abstract art मुझे कराची में Lahore is like मिलता the है. Texas of Pakistan. Everything's right, bigger in man. Lahore. 465 for 4, and the wheels were coming off. Again, as a federal person, I can make fun of everyone. No, you can make fun of no one. You're the oppressor. You're the oppressor. We are better than everyone. We can make fun of everyone. यार क्या बात है. Popcorn भी आ गए हैं. But I went to Lahore में होगा पान, but I haven't seen the abstract art in terms of pan art. क्योंकि यार लाहौर में लोग तमीज़दार हैं ना. यार बस करो यार, तुम खुद कराची से और इस तरह की बातें कर रहे मैं हो. कहाँ कराची से, मैं इस्लामाबाद से हूँ. बकवास ना करो. Unbelievable. I will There's not. no- I there's will no not. such- I will not. I will not. No, we no, will no. not. There's no such thing as No. being from Islamabad. Wrong. It's a fake city. Wrong. पेंडेमिक में घर बुला के इतना कौन मारता है भाई. इसी क्रिकेट वैक्सीन आने तक तो रहम कर. यही यही रह Zach गया Crawley यार, is the बस. vaccine and the disease. Sarosh कह रहे हैं this session of commentary has been the best part of this test. Thanks सरोश. यही रह गया, यही compliment मिला यार है. बट पॉइंट अच्छा है कि अगर आपने टेम्परिंग करनी है, हाँ. if I'm playing domestic cricket in भाई Pakistan, आपने फादर को क्यों खिलाया है? पान की पीक के लिए. उसके होंठ पे नजर आ रही है उसकी बिल्कुल. मूछें इतनी पता ही नहीं चलता वो खा भी रहा है कि नहीं. उसने दबाया हुआ है. अब फौरन आ जाएंगे मुझे कहेंगे मैं प्रोफाइलिंग. भाई अपनी प्रोफाइलिंग खुद किस तरह कर सकता तुमने हूँ? खुद कहा है तुम जो हो वो लाहौर से हो. नहीं भाई मैंने ये कब कहा? You अस्तगफुरुल्लाह. are Lahore via नहीं, Karachi नहीं via भाई, नहीं भाई. Yanbu. I am Punjabi. ancestral Punjabi, but I'm from Karachi. Both Okay. sides of my family. मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कराची को बेच के मैं जो है मैं क्या मैं बेच रहा हूँ? कह रहा हूँ मैं- फेडरल फेडरल मैं तो कह रहा हूँ फेडरल कोई जगह होती Federal है. जिंदाबाद. हाँ ये देखो नॉर्दर्न फेडरल वाले We लोग. are independent. फाटा. इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी जो है मर्चेंट्स स्टैटिस्टिक्स मर्चेंट कितने हैं उनके. फहीम को खिला देना, सिदाब को खिलाते. क्या करना था फहीम को खिला के यहाँ पे और बेइज्जत होना था. अभी 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 वो already अभी 350 दिसंबर होता. दिसंबर आने वाली की बात है. सब जो है ना ट्वीट पे शुरू हो जाएंगे, देखो हमने कितने पैदा किए हैं प्लेयर पाकिस्तान के लिए. खक किया है पाकिस्तान के लिए घंटा आपने. किया आपने. फौरन आप खुद पीएसएल जीत के बैठ गए हो, हमें भी सुनाते हो देखो हमने शताब खान दिया आपको, यार फहीम वो- दिया है, आसिफ अली दिया है. वो- बड़े बड़े तुम लोगों ने डॉन ब्रैडमैन पैदा कर दिए हमारे लिए. मनी बॉल मर्चेंट्स निकल आते हैं ना फिर.
हाँ, ड्रेयरस लाइट, एक क्लूजनर लाइट, एक ब्राइलर लाइट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ बट ऑन एयर मैं कह नहीं सकता। नहीं, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, आपने ट्रॉफियां जीती हैं, अपने पास रखो, जहाँ मर्जी रखो। आपके हमें क्यों सुनाते हो? हम प्लेयर बना के दिए, ये करके दिए, कोई एहसान किया हमारे ऊपर? This is where we burn the bridges. Please, someone cut off our रेहान को बुलाना था हमने अगले हफ्ते शो पे। Why? रेहान तुमने तो वैसे ही ड्रॉप किया बाबर आजम को पहली ड्राफ्ट में, तुम्हें मैं बताओगे? यार बट सही किया था ना। बाबर कौन सा बड़ा प्लेयर है जो बाबर को बेच सकता है वो कौन, किस क्या पाकिस्तान को बेच सकता है। सकता है? नहीं, उसने पाकिस्तान को बेचा है ना, ख्वाब बेचे हैं। फहीम के ख्वाब बेचे हैं, आसिफ अली के ख्वाब सोचो बेचे हैं। बाबर आजम को सप्लीमेंट्री पिक, प्लेयर के लिए भी नहीं, एक सप्लीमेंट्री पिक के Which लिए। paid off. I mean, we're not gonna go Who'd you against get instead? the championship. That's what we got. in place of Wow, Babar. wow. Oh, there he is. Something useful coming out of Papa Shafiq. Shafiq, Pops, Big Daddy P. जैसे ही हमने पान की पीक की बात की। नहीं यार, ये नहीं ये पान नहीं खाता यार। शफीक पान नहीं खाता? नहीं यार क्या हो गया? नहीं यार, ये बेचारी लैंड क्रूजर मिनी चलाता है कराची में। वो इसके लिए बड़ी है। वो अपने साइज के हिसाब से गाड़ी चला रहा है। बड़ी वाली चलाएगा गुम हो जाएगा गाड़ी में वो। फॉक्सी क्या? Asif Shafiq, right arm leg break. मेहरान उसके लिए जो है वो सेडान से बड़ी है। यार reverse sweep, ओए होए होए होए, Down the leg side. Would have been given a wide if we were playing limited overs cricket. लग तो ऐसे ही रहा वैसे। यार वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा हम कराची के बारे में मतलब बुराई कर रहे हैं और ख्वाजा जो है वो साइड पे बैठा हुआ है। हम कर सकते हैं ना, मैं तो कर सकता, तुमने तो अपनी। नहीं, मैं भी इस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। मुझे कहा मैं कराची का हूँ तो मैं बुराई करने के लिए कराची का हूँ। अरे लाहौर की हम क्या बुराई करें? लाहौर की बुराई उनकी की जाएगी जिनकी थोड़ा कुछ होता भी है भाई। मैंने अभी तो बताया नान के साइज के पान आते हैं। भाई वो डिजर्ट भी नान पे खाते हैं, वो आम भी नान के साथ खाते हैं, और निहारी वो चावल पे डालते हैं। यार देखो वैसे क्या वैसे तुम सबको क्या लोग हैं? अगर आप मैंगो स्टिकी राइस को इतनी एक अजीम डेजर्ट बना सकते हैं, किसने बनाया? पूरा मतलब पूरा एरिया जो है हम नहीं मानते उसको। 150 बिलियन कोरोना उन्होंने बनाया। 150 बिलियन लोग जो है वहाँ पे मैंगो स्टिकी राइस खा रहे हैं, तो लाहौर में हम मैंगो नान नहीं खा सकते? नहीं मानते, हम नहीं ख्वाजा निहारी पे चावल डाल के खा सकता है, चावल पे निहारी डाल के सोचो खा यार, सकता वैसे है। वो कह रहे हैं पुलाव पे खाते हैं। कौन लोग है यार वैसे? लाहौर को तो इसी बात पे वॉल्ड सिटी नहीं, वॉल्ड हारून भाई ने मुझे फोन पे असैसिनेट कर देना है। वॉल्ड सिटी जो है ना उन्होंने भेजा, बट ट्विंस को भेजना है, ब्रेकिंग बैड वाले ट्विंस को। मैंने उनको कहना है हारून भाई बिरयानी के साथ दाल नहीं है वहीं उधर ही फॉरन। ऐसे यार हारून भाई ये जो दीवारें हैं ना जो लेजेंड है ना वो बढ़ना चाहिए, इसलिए खड़ी हुई हैं। बट you were you listening yesterday? या I was भाई लवीजा ने उनको झूठ बोला है, उन्होंने कहा कि हम टूरिस्ट हैं, हमें लाइन में आगे करें। आपने, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपने वो सूप नाची वाली एपिसोड देखी हो साइनफेल्ड की, तो लिटरली वो वाला सीन था। लाइक फोन पे मैंने ऐसे उनको एहतराम से और प्यार से मुहज़्ज़ब अंदाज से उनसे बात की है जैसे मतलब मेरे कोई अब्बू के भाई हैं, बड़े भाई हैं। बिरयानी मांग रहा था, मैं उनसे पैसे दे के ले रहा था, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं यार हारून भाई की वो दोपहर वो गाने बनाते हैं, नगमे बनाते हैं, रात को बिरयानी बनाते हैं। शाम 4:30 बजे तक एड्रेस नहीं आया था बिरयानी का, वैसे जैसे कोई ड्रग्स का ड्रॉप ऑफ हो रहा था। हारून भाई जो है वो गस फ्रिंग है बिरयानी के। हाँ, लोस पोलोस और मानोस, लोस पोयोस बिरयानोस, एग्जैक्टली लोस पोयोस बिरयानोस। 469 for 4, who gives a shit honestly? हमारा बच्चा बिरयानी कलेक्ट करने गया, उसको घर नहीं मिल रहा। एक किसी घर से हाथ आ रहा है, जी इधर आ जाए यार। उसको उन्होंने ऊपर जाने से पहले शर्ट भी उतरवाई, जूते भी उतरवाए यार कि you're not, हाँ, making sure you're not wearing a wire, रेसिपी ना चली जाए। यार पता है असद है भी कैसा, ना भी करना हो फिर भी करके he जाएगा। walks into places. No biryani for you. Ramesh keh Harun Bhai is the best thing that happened in this test match commentary so far. And the air. अब हटा दिया। और मिड ऑन अब नहीं है तो What is his captaincy? यार 4 स्लिपें होनी चाहिए, 4 मिड विकेटें होनी चाहिए। यार मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ लोग जो है सिर्फ पीछे खड़े कर दें, आप विकेट के पीछे खड़े कर दें, उनको कहो जितने मारने मार लो, उसके बाद घर तो जाओ, खत्म करो बस। यार हाँ, अभी, वैसे अभी शोएब ने कहना है दलेरी क्यों नहीं दिखाई, नसीम ने गालियां क्यों नहीं दी, उसको बीमर क्यों नहीं मारी। That's true, आप जाएं उनकी माँ बहन। यार क्या मजाक है, इस तरह थोड़ी होता है। महज़ब गेम है, जेंटलमैन गेम है, इस तरह थोड़ी खेलते हैं हम। वो रोरी बर्न्स आउट होने के बाद हमें जो घुरियां करा सकता है, हम ये नहीं कर सकते थोड़ा सा आउट हो उसके बेचारा यार वैसे कौन। Hey Burns, I'm not talking to you. 470 for 4। The wheels अभी have- शोएब जट की ट्वीट आएगी, अगर यार सरफराज कैप्टन होता ना तो हम टेस्ट मैच कल जीत जाते। क्यों सरफराज ने क्या करना था, विकेट खुद उखाड़ के ले जाता, वो घर ले जाता। 100 runs for Shaheen, 142 for Yasser, 98 for Naseem,
What a batting performance this has been by Pakistan. इतने रन तो हमारे बैट्समैन पूरी सीरीज में नहीं कर रहे. A straight drive this time. There'll just be a single. England are still batting in case you have forgotten that. They're 471 for 4. Zach Crawley 261. Butler मतलब कुछ करके नहीं दे रहा यार. मुझे तब चढ़ी है Butler पे. Butler मार भी रहा और वो भी कर रहा. कोई रन सेंस बनाए. बेगैरत. हमें अपना जो है वो प्रैक्टिस सेशन बनाया हुआ इन्होंने. वो आया जनरल कर्नल एल डिक्टेटर. Misbah Musharraful Haq. Michael Holding is retreating to have a nap. We might follow soon. Like, why is Wokes being made to sit in the gallery with his pads on for the last 2 days? उसको जाओ यार, उसको बोलो तुम भी आराम शराम करो, कोई फीफा खेलो, कोई घर वालों से फेस टाइम करो. बॉलिंग प्रैक्टिस करी जाके. बॉलिंग प्रैक्टिस क्या करने की जरूरत है? तुमने बैट्समैन देखे हमारे? Wow. It's all coming apart here on Change of Pace Live, your home of Pakistan cricket commentary. And this is the kind of commentary you get at home. This is the feel that we want to recreate. मतलब आप चाहते हैं तो हम आपको थोड़ी सी बुराइयां भी कर सकते हैं, चाय शाय भी मंगवा सकते हैं आपसे. आपको बिल्कुल माहौल ये लगे कि अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं इस वक्त. Zainab कह रही है, will the entire Pakistan team be able to match Crawley's score? Yeah, I'm very doubtful at this point, given the kind of record that we have when we've had these kind of huge totals in front of us. Warner वाला आप देख लें, उन्होंने हमें जो है वहाँ रोल ओवर कर दिया था 300 बनाने के बाद. उनकी बॉलिंग बेहतर थी पर. Oh, it's a full toss missed down the leg side and there'll be 4 runs should be given as buys. ये भी बटलर को ही दे दो यार. What are you checking? The highest score against Pakistan? I think it's David Warner. वही 337. हाँ वही होगा. Yeah, because we haven't given up any of the... कह रही है, this pitch will become a minefield when we bat. I have no doubt about that. Jofra Archer will be hitting us from length in our heads. ASMR ही कर दें थोड़ा सा पॉपकॉर्न के साथ. वो तो रुकू में चला गया यार रिजवान. 477 476. नहीं मानते हम सोबर्स को. Gary Sobers. Sobers 365. कितना 365? 58 वाले runs count ही नहीं होते. Nothing after 2000. वर्ल्ड कप भी चला जाएगा. एक ही तो वर्ल्ड कप है. वर्ल्ड कप भी गया, प्राइम मिनिस्टर भी गया. अगर वो शुरू कर दोगे काम तो फिर हम दोबारा मर्जर हो जाएगा. 262 for Zach Crawley. ओ यार बस करो यार. 335 वार्नर होगा फिर उसके बाद. अच्छा एमा, हाउ वुड यू फील? सहवाग ने भी बनाए हुए हैं. सहवाग ने 100 के स्ट्राइक रेट बनाए थे. कितना स्ट्राइक रेट था उसका? जी मुल्तान में उसने सकी भाई का करियर खत्म किया था, अगर आप भूल गए. बहुत मारा था उसने. सकी भाई को जो उन्होंने सकी भाई कर दिया था उधर. Partnership of 350 for England. Runs don't even mean anything. Numbers are just arbitrary. ठीक है 300 आज बनाए 350. How would you be feeling if this was a Pakistani partnership? मैं तब भी सो जाता. तो इतना रन्स देख के हम बोर हो जाते हैं. हम अजहर ने 300 किए, क्या मतलब है टेम्परमेंट? यार हम तो अजहर के कौन 300 देखना चाहता है? मैं गया था स्टेडियम देखने. तुम पागल हो यार. ऐसी बात थोड़ी है. तुम्हें टीके लगने चाहिए. तुम्हें विटामिन की कमी है. विटामिन ए, विटामिन ऐसा, विटामिन अकल. बट ऑनेस्टली हम एज अ नेशन जनरली जो है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन लाइन जो है वो बॉलर्स की है, हम वो अग्रेसिव पेस, लंबी नहीं देखने जाते. सही बात है. स्टंप्स उखड़े कुछ हो, उस किस्म की हम चीजें देखने के आदी हैं. बस धमाकेदार दिलेरी. अब तुम सोचो सहलीली. हनीफ मोहम्मद की अगर 999 बॉल्स किसी ने देखनी होती वो जाग रहा होता. मैं ही जाता सिर्फ. Zach Crawley's high score in Test 260 is the highest of any active English Test cricketer, which is saying a lot. रूट का कितना है? 240. रूट उसने 200 किया भी है नहीं? रूट ने किया ना 240 किया था. खिलाफ भी 200 किया है. हाँ एग्जैक्टली. रिवर्स स्विप यार, एक हिट विकेट मार दे यार. लाइन वाइड आउटसाइड द लेग स्टंप. क्या That's मारोगे? the only line we have not explored. क्या मारोगे? न्यू प्लान, न्यू टैक्टिक. असद शफीक, पान मर्चेंट. इन सब का जो है ना वक्त बहुत ही अनकरीब पूरा होने वाला है. फिर से wide outside leg stump and he's dragged it through the covers. What a shot by Zach Crawley. That was at least 4 stumps outside the leg stump. Zach Crawley still managed to hit this through the covers.
He's pierced the gap. That's another 4 for him. 267 now. Butler 136. And England have more runs that we can actually count. अजहर क्यों नहीं करा रहा? वो उसने कहा एक ही बॉल काफी थी बस. अजहर का अगर आप फिर नेट टोटल लेंगे ना, बैटिंग प्लस माइनस बॉलिंग, तो वो नेगेटिव में जाएगा. इस वजह से बॉलिंग नहीं करा रहा. सीपीएल पे कमेंट्री कर लेते हैं. इधर तो एलपी का चल रहा है, बट हाँ यार सीपीएल ही लगा लो. किसने देखना है? पूछो कमेंट्स में, आपने देखना है मैच या हम बदल लें? सीपीएल में चेक करो क्या स्कोर चल रहा है. शाहीन अफरीदी को ले आए यार. शाहीन अफरीदी क्या करेगा बेचारा? क्यों उसको इस जिल्लत से गुजार रहे हैं? ये कौमी हीरो सुहेल तनवीर है ना, उसका मैच है, सीपीएल में मैच है. He was injured in the last game. He's back now. Did he pull his chin or something? या मैं कह रहा हूँ इसी तरह होना चाहिए. अब जब आप इतने बड़े बॉलर बन जाए, जब आपकी एज इतनी हो जाए, when you're 34, why do you want to bowl on these Then dead you're 2 tracks? for 26 in his 3 overs. Not bad. सुहेल भाई प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, सारे मीनियम जो हैं वो उसमें ही हैं. Azhar really? यार वैसे इसको जब भी कैप्टनसी मिलती है तो इतनी घटिया पिचेस पे मिलती है और घटिया जगह पे मिलती है. हाँ यार, इस तरह उसकी गलती तो नहीं है इसमें कैप्टनसी की. Have you heard that saying, if you meet a butthole all day, then you might be the butthole? नहीं, ये इस तरह ना करो यार बेचारे एक साथ. I feel Tell me what he did wrong in this test match. existed. यार ये तो गलत है ना. नहीं, इस टेस्ट मैच में इतना कोई इसने कुछ खास नहीं किया. ऑनेस्टली ये ट्रैक काफ़ी जो है वो डॉसाइल था बॉलर्स ने और भी सही किए हैं. बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे. बट दिस इज द पॉइंट एग्जैक्टली. अब प्रूव हो चुका है कि अगर आप 500 रन बना सकते हैं इस ट्रैक पे, देन द अदर टीम शुड आल्सो बैट वेल. अगर इंग्लैंड ने आके स्विंग करके हमें आउट कर दिया तो फिर क्या? बटलर तो अब ऐसे खेल रहा है जैसे ही जस्ट बिगैन हिज इनिंग्स. उससे कुछ ना टच हो रही है बॉल, ना runs बन रहे हैं. I'm gonna leave this the microphone with Khwaja now for the next part of play. Before I do, I'm gonna actually कराची को रोलें. ये मुझे बताएं कि एक ख्वाजा हमारे एक ट्विटर पे बंदे हैं हसनैन शाह, ठीक है ना, वो यूवेंटस के फ़ैन है और वो इंटर मिलान के फ़ैन भी है. हाँ, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिटी दोनों को सपोर्ट करते हैं. ये भाई तो फिर कोई दिमागी पोलियो के मरीज ही लगते हैं अगर आप यूवर इंटर दोनों के फ़ैन हो सकते हो. वही कह रहा हूँ ना. हमने 15 लैंग्वेज में ट्वीट किया है और हमारे सिर्फ 9 ऑफिशियल अकाउंट है. मतलब आप खुद सोच रहे हो हम कितनी नफरत करते हैं इंटर से. और कितने पेटी हैं आप लोग. यार अब इतना तो होना चाहिए. I support pettiness in all forms and manners. Oh my God. क्या फायदा कमेंट्स पढ़ने का? आप लोग भी घर जाए. 484 अपनी फैमिली के साथ दौड़े, सिर्फ 4 डंडिया शहीद. यार शहीद हलाक. हलाक. हाँ, हलाक हुई है. सीरियसली मैन, अनबिलीवेबल एफर्ट्स. बटलर को उर्दू में क्या कहते हैं? बटलर को हाँ, पता नहीं. खानसामा क्या होता है वो? क्या कहते हैं वो? व्हाट इज खानसामा? यार वो ये मिलिट्री वालों के पास क्या होता है? बैटमैन बटमैन तो ऑलरेडी है. वो अगर कोई जानता है कि बटलर को उर्दू में क्या कहते हैं तो प्लीज हमें. बावर्ची क्यों कहते हैं? वो तो बावर्ची तो शेफ होता है, कुक कुक कहते हैं. होता है. मैं तो खानसामा कह रहा हूँ. वही ऐसे ही कुछ होगा. चलो वो भी शुरू हो गया बल्ला उठाना अपना. उनके उर्दू में नाम यही होंगे ना, खानसामा और रेंगतावा. अनबिलीवेबल स्टफ है यार. और शाहीन शाह को अभी तक बेचारे मिस्कीन को बॉलिंग पे लगाया हुआ. आई डोंट अंडरस्टैंड. सारी भाई यासिर शाह को बोलो राउंड द विकेट आओ, पैरों पे बॉल डालो, टॉप पेज मिल गया तो ठीक है. यासिर ने ऑलरेडी कह दिया, माना मैं नहीं कर रहा. हाँ. कराओ तुम खुद करो. हाँ. बस क्या अजहर अली तुम लेग ब्रेक बॉलर हो, तुम करो आके. एग्जैक्टली. असद को आपने लगाया, वैसे बेहतर तो फवाद को ही लगा हाँ, के वो यार है कोई. डाउन द लेग साइड बॉले डाल रहा है. एग्जैक्टली रिजवान को तंग कर रहा है. एग्जैक्टली. रिजवान बेचारे की भी कमर आपने तोड़नी है. सबकी हाँ. कमर तोड़ दी इधर वैसे. बटलर इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग नो. इट्स bit of an anomaly. एक्चुअली होता है कभी-कभी कि आप इतनी देर बैटिंग करते हो आपके रिदम आउट हो जाता है. हाँ, हो सकता है. बट दूसरी तरफ फिर यही है ना कि सिंगल लेके क्रॉली को खेलने दो. रमीज हसन कह रहे हैं यू राइट, इट खानसामा ही कहते हैं वाकई. थैंक्स यार. रमीज खानसामा ने 136 बना दिए आपके खिलाफ. देखो यार, क्रॉली 267. उसने इतने रन्स कभी एक सीजन में नहीं किए होंगे जो आज इसने अकेले इधर कर दिए. लिटरली मतलब उसके जो रिकॉर्ड 33 पर एवरेज थी सीजन 300 रन जो है वो 10 मैचेस में करता था वो. $484 for 4.
132वां ओवर चल रहा है इनिंग का और पाकिस्तान अभी भी बेचारे लगे हुए हैं मजलूमों के साथ उन बॉलिंग करवा रहे हैं इस सीरियसली यार. वेल लेफ्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप. असद शफीक साहब घुस गए हैं स्लिप में. मतलब इस वक्त लीव करने का तुक क्या बनता है? तुम 132वें ओवर में हो. भाई इंग्लैंड के घुमाओ प्लान बैट. इफ यू आर लुकिंग एट इंग्लैंड स्ट्रेटजी अभी भी कितने 30-35 ओवर रहते हैं दिन में. या व्हाई वुड दे डिक्लेयर? I'm saying the same thing. If I'm England, I'm looking at 600 if possible. एक बार बैटिंग करो, बॉलर्स को कहो कि अच्छा जी आपका आखिरी टेस्ट है. ये सारे जो हैं वो आर्चर के अलावा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट वैसे ही नहीं खेलते. इनको टेंशन क्या है? मिसबा और मुशी भाई इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं किसको चित्तर मारने हैं. करो भाई दिस टाइम. अपने आप को ही मारने होंगे एट दिस रेट. नहीं अजहर को पढ़ेंगे भाई. अजहर क्या? अजहर को जैसे ही ड्रेसिंग रूम में वापस वरना जाएगा सबका ना, फेवरेट स्केपगोट है फवाद आलम. फवाद को तो वैसे ही पढ़ने चाहिए ओह वाओ. मूंछों की वजह से. सीरियसली यार ये कौन सी तुमने ये मूंछ और ये गैर इस्लामी मूंछें हैं ये खाना ही नापाक खाने हो में जाता जाती है, हैं, हाँ, मकरू हो exactly. जाती हैं. कटवाएं, मुंडवाएं, ट्रिमर लाएं. लेकिन आप उसकी फ्रस्ट्रेशन सोचो क्रिस वोक्स की. Yeah, he's just been sitting there for the last 2 days. पिछले 12 घंटों से ऐसे ही बैठा हुआ है. क्योंकि अब वो क्या करे, आपको हाँ. कभी भी विकेट गिर तो सकती है. बल्कि बेस्ट ने भी पहने हुए होंगे इस वक्त. हाँ. इट्स ऑलवेज एटलीस्ट 3 बैट्समैन दैट आर पैडेड अप. हालांकि इतना टाइम नहीं लगता पैड्स पहनने में. हाँ. बाकी आप चीज़ें पहन लो. पैड्स तो चलो 1-1.5 बाकी मिनट चीज़ में. गार्ड शार्ड, ग्लव्स. गार्ड तो ठीक है. शार्ड क्या होता है? शार्ड भी होता है. अच्छा शार्ड भी होता है. कुछ लोग गलत लाइन पे बॉलिंग कराते हैं. जैसे असद शफीक. जी. अब आप अगर फवाद आलम का बैटिंग स्टैंस देखें तो वाकई उसको गार्ड की ज़रूरत तो है नहीं, शार्ड की ज़रूरत शार्ड है. की तो 100% ज़रूरत है. उसको बॉल कहाँ लगने वाली है शार्ड में. और मज़े की बात है एक स्प्लिट स्क्रीन आ रही थी ट्विटर पे जब वो दिखा रहे थे इसके स्टांस के वेरिएशंस. मतलब 2009 में थोड़ा फिर भी साइड ऑन था. हाँ. फिर 14 में और हुआ और अब बिल्कुल पलट गया है अब तो विकेट कीपर से बातें कर रहा होता है बैटिंग करते हुए. Oh, and he's stumping. Oh, and he's he's done finally it. gone. Asad Shafiq, the golden arm has struck. वो Zach Crowley. वो भाग के मुझे लगा ऐसे जाने वाला है जैसे इमाद वसीम की वो ओ भाई सेलिब्रेशन किधर होगी. जा रहे हो इतने हाथ मिलाने को? भाई तुम्हारा अब्बा थोड़ी है वो जो इतने भाग के जा रहे हो. इनफ हो गई है. Thanks for zalilifying us. Thanks for panting us कुत्ता. But that is the What is this end ridiculousness? of a huge innings from Zach Raise the Crowley. bat raise करके इसके मैं क्या बोलूं यार. His maiden test 100 while Khwaja rants. और अभी भी यार मुंह धो के ऐसा लगता है क्लास पे पढ़ने जा रहा है जिसके ज्योग्राफी का लेसन आने A वाला है. levels उसने भी पास नहीं किया by the way. नहीं मजाक कर रहा हूँ यार. क्या यार दैट वाज रिडिकुलस. ये क्यों भाग के उठ के पास गया? नहीं you have to be a good sportsman. अबे जन्नत में जाए यू हैव गुड स्पोर्ट क्या? नहीं, I'm हमें all for महीने it. से हमने बंद करके रखा हुआ है जेल में उन्होंने कोविड के बहाने. I'm all for it. आपको पता एलपीसी है जैक क्रॉली मेरी तरफ से क्या किया तुम? ਵੱਡਾ आया 300 बनाना छितर लाओ ਇਹਨੂੰ. But at long last the innings has come to an end. 267. What an amazing innings from Zach, Lucius Alexander, Marcus Crowley. And I'm just happy for Chris Woke because he finally gets to And come out Asad and bat. Shafiq has finally made a positive contribution. 3 wickets in his career now. क्या बात है. आप कह रहे थे कि फवाद को ले आए. Another garbage ball down leg stump. Just turned, just gripped and turned, and good stumping by Riz. Mo Riz. Zach Crowley will be upset with himself because he's given it away here. 300 looked in sight, and then everyone ran up and told यार Mr. ये Zach. अजीब ही था. हमें वो अवार्ड चाहिए स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड. जी उन्होंने कहा थैंक्स डैडी. थैंक यू अब्बा जी. अब आप घर जाएं. अब आप घर जाएं, हम संभाल लेंगे. वाह बाकी. कुट्टा है तो. मिसबा भी giving us that Ferroni look. Well played Barrett. I wish I had one of you in my lineup. Instead I have Azar. Instead of Asad, instead of Fawad. उन तीनों को एक साथ आप खड़ा भी कर देना एक के ऊपर एक, तब भी Zach Crowley से छोटे हैं वो. Seriously यार. But Chris Woakes finally getting a knock. 486 for 5. England have batted Pakistan, pretty much batted us out of the series. But इसने भी बटलर का भी एक ही 100 था इंडिया के खिलाफ, इसका भी एक ही 100 इंडिया के खिलाफ. बिल्कुल. तो अभी भी टाइम है अगर ये तेज खेले. रन अ बॉल सेंचुरी हमें मार ले साथ ही इसको स्लॉग स्वीप मारना चाहिए असद शफीक को, जिसने एक बहुत यार जबरदस्त स्लॉग स्वीप छोड़ो, स्लॉग चपेड़ ही मार दे असद शफीक को. दैट वुड बी सैटिस्फाइड विद दैट यार. ऐसे एक जो डाउन साइड रही है वो भी है कि असद शफीक कहेगा एज अ बॉलर मैं खेल सकता हूँ. ये चेक करो यार, चेक करो तुम. उसने मतलब 6 स्टंप पकड़ी है लेग स्टंप के बाहर. जन्नू में जाए रहीम कॉर्नवॉल यार. क्यों यार? वो जन्नू में भी नहीं घुस पाएगा इतना तो माशाल्लाह है वो.
486 for 5 under 132.3. Facts. Asad Shafiq. फैट शेमिंग फौरन शुरू हो जाती है चेंज ऑफ पेस पे. यार वैसे that's not acceptable यार. What is not acceptable? At this level, if you're a professional athlete यार, come तो on. उस दिन आपने पढ़ा है शाह महमूद ने भी आजम खान को चपेट मार दी थी. हैं? हाँ शाह महमूद कुरैशी ने? हाँ, बट वो कोई मिनिस्टर है, वो उसका बेटा नहीं है. मैंने कहा ये कौन? मैंने एक्चुअली ट्वीट भी किया था, why did SMQ slap मोइन खान son? But actually it was some parliamentarian of PTI. वो खाना चुरा रहा होगा उनके घर से. ऐसे कुछ हो रहा होगा, मास्क ले लिए होंगे उसके, कुछ कर लिया होगा. यार कमेंट्स में क्या क्या ज़करिया खालिद कह रहे यस 600 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा भाई, एक 125 रन ही तो करने उन्होंने. उम्मीद रखिए ज़करिया, ऐसी बात नहीं है. हैव फेथ इन इंग्लैंड, हैव फेथ इन हाँ. पाकिस्तान, एनीथिंग कैन हैपन. इंजी इतना भी मोटा नहीं था जितना आजम खान और रहीम है. ज़ैनब क्या हो गया आपको? इंजी तो हेल्दी था लेकिन जहाज नहीं था वो. Later in his career he became a bit pudgier, but वो तो overall 37, 38 यार रनर टुंगा भी आपको पता है फिर. हाँ वो तो ठीक गोल ठाक. पटोल, डेविड बून, डेविड बून who भी were the था. jahziest cricketers I you think these remember? guys qualify as that. डेविड बून, राना टुंगा, डिसिल्वा भी थोड़ा गोल मटोल था. लेवी रॉक आप देखें वो उसका वो लेवरॉक वो तो चलो बेचारे एसोसिएट्स हैं, वो हम ये कितना टैलेंट पूल है बेचारों का. कॉर्नवॉल भी बेचारे Merv Hughes भी क्रिकेट जहाज था. Hughes was also a tubby little man. Graham Gooch was also a little bit of a भी tubs. ठीक ठाक. इयन बोथम भी अपने लेटर इयर्स में Yes, the big अच्छा belly. खासा बिग Beers यूनिट था. पी के उन्होंने जो है वो Shaheen Shah sticking to that off stump channel for Joss Butler. 134th of innings. अभी Clive भी Lloyd ठीक was पेस a- करा रहा है यार. 84, Clive 85. Lloyd was a big fella too. यार but he was tall as well, तो वो फील नहीं होता. True, yeah. पजी पजी फील नहीं होती. कीमा रोज थोड़ा सा थिक कह सकते हैं. कीमा रोच हाँ कहाँ से? यार थिक तो है वो. कहाँ से? अब मैं अब कितनी डिटेल में जाऊँ अब. Guard कार्डी side. बी की वीडियो देख लें, आप समझ जाएंगे कहाँ से thick है. यार देखिए आपने ख्वाजा. यार एक दफ़ा देखी थी, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ, और मैंने बंद कर दी. For science and research. नहीं मैंने कहा वैसे ही क्यूरियोसिटी थी. क्यों? क्योंकि वो बेन शपीरो की क्लिप आई थी ना, वो अच्छा, उसको अच्छा, कोट कर. अच्छा. मैंने कहा कौन सा गाना है, check आज कर मेरे लेते हैं. साथ आप सोचें क्या हुआ है जब क्या हुआ? ये मेंटेनेंस वाले फिक्सिंग कर रहे आप थे. वो वीडियो देख रहे थे? नहीं नहीं मैं वो अच्छा, वीडियो अच्छा. नहीं देख रहा था. हमने अभी रिसेंटली आपने भी लिया, मैंने भी लिया है वो एक हैं? रिंग लाइट ली है रिंग राइट. लाइट. तो वो साइड पे रखी हुई थी तो वो बंदा आके मुझसे कहता है और तुम टिकटॉक शिकशॉक बनाने हो. मैंने कहा नहीं ऐसे कोई शौक नहीं है, हम इससे ज्यादा गंदे काम करते हैं. वो हम पाकिस्तान क्रिकेट पे तबसरा करते हैं. ज़करिया खालिद ने एक और नाम बताया, रमेश पवार, वो जो रमेश था पवार, yes. जहाज उनका जो था. कि अब आई थिंक इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच बन गया था. Flashed. यार बट खान शुक्र है सामा- थर्ड मैन तो डाल दिया उन्होंने. Khan Sama is now the hope for England. He needs to get to 150 here. And England will reach 500 if हालांकि he does. टैलेंट वाइज वो कॉर्नवॉल की अच्छी खासी ब्रेक होती है बॉल, सो यू नो ही इज यार नॉट. सरप्राइजिंग था कि उन्होंने उसको पहले नहीं खिलाया था टेस्ट में, बट he didn't take any wickets when he did play. तो यार वो मैं चमार होल्डर को देखना चाहता था, उस बेचारे को चांस नहीं yeah, मिला. it's always nice to see young fast bowlers. थोड़ा सा आपको पता चलता है कि फ्यूचर क्या है क्रिकेट का, बट Well played matey. What a lovely innings there by Zach Crawley. वो है भी ऐसा प्लेयर दैट दे लाइक प्रोटोटिपिकल इंग्लिश क्रिकेटर, जो Yeah. देखते हैं फ्यूचर कैप्टन बन सकता है. And very like technically correct, हाँ. doesn't play ugly shots, but also like he has some flair. He plays the sweeps, हाँ. he plays the reverse sweeps. And I think that's something in the new English breed that they're all very innovative with the cricket that they play. ये तो आप ऐसे कह रहे जैसे कुत्ता है वो जैसे. Yeah, बस यार हैं तो ये फिर. हाँ भाई. But ये एक चीज़ हमने देखी है कि ये सारे 360 players निकल रहे हैं. Ollie Pope is actually a very good T20 player. I've seen him हाँ. play in the Blast. And he's also a 360 player. बाकी सब तो आपको पता है, बटलर, बेयरस्टो, ये शो वो सब तो मारते ही हैं. मतलब इनकी दो डिस्टिंक्ट 11s बन गई हैं, Yeah. और मतलब बल्कि 15-15 Equal बंदे बन गए. strengths. हाँ लाइक विंस प्योरली वाइट बॉल क्रिकेटर बन सकता है. Yes. रॉय तो उन्होंने ट्राई कर लिया, एशेज में फेल हो गया. इवन मोइन अली का उन्होंने आई थिंक डिसाइड कर लिया है कि हाँ. ये जो है वो लिमिटेड ओवर्स मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे हम अब. हाँ. Oh, he's leaving that Chris Wokes and it's gone through off the face of the bat. यार ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब हम सेकंड न्यू बॉल पे पहुंचने वाले, तो कितना वाकई एक स्लिप और रख लें तो कोई बुराई नहीं है वैसे. एंड वोक्सी ऑफ द मार्क. अब देखो क्रिस वोक्स को अभी बाउंसर कराएंगे या नहीं. Have we learned our lesson? Have we learned anything? यार over the course of बेचारा the series? अपना 32वां ओवर करा रहा है, हम कह रहे हैं बाउंसर कराओ ना. 30वां ओवर है मे बी. बाउंसर एक तो बनता है यार. माजिद हुसैन, आई एम एट वर्क एंड जस्ट लॉग्ड इन एंड अ विकेट फेल.
यार अब पहले आ हाँ, जाते, माजिद। 1.5 दिन पहले आ जाते माजिद भाई। नहीं, ये माजिद भाई तो 127 पे जब 4 थे तब हाँ, से he was there तब से with us, मौजूद हैं, yeah, बट इनकी उस वक्त किस्मत नहीं जाग रही थी। बट आई थिंक हमें वी शुडंट बी वेरी क्रिटिकल ऑफ आवर बॉलिंग अटैक। इट्स अ वेरी वेरी फ्लैट विकेट, Yep. एटलीस्ट इट हैज़ लुक्ड वन सो फार। ये तो होता है यार, हाँ हार जीत का गेम है, यार वाकई ये तो है, हमारी बस हार कभी कभी ज़्यादा ड्रॉ आती भी हो रहती जाता है। है। हाँ, बट इट्स क्रिकेट, लेकिन आई थिंक 50-50 चांस। द हार्टनिंग थिंग इज़ कि नसीम और शाहीन की फिटनेस स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। हाँ, उनकी पेस ड्रॉप ऑफ नहीं हुई, उनके शोल्डर्स ड्रॉप ऑफ Yep. नहीं हुए, ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने जोर लगाया अभी इट्स भी। ट्रू, स्पेशली ठीक-ठाक। जब इतने आप लेंथी ले ऑफ के बाद आ रहे होते हाँ। हैं। एक एक्सटेंडेड ऑफ सीजन था कोविड की वजह से, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही थी, लीग्स नहीं हो रही थी, उसके बाद आना, 1 महीने के अंदर प्रिपरेशन करना, इतने लंबे स्पेल्स कराना। क्लॉस्ट्रोफोबिया में वही बिल्कुल। मनूस शक्लें आप 30 दिन के लिए देख रहे हो, बिल्कुल। बंदा तंग आ सरफराज जाता बार है। बार आए जा रहा है, शफीक बार बार आए जा रहा है, फवाद आलम बार बार आए जा रहा है। सही बात है। यार हाँ आप, यार ये क्या ये थोड़ा सा उनको फीलिंग दिलानी होती है कि हम बड़े मतलब प्लेयर हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, और असल में इन चीज़ों के हिसाब से ना पाकिस्तान क्रिकेट's always been pretty decent in the यार वी recent हैव बीन lot. ओवरली डिसेंट टू बी This is the thing, मैं तो कहता हूँ बाहर में जाए। एंड में अवार्ड हमेशा न्यूजीलैंड को दे देते हैं। हाँ, वो किसी एक बच्चे को बचा लेते हैं कहीं इधर उधर, इसलिए मिल हाँ। जाता है उनको, किसी केव से निकाल लिया, कुछ कर लिया। कौन फिक्सिंग करता भाई है? लास्ट ईयर रिडिकुलसली वो विराट कोहली को दे दिया था बिकॉज तालियां बजवा दी थी क्या उसने। स्टूपिड यार, कम ऑन मैन। खुद वो एमसीबीसी हर प्लेयर को कर रहा होता है। हाँ, सबसे बड़ा छिछोरा है वो फील्ड पे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो बंदा, उसको या- ये तरबियत दी है। मतलब ऑन द फील्ड ही डज यू नो ओवर एक्ट, गलत बात है। ऑन द सही फील्ड, बात ऑफ द फील्ड, हर तरफ से वो छिछोरा आदमी है। नहीं, ऑफ द फील्ड सरप्राइजिंगली इज वेल कल्चर्ड, और मतलब अपने आप को ग्रूम किया हुआ है उसने। I would लेकिन फील्ड में जाके फिर आप वही अपने मेरा- मेरा एसहोल निकल आता है मेरा आपको, तो फिर सख्त क्या किस्म का फायदा? बायस है उसके खिलाफ, इसलिए मुझे नहीं पसंद। हाँ नहीं, मुझे भी, आई एम नॉट अ बिग फैन। हाँ, सिर्फ मुसाद दिया इंडियन क्रिकेट टीम का फ़ैन, वो वो हर वक्त जो है रोहित शर्मा और पुजारा की जो है उसमें घुसा रहता है। जैन विराट म्यूजिक कोहली नहीं, में घुसा एमसीबीसी रहता नहीं, है। वो बेन स्टोक्स बोलता है। यस ओह लुक एट दैट बिग टर्न। यार, वाइड ही दे दो यार, ये तो wide है। अंपायर भी अब जो है इस वक्त सोच रहा है। My Review ले thoughts लेगा। like, do I सॉफ्ट give wide? सिग्नल। It's the most negative tactic employed by बल्कि such a इफ आई thing. वाज द इंग्लैंड बैट्समैन आई वुड बी कंप्लेनिंग, क्या कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, कुछ तो इट्स करना अगेंस्ट द है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अभी हमने जाके तालियां बजाई हैं, हाथ मिलाए अब हैं उसके हमने। चौकी पे तालियां बजा देंगे हाँ। प्लेस बुक्स के। दिस में फ्लिक टू डीप नो ओए होए होए, diving effort but nothing coming. Comments क्या आए हुए हैं? Comments हमें कह रहे हैं या पाकिस्तान को कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही कमेंट्स में बेन यार। स्टोक्स ने भी, हाँ यार, सब अग्रेसिव जो है वो बिहेव करते हैं, ऐसी बात नहीं है। So what's the game plan for England now? I think bat 1 hour after tea. I think yeah, bat as long as फिर you वही can 10-12 ओवर का अनोइंग पीरियड दे दो Exactly, कि भाई थोड़ा आप सेट भी नहीं हो सकते। इवनिंग सेशन में आप खिलवा दें इनको, जब हाँ। शायद बादल भी थोड़े आ जाएं इस वक्त तक। थोड़ा सा एक गिव जिमी एंड ब्रॉड मिनी स्पेल। Yep, 4 ओवर आओ, जोफ्रा तुम भी कराओ, वोक्स तुम भी कराओ। exactly. 13 ओवर वैसे ही एवरेज हो रहे हैं 1 घंटे 16 के ओवर अंदर, 20 ओवर बस देंगे बस। मैक्सिमम। क्योंकि अभी भी एक काइंड ऑफ डिक्लेरेबल स्कोर इतना नहीं है कि बंदा के हाँ भाई 490 पे हम। यार आई थिंक मोर देन डिक्लेरेबल स्कोर, इनको Time भी है, थोड़ा सा निकल टाइम गया जो ना है वो game में। एग्जैक्टली वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं इस मैच में, कि एटलीस्ट ड्रॉ का जो रिजल्ट है वो ख़त्म हाँ। हो जाए, इक्वेशन से ही निकाल दें आप। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, ड्रॉ तो हो ही सकता है यार, अगर हम कोई क्रेजी इनिंग खेल जाए बाबर आजम। फिर वही तुम्हारी 346 ऑल आउट वाली बात हो गई है ये। हाँ, Are you follow- expecting कि इस मैच में इन कंडीशंस में बाबर आजम आपको 100 एटलीस्ट बना के देगा, क्यों 100 नहीं से यार? 100 से आगे जो है वो 100% स्कोर करेगा? यार, क्या हो गया, क्यों नहीं आप करेगा? मुंडवाने के लिए आबिद तैयार हैं? आबिद अली ने 176 मारे हुए हैं टेस्ट में यार। नहीं, वो तो मारे में ऐसी बात नहीं है, but मैं कह रहा हूँ इस इन कंडीशंस में अगेंस्ट यार दिस कंडीशंस तो बहुत ही ज्यादा फ्लैट है अगेंस्ट दिस लाइनअप, तो यार। लाइनअप अब देखना रिमेंबर पड़ेगा। श्रीलंका और बांग्लादेश का जो बॉलिंग लाइनअप था वो इतना कोई यार वही देखना मूवमेंट कितनी मिलती है, वरना हमने भी इनको अच्छा खासा 1-2 दफा हम हावी हो गए थे इन पे। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने भी 300 क्रॉस किया हुआ इस सीरीज में एक बार। बल्कि इंग्लैंड ने विक्की भी भाई। इस दफा ही किया है शायद। इंग्लैंड ने सिर्फ यार पहले टेस्ट में सबसे बड़ी बात ये थी कि इंग्लैंड नेवर मेड 300 हाँ। टू विन द मैच, एंड पाकिस्तान हैविंग स्कोर्ड द हाईएस्ट 277 ही हमारे गले पड़ गए। exactly in an innings were on the losing end. Shaheen continues outside the off stump, 490 for 5. England Wokes 2 off 10.
The Khansama is 140 off 286. भाई चेस कर दे बटलर, क्या कितनी देर तू खेलना चाहता है? हाँ ये यार ये तो मतलब लालचीपन है ना, लालच में खेल रहा है इस वक्त. जगह मतलब बच तुमने गई है अपनी टेस्ट में जगह बना ली है. एग्जैक्टली. सीरीज सिक्योर हो गई है. खत्म हाँ. करो, बस करो यार. रुलाओगे क्या इधर? मास की दवाई कह रहे हैं बैड पिच और पुअर बॉलिंग. फुल यूएई पिच बनाया यार वाकई यार. इट्स अ डेड विकेट. दुबई अबू धाबी डे 1 डे 2 वाला सीन. भाई अबू धाबी का मुझे तो लग रहा है इंडिया वाली विकेट है ये तो यार शिवसेना वाली पिच है ये. मुझे यही लग रहा है. एंटी पाकिस्तान पिच है. मुंबई शुंबई में कहीं मैच करवा दिया तो वांगड़े वांगड़े यार आई लव बैटिंग द वांगड़े ओनली, यू नो. अमची मुंबई, यू नो. You know, you Dilip Vengsarkar, Gavaskar, and all these guys. You know, they're my favorite batsmen and all. No matter what. Anyways, of course. Wangade. यार सोचो, imagine your home ground called Wangade यार. ये कैसा नाम है यार? चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर. अगर आप लोगों ने धमाल फिल्म देखी तो ये सीन आपको याद होगा. That was चुस फिल्म. लेकिन ये सीन बात नहीं. हमारा भी गद्दाफी स्टेडियम है. गद्दाफी हमने भी कोई यार, इसका टेरर तो है ना कम से कम. वो लोग बात है इट्स अ फ्लैटेस्ट दहशत है. इट्स अ फ्लैटेस्ट पिच इन पाकिस्तान, बट कोई टेरर तो है ना उसका. नाम से लगता है कोई भारी नाम है. उमेश शिराजी कह रहे हैं आर यू इमिटेटिंग रोहित शर्मा? आई डोंट नो हु आई वाज इमिटेटिंग, बट मैं जनरलाइजेशन आईपीएल सीरीज वो मैं देख ही रहा था. Yeah. ही वेंट टू सम आजाद मैदान और समथिंग लाइक दैट. वो काफी मशहूर एक ग्राउंड है यार. ब्यूटीफुल तो फिर भी नहीं था. ब्यूटीफुल नहीं यार. इसमें आप सोचो 14 जो लोग हैं वो एक तरफ खेल रहे हैं. हाँ. आपकी बॉल ही ना मिले, पता ही नहीं है कि आपकी टीम में है कौन सा. वो छोटू इधर आओ, कह रहा मैं इस मैच में हाँ. खेल रहा हूँ. बल्कि सचिन यही करता था, मैच टू मैच जाता था हाँ. उधर मैदानों में. पहचान ही नहीं पाते थे वो हर जगह. ओह बीसी आउटसाइड एज वंस अगेन. यार ये बटलर कितना बचेगा? वैसे सचिन इसी किस्म का लड़का लगता था. हर जगह बैटिंग लेके फील्डिंग नहीं He की, बॉलिंग literally नहीं की, used to भाग do गया. that. आचरेकर सर टोल्ड मी प्ले देयर. वो ऐसे ही खेल के 3-3 मैच खेल के घर जाता था. बट उन्होंने स्ट्रगल बहुत देखी है यार. मैं बुमराह की स्टोरी देख के वाकई में आई फेल्ट रियली. वो आईपीएल में जो वो सीरीज थी उसके अंदर यू गॉट लॉट ऑफ बैक स्टोरीज. इवन द पांड्याज मैन. पांड्या सारे जो थे वो बहुत ही हम्बल बिल्कुल बैकग्राउंड. बेचारे पांडु से थे. वो काफी हम्बल मेहनत बहुत बिगिनिंग की से. है उन्होंने वाकई यार. I mean, in terms of the IPL, then you know the money that they're getting now, उनकी पूरी जो है वो आने वाली पुश्तों को उन्होंने जो सिक्योर कर लिया इस चीज से. दो भाई आपके सोचें आईपीएल और में आपको खेल याद है रहे वो जो प्रवीण कुमार होता था उनका, Yes. उसकी भी मैं एक परवीन. क्रिकेट मंथली पे स्टोरी आई थी. बेचारा डिप्रेस्ड हो गया था. Yep. ये वो कि क्रिकेट के अलावा मेरी कोई पहचान ही नहीं थी. ये वो बिल्कुल. मैंने कहा तू इतने खरबपति बन गया, अब क्या पहचान चाहिए भाई? जा घर बैठ अपने एंजॉय कर लाइफ. कहता नहीं मेरे को खेलने का, मैं अभी भी खेलेगा, मैं आएगा. मैंने कहा यार क्या यार, गेट अ लाइफ. यार मसला ये होता है कि कुछ जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका उनका पोस्ट वजूद ही क्रिकेटिंग क्रिकेट करियर. है. एग्जैक्टली. अब वजूद आप ही सोचें क्रिकेट है. आपने 10 साल की उम्र से सिर्फ क्रिकेट देखी है, क्रिकेट खेली है. आपके पास कोई सेकेंडरी स्किल मेंटल नहीं है. एडजस्टमेंट मुश्किल होती एग्जैक्टली. है. आपके पास कोई और शौक नहीं है और प्लस उन लोगों के लिए और मुश्किल है जिनके लिए लैंग्वेज स्किल्स या उनकी जो वो एक ऑन एयर प्रेजेंस क्लास नहीं बायस है. भी होता है तो उनके वो आके ना कमेंटेटर्स बन सकते हैं, एनालिस्ट नहीं बन सकते. तो इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा मसला होता है. In any case, 490 for 5. We've just had tea on day 2 of the third test. We will have some tea. 117 runs in Yep. that session. But Zach Crawley has finally been dismissed as England look to bat Pakistan out of the series. We'll be back after a short break. Stay tuned on Change of Pace. दुआ करें हमारे लिए. Runs.
little test. We are back, and we've started with an appeal down the leg side. Asad Shafiq hit the pad of Josh Butler. It was taken by Rizwan, and they thought it might have been a wicket, but it was not. ये वाली वैसे हमारी किस्मत चली नहीं है अभी तक. Okay, we're back. Yeah, we are officially back. ये असद शफीक बिल्कुल सही काम किया हुआ है वैसे. Negative tactics. अच्छा, और उसको वार्न भी नहीं कर रहे, कुछ कह भी नहीं रहे उसको कि भाई ऐसे नहीं करो. यार उनको पता है शिट बॉलर है, उससे बेहतर हो ही नहीं सकती बॉलिंग. हाँ. 491 for 5 after 137 overs. Good take there from Rizwan. Again, actually, we've He seen did a this good throughout job. the test matches. Rizwan has been solid behind the stumps. He's not making any mistakes. There was a stumping chance in the last match, which was नहीं also तो very हमने difficult. रिव्यू लिया था, हमने रिव्यू यानी लिया खत्म हो गए अब हमारे. था. एक रिव्यू है शायद अभी भी. Maybe बीच में कोई लिया नहीं था. शाहीन का भी लिया था ना हमने. ले लिया था, फिर सारे चले गए क्योंकि हमने लिए भी जो है उस पे लिए हैं कॉट बिहाइंड्स और उस पे एजेस पे. Mo Riz with the sexy shades in the background. Chris अच्छे हैं यार, Wokes. वाकई लेने चाहिए. Yeah, it's finally out there. यार मुझे वो हिटमैन हार्ट वाले याद दिलाते हैं. Brett the Hitman Hart. ये शेड्स जब मैं वैसे देखता रेसलिंग की बात कर लेते हैं. हूँ मैं काफ़ी रेमिनिस कर रहा हूँ रेसलिंग के बारे में. I was a big wrestling fan like most kids. कौन है were. आपके टॉप 3 ऑल टाइम? ओए होए 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 यार रॉक स्टोन कोल्ड तो डेफिनेटली आते हैं. I was a big Shawn Michaels fan as well. Oh, what a Shot! drive by Chris Wokesy. Sexy Wokes through the covers. He's beaten the field. That's the first boundary for him. यार 495 up जब to आपका 5. नंबर 7 प्योर बॉलर ऑलराउंडर ऐसे कवर ड्राइव्स मार सकता है. विकेट आपको पता है फिर क्या है. आपके टॉप 3 कौन है? यार अच्छा, मी ब्रेट हार्ट फॉर श्योर. 100% लव्ड ब्रेट हार्ट. Okay. रेजर रमोन Oh, okay. एंड द रॉक. And The Rock. Yeah, I just मतलब वो पर्सनालिटी करिश्मा बहुत था यार. ब्रेट का करिश्मा बहुत था. एटीट्यूड एरा वो मतलब एक पूरा एक बहुत डिफरेंट जबरदस्त लेवल है, था वो. हाँ. अगेन मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब की बात होती है हाँ. अगेंस्ट ब्रेट हार्ट विद शॉन माइकल्स. अगर वो ना होता तो ही वुड हैव कंटिन्यूड. 100%. WCW दौर नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं आती. वुड हैव बीन अ डिफरेंट करियर बिल्कुल सही altogether. बात है. बट प्लस ब्रेट हार्ट को जो है ओवन हार्ट की डेथ से भी जो है हाँ. काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. वो स्टोरीज भी आती हैं. बट अब रेसलिंग वो बात ही नहीं रही यार, वो मजा ही नहीं है. अब आपने अगर आपने कुछ देखा ही नहीं, बट बिकॉज ऑफ कोविड उसकी जो प्रोडक्शन है या उसकी वो सारी चीज़ें जो है ना उसकी जो स्टोरी टेलिंग है अब वो बहुत हद तक उन्होंने एक ड्रामा मतलब एक्चुअल ड्रामा बना दिया. अच्छा अच्छा अच्छा. इवन सम ऑफ द मैचेस दैट दे आर हैविंग नाउ दे आर scripted like movies. लेकिन their revenues are even higher. अभी भी इतने लोग देखते हैं. I don't get it Dedicated यार. channels उनके निकल आए हैं. WWE नेटवर्क निकल आया है उनके पास. They were जो है ahead वो- of the curve. ये जो Disney Plus वगैरह अभी आ रही है उनसे भी बहुत आगे थे. एग्जैक्टली. प्लस उन्होंने जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग को आप सोचें कि एक रेसलिंग के 2 रेसलिंग शोज होते थे. हाँ, उन्होंने उनको कितना एक्सपैंड कर दिया. सही बात है. डेली शोज निकल आए, रिव्यू शोज निकल आए. और ट्विटर इन्होंने इतना अच्छी तरह यूज किया. एग्जैक्टली. फिर उन्होंने अब स्नैपचैट पे आप चले जाएं तो हर शो के बाद वो टॉप 10 हाइलाइट्स आई हुई होती हैं. मतलब यू कैन कीप इन टच विद WWE still. Plus another thing that they've really banked on now, which I've seen in the last couple of years, is they have an entire roster of women wrestlers who are बिल्कुल. actually very good wrestlers, and they've become bigger stars than some of the male stars. सही So बात है. because of that, the wrestling Back in the game's day आप evolved. कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. Like China was something very Yes, extraordinary exactly. in और those plus times. मतलब आपके पास 30 जो थे वो women wrestler नहीं थी. अब जो है उनके पास literally Royal Rumbles हो रहे हैं for women alone, which means you have the talent. Plus एक और चीज आपको और ये वो इक्वालिटी के लिए नहीं करे, वो प्योरली एक्चुअल उनके डेमोग्राफिक्स बता रहे हैं कि भाई लोग देखते हैं इनकी wrestling. एग्जैक्टली. प्लस आप ये देखेंगे पहले जो उनके वो एक चीप टैक्टिक्स थे कि the women were more just used as side stories and things like that. That's not the case. They were anymore. eye candy. ऐसा कोई चक्कर नहीं है. Exactly. वो मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे थे एक हिसाब से. बिल्कुल. अब जो है उनको उन्होंने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी दी है कि नहीं आप भी रिप्रेजेंट करें. बिल्कुल. I think some of the biggest stars now are women wrestlers. So I guess the WWE is ahead of their time. 100% यार. Presentation. Up is again from Wokes, and he's getting another boundary through the cover. Shaheen Shah does not deserve this. Pakistan do not deserve this, but Chris Wokes is hammering them through the covers. 499 now for England for the loss of 5 wickets. Wokes 11 off 18. I remember Butler I was 140. watching some old England cricket. वो उनके uploads होते हैं, player interviews वगैरह. उसमें वो बता रहे थे, they asked like who has the best cover drive in the team, Yeah. and 3 or 4 of the guys said Chris Wokes.
कि It's so technically correct. If you look at the way that he's extending his arms, he's got the foot movement, he's planting outside the off stump. It's perfect. It's glorious to watch. यार बंदा शॉर्ट कवर ही रख ले, शायद अपिच ड्राइव वो मार दे, Shahid, yeah. Umair Shirazi कह रहे हैं Bret Hart, Shawn Michaels and The Rock. Yeah, I think that's a solid list. I think The Rock is one of the most commonly found denominators in all of this. And Ahmed Afzal also agrees. Rohit saying WWE back on 10 Sports in the early 2000s was a delight to watch. Yeah. That was literally the last time I watched it. SummerSlam हुआ था, triple threat हुआ था, Brock, Taker और Rock ऐसा कुछ हुआ था, and I think Brock won it or something. यार I won't lie, even now जब SummerSlam और WrestleMania होते हैं तो मैं उनके अगले दिन highlight जरूर देखता हूँ. I just want to know what's happening. It's just something that needs to be something I need to be informed about. Oh, that's a tennis shot from Chris Wokes. He's forehand smashed that down the ground past the bowler. It's another boundary for him. That's 3 in the over. Shaheen Shah was just staring at him with those beady लेकिन little चलो eyes. इंग्लैंड की इंटेंट तो क्लियर हो गई कि we're gonna have a slog and then we're gonna put you in. I think 1 घंटा हमने जैसे कहा था वो बैटिंग करेंगे, but that was a pure tennis shot from Chris Wokes. Stand and deliver stuff from him. Shaheen has suffered in that over coming around the wicket, and that's 500 up for England now. 503 for 5. Butler is getting closer to that 150. He hasn't been fluent since the morning session. यार 127 for 4 से कहाँ मैच छीन के ले गए हैं यार, और वो भी खूबसूरत ग्रे निकल्स के बैट के साथ. हाँ वैसे सब फेंटी जो लगा रहे हैं वो ग्रे निकल्स के बैट के साथ निकाल रहे हैं. एक वो कुक का बड़ा मर्चेंट है बटलर, बाकी जो है वो. The last 100 coming up in only 135. That's about 23 overs यार, बहुत तेज खेल रहे हैं अभी एकदम. Even the third 100 was 113 delivery, so they really stepped on the बटलर ने gas. अजीब एक रोल अपनाया हुआ है. He's the cleanest hitter of the ball in this side. बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और प्लस जो है वो उसकी फ्लुएंसी नहीं नजर आ रही है आपको बैटिंग में. Even he's not even going aerial. Normally you see him target the shorter boundaries and stuff, or going down the ground. लेकिन that just shows the level of talent they have कि यार बटलर जैसे free flowing player ऐसी टेस्ट इनिंग भी खेल सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. I think he's proving the critics wrong with this innings as Asad Shafiq continues on the leg stump क्योंकि line. हमारे यहाँ बहुत बहस होती कि जी सही प्लेयर को सही फॉर्मेट में यूज करो. दैट्स बोगस. सही प्लेयर हर फॉर्मेट में खेल सकता है. David Warner is an example of that. हाँ. T20 स्पेशलिस्ट जो था वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर जो है वो सही बात है. eventually टेस्ट उनका माइस्ट्रो बन चुका है. यार सच्ची बात है, the loss of what's his face, Tubster. That was a big loss for Pakistan because you were finally getting an aggressive opening batsman in all 3 formats of the game. उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन्स बनाए थे on fast tracks. आपको नज़र आ रहा था उसके कट्स और पुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. लिमिटेड ओवर्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर निकल आया था. अगर वो फ़खर के साथ जैसे बैटिंग कर रहा होता, 1-2 साल वो उस फॉर्म पे खेलता, तो पाकिस्तान का एक लाइनअप डिफरेंट होता, कम्प्लीटली डिफरेंट होता. यार लेकिन एक बात भी है, लेकिन ग्लेयरिंग उसमें टेक्निकल फॉल्ट भी था. बहुत थे, बिल्कुल थे. बट वो होता है ना कि जब आपका दिन होता है तो सारी चीज़ें मतलब आपके साथ और आपको याद होगा फ़खर को भी हमने टेस्ट खिलाया था. आई डिडंट फील इट वाज अ बैड डिसीजन. उसने 250 अच्छा खेल, मतलब कैपेबिलिटी थी, लेकिन वही मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है. आप अपने आप को अपनी शॉट ही नहीं रोक सकते आप, तो फिर बंदा क्या बोले आप. देखो, horses for courses is a valid thing. मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा हर जगह खेल सकता है. अगर आप फ़खर को फ्लैट ट्रैक्स पे बुली करवाना चाहते हैं, ठीक है, खिलवाएं. इंडिया भी ये करता है. कुछ उनके बैट्समैन ऐसे हैं जो इंग्लिश कंडीशंस या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में नहीं खेल पाएंगे, साउथ अफ्रीका में नहीं खेल पाएंगे, बट इन होम कंडीशंस अगेंस्ट स्पिनर्स फॉर एग्जांपल, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स दैट दे हैव, सो दे प्ले देम. इट्स नॉट बैड टू हैव दैट डेप्थ एंड वैरायटी. अब हमने 4 और 5 पे या 3 और 4 पे बस हम डटे हुए हैं कि जी नहीं, इन्हीं को खिलाना है, जो मर्जी हो जाए, हफीज मलिक यही खेलेंगे. क्यों? आप इस बेसिस पे भी तो रोटेट करें. इतना बड़ा कोई नहीं होता कि वो रोटेट ना हो सके या ड्रॉप ना हो सके कंडीशन की वजह से. अब वही बाबर वाली बात आती है. ठीक है, जो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया, हाँ, that's paddled away down the leg side, but there is a fielder there. He's missed out on a freebie. 508 for 5 after 139. बट जो बाबर को ट्रेड किया था इस्लामाबाद ने, वो किसी बेसिस पे किया था, राइट? मतलब whatever that proved to be at the end of it is different. But when they were making that lineup and the way that Babar used to bat at the time, उनको ये नज़र आ रहा था कि यार ये हमारी लाइनअप में फिट नहीं हो रहा. इसकी रन गेटिंग एबिलिटी हो, एक सर्टन पेस पे खेलता है, जो भी कुछ करता है, हम इसकी जगह एक्स प्लेयर को खिला लेंगे. राइट और रॉन्ग व्हाटएवर, बट द थॉट प्रोसेस वाज देयर. यार लेकिन बात ये है, उनके पास मिडल ऑर्डर कौन है?
आसिफ अली, कम ऑन मैन, हुसैन तलत भी आप बेंच पे होता है. बट दैट्स द थिंग, हुसैन तलत का क्योंकि इतना एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया तो उसके अंदर आपको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई यार उस बंदे को ही वाज गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन द 2018 एशिया कप स्क्वाड, लेकिन उसका नहीं जी मैंने हज पे जाना है अपनी मदर को लेके. ठीक है मतलब फेयर इनफ, बट इट Priorities, कुड हैव बीन अ but- करियर मोमेंट इन हिज लाइफ. एंड अगेन वी टॉक और हमने आसिफ अली को खिला दिया और उसको खिला हम दिया. पर्पल पैचेस की भी बात करते हैं ना, उसके बाद से वो अपनी डोमेस्टिक साइड्स में सेलेक्ट नहीं हो रहा. हाँ वो सेकंड स्ट्रिंग जो है सेकंड 11 के अंदर Second जो है 11 में खेल वो रहा है. फंसा हुआ है. तो मौके हर किसी को हर वक्त नहीं मिलते. जस्ट अब है- बिकॉज यू आर अ गुड प्लेयर या टैलेंट है, आपको हर वक्त चांस नहीं मिलेगा. अब ये बात है कि हैदर अली को अब ये लेके आए, होपफुली इन दिस टूर ही डज वेल इन वन ऑफ द T20s, एटलीस्ट वन ऑफ देम, बिल्कुल शो इज क्वालिटी. बिल्कुल. और अगर मसला ये हम first class खिलाएंगे भी cricket ऊपर में- ऊपर ही, नीचे नहीं भी उसको छुपाएंगे, हाँ. ऊपर के भेजेंगे. नहीं ठीक है, मतलब अगर आप इस बेसिस पे खिलाते हो उसको कि यार नहीं हम तुम्हें चांस देंगे अगले साल, 1.5 साल, 2 साल हम तुम्हें हाँ, मतलब लगाए रखेंगे, तो वो अलग बात है. Shorter delivery again from Shaheen, just punched down to आई mid जस्ट on. होप ही डज वेल. I hope so too, and honestly एंड again और जो ऐसी जैसी ये पिचेस बना रहे हैं इंग्लैंड में, हाँ. ही शुड प्ले अक्रॉस द लाइन, थ्रू द लाइन. true wickets हैं यार. ट्रू विकेट्स देते ट्रू हैं वो. विकेट्स हैं, पेस के साथ बॉलिंग होगी. हाँ. ही हैज द चांस टू स्कोर बिग. मैं तो उस वक्त, बल्कि जब आपको याद है पीएसएल खत्म हो रहा था, जिस जमाने में कोविड का हाँ हाँ हाँ. कोविड की इमरजेंसी नहीं थी, तब मैं ये कह रहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज भी होगी तो उसमें भी आप डेब्यू कराओ, क्योंकि ही इज इन फॉर्म नजर आ रहा है, और इनके खिलाफ इन विकेट्स पे वो खेल सही सकता टाइम है. पे डेब्यू कराना भी बहुत बिल्कुल. जरूरी होता है. Oh, that's edged over the keeper. Unlucky from Yeah. Shaheen, but Wokes gets another boundary off the big man. That's 512 now for England. Wokes 21 off 24. That's the short delivery that we've been talking about. यार द वन Shaheen थिंग आई sticking विल to that. फॉल्ट शाहीन इज दिस, यार आप एटलीस्ट विकेटों पे तो बॉल डालो. अगर वो टांगे निकाल के शॉट मारने को तैयार है, एटलीस्ट लुक फॉर गेटिंग अ यार बॉल. वो शॉर्ट बॉल टैक्टिक ट्राई कर रहा है, जो फाइनली पिछले मैच में रह गया था, वो इस बार ट्राई कर रहा है. तो एटलीस्ट ये मैसेज तो गया है कि जी वोक्स को आपने थोड़ी शॉर्ट पिच डिलीवरीज करानी है. He's gonna be a bit hard done by that though. It's going over the slips. यार and keepers. बिल्कुल उसके नंबर्स इस सीरीज में बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग करेंगे जिस तरीके से Honestly, उसने बॉलिंग कराई honestly, है. हम वही कहते हैं कि stats don't tell the full picture. And if you look at the numbers purely, you would think that Shaheen and Naseem and even Abbas haven't bowled हाँ. that well, whereas in fact they've been quite outstanding with the ball. Their lines and their lengths and everything. There's a fly slip short third man in place Short. now for these edges. Fly third man. Fly third man, you could call it that. It's, that man, Bobby Prince. Lot of pressure on him to get a big Huge, score. huge, especially when we're talking about flat tracks and you know, the equation being negated by the pitch. This means runs are due. Again, short arm ये jab कैसी shot towards mid wicket, no टेबल run. टेनिस वाली शॉट मार रहा ये है यार. मैं बता रहा हूँ, फुल इस वक्त टेनिस मोड में गया हुआ है ये. और हैवी खतरनाक प्लेयर 21 ऑफ 25. बटलर जस्ट गोइंग अलोंग नाइसली 142. बटलर फंस गया. बटलर ने थोड़ा सा इनिंग्स को भी फंसा दिया है. वेरी गुड डेप्थ दे हैव इन इंग्लिश क्रिकेट दीस डेज. 3-4 सेपरेट स्क्वाड इनके बन गए अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स के. भैया आप ये सोचें, इस वक्त अगर सैम करन खेल रहा था तो वो भी बैट्समैन है. टॉम बेस हैज अ कपल ऑफ 50s अगेंस्ट पाकिस्तान. तो ऐसी बात नहीं है कि बैटिंग यहीं खत्म हो जाती है इनकी. दे हैवंट मिस स्टोक्स व्हिच वाज ह्यूज फॉर देम. दे थॉट कि स्टोक्स के जाने के बाद एक गैप आएगा, बैटिंग शॉर्ट और होगी. मार्क वुड बेंच पे बैठा हुआ है, वो 150 वाला बॉलर यार. Exactly, soaching around the wicket now. Shaheen goes short again, pulled away, not timed very well, but they'll pick up a single. 5-13 बल्कि ऐसे for पिच 5. पे आई थिंक मार्क वुड का ज्यादा फायदा होता है जोफ्रा से. Yeah, because you'd get that extra pace, extra bite off the wicket. क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि भाई मैंने लाइन लेंथ, वो तो फुल फ्लैट आउट ही सिर्फ बॉलिंग कराता है. Mr. Arsenal Kenny, this is one of those innings where Pakistan had like 5 or 6 centuries against Sri Lanka, and Rohit is saying Pak will lose by an innings. यार कोई अच्छी बात कर लो यार. ऐसे तो ना को यार. No, but I think the current rate of the game and the way that the scores have stacked up, it is very likely that Pakistan will be looking at a heavy defeat, unless क्या हो गया यार. I'm being realistic. If the weather interferes, fine. Otherwise, having this kind of total on the board, it's very difficult to get a draw. This is the reality of it. You have to bat once at least extremely well to get. I mean, getting to 500 has taken them almost 2 days, right? You have to bat another. टाइम 2 भी days निकला है गेम से. to get to 500. Plus, आपके दिमाग में ये कि यार हम सीरीज हार रहे हैं. यानी अभी सिर्फ फॉलो ऑन करने के लिए हमें 314 रन करने होंगे. तो अगर इंग्लैंड इस वक्त ये सोच रहा है कि यार इनको हम फॉलो ऑन से पहले आउट करवा देंगे, अगर 600 रन उनके बने हुए हैं, they're definitely not going to bat again. Maybe they'll bat for a session and score some quick runs, but there is a forecast of rain. ये रेड और येलो बॉल कौन सी है? नहीं वो सही है. एक बॉल बीच में थी, इस पे रेड था आधा और आधा येलो था. वो तो वो They weren't sure कि Gender dodge fluid boundary. ball थी. Yeah.
the ball's just dying on Rizwan. It's a good length delivery. 140 over is up now. 141 पे उसने 5. बॉल कराई और 2 ठप्पे खा के पहुंची कीपर के सोचो। पास. Speaking of 2 ठप्पे, here comes Andrew Strauss with that glorious tinned. सही cricket oval shape सर है इसका यार. Very strange looking Looking at dome. the keeping of Mr. Dowrich in that last match. यार इसको मुंह पे He जो was ball struggling लगी थी. big time यार. Oof. Yeah, Rizwan's been exceptional behind the stumps. Yeah, ये बॉल थी. The ball's been moving just as much for him. He's been up to the fast bowlers, down the leg side. He's taken everything. Very few drops, edges that have been hard cuts going into his gloves. Lots of bounce in the first couple of matches as well. अब रिजवान की इतनी तारीफें कर रहे हैं सिक्कू भाई, ये तो फुल ट्रिगर हो गए हैं. भाई इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं. Mr. Arsenal कह रहे हैं मैच should be delayed due to यार मूड नहीं है खेलने का. Fawad Alam back into the attack. Yep. And Sarosh is making the point that there's 20 overs to go to the new ball. Yeah, the 160th mark will be the new ball. Hopefully we won't be out there by that time. वाकई यार इतनी बैटिंग तो खुदा के वास्ते ना करो. into the attack. 6 overs bowled for him. Maybe he'll stick to that leg stump tactic as well. यार अब आप अपनी ट्रू ऑनेस्ट पॉलिटिकली करेक्ट ओपिनियन नहीं देने, आपने सही बात बोलनी है. जी. हाउ डू यू रेट फवाद आलम एज ए क्रिकेटर? सही बात करें, दिल की बात करें. मैंने आपको कहा है कि देखें हर चीज़ स्टैट्स पे नहीं जा सकती. I think he's a 6 out of 10 kind of cricketer. Did you think he had a future, a long-term future in international cricket? No. अच्छा ठीक है. We don't rate him. मैं ढकी छुपी बातें ऐसी नहीं करता. I'm going with the blatant responses. No. अच्छा, you never rated him. Never liked Fair him. enough. I agree totally. मैं पिछले 10-12 साल से जो इसकी मैं बुराई भी कर रहा actually हूँ. यही कह रहा हूँ. वही लोगों का यही मसला है कि दे आर ऑलवेज कोटिंग अस नंबर्स बट दे डोंट लुक एट द कॉन्टेक्स्ट. जैरेड ने एक बहुत ज़बरदस्त पीस लिखा था फवाद आलम पे. ही सेड द लास्ट 5 years 89% ऑफ हिज इनिंग्स आर बैटिंग एट 5 Yep. इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. Yep. यार तुम 5 पे खेल रहे हो डोमेस्टिक में, जहाँ बॉल वैसे ही पिच कुछ नहीं है. भरकस मरकस जो भी बॉल होती है वो भी उस पे आप थर्ड खेल रेट रहे हैं. फर्स्ट क्लास, मतलब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स उस लेवल के नहीं हैं. This is my point. आप जब रन्स का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना, और अभी हम Context ज़ैक बहुत क्रॉली की बात important कर रहे है. थे कि यार हो सकता है ज़ैक क्रॉली ने एक सीजन में तब रन्स बनाए हों जब इंटरनेशनल सीजन नहीं चल रहा था, और इंग्लैंड के टॉप बॉलर्स भी उस वक्त और नो डाउट ओपनर ऊपर आके खेला होगा, वो नीचे 5 पे नहीं खेल रहा था. Exactly. Context matters a lot when it comes to numbers because you can give very flattering stats for a lot of different people, but they don't mean much. मैंने रोहित शर्मा की भी बात की थी. 57, 58 उसने आके खेला इंडिया के लिए, नहीं सक्सेसफुल रहा. उसकी भी एक आध सेंचुरी है, फवाद की भी एक आध है. What I do disagree with though is कि आप एक क्राइटेरिया अगर सेट कर रहे हैं, या तो आप टोटली ये कहेंगे जी नहीं हम सिर्फ पोटेंशियल और इन चीज़ों पे सेलेक्ट करेंगे, ताकि फिर फवाद को भी पता होता कि यार मैंने ये चीज़ें करनी है, शायद उस पर वो प्रूव कर जाता. दूसरी तरफ आप जब एक बंदे को ही कह रहे हैं कि अच्छा आप डोमेस्टिक में रन्स करेंगे तब हम आपको लेके आएंगे, और अगर वो कर रहा है तो आप एक प्रेसिडेंट गलत सेट कर रहे हैं. मतलब मैं फवाद की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल ओवरऑल रूल की बात कर रहा हूँ कि आपको कोई एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि जी नहीं इस बेसिस पे हम ला रहे हैं. या मसला ये सिलेक्शन इट्स नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट. तो आपको थोड़ा सा इट्स इन बिटवीन द लाइंस, एक कंफर्म चीज़ नहीं होती. और इंजमाम ने भी कहा था अगर ऐसी टीम सेलेक्ट करनी है मैं फिर एक एक्सेल प्रिंट करवा के पहले 5 नाम सेलेक्ट करके टीम बना लेता. एग्जैक्टली टॉप 5 रन गेटर्स पे आप जो है वो बना लें. वो जी इमरान फरत होगा, कामरान अकमल होगा, फवाद आलम होगा और खुर्रम मंजूर होगा. बिल्कुल, खुर्रम मंजूर को हर बार इसीलिए खिलाया है, और आपने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे आके उसने क्या किया है. और वनडे टूर्नामेंट्स में 60 बॉलों पे 100 मारता है वो. यार वो T20 में जो है वो मॉन्स्टर है. ही इज एक्चुअली अ मॉन्स्टर इन T20 क्रिकेट. और PSL में हमने आया वो खेल ही नहीं सकता, उसे खेला ही नहीं जाता. नहीं होता. एक कमेंट आया है बी इकबाल का, तो फिर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या फ़ायदा, क्या अगर परफॉर्मर्स को खिलाना नहीं है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नंबर्स इज. यार हम फर्स्ट सेशन में यही बात कर रहे थे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट इट्स एन इंडस्ट्री. इट्स नॉट जस्ट कि जी हम क्रिकेट खिला रहे हैं फॉर द सेक ऑफ हमने प्लेयर निकाले हैं. वो लोगों की रोजी रोटी है यार, उनका प्रोफेशन है. क्रिकेट एक प्रोफेशन है आपके मुल्क में. इंग्लैंड में दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. साउथ अफ्रीका से लोग क्रिकेट छोड़ के इंग्लैंड में जाके हाँ वो एज अ रोजी रोटी भी खेलते हैं लोग यार. वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी लगी हुई है. Mr. Arsenal, do we have any proper off spinner at this moment? No, we do not. है ही नहीं. वही बिलाल आसिफ टाइप ही है बंदा. वो भी और बिलाल आसिफ भी अगेन हिट और मिस रहा है. अच्छा मैं समझा वो चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है, वो अपने जूते साफ कर रहा है. रेडी हो रहा है उसने आके.
फील्डिंग भी तो करनी है, स्पाइक्स अपने सही Speaking of chocolate, here comes Naseem Oh, Shah. white back onto chocolate. ball. The white chocolate, Naz. एक एलन डॉल में व्हाइट लाइटनिंग होता तो नसीम व्हाइट White चॉकलेट हो chocolate गया हो फिर. सकता है। यार इसका वैसे निकनेम पड़ सकता है ये. यार पता नहीं थोड़ा सा आज ही push कोई करें हम. आर्टिकल कोई बार बार मुझे कोट करे कि ये इसको डेनिस लिली बोलते थे बचपन में, इसका नाम लिली शाह होता था और समथिंग रिडिकुलस. एक्शन उसका थोड़ा सा उससे हाँ. मिलता जुलता है. बी इकबाल कह रहे हैं मुझे बुला लो प्रॉपर फिंगर स्पिनर. अच्छा. यार आप कोई ट्रायल क्लिप्स भेजें. भाई आप सोशल मीडिया यूज करें ना, क्या बुराई है. अभी हम कह रहे हैं फर्स्ट क्लास को वैसे कोई नहीं पूछता, तो अगर हाँ. आपकी कोई क्लिप्स हैं तो हम ही वायरल करवा देते हैं, इसी बेसिस पे पिक करवा दें. भाई मैंने तो देखो तय किया हुआ है, अगर कोई बच्चे शच्चे हुए ना तो पाकिस्तान के लिए मैंने उनको बचपन से कह देना है आप विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करें. अगर आप 20 की एवरेज पे भी खेल लेते हैं तो जगह आपकी पक्की है, क्योंकि 20 से ज़्यादा हमें चाहिए नहीं विकेट कीपर से. या न्यूजीलैंड भेज दो लेग स्पिनर बना के. 100%. साउथ अफ्रीका भेज दो. करियर सेट यार, टेंशन ही कोई नहीं. अच्छा आप रिस्ट स्पिनर बन जाओ साउथ अफ्रीका में, आप 80-90 टेस्ट खेल जाओगे आराम से. एग्जैक्टली. उनके पास है ही नहीं बेचारा कोई सीम बॉलर, तो बेतहाशा है उनके पास. Naseem replacing Shaheen on the pads first बटलर delivery. वंस अगेन अच्छा वोक्स दिस टाइम बट बटलर की तो मुझे लग रहा है बारी भी नहीं आ रही, और जो आ रही है तब भी 300 यार यानी 50 स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहा है. क्रॉली 60 पे खेल रहा Yeah, था. exactly. And Crawley was playing confident shots. Butler's just been stuck. आई गेस उनका कोई होगा गेम प्लान के भाई यू जस्ट बैड टाइम, कोई जल्दी नहीं है. कितना हाँ first time in his first class career that he's batted more than 400 minutes. अच्छा यानी इसने कोई अना की जंग बना ली कि भाई मैं बस खड़ा रहना Yep. Mazhar Musad with the stats there. है. Musad Azhar. मुसाद अरशद. यार आप सोचो वो ऐसे स्टैट्स दे रहे हैं कि भाई इन द फर्स्ट 25 मैचेस आसिफ अली हैड अ बेटर T20 रिकॉर्ड देन एंड्रे रसल. मैंने आपको कहा है ना, stats don't always एग्जैक्टली mean जैसे हम फवाद के something. बारे में डिस्कस कर Yes. रहे थे. अब कल मुसाद ने स्टैट्स दिए थे. हाँ आसिफ 1200 हैं आज नहीं आसिफ और अब्बास के मैंने हाँ. स्टैट्स सुने थे. उसमें डेसिमल स्पेसेस का डिफरेंस था, राइट. हाँ. 22.2 और 22.9 या उसमें. बट आपने जब बॉलिंग कराते हुए एक पोटेंसी देखी आई है, टेस्ट आई टेस्ट है, आपने विजुअली भी देखा है. एंड दिस इज समथिंग बाय द वे इन द NBA व्हेन वी ऑलवेज गो बैक टू इट. चार्ल्स बार्कली एंड अ लॉट ऑफ दीस प्लेयर्स आर वेरी अगेंस्ट एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स. हाँ अ लॉट ऑफ प्योरिस्ट्स ऑफ द गेम कहते हैं कि जी हम जब देख रहे हैं, हम एक बंदे को खेलता हुआ देख रहे हैं, हमें अंदाजा है कि वो किस तरह खेल रहा है. सही बात है. बहुत से लोग आएंगे कि जी पर 36 मिनट उसके ये स्टैट्स हैं, क्योंकि एवरेज मिनट्स आपके XYZ होते हैं, उसको एक्सट्रैपुलेट करके जी ये निकल रहा है, प्लस माइनस ये है, एफिशिएंसी रेटिंग ये है. वो कहते हैं यार ये सारी चीज़ें जाए भाड़ में. हाँ. हमें अगर बंदा नज़र आ रहा है जो क्रंच में खेल ही नहीं सकता, उसका हमने क्या करना है. हाँ Those things are what they end up looking at. So sometimes in cricket you also have to look at the eye test. We've seen Asif bowl. We और saw इसमें what कोई kind शक नहीं है of- कि फवाद आलम ब्रूटली फेल्स द आई टेस्ट. Yeah. And it's not just the style, but it's also हमने उसको limited यार overs cricket में भी टेक्निक ठीक देखा नहीं है. है ना, बेसिक मसले हैं Exactly, उसके. हमने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी उसको खेलते हुए देखा है. वो हाँ. उसके अंदर हैं फ्लॉज नजर आते हैं, वो फंस जाता है यार. आप फिर वही एक चीज पे गौर करें, जब आपकी टेक्निक फ्लॉड होती है और आपको तेज बॉलिंग आपके hitting zones नहीं बनते. एग्जैक्टली, आपकी जो फुटवर्क होता है आप फंस जाता है. वो पहली जो डिसमिसल है, आई डोंट वांट टू बेस हिज एंटायर करियर ऑफ इट, बट इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर व्हाट ही डज. बिकॉज वो हाथों से खेलता है. हाथों पे आप स्लो विकेट्स पे खेल सकते हैं, स्लो बॉलर्स के खिलाफ खेल सकते हैं. अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स ऑन स्विंगिंग कंडीशंस इट्स डिफिकल्ट. सही बात है. इट्स अ वाइल्ड स्विंग ऑन दैट लास्ट. और आप क्राउच भी कर रहे हो, इसका ये मतलब कि आप शॉर्ट बॉल सही तरह नहीं खेल सकते, हाँ. आपकी पावर नहीं आपकी होगी. ट्रिगर मूवमेंट जो है हाँ. वो डिटरमिन करती है. अगर मैं कह रहा हूँ आप at the end of it, I don't even care about the square stance. By the time he gets to the bowler's delivery stride, वो in position होता है. सरफराज भी crouch करता था, सारी चीज़ें हैं, but वो flaws निकलना शुरू हो जाते हैं. आपकी limited foot movement होती है, बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर. Dabbed away towards third man. There will be just 2 runs off that. End of the 142nd over, 520 for 5. Chris Wokes is 27 off 34. Josh Butler's 144. Abdullah Amin कह रहे हैं, speaking of रोजी रोटी, हमारी COP टीम में किसका क्या प्रोफेशन है? यार हम प्रोफेशनली जो है वो बस यही करते हैं, हम झक मारते हैं. झक मारते हैं. You might have asked this before. 144 of 303 What do you for do, Joss. Abdullah? Maybe you can start the conversation. मजा है फवाद आलम आज 200 मार यार, मार जाए अच्छी बात है. मार ले यार, हम जाती हमारी तौर पे बोलती दुश्मनी बंद हो नहीं जाएगी. है. हाँ,
Exactly. When we talk about shutting up the critics, this is exactly what you need to do. सब करे, असद भी करे, अजहर भी करे, बाबर भी करे, आबिद भी करे, सब करे. बाबर तो करेगा यार, बाबर तो इसमें चलो, कोई डाउट ही कोई नहीं. हमने उसको डार्लिंग बनाया हुआ है ना, वो अलग बात है. उसके लिए हमारी एक सॉफ्ट स्पॉट अलग से निकल आया है. वही हम एस्थेटिकली जो है वो अट्रैक्ट होते हैं. मतलब लोग कहते हैं ना, लुक्स आरंट एवरीथिंग. वेल इन क्रिकेट इट टर्न्स आउट लुक्स आर एवरीथिंग. ऑफ कोर्स यार. तो बी इकबाल ने ऑलरेडी कह दिया, एजी भाई का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मसाद इज अ सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, और उसके ऊपर कोटेशन मार्क्स लगाए हैं उसने. तो आई डोंट थिंक ही बिलीव्स इट. क्या सस्टेन विद करते दुबई हो कार्बन. और बाकियों का नहीं पता यार, मैं आपको पता है वेला आदमी हूँ, लॉन्ग टाइम लिसनर यार. ये हैं बी इकबाल. तुम क्या सस्टेन करते हो? सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट विद दुबई कार्बन. सो some question marks being raised there. Abdullah saying I'm in uni currently, and Ramiz is saying Babar earned that soft spot. Yeah, absolutely. I mean, to be a darling, you have to actually do something. हम ऐमी तो नहीं उठ के उसको darling बना के बैठे हुए. Fawad Jadeja continues driven down the ground. That'll be a single for Chris Wokes. Butler is now 5 away from 150. It'll be his highest score in Test match cricket. He's taken a liking to Pakistan in the past as well. Scored some 50s off against us. Scored 100 against India in the past, so he's taken the subcontinent for a ride. Mountbatten की औलाद. वाकई यार हमारे ही खिलाफ है बगैर. यार बट वैसे गोरों को भी कहना चाहिए, कोई मेहमान नवाजी होती है. सही बात है. बंदा आके मतलब खिलाता पिलाता है, मारता थोड़ी है. What is this behavior? साथ खुद ही साइड पे बैठ के कमेंट्स चैट में लिख रहे हैं, तो मैं पढ़ने नहीं वाला. Oh, he gets one to grip this time. Fawad Jadeja beats the outside edge of Chris Wokes with a tentative prod. Ooh, that was a good delivery. Perfect line and length there. Maybe he can offer a bit more with the ball than he can with the bat. End of the 143rd. No, one delivery to go. Zach Crawley has more 250s than Sachin Tendulkar. Another stat by Masad. Suchin Tendulkar. Ramesh Kane, where is Sirkhail? Sirkhail is in Abu Dhabi. Abu Dhabi. वो लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जो है वो आपको पता है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस चल सकता है. हाँ, रिमोटली चल सकता है. 523 for 5, 143 overs batted by England in this mammoth first innings. अब फिर इन्होंने इनका बल्ला रोक गया. I don't understand. Look at that, 127 for 4 and 360 runs later, 59 runs in fact. What a partnership. Just took the game away. Rohit is saying, watch DC fandom guys from some crazy premieres. This match is dull. Yeah, मैंने आज वो Rock के Instagram पे देखा था. He is debuting Black Adam, which is his Black Adam. That's his superhero involvement in the DC universe. Acha, okay. He's a villain, actually, if I'm not mistaken. So they're being released online. They can't afford Rock for an entire franchise series. I mean, he's gonna be there, so we're gonna see how that goes. But yeah, what I mean is like they're introducing a new concept here, the fandom and everything, and we're gonna see how they reveal these new characters and new movies. For a movie or a streaming show? It's gonna start in 30 minutes. I think it's the entire DC universe that they're gonna be exploring here. If you have more details, please do share. Where can we watch it? That's driven through the covers. Azhar Ali, the Pappu has fallen over, and that's going to go to the boundary. कुछ सही नहीं होता इस बंदे से. 150 for Joss Butler. यार finally. इसकी भी माँ की दुआएं कबूल हुई हैं. Seriously यार. लगा हुआ है. His first ever score of 150 plus. यार ये यूनुस ऐसे तालियां बजा रहे से इसने कोचिंग की है. तुम्हारे किसी लड़के ने किए हैं यार. क्रॉली और खानसामा की दोनों की.
हद हो गई यार 13 48.9 strike rate. That's very anti-Joss मतलब Butler. जॉस बटलर अगर 300 बॉलें खेल रहा है टेस्ट मैच में you'd expect him to be on like 220 or Yeah, something. but I think he's proving the critics here that he Uh-huh. can play this kind of innings, and I think it was much needed for him because a lot of questions were being हमारे raised. कभी हमारे लड़के भी क्रिटिक्स को चुप करा जाएं आज करवाए ना, हम कह रहे हैं हम खुद critics हैं अब. पता नहीं बचते भी हैं या नहीं On the pads, driven down the mid on the Maro! quick single. Yeah. Even at this stage of the game where he's faced 310 plus deliveries, he's still running those quick singles, and that shows you the kind of fitness levels that these guys have, the kind सही of बात है. mental ability that they also have. They don't switch off. They're always putting the attack back onto the bowlers and the fielding side. It's been a tough Draco Malfoy भी काफी खुश है अपने team की It's been performance a से. tough slog in the field for the Pakistani bowlers. Nothing happening off the deck, no Yeah. chances created, just Nothing in beating the the air, bat. no spin, no seam movement. ऐसा पिच अगर पाकिस्तान में बना होता ना तो अभी इयन बोथम बैठ के रो रहा होता बिल्कुल. क्या look at this flat conditions इसीलिए उसको निकाल दिया इन्होंने. बूथी की रोटी की शक्ल नहीं देखनी. Pulled away this time towards mid wicket by Chris Brooks. It'll be a single. And Ramiz is saying it's a virtually created hall of heroes with all the DC verses and the announcement of upcoming DC content. Yeah. So it's Yeah. today. It's starting आपको in अच्छी 30 लगती है minutes. ये मार्वल डीसी मैं टाइप तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि I follow the lore, I follow the story. I द feel- होल थिंग for the most part, yes. सरखेल से भी ज्यादा मतलब उस हद आप तक कॉमिक बुक्स पढ़ते थे कॉमिक बुक्स मैंने बहुत शुरू में पढ़ी हैं, उसके हाँ. बाद नहीं पढ़ी. मतलब I won't say I follow it as हाँ, closely हाँ. as other people do, but I do watch all the movies. I am in touch with it. I do read up on things afterwards too. यार आपको चाइल्डिश और सिली और स्टूपिड नहीं लगती Yeah, I feel like it's a part of your life that you still need to hold on to at some point. It's a bit of that escapism that we all talk about, right? So it's just something different, and I feel like the यार storylines कैसे that they're डिफरेंट है 500 created. फिल्में आ चुकी हैं Yeah, यार but storylines हर चीज में एक मतलब different. एक ही स्टोरी लाइन होती है हमेशा ठीक है. they're fighting for some great power source that But would we all need destroy the universe. We all seek heroes in our life, right? We यार all ये क्या seek बात हुई? heroes, and we if we find them through this, then why not this? but they are literally ओए, in no AZ की shout शुरू हो गई हैं. चड्डी बनियान हीरोज ही हीरोज होते हैं रमीज यार कह रहे हैं no AZ, इकबाल कह रहे हैं no AZ. Many comics are decidedly not childish. Yeah, I agree. I think there's a lot of lessons and stories in there that are sometimes better than feature films. So यार प्लीज hey, I'm not gonna take it away. I think they've created an entire universe for a reason. There's some brilliant minds behind the comic book series that we follow now and the movies that have come out. So I will not discredit them. AZ, you ओके might टेल मी सम हाई कॉन्सेप्ट you might be alone in this. अच्छा आप मुझे बताएं I कोई think that the वॉचमैन मैंने थोड़ा सा देखा दैट हैड एन इंटरेस्टिंग Watchmen's one of the few things that I have not really followed. उसका too much. कॉन्सेप्ट हाई कॉन्सेप्ट था अच्छा था वो Yeah. भाई I think the comics सुपर will हीरोज just आर यू नो start coming in with this. उनको लोग भूल चुके हैं और सोसाइटी हैज Yep. यू नो Abandon the concept, ऑस्ट्रेसाइज देम और ये सब बिल्कुल. चीजें दैट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट which is a bit like the Incredibles. इनक्रेडिबल्स वो भी Hancock, what is your opinion about Disney cartoons I have grown out of those. ये a bit Pixar more. और ये Disney और ये I've grown out of those a bit यार more. they make too many of them man Yeah, I haven't watched too many of the recent ones. They're entertaining still. the worst one I ever watched was that Seth Rogen one Sausage Party वो तो कुछ और That ही was था. so bad, You know, man. you can't classify it in the same same genre. universe में नहीं but that was so awful That was just absurd. catch Oh, he's taking it. Fawad out of his truck The breakthrough, the Prince of Karachi has picked up the key wicket of the 150 man. The Khan Sama is gone, and Fawad Jadeja, toiling away for 90 overs in this match, has finally picked up his maiden test wicket. नहीं he must Does he have one more? I think he might Doesn't not. matter. This is the biggest one that he's ever taken. The biggest क्या one he बात might है. ever take. Sound the alarm Fawad has struck 152 कराची में कल हड़ताल का runs 0 wickets 1 Fawad कल Alam. कल हड़ताल जो अनाउंस हो गई है फवाद की विकेट की वजह से. 530 for 6 after at long last And they've declared? have they नहीं No, मुझे they नहीं लगता haven't. अभी तक नहीं सोचो यार मतलब कराची in the wickets, Asad Shafiq, then Fawad Alam, and क्या बात है both the big batsmen. This the is the- 260 and the 150 man. this is the shining hour of the KCCA mafia भाई हमने कहा था कि सिक्कू भाई ढोल के टाप पे रक्स कर रहे इस हैं वक्त. जियो के छत जियो पे। हेड ऑफिसेज में जो है इस वक्त मिठाइयाँ बट रही हैं.
शर्टें उतर चुकी हैं. या कैंची नंगा नाच कर रहे होंगे उधर बैठ के. वाइज बेग कह रहे हैं साकिब अल फवाद. Abdullah Amin कह रहे हैं maiden test wicket. I think Nasir Hussain just said it's his second or Atherton sorry just said it's its second test wicket. But if it is his maiden then वो it's a big वापस भी wicket. थक के जा रहे हैं यार कि अब उसको सूडी पता है अब लाएगी. यार अब मुझे विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी. Seriously, man. 530 for 6. Are England declaring or are we waiting on Jofra or Dom Bess? Bess आके हमें और तंग करेगा मनूस. Yeah. और जोरू तो full relaxed है. I don't think they're planning to declare anytime soon, to be quite honest. No, वो I तो think अपने they're looking for that 600 mark. वो भी पूछ रहा है कि करें या थोड़ा सा बटलर को वैसे रेस्ट भी देना चाहिए because he's been out there for a day and a half. तो थोड़ी यार इनके पास कोई 15 बंदे तो कीपर होंगे. ओली पोप भी कीपर है. हाँ पोप साहब. Yeah. बस पी ज़्यादा बात नहीं पोप साहब. Yeah. Adil Momin कह रहे हैं Lakers tonight going to lose to the Blazers. Rockets on their way भाई to क्या हो गया? 3-0. क्यों हारेंगे भाई? क्यों हारेंगे? 3-0. Lil हमने James, 3 क्वार्टर में उनको उड़ा दिया था. Lil James is not really at his peak. फवाद मुताया यार ये थोड़ा अजीब सा नाम है. अब फवाद मुरलीधरन कह दें. फवाद मुताया कहना थोड़ा सा जो है ना वो awkward है. फुरलीधरन. But good. Is it true all Fawads are chaddas? That's the nickname. That's what I've always heard. Bowling to Dom Bess now at strike. Who's a better spinner, Dom Bess or Fawad Alam? That's actually a genuine question. Adil saying it's Dame time. Dame time can only happen if his finger Dame is... time हाथ तोड़वा गया. Dame time अब क्या करेगा Dame time? उससे celebrate भी ऐसे किया जैसे duck पे out किया बटलर को. Fly to deliver driven to the covers, misfield by Azhar Ali as is the norm. Yeah, but मैं उनसे काफ़ी surprised हूँ Celtic से because without Ben Simmons, the Sixers still have a pretty deep lineup, but they're getting their ass handed to them. Short delivery this time. He's mixing it up with the straighter यार ones. फिलाडेल्फिया का मसला ये है कि एम्बिड और सिमंस साथ ही नहीं खेलते. वो अपना खेलता है. नहीं but Simmons तो injured वैसे ही हो गया ना. Simmons is out. आपने पिछले Embiid is one of the biggest frauds in the league, to be quite honest. क्या हो गया? प्लेयर है लेकिन वो switched on नहीं है ना. I feel like वो कुछ ज़्यादा ही hyped रहता है. हाँ. Cut away this time by Dom Bess. यार तुम 7 फुट फलाना इंच हो, तुम 3 पॉइंटर क्यों मार रहे हो? But that's the new NBA. Jokic भी यार आप कौन देखें. सा new NBA यार Jokic यार? को देखें. That's how they stretch the floor now because आपको पता है कि if you can't shoot the three as a big man, you're no longer playing in the paint. हसान Whiteside को जो है उन्होंने इतना बड़ा contract दिया था. The NBA has changed completely since then. You no longer play in the paint. You need to have the range. ये पोर्जिंगिस को आप चेक करें. कल उसने कोई 4 या 5 3 पॉइंट यार लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप क्यों फिर भी मुसलसल लगे हुए? Embiid can shoot. Embiid's not bad. फिर भी यार. But अब वो ब्रुक लोपेज लेवल थोड़ी है वो. नहीं ब्रुक लोपेज तो चलो मतलब वैसी बाकी सारी चीज़ों में फारिग है तो उसने कहा 3 पॉइंटर ही डेवलप कर लो. मतलब आप इतने फिजिकल स्पेसिमेन हो, जाओ पेंट में जाके तबाह करो उनको. Mr. Arsenal कह रहे हैं Kevin Garnett retired. KG the big ticket retired a few years ago so he's no longer there. Adil Momin saying Celtics will come out of the East. Brown, Tatum, Hayward's injured. It's a spacing centers will soon be a liability. Exactly that's what I'm saying. रहता ही इंजर्ड है बेचारा. Hayward को तो यार जब से वो टांग गई थी और टूटी थी उसके बाद से injured है. But yeah, I agree. Spacing and having the range is extremely important for a big guy. Again, Jokic has been knocking down threes easily. I think Rudy Gobert is one of the उनका क्या चल रहा है? Jazz का और उनका. Jazz are 2-1 up. They were dominating the Nuggets yesterday. उन्होंने भी कोई 40 पॉइंट से हराया उनको कल. 87-120 ऐसे कुछ स्कोर था उसमें. क्लिपर्स भी सुकून से जीत गए हराम. क्लिपर्स भी कल जीत गए. वो इंजर्ड हो गया था बीच में लुका. He twisted his ankle. He might be doubtful for game 3. Game 4. Game 4 sorry. Yes. It's already 2-1 to the Clippers but अब ये सारे बेस्ट ऑफ 7 है एंड तक. यार ये बेस्ट ऑफ 7 किसी ज़माने में बेस्ट ऑफ 5 होता था फर्स्ट 7 बहुत लंबा है यार. यार बस वो इक्वल चांस देने के लिए ना. समटाइम्स इट टेक्स यू टाइम टू स्टार्ट. लेब्रॉन का वो 3-1 अगर आप बेस्ट ऑफ 7 में ना करते तो वो 3-1 द ब्लॉक. भाई block. वो सब वो लेब्रॉन का एक टाइटल एक तरफ और जॉर्डन के 4 टाइटल एक अच्छा तरफ. बस ठीक है. क्या सही बात है. 4 टाइटल 6 टाइटल मतलब ठीक है 2 तो उसके मेरिट पे दे दो ना. दो बार उसने 3-peat किया. मजाक नहीं है. तो आपने डॉक्यूमेंटरी देखी थी? ऑफ कोर्स देखी है. उसकी ड्राइव चेक की. भाई ही नेवर हैड टू फेस अ टीम बेटर देन हिज ओन. ओके लेब्रॉन ऑलवेज हैड टू फेस ऑलवेज नहीं क्वाइट अ फ्यू टाइम्स हैड टू फेस अ टीम बेटर देन हिज ओन. तो लेब्रॉन ने भी तो खुद जाके अपनी जो है वो सुपर टीम्स नहीं बनाई. भाई पहला वो स्पर्स से हारा. वो कैसे वो से लड़ जाता है यार. भाई देखो जब वो पहली बार और फिर वॉरियर्स 4 साल पहली बार जब वो हारा था आई एग्री. उसके पास डॉनियल मार्शल
Warriors. वो क्या नाम था उसका, ज़ेड्रोनिस जो था, ये ह्यूज जैसे Ilgauskas. लैरी ह्यूज जैसे जो है वो टर्टी प्लेयर्स थे, बट उसके बाद जाके विद द हीट लूजिंग टू द मैवरिक्स, हीट वाले चलो ठीक है, अच्छा वो एक लेकिन मान लिया। कैव्स वाले तो मानो ना कि कैव्स वाले तो थे ही नहीं, कैव्स वाले में उसका एक ही तो सीजन था, उसके अंदर तो बनता कैव्स था। वाले हर साल उसको ज्यादा मुश्किल टीम मिली है यार। आई एग्री, बिकॉज उस तो जमाने फिर ग्रेटनेस मानो हाँ ना तो फिर उसके LeBron। ग्रेटनेस क्या मानो, उसके बाद उसने जाके जो है वो 3 जो है सुपर टीम्स बनाई हैं और फिर छोड़ के भाग जाता है। इसमें क्या बड़ी बात है, हर कोई सुपर टीम बनाता है। He went back to Cleveland, abandoned them after championship. अब कायरी बगैरत निकला, हमारी गलती है। अब ये भी सही है। Let's read some of the comments. बोबान जैसे सेंटर्स चाहिए ख्वाजा को, हाँ बड़े logs who just stand in the भाई paint. एडी है हमारे पास, उसकी गेम देखो आप। वो भी 3 pointers करता है ना अब, लेकिन मिस करता है ना, फिर हमने उसको मना किया तो उसने जाके 40% shooter नहीं है, बट मतलब he's a high percentage shooter. स्पीकिंग ऑफ 40% शूटर, ये क्या कर रहा है हमारा कैप्टन नजर वो भी shooters नहीं पकड़े वो जाते 40% चूतड़ ही हो गया ये बेसिकली। रोहित कहने guys your thoughts about Giannis probable Warriors trade. यार अगर यार Giannis को ट्रेड कर दें मैंने- तो बस फिर आप दे दें वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टेप यार करिए फिर बंद कर दो ना बास्केटबॉल, खत्म बंद कर दो। लेब्रॉन को अगर दे दें तो फिर ख्वाजा को मसला नहीं है। ओह या बेबी, रोशान कह रहे हैं लेब्रॉन ग्रेटर देन जॉर्डन always had Pippen. 100% यार। And Mr. Ooh. Arsenal is just asking NBA game questions. How's Zion the face of NBA 2K? Yeah, Zion is a Hype machine. He's a bit of a T-Rex when it comes to his arms, but he has the inside game. Roshan saying Jordan could not carry that Cleveland team. I don't think anyone needed to carry that 100% Cleveland यार। team. भाई LeBron never lost in the first round of the playoffs. Adil saying y'all need to watch Inside the NBA. I do watch it, and yeah, it has some of the यार मुझे funniest honestly moments, I man. like Undisputed, वही मजा आता यार है मुझे वो चार्ल्स बार्कली और Inside the Shaq NBA बस का ठीक है यार। वो अच्छा लगता है, एक juxtaposition as Mossad would put it. मुझे honestly Shaq annoying लगता है। सर चार्ल्स अच्छे हैं। Roshan Sir saying Charles। only one I think LeBron lost himself was the 2011 finals. Yeah, he was a favorite. You can't lose to that Mavs team with the aging Dirk and हाँ वो Jason Kidd वो बुरा था। and Terry in there. AZ watches too much Shannon on Undisputed. Sub छोड़ो, who is winning the UCL tomorrow? I don't think Bayern Munich. आज or नहीं है, कल. अच्छा कल है। It's Sunday night. No, I think it's tomorrow night, 11 p.m. I think संडे है ना, आज तो सैटरडे है, क्या हो गया? हाँ, Saturday को नहीं है. Tomorrow 11 p.m. I don't see it going past Bayern Munich. What do the comments think? भाई what would you like, a Babar 100 and a PSG win, और Babar 100, I don't give a shit about the rest. वाकई यार Bayern यार, Munich लेकिन भी जाए PSG को भाड़ नहीं में. जीतना चाहिए हैं? यार। स्टेटस को रखो, कोई नई यार, टीम नहीं आनी चाहिए। PSG वैसे अगर जीत जाती है ना, फिर I would वही- only want them to win because of Mbappe. I like Mbappe as a player. यार उसको थोड़ा सब्र करवाओ, क्या हर चीज पहले सालों में दे रहे हो? यही तो उसकी ग्रेटनेस लेवल को मतलब एक वो सोलिडिफाई करेगी चीज़ के यार पहले 3 या 4 साल में चैंपियंस लीग्स तो वैसे ही मुफ्त में मिल जाती हैं, वर्ल्ड कप जीत गया अगला, बैलोन यार डोर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका यार। बन जाएगा, मतलब इजीली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। अब फिर लोग कहने शुरू कर देंगे भाई ये तो CR7 के लेवल पे है, और ये Obviously. वो है। क्या फिर obviously? लेकिन फिर उसकी जो है वो स्टॉक वैल्यू भी बढ़ जाएगी, फिर वो क्वेश्चंस आएंगे कि बार्सिलोना जाएगा, मैड्रिड जाएगा, कहाँ वो जाएगा? तो सवाल ही नहीं पैदा होता कभी कहीं जाने देंगे उसको। मैड्रिड जाएगा, वो 100% जाएगा। नहीं जाएगा उसने यार। उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है, उनको पता ही नहीं क्या उसको मतलब रख- क्या कहा यार, हुआ है? उनको पता है PSG वाले नहीं रख सकते उसको। कैसे नहीं रख Ambition- सकते आप सिर्फ चैंपियंस लीग के लिए नहीं भाई? आप खेलोगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो कि भाई आपको 600 मिलियन पर हाँ, फिर क्या करेंगे वो रियल मैड्रिड? रियल मैड्रिड निकाल लेगी, कोई मुल्क बेच देंगे। कहाँ से वो- निकाल लेगी? भाई वो कैटलोनिया को बेच देंगे। वो तो बारसा का है, वो कैसे भेज देंगे? वो यही तो मैं कह रहा हूँ, निकाल लेंगे कि जी कैटलोनिया बेच दो आप। नहीं स्पेन को ये बाकी नहीं पैसे दे ट्रांसफर दें। हो सकता है यार। और हम जो है PSG बुली नहीं होंगे। PSG क्यों नहीं बुली होंगे? कैसे बुली होंगे? उनके पास पैसा होंगे। नहीं है। पैसा, फिर बट एक वक्त आएगा जब आपको पता है प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर प्लेयर्स के पास इतनी पावर होती है कि दे कैन मैनिपुलेट द बाय आउट क्लॉजेस एंड थिंग्स। आप नेमार को ही देख लें जो उसने बाय आउट लेकिन वो क्यों जाना चाहेगा रियल मैड्रिड? क्यों जाना चाहेगा बिगर क्लब? इट्स द हिस्ट्री ऑफ द गेम यार। अब वो खुद हिस्ट्री बना, वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा बट है। हिस्ट्री इन PSG मैटर्स वेरी लिटिल। तो वो भी अगर वही 2-3 Farmers CL जीत League जाए वाली बात रहेगी। और 36 गेम आप जो लीग में खेलते हैं व्हिच आर मीनिंगलेस गेम्स, आप अगर अगेन अपने आप को यार test winning is करना never चाहते हैं, meaningless अब तुम यार। सोचो मेसी जाके अपनी पूरी जिंदगी PSG में खेलता रहता, हर सीजन 50 गोल मार रहा है, हाँ। ठीक है, एक आध चैंपियंस तो यार 3 CL भी तो जीते हैं उसने। 3 CL जीते हैं, बट ला लीगा में रहते हुए playing some of the best Madrid teams that also changed the equation for him, right? जब बातें होती हैं कि भाई एल क्लासिको में उसने ये किया, इनके खिलाफ ये किया, रोनाल्डो और मेसी के हेड टू हेड स्टैट्स,
That's a different conversation. PSG जो है वो इस वक्त तो किसके अभी खिलाफ? उसका राइवल लियोन कौन के होगा खिलाफ। बारसा में? बारसा में मेसी अगले 6 साल और खेलेगा। कौन सा But 6 साल? अब तुम ये सोचो, अगर एम्बापे बारसा मैड्रिड जाता है तो तुम्हें क्या लगता है बारसा नहीं खरीदेगी फिर और 10 सुपरस्टार्स? किसको खरीदेंगे? हो वो सकता तो है पहले फेल हो भाई चुके हैं। नेमार शायद वापस चला जाए वहाँ पे अभी भी। क्यों जाएगा क्यों नहीं यार? जाएगा? If you become a legend at Barca versus PSG, it's a bigger deal. I don't agree with that. The history. अब तुम सोचो यूवेंटस अगर आ जाता है एम्बापे, Oh yeah. हाँ वो तब oh yeah, तब मुझे बताओ would Mbappe not leave for a more storied and a bigger club than PSG? I just think that the finances can't work. That's the problem. The finance, let's I forget get about the the attraction, वो सब Yeah. ठीक है, लेकिन वो पैसा है हो सकता है ना। मैन सिटी आ जाए वो। जहाँ मर्जी आ जाए, पैसा इतना देना पड़ेगा कि वो कैसे मैनेज नहीं कर पैसा पाएंगे। तो ऑलरेडी ये डिसाइड हुआ हुआ है कि अगर किसी को $500 million भी देना पड़ जाए ना, मेसी के लिए सिटी तैयार है नहीं 500 यार, million देने के लिए। ये तुम बातें सोचो हैं। बातें क्यों है? The market, if you look at the market for Messi, भाई and मेसी the का money बाय you आउट क्लॉज make क्या है? off अगर of कोई it, बारसा फैन है जरा मैं बताएं। 500 मिलियन ही होगा उसका। इतना ही होगा, 300 400 मिलियन है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मार्केटिंग टर्म्स में देखें ये अच्छा, players- वैसे आई हैव ऑलवेज थॉट हाँ। ये जो ऑल दिस फिगर्स वी हियर अबाउट, यू नो, फुटबॉलर इतने मिलियन, डज दैट रियली एग्जिस्ट और इज जस्ट, यू नो, कंप्यूटर नंबर्स? इट्स जस्ट नंबर्स। बट मैं किस हिसाब से वैल्यू जब उनकी वो करते हैं, उनको वैल्यू मार्केट मतलब एक्चुअली इतना पैसा ट्रांसफर होता भी है या नहीं? होता है बिल्कुल होता है। अब ये नहीं पता कि 10 साल में होता है या 2 साल में होता है। हाँ। उनके एड ऑन्स वाला जब हाँ। ये मैन यूनाइटेड का जोक चल रहा था कि जो सैंचो को खरीदना चाहते थे 120 मिलियन कि हम 10 मिलियन ऐसे देंगे, फिर 5 मिलियन ऐसे देंगे, फिर 6 मिलियन हम लेफ्ट पॉकेट से, फिर 7 मिलियन हम राइट पॉकेट से। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो टीम्स नहीं एक्सेप्ट करती बिकॉज दे वांट मनी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी क्यों इतरा रहा है यूनाइटेड। दे दो यार, दे सकते थे वैसे। इस वक्त उनकी टीम अच्छी एक बन रही है, उसके अंदर वो एक कोर जो है वो भाई ये ब्रूनो पॉगबा की वजह टीम से- अब नहीं रही है, ब्रूनो चला रहा है ये टीम। 100% ब्रूनो मैं की तो टीम कहता है। हूँ पॉगबा को बेच दो और कोई यूवेंटस को हमें दे दो या रियल मैड्रिड को दे दे क्या दो वो खरीद के जाएगा। जो कुछ नहीं था तो अजहर अली की फिंगर इंजर्ड हो गई यार है। एक नया ड्रामा है ये, कसम कुछ खुदा की कुछ यार। नहीं बचा था तो अजहर भाई जो है वो यार मैं 10 साल से स्टॉन्च डिसेबिलिटी भी लेंगे। 10 साल से स्टॉन्च अजहर फैन हूँ, लेकिन अब मैं भी इसे तंग आ गया हूँ यार। बस कर देखो, दो। फैंडम शुडंट कम विद ब्लाइंडर्स। हाँ। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी अगर कोई गंदा काम भी करे तब भी आप बस बैठे हुए हैं। यू गॉट टू कॉल अ स्पेड एंड इफ समवनस नॉट डूइंग द राइट जॉब, कॉल इट आउट। लेब्रॉन की भी यही चीज़ है, अगर वो नहीं खेल पा रहा किसी मैच में, यार you have to call it क्या out. हो गया आपको यार? क्यों नहीं? लेब्रॉन आप नहीं ये LeBron struggled after the bubbles been introduced. I don't think he भाई अब cares as हमारे much. 5 of 30 अगर वो 3 पॉइंटर मार रहे हैं तो लेब्रॉन की क्या गलती है इसमें? 5 of 30 उसने 17 असिस्ट दिए हैं यार, किस दिन? 20, 15 एंड 17 पहले How मैच में? dare you? पहले मैच में पहले मैच में 17 असिस्ट थे जब हार यार गए थे जी। तो क्या फायदा? तो अब वो 17 असिस्ट दे रहा और हम 5 of 30 थे फ्रॉम 3। आई थिंक काफ़ी कमेंट्स और भी आए हैं। हाँ जरा पढ़ो। Roshan is saying, oh no, AZ, I like Shaq and Chuck. I like Shaq and Chuck too, Roshan. Adil saying, Jordan had Pippen. LeBron Exactly. had Wade, Bosh and Kyrie for all wins. LeBron ऐसे मतलब मैं ये अकेले नहीं कह रहा जाके लोन teammates नहीं थे। केविन लव भी था मैं उसके पास। ये नहीं कह रहा Kevin J.R. Love क्या है Smith भी यार? था। Kevin Kevin Love is Asad Kevin Love Shafiq। was a 2020 machine. Okay, Asad Put some Shafiq के respect Kevin on Love K यार। Love's name. रिजवान को भी लग गई है। चलो ये एक और हार्ट टूट चलो गया। जी, हम सारे टूट रहे बिखर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लेयर। Can rate both Wade, Kyrie better than Pippen. Yo, listen, Dwayne Wade is regarded as one of the best shooting guards of all यार बस time. कर दो यार। One of the best shooting guards of all time. Not going to take that away from Scotty D is a Wade. top 25 D-Wade, player by of the all way, time D भाई। Wade won a championship before LeBron. Shaq, हाँ। With a washed up Shaq. With a ठीक है washed यार। up Shaq against the Mavericks. ऐसी बात नहीं है. ये स्ट्राउस साहब क्या कर रहे हैं? Strauss वैसे right-handed golfer है. Lefty batsman, right-handed. But that's not Strauss, is it? वही है, Is it? लग तो वही रहा है। मुझे तो Shane Warne लग रहा है. Little topster. हाँ वॉर्न भी हो सकता है। Roshan saying, I hope PSG doesn't win. And Tala saying, only ये if वॉर्न ही था। Madrid pays 300 million, they might. Zidane and Mbappe से पिंकी प्रॉमिस किया है। मैं बता रहा हूँ वो Zidane तो पॉगबा का भी हम कब से सुन रहे हैं। हैजार्ड भी जो है वो Madrid प्लस Zidane कॉम्बो के लिए जो है वो तरसा हुआ था। अब जाके मोटू जो है वो बेंच पे बैठा हुआ है। हाँ ये Adil एंड saying, ऑफ you द think डे NFL will start on time? First opener is September 10th. Chiefs versus Texans. Just hope season opens on time. होम बॉय। Yeah, Mahomes boy will have to have a यार, bubble लेकिन अब- created for him too. यार देखो डैक को उन्होंने डील नहीं दी, कितने कुत्ते के बच्चे हैं मेरे काउबॉयज यार। Cowboys तुम्हें पता है तुम्हारा जो जेरी ओनर है जेरो जोन्स। वो है ही कमीना। लेकिन एक मिनट क्या हाँ। हमारी जो लेब्रॉन पे बात हो रही थी, आप किस हर स्टैटिस्टिकल मेजर पे वो We just MJ की said बी मार रहा है Stats don't always tell the full यार। story. 18 साल के करियर में आप ऐसे नहीं कह सकते यार। ठीक है,
Some of them are meaningless stats. Sometimes you're the only guy on the team scoring the points. That's also true. यार LeBron के पहले आप 6 ऐसे 7 कह रहे हो season- जैसे आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि जॉर्डन नेवर फेस्ड अ टीम दैट वाज बेटर देन हिज ओन. Why? ये फैक्ट है भाई. यार वो लेकर्स बायरन स्कॉट इंजर्ड था. ठीक है, not better than जेम्स his own वर्दी भी because- कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है. जेम्स वर्दी भी बुढ़ा हो रहा था. Magic ब्लेजर्स वो तो छोड़ देना. He was facing the Suns Pistons. छोड़ He was दो. facing the bad boy Pistons during his time. तो वो तब तो वो हारता था. तो हारता था. उसके बाद they defeated the bad boy Pistons, तो right? पिपन जो आ गया था. तो क्या मतलब लेब्रॉन ने कौन सा अकेले जितवाया मैं है? ये नहीं कह रहा. तो मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं कि मैं वो कह रहा हूँ अकेला जॉर्डन जिताता ने है. भी अकेले नहीं जितवाया, बट जॉर्डन की जो परफॉर्मेंसेस थी प्लेऑफ्स में, आप अगेन स्टैट्स निकाल के लेकिन देख जॉर्डन लें. तो फिर वो और अकेला खेलता 6 था for ना. 6 भाई, 6 for 6 क्यों 6 for 6 for 6? 6 यार वही बात है. 6 for 6 फाइनल में सेविया ने भी 6 जीते हैं. एस्पेन्योल आ रहा है, डिनीप्रो आ रहा है. हाँ, ये तो कोई टीमें हैं यार. क्या मतलब टीम है वो? तो यूरोपा लीग की बात हो रही है. वो तुम ये क्यों? कंपैरिजन बात वही है, बात वही है. यूवेंटस जो जाके नहीं जीतती, क्यों नहीं जीतती? तो हमसे बड़ी टीम आ गई थी. बड़ी टीम तो तुम्हारी टीम मेसी कोई ज्यादा एमएसएन कमजोर आ गया होती है. था. That's what I'm saying, but कभी-कभार आपको जॉर्डन जैसी टीम भी तो बट मिलती है. लेब्रॉन बीट एमएसएन प्लस रोनाल्डो प्लस जिडान प्लस ऐसी Once. टीम को उसने हराया. Once. वंस क्या? Once. Once ही तो काफी तो होता फिर है. उसके बाद वो स्पेनियोल से भी तो हारा है, मैवरिक से, with the super team. कोई बात नहीं यार, ऐसे हो जाता है. 8 लगातार फाइनल जाना यार. 8 लगातार, और वो भी तो भाई 3-3 बैक टू बैक. आप कौन से बैक टू बैक? 1.5 साल वो बेसबॉल खेलने चले गया. अब ये सुनो, बैक टू बैक कैसे? वो मैजिक से भी हारे थे. क्या मतलब? मैजिक से नहीं हारे जब वो 45 नंबर था. भूल गए आप? यार वो तो जब उसका ओ यार, कमबैक वो तो सीजन ये था. क्या? या फाइन, आई एम सेइंग हाँ. बैक टू बैक इन द सेंस कि 3-peat 2 बार किए ना उसने. हाँ, किए. राइट, 3-peat 2 बार ठीक है. किए. देन ही लेफ्ट द गेम इन द मिडल ऑफ हिज प्राइम. यू वॉच द डॉक्यूमेंट्री, आई वॉच द डॉक्यूमेंट्री. उसके पास जो भी वो एक अब वो उसकी मर्जी, हम क्या करें. जो भी था, बट आप लेकिन लेब्रॉन ने तो नहीं छोड़ा. लेब्रॉन और ने लेब्रॉन क्यों- कॉलेज भी नहीं गया. वो खुद उसने अपने तो लेब्रॉन game बनाई. कॉलेज नहीं गया उसके तो हम पास- क्या करें उसका? उसके पास कभी कोई बड़ा कोच भी नहीं था. उसके पास फिल जैक्सन था. किसके पास? फिल जैक्सन था. तो फिल जैक्सन गंजे के पास. फिल जैक्सन कौन सा उठ के जो है वो पैदाइशी तौर पे आपको बड़ा कोच मिला था? है तो बड़ा कोच ना. बड़ा कोच बन गया था बिकॉज जॉर्डन वन. यार हद हो गई. आपने- जॉर्डन के एक second. बगैर वो टाइटल नहीं जीता. आपने डॉक्यूमेंट्री देखी थी? एक सेकंड, मेरी सुनिए बात सुनिए सुनो, सुनिए. मेरी फिल बात जैक्सन सुनो. वाली बात. फिल जैक्सन का वो कितने टाइटल जीता वो लेकर्स के फिल साथ. जैक्सन का सिस्टम नहीं. या क्योंकि फिल जैक्सन टुक अ सिस्टम फ्रॉम अनदर गाय एंड देन वेंट एंड मेड इट यार बेटर. ग्रेट कोच तो था ना. ग्रेट कोच. मोरिनियो भी ग्रेट कोच था ना, जो आप लोगों को सब कुछ जिता गया. ही वाज अ बेटर मैन मैनेजर. जो भी है. तो ठीक है, जो भी है. ऑफ कोर्स इस लेवल पे तो मैन मैनेजर ही होना मोरिनियो ने भी पड़ता है. इंटर में जाके क्या किया था? वो ट्रेबल मारा है. ट्रेबल मारा था, बट हाँ. बिकॉज ही हैड द मैन मैनेजमेंट स्किल. हद हो इंटर गई कोई यार. इतनी कमजोर टीम नहीं थी बाय द वे. बहुत strong team थी. बहुत स्ट्रांग टीम थी, राइट. तो हम उस चीज से ये नहीं निकाल रहे. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जॉर्डन हाँ. की अपनी जो परफॉर्मेंसेस थी उन प्लेऑफ्स के अंदर, he was dominant. He was भाई, wrecking people. 45 पॉइंट्स मारे हैं इसने अगेंस्ट द गोट वॉरियर टीम, द ग्रेटेस्ट टीम एक ऑफ बार ऑल किए, टाइम. जॉर्डन ने कुछ 6 बार किए हैं. यार कौन किसके खिलाफ? In his first ड्रेक्सलर के, season, ब्लेजर, गंजे के खिलाफ. आपको याद है लेब्रॉन वाली वो कंपैरिजन उसकी आ जाएगी. ऑपोजिशन बताओ ना मुझे क्या यार. मतलब opposition फाइनल बताओ? में आप जिम्बाब्वे आ गई, फिर क्या फायदा? जिम्बाब्वे कहाँ से आ रही है? कौन सी अच्छी टीम आई थी? वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस टीम्स कितनी स्ट्रांग होती थी उस जमाने में. फाइनल की बात करो ना यार. सुपरसोनिक्स आए अब थे, मैं सन्स आए सेमीफाइनल्स थे, गिनूं. लेकर्स आए थे, ब्लेजर्स लेकर आए खत्म थे. लेकर दे एड्स हो गया था मैजिक को यार. यार अब तुम हर चीज को डिस्काउंट कर दोगे. मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ठीक हाँ. है, थोड़ा सा उसमें आपको इम्पैक्ट आता वो है. डायनेस्टी but स्पर्स थी. जैज की टीम भी जो है वो कम नहीं थी. यार they were the winningest team. 40 साल का स्टॉकटन था, 35 साल का कार्ल मलोन. नहीं थे भाई, प्राइम में थे अपने दोनों. बस कर दे प्राइम यार. में थे, जाके देख Jeez ले. यार. मैं बता रहा हूँ प्राइम में थे. जैज कम ऑन मैन. भाई प्राइम में थे. they were the most winning team in the NBA when he faced यार them. जिस टीम का नाम ही जहाज है, आप कैसे सीरियस ले सकते हो? जहाज नहीं, गाने का नाम है. आप ये सोचें कि माइकल जॉर्डन को ऐसी टीम मिल रही है जिसके अंदर कार्ल मलोन को MVP जो है वो डिक्लेयर किया था. वो इसलिए- तब भी तपा हुआ है. वो इसीलिए किया अच्छा, था. personal. जॉर्डन ने कहा कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी. वैसे अगर आप कार्ल मलोन की बैक स्टोरी पढ़ो तो बहुत बड़ा बेशरम आदमी था वो एक्चुअली. कार्ल मलोन ने काफी हरकतें की हैं. हाँ. he has a son who's हाँ, who's an जिसको उसने NFL कभी claim ही player. नहीं किया. कोई सा बेल, I can't remember. So many comments, I don't know where to start now. Adil saying Dak's not worth 40 mil per year. And यार worth is what you can pay him. ये क्या बात हुई? honestly, there's so many comments now that I can't go back into this conversation. So we'll just भाई जो लेब्रॉन वाले आप जो पॉजिटिव वाले वो पढ़े जो हैं. narrative fit करते हैं वो वाले पढ़े. आदिल कह रहे हैं it's not a documentary, it's an autobiography, but propaganda था. यार propaganda piece है. but उसके अंदर facts से ऐसी बात नहीं है. And Zainab saying time to talk about food, maybe that will bring a wicket. Zainab वैसे wicket सिर्फ तब आ सकती है जब फवाद आलम दोबारा bowling कराने आए. Sonics with Kemp, Peyton, man were a great team in '95. Yeah, they had that. क्या जीते हैं two-man वो? game going. क्या यार, जीते हैं वो? क्या मतलब जीते इसीलिए नहीं क्योंकि दूसरी तरफ लेब्रॉन खड़ा हुआ था. वो यार did they come back to back? Did they repeat? None of them came back to the finals except Jazz. Jazz. Jazz वो भी बस ठीक ही थी यार.
यार तुम निकाल दो, हर किसी को निकाल दो. भाई वॉरियर्स के जो 4 साल Rashan उन्होंने is saying, compete I'm किए. team AZ, Karl Malone is Peter, horrible man Malone. Yes, we've 100%. heard some horrible stories about Karl Malone. स्टॉकटन यार 5 फुट 10 इंच वाइट गाय, उसने क्या करना था? He was an Bulls के assist खिलाफ? king. और यार assist उसके king numbers है. जाके देख लो John Stockton I के. know, I agree, The but second guy in that list is at least like 10 years away from John Stockton in terms of प्लीज assists. यार जॉन स्टॉकटन. Killers was last year. जॉन स्टॉकटन से तो अपना छोटा करी अच्छा है उससे यार. In December last year. Killers was in the National Day weekend. हकीम को कौन गार्ड करता था? लॉन्गली. यार लूक लॉन्गली करता था, हॉरिस ग्रांट करता था, ओ यार बस कर दो यार. बिल कार्टराइट करता था. यार ये कौन से टुंडे को ले आए हो? Bill Cartwright was a coach. मैं ऐसे बोलूं जी Raptors J.R. at some स्मिथ point. मेरा वो था. Yeah, J.R. Smith was a J.R. Smith role ने वैसे player. अच्छा ट्रोल किया था पिछले मैच में Yeah. ब्लेजर्स को. GSW team was the best team. I am not denying that he played one of the best teams. यार पता हूँ And मसला क्या था? 3-1 is remarkable. मैं by any बताता हूँ means. दो चीज़ें. द मिथ्स अराउंड जॉर्डन, क्योंकि 90s में उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था. 90s में एक अनडिस्प्यूटेड फुटबॉलर किंग नहीं था. लुक एट दैट शॉट बाय डॉम बेस्ट डीप पॉइंट. क्योंकि फुटबॉलर रोमारियो था, बाजियो था, फलाना थे. 90s में बहुत सारे टॉप फुटबॉलर्स थे, ठीक है. लेकिन वो सब एक दूसरे के साथ compete करे तो अनडिस्प्यूटेड CR7 मेसी लेवल का कोई एक बंदा नहीं पूरी स्पॉटलाइट लेके जा रहा था. जॉर्डन का ये था, हाँ जी ये तो क्लियर नंबर 1 है. Yeah. तो फिर उसकी एक मिस्टेक बन गई थी. Mystique नहीं, पर इसलिए लोग जूम आउट करके नहीं देखते कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था. भाई जब वो आया था उस जमाने में लैरी बर्ड तब तक खेल रहा था, मैजिक जॉनसन भी खेल रहा था. हाँ. He played against the Celtics. He dropped मतलब वो the, एक the राइवलरी थी ना. He dropped the 63 in the Garden. Fawad Alam 2. Oh, he's picked up another. Fawad Alam has 2 wickets in the match. He's the highest wicket taker for Pakistan all of a sudden, and that's Chris Woakes gone for 40. Fawad Chadda Alam has picked up 2 wickets, more runs than he scored in the series. And will the declaration finally come? England are 547 for 7. Amid all of that cricket, basketball talk, we forgot that Fawad Alam was still bowling, and the man with the golden arm, the golden mustache, has picked up another. क्या बात है भाई. फवाद आलम शाहीन शाह से ज़्यादा विकेट ले गए. Is Fawad Alam the greatest Alam to ever play for Pakistan? यार आपने वैसे वो देखी थी इंतखाब आलम की जो 14 अगस्त पे? दैट वाज सो गुड. वो जो अपनी दिखा रहा था पार्टीशन स्टोरी और ये वो वेरी वेरी मूविंग एंड वेरी यू नो एंड ऑनेस्टली इट्स अ वेरी अंडर डिस्कस्ड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इंडिया में भी हम दोनों ने ना एक ये बात दबा दी है, द पेन एंड द सेक्रीफाइस एंड द स्टोरीज. आई थिंक पीपल डोंट वांट टू रिविजिट इट. जैसे हम गोरे देखे ना बार बार वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरियाँ दोहराते थे, हम ये करते नहीं है. They milk it in a way. यार दे डू मिलकर, लेकिन ये स्टोरीज बताना भी बहुत जरूरी है यार. It's absolutely important because आपको अंदाजा नहीं होता कि actual struggle Especially in these kinds of social media times, जब हर कोई ट्रोल कर रहा है, रीजनलिज्म चल रहा है, तेरा शहर मेरा शहर चल रहा है. मतलब it's a factor to bring unity into place because if you have these kind of stories and people realize कि भाई struggle कितनी थी आपको इस मुल्क को बनाने में या इन independence को हासिल करने में कितनी मेहनत लगी थी. सही बात है. That's what changes the equation. स्पीकिंग ऑफ आज़ादी के लिए मेहनत, स्टुअर्ट ब्रॉड साहब आ गए. हमें अभी आज़ादी के लिए मेहनत यार, हमें आज़ादी दें, मुक्ति दें, डिक्लेयर करें, इनिंग्स खत्म करें. हमें भी आज़ादी दें यार इस बैटिंग इनिंग से. Umair Abdullah has a long comment. These people have been talking about football since the last 30 minutes continuously. Too much change of pace will make me start watching football eventually. These people have been talking about football for the last minute 30. I'm just reading the comment again because he put it twice. But yeah, we'll just come back to the cricket a bit because the innings might just start winding down. Also, if you forgot, Stuart Broad has a best of 169 against Pakistan in that infamous Lord's Test in 2010. We'll cover more sports over time. I think we'll focus on cricket more because we do have a lot of people within this room. NBA इधर सुबह 4 बजे शुरू होता है. यार मेरा भी यही मसला हो गया. I'm an avid follower. I can only catch the games between 9 and 12. After that, it starts affecting my time. या मैं सुबह उठ के 7 बजे वो Western Conference matches देख लेता हूँ, but highlights or articles और ये वो, I think I follow that more than I follow cricket perhaps. और YouTube पे बहुत अच्छी presence है उनकी highlights की, वो बहुत आराम से. That's what changes the game for me. Oh, first delivery and he's edged it to the slip, but it's fallen just short. Fawad Alam कुछ तो हमारे लुत्फानंदोज होते हैं. producing some absolute peaches here. It was a straight delivery and Asad Shafiq was not expecting it either. Neither was Stuart Broad. बैठ गया. Yeah, they just released a new Killers album a day before. I got a message on ENGvPAK. I haven't listened to it yet. यार अनगामी. I will listen to the music in due time. Imploding the Mirage, exactly.
I'm going to stay away from it for a bit. Oh, another leading edge from Fawad. This wicket suddenly has demons. यार अब फिर डोम्पेस आके हमको लिटा देगा फिर 2 फिर 3 for 45 हमारे मिडिल ऑर्डर को उड़ा देगा. Zainab is saying Fawad roll over the tail. First ever 5 for him. Yeah, Zainab, this might just happen. यार हो भी सकता है वैसे. But जो रूट इतना कमीना है कि जैसे ही वो देखेगा फवाद आलम की 5 आने वाली है डिक्लेयर कर देगा. मेलफॉय का बच्चा फवाद आलम टू बिकम अ न्यू ऑलराउंडर. एक ज़माने में पोटेंशियल था इसमें क्योंकि ये जब T20s में भी कराची के लिए बॉलिंग कराता था. यार मेरे कज़न वगैरह इसके साथ काफ़ी खेले हैं बाय द वे. अच्छा. हाँ क्योंकि कराची बॉयज़ हैं, कराची के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली है. आफरीदी और ये सारे जो हैं वो एक साथ ही खेलते थे. वो भी ये कहते हैं कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल पीपल टू वॉच while playing with वो it. भी रेट नहीं करते थे इसको. But रेट के अलावा कहते थे रन्स मतलब you used to make runs for fun. It's just not fun to watch him. तो एस्थेटिकली प्लीजिंग तो डेफिनेटली नहीं है. रन्स होते हैं असली हो या नकली. 547 Yasser for 7. continues. Ooh, good ball. It's a push, but I would like to go back and just tell our friend Umair Abdullah that if you haven't been watching football, I think आप this is यूए probably के फैन बन जाए यार. one of the best times to watch football. There's so many great players all across the leagues across Europe. So much football is coming up all of a sudden. Driven up Ishley, it's a diving effort from Shadab, but it's going to go past the point fielder. There is a deep sweeper in place, but he's not going to cut it off. It's Mohammad Abbas. He's a little too slow. And that's 4 runs for Dom Best. 550 up for England in the 150th over. Yeah. Where are they going with this innings, भाई? जान छोड़ दो अब हमारी. Practice के लिए खेल रहे हैं अब तो मुझे लग रहा है. I think they're just warming up for whenever the next test series is. Thickish edge. Drive and How close was he? Yeah. I think it was always behind him. But it was a good effort from Shadab. He's always putting his 100% in the field. And that's why he's going to be the future captain of Pakistan. यार वैसे अब शदाब की बात आपने छेड़ी है. I think he definitely needs to start thinking about developing as a batsman. Number 5 batsman बन जाओ. मैंने आप लोगों को कोई 2 महीने पहले कहा था कि अगर फवाद शादाब एज अ बैट्समैन आपको मिल जाता है, फॉर मी दैट्स मोर वैल्यूएबल देन अ बॉलर शादाब, बिकॉज आपके पास है ही नहीं बैट्समैन यार. आपके पास लेकिन फिर आपके पास लीड स्पिनर नहीं रह जाएगा ना यार. लेग स्पिनर ठीक है. आप लीड स्पिनर आई फील कि चलो वनडेज में इमाद आपको मिला हुआ है एक हद तक यार. वो लीड स्पिनर नहीं है यार, वो कंडीशनल है. I can say that again, cut away, but Shadab मतलब शदाब जेन्युइन मैच विनर है बॉल के साथ फिलहाल है. लिमिटेड ओवर्स में है, बट टेस्ट में वो क्योंकि नहीं टेस्ट में छोड़ दे. मैं वनडे के हिसाब से, क्योंकि ना हमारी टीम का हमेशा ये मसला रहा है कि हम 6th-7th बॉलर नहीं होता हमारे पास, फिर हमें एक्स्ट्रा टुंडे खिलाने पड़ जाते हैं. इसकी ये बात है कि इसके अंदर एक कीड़ा है क्रिकेट का. Oh, that was a grubber almost along the floor that time. The googly from Yasser Shah and Dom Best camping on the back foot was able to just keep it out. भी यार वेल सेट हो गया. 10 पे चला गया. 10 पे चल रहा है. वो भी क्विक रन्स बनाने के चक्कर में होगा, ब्रॉड भी इसी चक्कर में. बट मेरा मकसद है कि शादाब में फवाद क्यों बार बार कह रहा हूँ, शादाब में वो कीड़ा नज़र आता है कि वो मतलब क्रिकेट के अंदर इतना उसका दिमाग बसा हुआ है. And he loves his game so much. He seems like one of those people who just likes talking about cricket, playing cricket. वो अगर बैट्समैन बन भी जाएगा वो बॉलिंग नहीं छोड़ेगा. मतलब he will be a genuine all-rounder. फील्डिंग में आपको पता है ऑलरेडी वो गोली है. I don't think कि वो बॉलिंग छोड़ के जो है बैटिंग अपनी डेवलप करेगा. I think वो बैलेंस रखेगा. Fawad Vittori I think is the ideal name for Fawad Alam. It's disrespect to Daniel Vittori. यार डैनियल विटोरी वैसे ओवररेटेड नहीं था यार. क्या हो गया यार, ख्वाजा हर बंदा क्या किया उसने अपने करियर में. 400 विकेट्स लिए उसने यार न्यूजीलैंड के लिए. वो 400 नहीं होंगी, 400 विकेट्स हैं उसकी. इतनी ज्यादा हैं. अबे हाँ. आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल स्पेल. जस्ट बिकॉज़ यू कैन थिंक ऑफ इट डजंट मीन. मुझे ऑनेस्टली उसकी बैटिंग याद है, वो जो बैटिंग में 100 मार देता था. मारी है 2-3 सेंचुरीज. 400 विकेट्स हैं भाई. 400 नहीं होंगी यार. ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर यार. 400 विकेटें नहीं होंगी उसकी यार. मुसाद करो यार. मुसाद अरशद 200 को जिसकी यार. ही वाज आल्सो अ वेरी गुड वन डे बॉलर. व्हाट वाज हिज वेरी इकोनॉमिकल. व्हाट वाज टेस्ट मैच विकेट बताओ. तकरीबन 400 हैं. 360 400 कहां से 400 हो गए यार. 362 और 400 में ख्वाजा मतलब मुझसे ले ले. मैं दे देता हूं 30 विकेट इन व्हाट 100 प्लस टेस्ट मैचेस राइट, व्हिच इज नॉट सो बैड. दैट्स अ शिट रिकॉर्ड. या बट वो न्यूजीलैंड में बॉलिंग कहां करा रहा है. उसकी एवरेज क्या है यार. वनडे की बताओ मुझे. इकोनॉमी अब बोलो यार. इकोनॉमी क्या? वनडे में इकोनॉमी नहीं काउंट होती. यार he played in that era यार. 4.1 he played in 90s 2000s era यार. क्या हो तो इस एरा में यार 300 वनडो में यार. शाहिद अफरीदी, come on Sanad Jayasuriya swept away by Stuart Broad, and that will be 4. He's found the gap between mid wicket and
यार वनडे में इतने वो खिलाते थे एग्जैक्टली 8 नंबर पे आता था ओरम भी तो होता था उससे ओरम ऊपर। आगे आता था वो भी फ्रॉड था वैसे यार उसने वो याद नहीं वो जो 100 मारा था एक ही ऑस्ट्रेलिया में। मारा था बस वैसे वो फ्रॉड बॉलर था वो लीग में तो कुछ कर ही लेता होगा। T20 में इसी वजह से कोच वगैरह के लिए भी उसको काफी ज्यादा ये Plus he can इसने open the आईपीएल bowling. खेला हुआ है ज्यादा IPL विक्टोरिया खेला ने? हुआ है IPL भी खेला हुआ है हाँ। अच्छा बहुत ज्यादा खेला है फिर तो इसने। अभी बहुत रिसेंटली तक खेल रहा था जब तक ये कोच नहीं बना था बॉल ही घूम गया है भाई और माजिद कहने so Fawad has edged Shadab in the battle of the all-rounders यार I हद हो mean गई है। he still needs to make runs because that's his primary role here Runs. so these 2 Deep wickets mid wicket deep square in place for Fawad deep and all. everything struck on the pads this time ball turning a bit for Fawad There is some rough there for him to work with तो कुछ Yeah. कर रहा है। VK Skang Vittori carried New Zealand for 2 to 3 years as he did plus he was a captain Carried too, them so. towards nothing. यार semi-final finishes मिल रही थी इनको ऐसी बात नहीं है कौन New Zealand have been quite consistent we forget how many swept again by Stuart Broad this will यार, also फिर find gap the gap में- no अच्छा, there is a अच्छा, fielder there and it's Bhola who gets it weak arm they could easily take I think 3 the there they only won the 2000 Champions Trophy। वही ज़ैनब मुझे हम याद सब मैं नहीं फ्रॉड कह रहा सबको ये ख्वाजा साहब जो हैं वो हर चीज़ को फ्रॉड और है। यार मैंने कहा ओवररेटेड है मैंने ये नहीं कहा अच्छा fraud सॉरी है। वो ओवररेटेड है फ्रॉड नहीं ओवररेटेड है यार सेक्स अपील भी थी प्लस कौन सा है यार? टॉल लैंकी यार बुकिश उसकी एक लुक थी हाँ इवन जब वो आया था ग्लासेस के साथ मतलब वो मुझे बस school उसका boy वो look कैच थी। याद है इस वर्ल्ड कप में दैट वन वन हैंडेड यस Samuels का 2015 वाला बाउंड्री लाइन पे यस यार World दैट Cup- न्यूजीलैंड टीम वाज अमेजिंग। ये देख लें वीके बता रहे हैं 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी 2009 फाइनल क्या जो, क्या जो दोनों न्यूजीलैंड हार गए। ये वो तो न्यूजीलैंड वैसी चोकर्स है ना अलग बात है वो वर्ल्ड कप में पिछली बार नहीं हारे 2011 कौन से सेमीफाइनल खेला था उन्होंने? सेमीफाइनल में खेला है इन्होंने श्रीलंका ने अच्छा हाँ वो जो 100 कोलंबो में उड़ा दिया था संगाया वगैरह बिल्कुल। ने। Swept away this time by Dom Bess at the paddle sweep. 5:59 right now. They will probably pick up 2. Yes, they do. Quick arm, but not quick enough. 5:61 now. England for मुसाद 7 जरा चेक wickets. करें दिन में कितने ओवर्स रह गए और इंग्लैंड का प्लान क्या है? 15 ओवर रह चुके हैं इस वक्त और यानी ये पूरा दिन खेलेंगे। बस यार उनको पता है कुछ क्योंकि चेंज ओवर में आपके 4-5 ओवर्स तो वैसे ही 3 ओवर तो हाँ चले नहीं अब जाते इनका कोई इन्होंने Yeah. पूरा दिन ही खेलना है। हैं 19 ओवर रहते हैं तो शायद एक हमें 10 ओवर का स्पेल मिल जाए 600 के करीब ये दे शुड बी डिक्लेयरिंग नाउ कि 16 ओवर यू नो वी कैन गिव 4 ओवर बर्स्ट्स। ब्रॉड का छक्का नहीं हुआ Oh, almost bowled him but he's just missed once again. अबे हमें चौका नजर आया उसमें when he 4 swept him. है। Don't you question us over cricket info Mossad. तुम तो 2005 से देख रहे हो। और जैनब रजवी कह रहे हैं न्यूजीलैंड वालों के सारे कसूर माफ हैं दे आर मेक अप फॉर देयर लैक ऑफ स्किल्स विद देयर एक्सेप्शनल गुड लुक्स एंड मैनर्स यस दे आर यार, ये क्या जेंटलमैन बात हुई? एंड न्यूजीलैंड टीम ऑलवेज हैड ग्रेट प्लेयर्स Astley Fleming Nathan Astle Catch oh, high in it! the air will this be a wicket अबे यार ये भी नहीं पकड़ेंगे। Naseem has dropped Yeah. it he's dropped our World Cup and Yeah, Naseem Shah should be yeah. removed from the team immediately he no longer has a future for Pakistan can't Yeah, keep it's these dollies ये मजाक कर रहे क्यों हैं सिक्कू भाई वाली बातें कर रहे हो यार? व्हाइट चॉकलेट को आप कैसे ड्रॉप करेंगे ओए होए होए। the Naz स्पीकिंग ऑफ व्हाइट छोड़ो यार। I mean, यार बाय द वे नेथन एस्टले जो भी आप इसको वो कहना फिट प्लेयर था। 200 वो फिट he प्लेयर had a था। record Hmm. for the fastest 200 यार against इतने England आई believe. वॉच दैट इनिंग्स लाइव इतने जोरदार उसने वो उफ। शॉटें मारी हैं स्पेशली हॉगार्ड और कैडिक को Yep. रुला जो है दिया वो- था उसने उनको। मुझे उसका बस नाम ही जो है हमेशा नेस्ले की वजह से एस्टल Astle Dom Bess was trying to attack Mr. Yazir Shah there Naseem Shah made good ground from mid on but just couldn't hold on नहीं to तो it. It was अगर an over the आपने shoulder catch पता नहीं है लगता है करेंगे डिक्लेयर आई गेस। cut away this time but there is Shadab Khan there keeps it यार to उधर no से run. आगे खड़े हो जाए हमें तो जब बॉल जंप करके बूथे पे पड़ जाएगी। इंग्लैंड का डिक्लेयर करने का कोई प्लान नहीं है दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान यार हाँ, ये भी है। यार वीके क्रिस केन्स जो था वो लेकिन वो गेम भी तो आगे बढ़े ना यार। एक हद तक जो है वो तबाही प्लेयर था यार उसका रिकॉर्ड में कल लिटरली मैं कल परसों देख रहा था बहुत आला रिकॉर्ड है बट यार। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मतलब बट उसके ऊपर वो क्रिस केन्स फिक्सिंग और सारे वो सब वो बरी हो गया था वो he got acquitted। हां वो एक ब्लैक स्पॉट आ गया था उसके ऊपर और मुझे लगता है ये बैज ने कोई हरामजादगी की है ही बेसिकली को झूठ बोले हैं यस इसमें। उस पे यही उस जमाने में हाँ। डिस्कशन था क्रेग मैकमिलन भी जो था वो अच्छा बैट्समैन था बट शेन वॉर्न यूज्ड टू हैव हिज नंबर टू
Wasn't Kane convicted for fixing? नहीं, सब he got acquitted. को भी था, but he got acquitted. He got acquitted in everything. हाँ, कोई ड्रामा था. Plus ICL में भी involvement थी Chris Gaines की. तो उसी में तो कह रहा था लू विंसेंट ने कहा था कि भाई इसने मुझे अप्रोच किया था. झूठ बोल रहे हैं. is replacing Fawad Alam for some of his leg stump lines. बहुत मजलूम लगता है वैसे असद शफीक. खाना पीना नहीं देते लगता है. न्यूजीलैंड का एक और फास्ट बॉलर होता था, अच्छी पेस थी, जेम्स बटलर, याद है आपको? यस, ही वाज गुड. हमारे खिलाफ ही वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था. आउट हो जाएगा. वाह, कह रहा आउट हो जाए एक बार. रिजवान साहब इतने कॉन्फिडेंट है कि असद शफीक ब्रॉड को आउट कर लेगा. Swept again by Chris. Big six. Chris Stewart, Alexander Broad, and that's a big six. That's a six, Musad. यार उसको क्यों मुंह में दे रहे हो बॉल यार? वो हिटिंग मोड में आया हुआ है और उसकी फॉर्म भी लगी हुई है. मुझे समझ नहीं आ रहा, जब उसने हिटिंग करनी है, आपको पता है, तो आपने ऑफ स्पिनर लगा के उसको क्यों? एग्जैक्टली यार, आप क्या या ऑफ स्पिनर को कहो दूसरी साइड से बॉल कराए, एटलीस्ट ग्रिप तो अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर. वो विकेटों में दे रहा भाई, तुम रफ में मारो ऑफ के बाहर. डैरिल डफी भी होता था ज़ैनब. यस, आई डू रिकॉल. वो भी फिक्सर था ना, या कुछ था. डैरिल डफी पे भी कोई एलिगेशंस आए थे. उसके वो एक वो थी क्रिस मार्टिन यार, आपको द टेस्ट लेजेंड, नॉट द कोल्डप्ले सिंगर. वो भी शिट है. Sahel, if you can hear us, don't hurt yourself. It's gonna be okay. एक इनका बॉलर भी होता था मार्क गिलेस्पी, सिर्फ बाउंस खिलाता था, आपको याद होगा, गंजा सा. Yes. He was also a good player. गिलेस्पी भी था, और यार एक बीच में वो भी आया यार था. उनका एक बैट्समैन था जेमी हाउ, उसका स्टाइल बहुत प्यारा था. जेमी हाउ, yes. लेकिन उसने कभी रन्स ही नहीं किया जो उसका टैलेंट. Wasn't he the one who got hit in the mouth and broke his teeth? Could be. I think Dale Steyn hit him. और एक वो एफ्रो वाला होता था, हैमिश मार्शल. हैमिश और उसका भाई भी जो था, दूसरा मार्शल जो था, वो भी कोल्डपैक प्लेयर्स बन गए थे. प्लस यू हैड पीटर फुल्टन, जो कि अब उनका कोच है, बिग पीट. चलो सैनिटाइजर मरवाना पड़ गया. क्रिस ब्रैडमैन मार्टिन बहुत आला टेल एंडर यार. उसकी कोई 2 की एवरेज थी. जीतन पटेल था, और मार्क रिचर्डसन अगलीस्ट ओपनर. स्कॉटी स्टायरस वाज अ फन लिटिल यार. आप उसको कैसे भूल सकते हैं, मिस्टर हैरिस को. क्रिस हैरिस, हाँ, द डिबली डॉबली किंग, जो बिल्कुल ही. और गैविन लार्सन भी होता था, गैविन लार्सन भी था. इवन यार डैनी मॉरिसन वाज अ स्पीयरहेड फॉर देम. ही वाज अ डैनी को आप उसके YouTube क्लिप्स देखे, अच्छा बॉलर था यार, अच्छी पेस थी उसकी. थोड़ा अशोक डिंडा स्टाइल था. लेकिन James and Hamish Marshall, yeah. Scott Cyrus was awesome, underrated. James Franklin भी था. James Franklin was a fraud, man. He was actually a fraud. उसको इतना ओवरहाइप करते थे. हर T20 टीम ने खरीदा है. लेकिन पहले उसके पास पेस थी यार. पहले उसकी डिसेंट पेस थी. वो T20 में उसने अच्छा अपने सेकंड करियर बना लिया था. Yeah, there were bits and pieces players, and you're absolutely right. In the 90s, they always had these guys who were neither here nor there, but they got them over. लेकिन फ्लेमिंग की कैप्टनसी में वो सारे गन बन जाते थे. यार स्टीवन फ्लेमिंग खुद कितना अच्छा बैट्समैन था. वेरी क्लासी, टॉल, लेफ्ट हैंडेड. And he had so many 90s बेचारा. Good stop once again there from Shan Masood. जेम्स फॉल्कनर, हाँ, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था फिर उन्होंने बाद में. किसको? फॉल्कनर, मतलब टीम ने उसको फारिग कर दिया था आहिस्ता आहिस्ता. I thought we were talking about New Zealand, that's why. नहीं. I think in their the worst man of the match of a World Cup. Neesham is really underrated cricketer. Yeah, Neesham. वो अब अच्छा हुआ, पहले फारिग ही था. Neesham was again bits and parts pieces. अभी उसने बैटिंग और बॉलिंग बहुत ज़्यादा अपनी इम्प्रूव की है. Zainab is saying Fleming was the best captain of his time, better than Watt, etc. Got the best out of his players. Yeah, he got the best out of a lot that wasn't extremely talented. That one gripped off the rough. और जब वो उनको एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर मिला था, शेन बॉन्ड, उसके बाद तो तबाही मचा दी थी उन्होंने. They won that tri-series, I believe. Yeah, and also they won a bunch of those Transmania, whatever series against Australia as well. A faster delivery from Asad Shafiq. Shane Bond and Asif were probably the biggest lost what talents. I think it's the what ifs of cricket, but Shane Bond was exceptionally talented. मुझे तो वो उसके opening balls में याद है कि वो यॉर्कर कितनी swing होती थी यार, 150 miles per hour पे, kilometers per hour पे बॉल, और ऊपर से swing. बल्कि मुझे याद आ रहा है 2007 के सेमीफाइनल भी ये श्रीलंका से आ रहे थे, when Jayawardene made that 100. Yep. Rohit Singh, Jamieson, the new prospect guy, 6 feet 10. Yeah, we've watched him against India, but he's not a very quick bowler. Again, वो कंडीशनल बॉलर है, उसके अंदर बैटिंग एबिलिटी भी. यार उनका एक लड़का था हमारे खिलाफ T20 खेला था, व्हीलर. ही इज वेरी गुड भी था यार. मुझे तो एडम मिलन भी बहुत पसंद पता नहीं उसको ये क्या करते हैं, वो बॉलर ही नहीं बन पाया अभी तक. वो तेज बॉलर था, एंड ही वाज द परफेक्ट T20 बॉलर, क्योंकि उसके बाद आप स्लो बॉल्स भी डेवलप कर रहा था वो. ही लुक लाइक द राइट काइंड ऑफ गाय. बट Waz is on the mic on the other end. 569 for 7, 153 overs up.
Broad 14 off 15, Best 14 off 23. Yasir Shah is continuing. He's 160 for 2 off his 38. It's been a hard 2 days of toil for Pakistan. They've been out in the field trying their hardest, not getting much. And now England are letting their tail enders bat against us. So make of that what you will. Spinning delivery played off the back foot. यासिर का भी टाइम ख़त्म हो गया यार. आदिल अभी तो वो आपको 6-6 10-10 विकेट्स लेके दे रहा था. अब आप कह रहे हो टाइम ख़त्म हो गया. Little fickle there. मसला ये कि रिप्लेसमेंट नहीं है ना, आपको किसको लाओगे? Wasim bhai just named the entire bowling attack and said everyone was tired. यार वसीम भाई आप फिर सही बात करते हैं यार. कैप्टन ऑब्वियस हैं बट क्या करें. कैप्टन तो है ना. कैप्टन तो है, हमें प्यारे हैं. वो क्या करें. कलाइयाँ उनकी कप्तान वाज़े. वो उनको उसकी तस्वीर निकाल के अपने बेड के यार सामने लगी है. कलाई गॉड यार. KG. Maybe Shadab time in New Zealand tests. Yeah, Jesse Ryder was also a very good player. One Gifted of the most player, the powerful. gifted player. Yeah, he was one of the most powerful players that we've seen, and it's unfortunate that he also faced a lot of issues off the field, so couldn't continue. और मैं आपसे कल परसों ही गैरी बैलेंस की बात कर रहा था. आज ही उसकी खबर आई. ही स्ट्रेस हो गया उसको बेचारे को. आज की खबर है लिटरली. यार गैरी बैलेंस अगेन वो स्टैट्स मर्चेंट है, उसके पास कुछ है यार. he was 600 है उसके यार. but he was found out in test match. बोल्ट ने उसको भशर कर दिया था. बोल्ट और स्टार्क ने. Oh, paddle sweep by Chris. I keep calling him Chris Broad, Stuart Broad. Keep thinking of his dad. यार by the way वैसे हम न्यूजीलैंड की जब बात करते हैं तो अगर आप न्यूजीलैंड का जिक्र करें और शोएब भाई का जिक्र ना करें तो ज्यादती है. शोएब भाई had New Zealand marked as his bunnies. Unbelievable. आप 99 वर्ल्ड कप में याद रखें अगर कि उन्होंने किस किस्म के स्पेल्स कराए. 2 आई थिंक 6 फर्स हैं उसके, दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ. एक लाहौर में था और एक आई थिंक न्यूजीलैंड में था. 6 for 13, 6 for 18 इस किस्म की उसकी स्पेल्स होती थी. बाकी किसी को कुछ करे ना करे लेकिन न्यूजीलैंड को आके शोएब भाई ने जो है वो तो हैंडल ही नहीं कर सकते थे यार. अब डॉम cut away by Dom Bess and he's found the gap between point and third man. That's a good shot from him. England now 575 for 7, 25 away from that 600 mark, and maybe Joe Root is waiting for that to declare this innings. है वो कमीना, कुछ भी हो सकता है. ओए शद्दाद. I was too far away from him. अब डॉम बेस भी यार आपका नौवा बैट्समैन आके ऐसे शॉटे मारे तो बंदा क्या करे. ज़ैनब कह रही है यार वैगनर वैसे कितना अच्छा बॉलर है. comes in and keeps bowling bouncers no matter what. यार वो कमाल ही बॉलर है वैसे. और उसकी पेस इतनी नहीं है by the way. 129 पे भी वो बाउंसर कराता है लेकिन एक्यूरेसी इतनी है उसकी कि makes it difficult. The slog sweep. Is there a fielder out there? Doesn't matter. That's gone into the stands. 6 for Dom Bess and Yasir Shah is being picked apart. 581 now for 7 England. Yasir Shah nearing a 200. Yasir Shah is nearing a 200. We're waiting to see whether England get to 600 or Yasir Shah gets to 200 first. यार. Musad Arshad with another stat. This is the first time England have passed 550 in an innings since they made 589 for 9 declared at Old Trafford in 2016, also versus Pakistan. In that time, India have passed 550 11 times, New Zealand 6 times, Australia 5 times, Bangladesh and Pakistan twice, Sri Lanka and South Africa once. So that's a interesting stat being brought out by Musad Arshad. It also works because your last name is Afzal, so just like one letter here or there. क्या बात है. Change of roles, change of pace. 582 for 7, 154 long tortuous overs bowled by Pakistan, and still no end in sight. Looks like England is just gonna bat the whole day. Yeah. मुझे लगता है कल भी बैटिंग पे शुरू हो जाएंगे ये लोग. यार करते हैं 5 दिन बैटिंग करने में. सीरीज तो जीत गए 1-0 or 2-0, but I think they want to win because of course the points matter on the Test Championship table, and with this win they will only be I think 30 points behind India in second place. प्लस इंडिया के भी मैचेस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के. इनका श्रीलंका टूर तो वो कैंसिल हो गया ना, वो नहीं हो रहा. आई थिंक हाँ वहाँ पे पहले उधर जाना था उन्होंने. एग्जैक्टली. अब इनका जो अगला टूर है या अगली सीरीज है पाकिस्तान के बाद वो ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड ओवर्स के लिए पहुंच चुकी है. सो दे आर गोना प्ले देम. पहले हमारे साथ T20 खेलेंगे. बिल्कुल. हम जो है वो मोस्ट लाइक यानी इंग्लैंड ने अपनी पूरी समर तो निकाल ली है भाई. वो उस दिन यही बात हो रही थी ना, वो जब कॉलिन ग्रेव्स से जो बात कर रहे थे, एथरटन नासिर वगैरह, तो ये कह रहे थे कि एटलीस्ट इस सेटअप की वजह से हमने पूरा अपना समर स्केड्यूल जो है कंप्लीट कर लिया विद फ्यू अमेंडमेंट्स आई एम श्योर. बट और उन्होंने फार्मूला बना दिया बाकी टीमों के लिए कि भाई ऐसे आपने रेप्लिकेट करना है. ज़ैनब विद द $1 million क्वेश्चन, क्या हम T20 में भी जलील होंगे? नहीं यार, इंशाल्लाह जीतेंगे यार. ख्वाजा ने कह दिया इंशाल्लाह जीतेंगे. कौन हमारा वैसे चलो बैटिंग तो हमें पता ही है, हु शुड बी द बॉलिंग अटैक. यार उस दिन हम फास्ट बॉलर्स ही डिसाइड करें. कह रहे थे शाहीन, आमिर, वहाब,
नहीं नहीं lefties. यार, नॉट वहाब. क्यों नहीं What about हसनैन? हसनैन को खिला लें आप. रऊफ. नो. No? रऊफ में मुझे वो यार एक यॉर्कर मजेदारी डेथ नजर ओवर नहीं आ रही. स्पेशलिस्ट चाहिए ना आपको. आमिर तो चलो न्यू बॉल लेगा, 2 ओवर 3 वहाब ओवर यार, निकाल इसीलिए लेगा. मैं कह रहा था. नहीं यार, आमिर भी वहाब डजंट हैव अ गुड Shaheen is not T20 bad at the record. death, by the way. कौन? Shaheen, we've seen him in शाहीन भी the- ठीक है. in the death. नहीं शाहीन तो वो तो एक बॉलर है ना, दूसरा कौन है? आमिर. आमिर को डेथ पे यार या मारे आमिर आपको पड़ेंगे. पता है वैसी न्यू बॉल से इतनी नहीं करा रहा अब. मोस्ट लाइकली अगर इमाद खेल रहा हो, इमाद एक एंड से ले लेगा. शायद शाहीन एक आध ओवर करा ले न्यू बॉल से, फिर आमिर फर्स्ट चेंज पे आएगा. फिर सेकंड ओल्ड ट्रैफर्ड में हो रहे हैं ना मैनचेस्टर में हो रहे हैं जी. तीनों. आई थिंक तीनों मैनचेस्टर में. जरा ही हैं. check करें, या मुसाद शायद क्या एक इधर सीन है, है? 2 उधर है. इस किस्म का सीन है. अब्दुल्ला अमीन कह रहे हैं आमिर, शाहीन, हसनैन और ज़ैनब कह रही हैं हारिस, शाहीन और नसीम को रेस्ट करवाएं. यार शाहीन को आप शायद नसीम तो डेफिनेटली नहीं खेलेगा. आई डोंट सी नसीम डेब्यूइंग अगेंस्ट इंग्लैंड हियर. उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी वर्कलोड डाल दिया है. Cut away towards the slip, good fielding by Shan Masood or Babar Azam. I was not sure who that was. तीनों मैनचेस्टर में. यानी स्पिनर का रोल होगा. स्पिनर का रोल होगा क्योंकि हमने देखा है कि विकेट थोड़ी सी वहाँ टर्न करती हैं. तो फिर दोनों फिर फवाद इमाद और वो तो शादाब खेलेंगे ही खेलेंगे. इमाद तो एज अ बैट्समैन है आपकी T20 शादाब भी टीम एज अ बैट्समैन अब खेलेगा. में. वही बात है. PSL के बाद तो उसका वो नंबर बन गया है. और आई थिंक फिर 3 फास्ट बॉलर सही हैं आपके पास. आपके लेकिन पास एक छठा बॉलर भी तो होगा, छठा स्पिनर भी तो होगा. हफीज होगा ना. मलिक होगा या हफीज होगा. मलिक भाई भी करा लेंगे थोड़े से. खुशदिल भी थोड़ी बहुत करा लेता है. इफ्तिखार भी करा लेता है. इफ्तिखार भी करा लेता है. इफ्तिखार Who would you pick over इफ्तिखार और खुशदिल? I think Iftikhar right now. I think just because Iftikhar had a very good Australia series as well. वो एक इनिंग अच्छी खेली. International level पे हमने उसको थोड़ा सा देखा है. I'm not a big fan of Ifti Chacha, but हैदर तो चलो वन डाउन खेलेगा. हैदर तो यार पक्का. अगर हैदर को नहीं खिलाया तो फिर there are some questions to be asked. 2 डाउन हफीज हो गया. 2 down हफीज हो गया. तो 5 मलिक. 3 पे मलिक को गिरा दो ना. इफ्तिखार को खिलाओ, शादाब, इमाद को खिलाओ, रिजवान आएगा और 3 फास्ट बॉलर आपके. अच्छा रिजवान भी आप बोल रहे हैं. Exactly. तो अगर आप सो इट्स हफीज और मलिक. हफीज और मलिक मोस्ट लाइकली ये क्या करेंगे कि रिजवान को 4 पे खिला देंगे क्योंकि रिजवान इससे नीचे नहीं खेल सकता. अगर आप 3 पे उसको खिलाते हैं बच्चे को, अपना हैदर को, तो 4 पे इसको खिला दें और फिर उसके बाद हफीज और इफ्तिखार या मलिक. हाँ. But the thing is, you can मसला either ये hide कि him at the end of the innings, or you bring him in as a number 4. नहीं. सो हु वुड यू पिक, हफीज और मलिक? हफीज. तो फिर हफीज तो 4 से नीचे फायदा नहीं है उसको खिलाने का. हफीज कौन सी लॉन्ग हिट्स? यार मैं हम हर बार इस पर डिसएग्री करते हैं, but I've always believed Hafiz should have been a better batsman lower down the order. यार उसमें वो 360 एबिलिटी है. आप कब है? मैंने यार इंडिया के खिलाफ भी देखा है हमने. कौन सा? इंडिया के खिलाफ. That was a fluke innings of his life, man. Time, but he played 13 साल में उसने वो एक plays इनिंग those खेली है. paddle sweeps. ऐसी बात नहीं है. Even Afridi used to play paddle sweeps. वो फास्ट बॉलर को मार देता था. हफीज में वो है एक टेढ़ा मेढ़ा वो निकाल देता है. I feel कि आप हफीज को खिला सकते हो. हफीज का मसला ये है, his running ego between the इतना wickets ज़्यादा is bad. उसके जो 100%. शॉट्स जो वो जिस किस्म के मारते हैं वो टॉप ऑर्डर प्लेयर के हैं. तो खिलाएं फिर 1 डाउन पे खिलाएं उसे. ले आया. नहीं 1 डाउन नहीं 2 पे खेल सकता है, लेकिन वही है फिर रिजवान को 5 पे वो आना पड़ेगा. खेलेगा नहीं. उसका जितना बड़ा ईगो है ना आपके यार मोहम्मद 4 पे हफीज तो भाई खेलता है का. वो. 3 पे आता है. नहीं हाँ अब तो हाँ हाँ. फिर हैदर को 4 पे भेज हैदर दिया. को. Oh, that's a beauty from Shaheen. Finally a bit of tail into the left-hander and he's cleaned up Stuart Broad with a beautiful full swinging delivery. England 583 for 8 now in Joe Root. सिबली तो ऐसे ही घूम रहा है भाई. वो तो कोई उसने तो कपड़े भी नहीं बदले. हाँ. वो नाइट सूट में बैठा हुआ है. And he's going to declare. He's coming out to the gallery. Is the signal coming out? Yes, he has. उसने कहा enough is enough. आओ boys, अब पाकिस्तान को हम bowling में तंग करें. That's the end of the England innings. 583, a gargantuan total from the Englishmen, led by Zach Crawley and Joss Butler with 150 and 267 respectively. Zach Lanti, as Musada has called him. And Pakistan will now have a difficult session to face here. About an hour to go in the day's play. And Shan Masood and Abid Ali कितने are ओवर रह gearing गए up. दिन में? 10 overs, about an hour. ओह ठीक है. It's about an hour. यानी 3 ओवर्स के मिनी स्पेल आराम से करा लेंगे. यार डेफिनेट 5. हाँ उसमें मैं वही कह रहा हूँ 15 ओवर रह गए. हाँ. वही मेरी कैलकुलेशन थी कि 16 ओवर 4 ओवर. Exactly, 1 ओवर की हमने बात की थी. और बस कर दो तालियां बजाना यार. ये एफयू तो नहीं बोला यूनुस उसने का. FU कह दिया. नहीं उसने कहा F हो गई है. वो तो हम डेफिनेटली हो गए हैं. Yeah. A tough slog in the field for the Pakistani boys, but 583 तो सबसे पहला टारगेट है हमारा
384 384 क्या बात है. और अब्दुल्ला अमीन कह रहे हैं यार अब्बास को ओपनर भेज दो. माजिद has given us his T20 lineup. आमिर अफरीदी, वहाब, इमाद, शादाब, सरफराज, हैदर, बाबर, फ़खर, इफ्तिखार. सरफराज आपने अफरीदी कहाँ से बीच में डाल दिया? शाहीन मुझे शाह समझ नहीं आया. अफरीदी. अच्छा शाहीन शाह. मैंने कहा ये एकदम से ये रेनेसांस कहाँ से क्या आ रहा हो है? गया यार. ये कहाँ से एकदम से आपने शायद अफरीदी को दोबारा डाल दिया है? कोई पता नहीं है भाई. हो सकता है ऑफिशियली रिटायर हुआ है शायद. हाँ उसने डेफिनेटली ले मिसबा लिया. नहीं हुआ था. नहीं मिसबा ने भी ली. आपने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? यार लेकिन ग्राउंड में उसको लेके घूम रहे इससे ज्यादा क्या रह गया. वनडे में. वनडो में नहीं याद नहीं वो जो यार देव कह रही है मैं वेस्ट जी इंडीज. बिल्कुल वो एक जो आइकॉनिक फोटो है. जी जी दोनों की. क्या बात है. और आदिल कह रहे हैं फ़खर, बाबर, हैदर, हफीज़, रिजवान, इमाद, शादाब, आमिर, वहाब, शाहीन, हसनैन. तो इट्स a Full one batsman पेस short अटैक kind of है. lineup. फुल Yeah. पेस अटैक है. आई डू रिमेंबर अस विनिंग इन मैनचेस्टर. उसमें वहाब ने अच्छी बॉलिंग कराई थी उस मैच में. यार जब शर्जील और खालिद लतीफ़ ने उनको तबाह कर दिया. वहाब की एक ही मतलब अगेन नॉट अ बिग फैन ऑफ वहाब. आई से दैट फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बट वहाब रियाज का एक आपको एडवांटेज ये है कि अगर थोड़ी सी भी ड्राई कंडीशंस हैं, बॉल इधर उधर हो रही है, वो चांस है. बट एट द सेम टाइम वहाब द काइंड गाय जो 4 ओवर में 60 रन भी दे देगा. मतलब ये डिपेंडेबिलिटी आपके अंदर नहीं है कि वहाब रियाज. Didn't he have the second worst ODI bowling figures ever? 107 या पता नहीं कितने साउथ खाए. अफ्रीका के खिलाफ. नहीं इंग्लैंड के खिलाफ. इंग्लैंड के खिलाफ. अच्छा उस मैच में एक बार मुझे साउथ अफ्रीका में भी याद है इसको फेंटी पड़ी थी. यार न्यूजीलैंड में अगर आपको याद हो इसको एक डेथ ओवर दिया था हमने, इसने हरवा दिया था. डेथ ही कर दी थी फिर इसने हाँ. हमारे मैच की. कोई 14-15 रन डिफेंड करने थे, इससे नहीं हुए थे. देखो यार. I think we're just going to take Let's take an innings break. Yeah, a now. little bit of a break. We'll resume in a few minutes once Pakistan come out to bat. See you then.
Good evening. It's back to Good the evening. final little section of the day's play. 10 or 12 overs to go. AZ Khwaja, 580 runs. England have put Pakistan against an unsurmountable task. They're going to need 380 just to beat that follow-on, just to avoid that follow-on. And if that's not bad enough, to open the bowling are the two most prolific fast bowlers England cricket have ever had. James Anderson and Stuart Broad in to face them. Sean Masood, who's a decent Nick. He's got that 156 under his belt. In that first test match. Since then, he's been scoring in single digits. They're going to start off with 4 slips. It's Here going we to go. be James Anderson to Sean Masood. And immediately it's Abid bhai swinging, babu. seaming, spinning, नहीं यार सही थी बॉल सीधी rank पकड़ी। turning, cracks in the pitch, demons in the pitch. Hey. Yeah, I can- And just to have a chance of drawing this game, we need to make 384. Yeah. Oh, there it is. And you can see that Sean Masood does not bode well against James Anderson, an average of 4.85. And that's why that 7 दफा out किया that यार single is उसने। probably going to be a sigh of relief to Sean. Can Jimmy take 600 wickets in this test match? No, there's only 10 batsmen. कितनी चाहिए उसको? नहीं हो जाएंगी अगर look at that average of 70 for Abid Ali. Good Brilliant start start to his test career. Yeah, Ooh, good stop. nice front foot defense from Abid. Who does Abid remind you of besides Sachin Ramesh Tendulkar? यार सोचना पड़ेगा. A short opener who used to be very good on both sides of the, maybe a bit of De Silva, to be quite honest. Ah, जैसे free flowing player है. Arvinder De Silva भी बड़ा ज़बरदस्त player था. Back in the Aravinda. good old late 90s, early 2000s. जैसे गोल मटोल सा. We but are a now, very we are- adventurous player. Yeah, true. De Silva, very similar. We are now taking predictions for the first inning score for Pakistan. Yeah. So let us know, as Abid Ali will get off the mark too, but that will bring Sean on strike. So at least ये pressure तो उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया कि भाई 0 of 15 deliveries और फंसे हुए हैं. क्या predictions आ रही हैं? ख्वाजा खुशहाल कह रहे हैं ट्विटर पे 266, तंजील कह रहे हैं 173, यार हद हो गई है यार. स्प्राश भद्रराज कह रहे हैं 320, VK हसन कह रहे हैं पाकिस्तान, अच्छा हसन कह रहे हैं पाकिस्तान will take the lead of 217. यानी हम क्या अगले हफ्ते तक खेलते रहेंगे. उमेर असलम कह रहे हैं 376, Yeah, just short of the. हाय शबीर कह रहे हैं 400 दोनों इनिंग मिलाकर. यार ऐसे तो ना को यार. Innings defeat. Mr. Arsh ने कहा 420 for no loss. 420 for no loss. That sounds like a plan. Speaking of 420, James Anderson. Whoa. Oh, okay. Jimmy. Follow on कितना है? 384 follow on है जकरिया भाई. That is what it is. नहीं 382 होगा ना? नहीं 81 किए थे ना? 199. अच्छा, हाँ, करना नहीं, है सही, आपको. एक रन ज़्यादा करना पड़ता है. But Joe Root on the verge of another And again, series victory. Anderson's not going to have that cloud cover until it starts pouring But tomorrow. look at the Karate Kid, Stuart Broad. Intense expression. और भाई chewing gum भी खा रहे हैं तो ये planning करके आए हैं मैं full. 7 wickets away, Anderson, from that 600 mark. This has been punched away through cover for a single. But Shamsud getting squared up, but luckily no big swing yet for James Anderson. Let's see how he goes. Ollie Pope seems to be keeping or नहीं, he's in the field. The Popester? No. नहीं field में आ गया. 384 है. अब देखते हैं यार. आदिल मोमन कह रहे हैं आज ही 24 क्या हो गया आदिल? Adil ये पाकिस्तान the टीम में boss. आपके रॉकेट्स नहीं है, आपके टेक्सन्स नहीं है. Very pessimistic. But yes, we have seen this kind of scenario so many times in the past. Pakistani batting just wilts after a huge first innings score from the opposition. First over gone. Pakistan 3 for no loss. Sean and Abid has survived. That's a good sign for things to come. Khwaja, you guys were kind enough to give me the opportunity to take a break for commentary today in the afternoon. And I was moving around on Twitter looking at what people are saying. And I have to say that I'm slightly disappointed about what's coming out of Twitter. And they're ripping into 17-year-old fast bowlers like Naseem Shah. They're doubting bowlers like Shaheen Shah Afridi. And it really makes me question the cricket acumen of some of the top journalists and top thinkers that we have outside of the cricket field in Pakistan. Because frankly, if you've been watching this test match, and you and I, we haven't missed a ball. Shaheen and Naseem, I won't even talk about Abbas because he's an experienced lad. But Shaheen and Naseem have been immaculately accurate. They have been on the money every single over. And they've got no assistance from the weather or the pitch, and the batsmen have been played out of their skin. So we really need to look introspectively when we're criticizing these very young men.
बिल्कुल यार, लोगों का तो बस शौक है तनकीद करना और किसी को डिग्रेड करना. आप देखें यार, उतने दे केप्ट रनिंग इन थ्रू आउट द 2 days. दे केप्ट गिविंग द 100%. अच्छी पेस पे बॉल करा रहे थे, बॉल बीट करा रहे थे, बैट के एज को बीट करा रहे थे, बट दे जस्ट डिडंट हैव एनी लक विद देम. Exactly. एंड दे डिडंट गेट एनी असिस्टेंस विद द ओल्डर बॉल. बिल्कुल रिवर्स स्विंग वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. Yep. सो यू नो, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने तो होल हार्टेड एफर्ट किया थ्रू आउट दिस टूर. This time broad outside of off, and Sean Masood will leave it alone. And it's not just a lack of effort; it's also the fact that they've got exquisite skill. Khwaja. बिल्कुल There's यार. a lot of bowlers in Pakistan that you'd say नहीं इनकी effort पूरी है, but इन लड़कों की skill भी है यार. और They've भाई been आपके hitting- पास बेंच पे कौन है? इमरान खान जूनियर और सोहेल खान, उनसे आपने टेस्ट मैच But खिलाने. I honestly think even that वो response. तो पाँव पकड़ के कब के निकल के होते हैं भाई, हम नहीं ऐसे बॉलिंग. No, but Izzy, that response is reductive. Why should we discuss the bench when these guys are bowling exactly how we want them to? बेंच पे तो उस वक्त बात आती है ना जब हाँ. आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे होते. आप किस तरह एक बॉलर को जज करते हो? Yes, wickets are obviously the metric. Edged. नहीं. Oh no, is it a on the pad? ये It's कहाँ से gone. out It's है? been given immediately. Pakistan are 3 for 1, and I think that's hit Sean Masood far Review too लो high on the भाई. leg. He's got to take that review. अबे ले ले. Yeah, please, Sean's got to take it, and he's taking it with a high five onto the pad. I think that's too high, but it might just be umpire's call. यार ये अंपायर ने कैसे ठा करके एकदम दे दिया. हमारे तो यार कोई आउट नहीं दिया इस बंदे ने. हमारे कोई थे भी नहीं देने ये वाले. भी है वैसे. मिडल ऑफ द बैट ही सब कुछ लग रहा था, बट शान मसूद once again getting trapped on the crease. How was that? Oh, that's too high. I think it's impact outside of off too, Wait a right? second. Khwaja? Impact outside of off. बाहर लगी Yeah, है यार. yeah, अब yeah. वही अंपायर्स कॉल हैंड हो जाएंगे हमारे साथ. But No. that's definitely not hitting him And in that's line. no inside edge there, so that's going to be fine. That's not hitting him in line यार. It's hitting him off stump outside of पे the खड़ा off. है, हाँ. Yeah, that's he's going to be ऑफ fine. स्टंप पे खड़ा है वो यार. बच गया. इम्पैक्ट आउटसाइड. Oh, get lost. And again, just thankfully some Broad coming in with movement there, not a movement, just the angle there. वो यार ये किस तरह आउट दिया तुमने खबीस इंसान. बाकी यार बेशरम आदमी है यार. And early jitters for Shan Masood, 0, 1 or 2 फिर 2 हो जाता, but thankfully a good review time पे ले लिया. That was not out by any means. It just came in with the arm, just swung in Yep. from the round the wicket angle. That didn't look out in by any means यार. क्या है I mean drama. बच गया. I wouldn't say बच गया यार. That was a poor decision to be quite honest. But he got a lot of seam movement there. यार वो आर्म भी अपना इतना बाहर से ला रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी बॉल अंदर आई है. True. Joe Root celebrating a little too early there. Good flick off the pads. That might be another 2 through square leg. Yes, it should be. Jofra Archer has a good arm, but they do get through quite easily. 5 for no loss after 1.3. So Shan looking relatively relaxed. That appeal would have, of course, bothered him, but thankfully we did have a review, and it got retained, and the decision was overturned. But so far कोई वाज़े तौर पे मुझे कोई swing नहीं नज़र आ रही England bowlers के लिए. So let's make them toil a bit. Let's make them earn the runs, earn the wickets especially. कम ही दे तो अच्छा है. Yep. 5 for 0 after 1.3. Broad will continue this time. Much better from Sean, just leaving it on line. 1.4 was gone. Pakistan 5 for no loss. I'd also like to compare, obviously, with the new ball. It's important to see Broad and Anderson out, Khwaja, but I'd also like to see the kind of run rate that Pakistan managed to go at. I think run rate तो definitely England से कम ही होगा, because we'll be going to be playing under pressure, so we'll be a lot more careful with our shots. लेकिन अगर आबिद अली को start मिल जाए, if he's feeling good, he's the kind of guy who hits boundaries. He might enjoy the surface. शान तो हमें पता थोड़ा सा चलो resolute किस्म का player है. Left alone again this time by Masood. But it's a very big opportunity. आप series का छोड़ दें, match का छोड़ दें. Individually, it's a very big opportunity to get in relatively good batting conditions overseas. You should really dig in and make it count. Play an innings that we'll remember कि भाई तुमने साउथहैम्पटन में इतने स्कोर किए थे. हम भी याद रखें, इससे आपकी लेगेसी बढ़ती है, आपके नंबर्स इंप्रूव करते हैं. Of course, in a shaky test batting lineup, it improves your chances of playing more tests for Pakistan. So 5 for no loss. Last ball of the second over coming up. Stuart Broad round the wicket to Shan Masood. Well left. No need to touch those. No apparent big movement off the pitch so far. So they're looking good. Abid Ali versus Anderson will be a good contest. हमने देखा है जिमी ने 2-3 दफ़े edge निकाले हैं आबिद के. He does tend to fish at the ball a bit. He likes to play his shots, so you have to be careful. Yeah. 5 for no loss after 2 overs gone. Again, that breeze is picking up now. Michael Holding and Wasim Akram and Shane Warne, after the end of play yesterday, had some serious words about how the amount of wind in Southampton has disrupted the bowler's performance. I'd like to see if that same would apply
for the English bowlers. Obviously, they're slightly more accustomed to these conditions, especially the likes of Jimmy Anderson. Definitely. 593 international wickets, as this is left alone by Abid Ali for no run. आबिद अली ने भी एक अच्छी 50 मारी थी सेकंड टेस्ट में and he looked set at the crease in the first innings of the first test as well, and Shan Masood of course with that big 150. So it looks like they have the makings of a solid pair. They're very contrasting styles. एक थोड़ा stroke maker है, right hand batsman है, likes to get on the front foot. Shan Masood more of a back foot player, tall and dour batsman. So it's a good chalk and cheese combination. Yeah, it is, yeah. Difference in height, difference in the way they play as well. Down the leg side, and Abid's just going to escort that to the boundary, I reckon. No, it's... I reckon? It's only managed to go to short fine leg, apologies. It's going to be a single off the leg by. ठीक है यार, ये भी ऐसे बचाव कराओ, ठीक है. But important... शुरू के ओवर तो ऐसे ही होंगे. I'm actually quite surprised कि चलो जोफ्रा को तो उन्होंने खिलाया, मार्क वुड को उन्होंने opportunity नहीं दी इस टेस्ट में, उसको भी खिला सकते थे. But I guess they're more वही world test championship points on the line, so you want to play your absolute best bowlers. The one thing, and again, there's not too many good things about the World Test Championship, but one of the good things is that a team like England right now is actually going to look to win the test rather than just draw it out. Because the points are on the line. Oh, big appeal. This should be given. It is. That's trapped him in front. Shan Masood will definitely have to go there. It's hitting him in line, pitching in line, and it's hit him low enough for a wicket. Abid's shaking his head as well, so he's not really getting too much support from his partner there. I would not review this. Khwaja, what do you reckon? Yeah, it looks quite stone dead, but ले लिया है review. यार आप बार-बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हो उसी बॉलर पे यार. Exactly. The only saving grace here is that it's pitching outside leg, but I don't think it is. मुझे नहीं लगता है. वही उसने एक बॉल लगी उसको आपको आउट करने में literally. Could be wicket. Double whammy there from Mohamed Jr. in the back, but could be wicket number 594. Yeah, that's stone dead यार. Oh, unless he's edged it. But edge होता तो खुद review करता ना फिर वो. हाँ, वो unsure था. But I think he has hit it. Yes, Musad Afzal, there might be a chance. Yeah, let's check it out. Nope. There's so much daylight, Khwaja. Pitching in line? Let's see. Yes, it is. That is OU with a side of T, folks. That's middle stump knocked back. यार मतलब इतना कुछ improve करने के बाद अब फिर उसी तरीके से बार-बार आउट हो रहे हो. Shan Masood. आपको पता भी है वो कौन सी बॉल डालने वाला है. आप literally उसके दो बॉलों की मार हो. 6 for 1 after 2.3 पर बंदा क्या बोले यार. And a selfish review क्या करें. 8 times he's got you out. उसने सचिन को 9 दफ़ा आउट किया और आपको 8 दफ़ा आउट किया हुआ है. In good company at least. सीधी बॉल है यार. वो आपको पता है वो आपको मिडिल लेग पे बॉल डालेगा. आप थोड़े से तैयार हो. And Jimmy के आप 600 विकेटों की बात कर रहे थे. Yeah. 290. He's on his way. 594 now. Pathetic batting यार. Can you explain to me, Khwaja, why Shan Masood reviewed that? यार वही है. अब क्या है, चलो यार चांस ले लेते हैं. 3 रिव्यू हैं. Nobody ever wants to believe they're out. Yeah, true. Pakistan और आबिद भी बेचारा जूनियर प्लेयर है. वो क्या बोलेगा उसको. नहीं लो. Junior Tidda. Well, folks, what we've predicted is coming true. Pakistan again struggling with the bat after they couldn't get those 10 wickets. अब्दुल्ला अमीन कह रहे हैं चलो अजहर स्लैश नाइट वॉचमैन एक ही बात है यार. गलत है. ऐसे तो ना कहें. कौमी हीरो हैं आपके यार. ऐसे ना कहें. बट अजहर भी वही फुल बॉल मिसिंग स्ट्रेट फुल बॉल्स गेटिंग लेग बिफोर. अब ऐसी चीज़ें तो बंदा कोई कोच और कोई आपको एक्सपर्ट नहीं बता सकता. अगर आप सीधी बॉल आप पे आप लेट हो रहे हो. इस तरह के जब आप आउट होते हैं और इस तरह के ग्लेयरिंग फ्लॉज होते हैं, then there's no way you can be in the conversation मतलब about. आपने इतनी बड़ी इनिंग खेली एक 156 और आप हमने कहा कि यार चलो he's turned a new leaf और हमने इतनी तारीफें की. एंड में आप फिर सिंगल डिजिट स्कोर कर रहे हो उसके बाद. बाकी तीनों इनिंग सिंगल डिजिट रही. 0, 1 और 4 किए आपने. क्या बंदा बोले आपको यार. And then you kind of start thinking about hindsight, how lucky was that innings? उसमें भी उसके 3 कैच वही छूटे. तो मैं कह रहा हूँ. Here comes Azhar James Ali. Anderson to Azhar Ali. Man under pressure, a team under pressure. A man fighting for his job, fighting for his role on the side as a batsman and as a captain. And he is very used to this role. 10 साल ही बेचारे इसी रोल पे खेलता रहा है. Still a very fine record average of 41.9. Exactly, man. 1600s यार. मतलब if he retires tomorrow हम कह सकते हैं he's had a very glorious career. And that's with 2 very bad years. यानी आप सोचें ये किस लेवल पे जाना चाहिए था. 45, 46 की एवरेज थी 2 साल से पहले. That's very disappointing the way his career track has come down completely down track, you know. Well left alone. That's a wide line from Anderson. I know my personal preferences always do kind of overcast on the show, Khwaja, but I really would appreciate
which has been a very unlucky series for Pakistan. If Azhar Ali can get 100 here, it would really just lift the mood of this Pakistan camp, Most this definitely Pakistan side, यार, most definitely. and कोई भी 100 मार ले यार. bring that impetus needed in the captaincy position. But just in another days of work for Jimmy Anderson, another wicket. यार I'm just disappointed with the lack of innovation on the part of शान मसूदी. यार आप थोड़े तो अपने आप को इम्प्रूव करो, थोड़ा रेडी रहो, थोड़ी गेम अवेयरनेस दिखाओ यार. यही मुझे इन स्विंग मार रहा है, मैं पैड पे फंस रहा हूँ. नहीं, मैं ठीक नहीं कर पाता अपनी वीकनेस यार. Continue here, Jimmy Anderson now Ooh. getting extra bounce, and I told you, Khwaja, it's all happening. Azhar Ali, और वो भी 81 माइल्स पे बॉल करा रहा है. Not even at 85, 87 like our bowlers. And here comes the perfect tind of Andy Strauss. यार मुझसे स्ट्रॉस की टिंट तो ऐसी समझ नहीं आता कि शक्ल कहाँ खत्म होती है और सर कहाँ शुरू यार ये होता जो है. क्रिएट मोड में नहीं आपको डिफॉल्ट शक्ल मिलती है, आप Exactly. बाल लगा लो, चीक्स लगा लो. Exactly. फीफा में वही वाला हिसाब है. Azhar Ali's dismissals versus seem in the UK since 2010. Look, they're all around that वही middle लेग leg बिफोर stump. लेग Yep. बिफोर लेग बिफोर. यार ये थोड़ा अनलकी था, ये अच्छा खेल रहा था. ये थोड़ा प्लेइंग अक्रॉस द लाइन, दैट्स अ पोर शॉट. बट उसके अलावा वही सीधी बॉलें हैं यार, आपसे नहीं खेली जा रही. बंदा क्या बोले यार. एंड आई एम सिक ऑफ सीइंग दिस डैम रीप्ले, दिस इंटायर. कितनी दफ़ा हमें ये दिखा भी चुके हैं. और क्रिस वोक्स ने भी इसको बहुत दफ़ा आउट किया, ब्रॉड ने भी किया, एंडरसन ने भी किया है. हर बॉलर पे इसी स्ट्रेट इन डकर पे फंस रहा है. लेट्स होपफुली ही विल गेट अ स्टार्ट टुडे एंड ही गोज ऑन. लेग बिफोर टेस्ट इन इंग्लैंड 9 दफ़ा आउट हुआ है यार लेग बिफोर. 25 dismissals and majority of them have been LBW. कितने Yeah. बोल्ड हुए हैं? 4 बोल्ड भी हो चुके हैं. It's clear it's a glaring flaw. Interestingly enough, obviously Zach Crawley, very new to the game. Azhar Ali's a veteran and a good one at that. Down the leg side, Whoa. wayward, and that'll be. I much think it's going to be 5 buys for Pakistan. No, ओ दे दो यार, ये भी नहीं देते हमें. 5 legs around, so just be a couple runs. Zach Crawley yesterday was asked, "Why are you batting outside of the crease?" Obviously, many reasons to Abbas because he didn't want to face that movement that he has, the late movement that Abbas gets. But what he also said, he said that he felt by batting outside of his crease, he was taking 2 dismissals out of the equation, LBW and bowled. Maybe Azhar Ali can appoint that to himself as well. यार ही कैन जिम्मी के खिलाफ तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड वगैरह की थोड़ी अच्छी पेस और बाउंसर भी अच्छा मारते हैं. सो इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क क्योंकि अब्बास तो बहुत ही फ्रेंडली है. 78 79 माइट बी डिफिकल्ट डूइंग दैट अगेंस्ट दीज इंग्लैंड बॉलर्स जिनकी हाइट भी ज़्यादा है. Yeah, टॉल एज वेल. true. Leading edge from Azhar Ali, and Khwaja again, his वही that बॉल top body, the upper half of his body falling forward, over. his head kind of like looking into the ground. It's not a good look. 7 for 1 after 3.2. आदिल मोमिन कह रहे 691 runs and 25 dismissals. Ouch. Yes. लेकिन he's had some highlight moments as well in England as well. That century at Birmingham, he's made some 50s. He had that 92 as well in his first ever tour. That was a very good innings at the Oval, I believe, when we won that test match. तो capability तो है अज़हर अली में, ये तो कोई यार doubt 1600 हैं उसके टेस्ट मैचेस में, कोई मजाक है. 7 for 1. Clipped Lovely away. Oh, flick. just beats the man at short leg. It'll go all the way over 4. The release shot from Shot. Azhar Ali, but it was in the air, Khwaja. It was a little bit dangerous from him. कलाइयों का उपयोग there from Azhar Ali. Just a flick of the wrist and it screams away through square leg. Almost killed short leg. But a lovely shot, yeah. That's it. That's the confident Azhar Ali. Just we got to like be to careful see. there because that was an opportunity if it went straight to the short यार leg. कौन सा कैच वो ऐसे पकड़ेगा यार मुसाद. If he ये कौन नहीं नहीं ये तो गलत सही ये तो बात लेग अंपायर ही पकड़ है. Leg सकता umpire था. was- But lovely timing on that one. हमने देखा जब अजहर अपने Runs. शॉट्स खेलता है, they're very crisp, very elegant batsman to watch when he's in full flow. When he does play his shots, especially that on drive, बहुत ही I'd say खूबसूरत it's a शॉट. bit refreshing commentating on Pakistan batting after हाँ this. यार. Getting Gets underneath the that bouncer. short ball, good batting here. So Azhar Ali off with a flourish. 86 miles per hour, good pace from Stuart Broad as well. I know he's in a really poor rut of form, Azhar Ali, but top 10 ever Test batsman in Pakistan. He's up there. यार वैसे अगर हम सोचें तो जो हमारे टॉप ऑर्डर में ये तो मैं कह रहा रन हूँ। रहे हैं, चलो हनीफ और सईद तो ओजीज हैं. नहीं मैं लाइनअप नहीं कह रहा. हाँ. मैं लाइनअप नहीं बना रहा. मैं कह रहा हूँ कि टॉप 10 ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तानी टेस्ट बैट्समैन उसमें 90-10 पे भी आ सकता है. अजहर डेफिनेटली यार, डेफिनेटली. कौन है ही कोई नहीं. जहीर अब्बास, इंजी यूसुफ, मियांदाद, यूनिस इंजी यूसुफ, हाँ, ठीक है ना, इन दैट ऑर्डर. जहीर, मियांदाद एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, इमरान नहीं, इमरान हनीफ तो आएंगे ना. 100% ठीक आएंगे है यार. तो 6 वो हो गए आपके. वो तो क्या बताया हमारे आपने? गॉडफादर हमारे बैटिंग. यूनिस, सईद अनवर,
let me numbers भी तो होने चाहिए ना इसमें इस तरह not by order but just by tally. हाँ हाँ So Yunus, Yusuf, Inzi, मियादाद Hanif 5, Saeed 6. यस टेस्ट में है Saeed. 100% Okay. And फिर आई थिंक वी गो टू माजिद खान एंड मुदस्सिर नजर एंड दीस गाइस तो फिर तो अजहर आएगा. ज़हीर अब्बास आई थिंक वी फॉरगॉट ज़हीर अब्बास 9 हो गए आपके. फिर फिर अजहर अजहर आता आएगा, है डेफिनेटली आता है. दैट्स जस्ट मिसबा की भी बात कर सकते मिसबा हैं वैसे who's the better batsman, मिसबा और अजहर? मिसबा आप वही बात है, मिसबा नीचे आता है खेलने. हाँ आई थिंक उनके रोल डिफरेंट थे बट आई थिंक अजहर प्रोबेबली I think just edges अपने it. प्राइम में नहीं खेला ना. ही मिस्ड हिज प्राइम. बट वो तो अब क्या कर सकते हैं मतलब लाइक तो हमें पता नहीं लगा ना हाँ. कि मिसबा की ग्रेटनेस कितनी हो सकती नॉट थी. रियली और अप टू हिम और जिस रोल में उसने बाद में अपने करियर में खेला है उसमें तो अच्छा था वो. उसमें तो जबरदस्त बेहतरीन था यार. बेहतरीन. आउटस्टैंडिंग In fact, I रेकॉर्ड एज think कैप्टन. test format was his best format. 100% One days में I always felt he was lacking in terms of यार वनडो scoring में rate. वनडो में तो आपको पता है. Whoa! चलो Gone, and it goes straight to the man at fourth slip. It's another wicket. The two Pakistani openers are going to have an early supper. Pakistan are 11 for 2, and once again we see a pitch that England got 600 runs on. Pakistan are barely getting a move on. यार आप क्यों छेड़ रहे हो ये बॉल अच्छी खासी ऑफ पे बाहर है. ये क्या कर सकता है इस पे? वाकई यार. It's a meltdown in the calm box. 11 for 2, and it's all happening as Abid Ramesh Tendulkar Ali has to go back. आबिद डी सिल्वा. यार अच्छी बॉल थी. शार्प कैच एट थर्ड स्लिप. बंदा क्या करे यार अब. यार अब नाइट वॉचमैन भेज दो प्लीज़. बाबर को अभी ना भेजना यार. हमारा कल का दिन ना ख़राब हो जाए अगर वो आज आउट हो गए. जिमी 595. Yeah, there it is. ये किसने मनहूस ने कहा था कमेंट में कि ये 700 कर ले 600 कर लेगा इसी मैच में. Oh my God, here comes Bobby. What a juxtaposition going on. The captain who is struggling. ये for देखिए ये form, देखिए ये देखिए fighting. हमारे टाइम में हुआ ये. हमने मंगवाया ही नहीं होगा. But the captain struggling for form, barely hanging on to his spot. The next big thing, the young gun who is battling, who is his vice captain in fact, coming in at 11 for 2. Yes, captain and vice together. अब हम Miami vice ना हो जाए हमारा Whoa. ब्रॉडरसन के खिलाफ. यार सरोज कह रहे हैं नंबर को भी हो भाई. मिसबा इज बेटर देन अजहर इन टेस्ट क्रिकेट. मिसबा हैज बैटेड इन फर्स्ट सेशंस ऑफ टेस्ट मैचेस 2 unscored. Oh my goodness, the meltdown is continuing here. Babar Azam is not letting out a night watchman. He's come in himself. Average of 44.8, highest of 143 just earlier this year against Bangladesh and Rawalpindi. But he is yet to get to triple figures. यार फजूल की टेंशन दे दी है यार. Really disappointed with our openers. ठीक है यार, it's not easy, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन फिर आप वही टिपिकल आउट हो रहे हो जैसे हमेशा आउट होते हो. थोड़ा सा आप क्वालिटी दिखाओ, थोड़ा सा फाइट दिखाओ. अब बाबर को आपने एक्सपोज कर दिया है 11 पे 2 पहली रात के सेशन में ही. हम कह रहे थे कि वो 3 पे आए 4 पे आए, फर्क क्या है? यार 11 for 2. Pakistan struggling as the sunlight is still out, but Jimmy Anderson's got his tail up. 4 slips, bowling to Babar Azam. And शॉट clips this away off the pads immediately to find leg for a couple runs. Good running as well. Well, at least they're getting off the mark. Babar Azam सीधा भाग भाई, क्या हो गया? That was a bit too full and down the leg side and just flicked it to deep fine leg. Gets 2 runs off the mark immediately. I think Jimmy was trying to bowl like a magic ball there, but look at that one. Just hit the pitch straight and caught the edge, and a straight forward catch by Sibbers, जिसने पिछले मैच में भी 2-3 कैच छोड़े थे, but nowhere this time. Good confident catch and 595 for Jimmy. And England have Pakistan on the ropes. What a delivery that is from James Anderson, just barely getting past the outside edge of Babar Azam, and unlucky enough he got his bat out of the way in time. The future Pakistan captain और and यार जो current vice वाहिद बॉलर है captain. जिसको आपने विकेटें नहीं देनी थी उसको ही दे दी हैं. जेम्स एंडरसन, who's so dangerous when he gets early wickets, when he's feeling himself, when he's in his groove and his rhythm. VK's also mentioned Salim Malik in our top 10 batsmen. Oh yes, Salim Malik was a very fine player, disgraced player but a very fine player indeed, 100%.
played many good innings, especially on spinning tracks and stuff. Anderson continuing this time. Babar plays it away onto the leg side for no run. Short leg in place. Zainab is saying England are standing up close to the stumps compared to Pakistan. Also, our batsmen edging them, and England, while it kept getting beat. I told you we would be 3 down by stumps. My prediction is still on course. यार वाकई नॉट आउट तो चलो उम्मीद नहीं थी हमें कि दोनों आएंगे, लेकिन 11 for 2 भी हमने नहीं सोचा था इतनी जल्दी ये ले Roche is जाएंगे. saying Crawley was leaving this 4th and 5th stump ball early on versus Shaheen. जिमी का इन स्विंगर खत्म हो गया है, अब नहीं कर रहा था. यार अब देखना जब वो ये कराएगा, जो आप लोग बातें करते हो ना वही होती है. उसके खिलाफ ही हो रहा है हर चीज. What a Lovely drive. shot. That is Babar Azam at his finest. A lovely on drive, punch down the ground and look at that ball run away. ये पैसा वसूल हो गया भाई. जो हम 150 ओवर तड़पे हैं इस शॉट के लिए तड़पे हैं. ये अभी पूरी नहीं हुई, वैसे पूरी नहीं लगी है. हाँ ये तो है ना. Look at that shot. Look at Wow. the timing. Look at the class. Look at that player. Oi, oi, oi. The eyes of a tiger, like a tiger. The floodlights are on in England, but अब सारी floodlights, दुनिया की floodlights are on Babar Azam. There What it a is. shot. He Lovely. brings the Roshni into our team. 17 for 2 after 4.5. Beautiful shot. Zakaria ने अच्छी तरह describe किया. Sexy player, sexy shot. बस. Simple, articulate, and to the point is Zakaria Khalid. 17 for 2, last ball of the 5th over. Good and defense. clear off the back foot, यार. Defense. इधर भी अपन नारे शुरू करने पड़ेंगे. 17 for 2 after 5. Jimmy का lovely shot. चलो declare कर दो अब. World peace हो गया. Meta world peace. 17 for 2 after Yeah, I say the 5. on drive is such a difficult shot to play, and Babar plays it sublimely. Like it's just, he's so good at that. Can I ask you something, Khwaja? जी जी You watched a lot of cricket, you watched a lot of batsmen. जी जी. Babar, you think is stronger on the leg side or the offside? Good point, good question. Because he's so easy on the eye with those flicks, but then when he drives, he's just as good. I think उसकी ऑफ साइड गेम काफ़ी अच्छी है अभी भी. लेग साइड तो चलो हमें पता ही होता है, because that's basically if you're bowling poorly. Yeah. लेकिन जो वो cover drive execute करता है against top quality 95 mile per hour bowling, that's quite exceptional. Broad to Azhar Ali, and he's going to keep bowling into his body. That's going to an be, interesting tactic. of course, that's going to work, right? And Adil Mohamed is switching over to the Bucks and Magic. वो इतनी जल्दी शुरू हो गया 10 बजे. Yeah, I'm backing the Bucks to win the whole thing, Adil. नहीं यार. When it comes down to the crunch, it's gonna be LBJ. Man. Okay, here we Need go. that fourth chip. Actually, it's already in the second quarter. Bucks are up अच्छा. 53-34 after losing the first आज game of रात the है series. ना Lakers Blazers 4:30 बजे. Funny, इतनी both सुबह the यार. Lakers and the Bucks lost the first game of the series, right? हाँ, yes indeed. And they were top seed, 17 for Yes 2. indeed. Again, getting that extra bounce is Stuart Broad with the Bounce, new मतलब cherry. bounce. And Azhar might need a new pair of gloves after these bruising that he's getting around his hands and his abdominal region. लेकिन honestly I don't mind अगर वो ऐसी लाइन कराएं. इसका मतलब है तुम LBW बोल्ड तो नहीं होगे. हाँ, but ये लाइन इस लाइन पे हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? लेंथ पे नहीं, इस लेंथ पे नहीं हो सकते. हाँ, yes, in this length, I'm sorry, yes. Adil is saying no way. Celtics are coming out of the East. नहीं यार, कहाँ से आए? अब हम फिर से NBA chat नहीं start करें, लेकिन Celtics तो नहीं आते भाई. Yeah, you and Ahmed Hassan had a good enough time with that. 17 for 2. Stuart Broad now coming in. Good leave. We saw Khwaja. यही बॉल आबिद अली को भी ऐसे लेंथ पे और लाइन पे लीव करनी थी. मतलब आपको अपने ऑफ स्टंप पे 100% श्योरिटी होनी चाहिए. वही आबिद अली हर बॉल हर शॉट खेलना चाहता, तो इसलिए वो पोकिंग एट दैट एंड अ शार्प कैच एट सेकंड स्लिप. लेकिन थोड़ी सी सीम हो रही है ब्रोडी की बॉल. खतरनाक बॉलिंग. यार देखिए, हमने भी उनको 120 पे 4 आउट किए थे ना. ये बात तो है यार. तो ऐसा तो नहीं कि कोई बंजर पिच है. सही बात है. 17 for 2. 5.3 overs gone. It's the Pakistan captain in testing conditions in a test match. Testing times. And he leaves that well drive after ball थी, मूड था अजहर का, but nicely steps out and shoulders arms. Good bowling there from Broad. बड़ा चलाक है, बड़ा devious bowler है. उसने कहा था भाई मैं back foot उसको करा रहा हूँ अंदर ball. Let me go for a full out swinger. Make him chase the ball. Faizan is not happy the way Abdul is being dismissed. He's saying, I know it's early days, but he reminds me of so much of our old batsmen like Hafiz and Shahzad, who would leave their bat outside of off stump asking to be nicked. यार, but he has a bit more conviction when he tries those shots. You know, जब ये रोकने के चक्करों में जाता है तब वो पोक अच्छी नहीं लगती. Might just work. ओए. Oh, and I was
Azhar वो ऐसे Ali. भगा रहे जैसे कोई डेंगू का मच्छर था. Exactly, just managing to keep that ball away from his stumps, and that one's hit his guard. A little bit of sledging going on too, Khwaja. I hope So- vibranium का बना हुआ है वो guard because it might hurt. Yeah. Some words from short leg as the batsman meet in the middle. हाँ जी अजहर भाई ठीक है जिंदा है ओके ठीक है. A lot of respect between these two gentlemen. They live in the same neighborhood in Lahore as well. अच्छा they do I didn't know that. Yeah, yeah. In fact, Babur comes around, plays with backyard cricket with Azhar's kids. अच्छा then I need to find out their zip code. हम भी उधर पहुंच जाते हैं यार. Uh-huh. हमें भी कोचिंग दे बाबर. Left alone by. अच्छा अपने अब्बू से कोचिंग नहीं ले रहा बाबर से ले रहा है. नहीं कोचिंग नहीं बस वो खेल रहे वन होते टिप वगैरह. हैं. उसके इंस्टाग्राम पे आते हैं ना अजहर अली हाँ के. हाँ हाँ. बाबर. अच्छा आप फुल फ्लेज स्टॉक कर रहे हो अजहर अली को. अरे मैं यार अजहर का जाला हूँ मैं यार. अजहर और असद दोनों मुझे बहुत पसंद है. यार असद अभी भी पसंद है. यार देखो अब ये नहीं कह रहा 1200 है उसके. के हैं उसके यार 1200. कुल मिला के 2800 है दोनों के. ऐसे मजाक समझते हैं लोग. एक ट्वीट डालने में आधा सेकंड लगता है ख्वाजा. सही बात है, 28 सही हंड्रेड्स बात करने है. में टेस्ट मैच में टाइम लगता है. सही बात है. 17 for 2 after 6 overs. फैजान कह रहे वलेंसिया में रहते हैं आई थिंक. अच्छा Valencia is a place in Lahore? वलेंसिया कोई हाउसिंग यार, सोसाइटी. क्या बात है आप लोग की यार. हम तो मच्छर कॉलोनी वाले हमारे शहर है. वेलेंसिया, गोली मार मिकनोस, भैंस को कटी पहाड़ी हमारे लोग 90 वाले शहर है हमारे. आप लोग वेलेंसिया इस पे बता रहे. आप लोग केंसिंगटन में रहते हैं. अलग ही बात है यार. आप बर्मिंघम. लाहौर वालों की अलग ही बात है. क्या कह सकते हैं. दैट्स अ गुड वन मुसाद. Seven- दिल खुश कर दिया. अब 17 विकेट ना लूज कर जाए. एंडरसन नाउ कमिंग इन. ओए. देखिए कराची का मजाक सिर्फ मैं उड़ा सकता हूँ. मैं कराची से हूँ. यार ये क्या बात हुई. फील दैट पॉइंट. वेलेंसिया इट साउंड्स लाइक कि कोई वो ना कोई मैट्रेस का नाम हो. वेलेंसिया. और भाई सुई गैस सोसाइटियां भी हैं पाकिस्तान लाहौर में हाँ, ये हमारे भी है. हैं. सुई गैस की जौहर क्रिकेट- टाउन क्रिकेट टीम है भाई. मॉडल टाउन. 17 for 2 after 6.1. गड़ी शो भी तो है. गड़ी शो. गड़ी शॉ भी है. चिबुर्जी भी है. लक्ष्मी चौक भी है. मुगलपुरा भी है. रहमानपुरा भी है. कल मैं उस दिन बात कर रहा था. लाहौर में ऐसे मोहल्ले भी है ना जो पुराने मतलब बहुत. हिंदू They नाम go है back to उनके बड़े. literally thousands of years. Exactly. That's pretty cool. The heritage हाँ यार, city has 100%. 17 for 2 after अब वो 6.1. सिंध ने आपने देखा हेरिटेज डिपार्टमेंट ने क्या किया. या. वो सफेद जोतन पेंट मार वो दिया. तो वही नेशनल पेंट. जोतन पेंट जूते मारो उनको यार. नहीं जोतन फिर भी महंगा. नेशनल सस्ता है. जोतन मारा उन्होंने. भैया हम इतने अच्छे रेस्टोरेशन हमने 17 for 2 after 6.2. यार दुनिया का सबसे बड़ा Pandora's box है ख्वाजा. If you get me started on that sin stuff, I will not stop as a resident फुल of रैंट मोड. Karachi. नहीं वो तो वैसे मतलब हमें भी एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम करना वो चाहिए. रैंट नहीं है. Tonight with वो तो मुसाद. तबाही है भाई. मैं शाहजेब खानजादा की तरह जो है ना वो I will not sit on the यार fence. मैं तो कहता हूँ हमें करना I will चाहिए. rip into the अगर हमारे चेंज ऑफ पेस ये कहते हैं कि हम Monarchy. करंट अफेयर्स शो करें तो आई थिंक वी शुड डू दैट. आप कराची का पर्सपेक्टिव दें. मैं लाहौर का दूंगा. फिर हम एक फेडरल अस्करी बंदे को भी बुला लेंगे. अहमद हसन है. वो फिर जूनियर को हम होस्ट बैठा देंगे. भाई जूनियर देखिए, जितनी देखिए सर देखिए. नहीं ऐसे नहीं करें. मैं ब्रेक पे ले जा रहा हूँ. फैजान कह रहे हैं रामगढ़. मेरे तो उधर रिश्तेदार रहते हैं रामगढ़ में. राइट नेक्स्ट टू मीनार पाकिस्तान. वेरी क्लोज टू इट. इकबाल सिंह लाहौर में नहर के अलावा कैंची, पानी हाँ, का नाम कैंची। और निशान ही नहीं है मगर बहरिया टाउन जरूर है. Fair enough. बस देख लो 17 for 2. सक्रू कर रहे हैं भाई हमारे वेलेंसिया भी है. आईफल टावर भी है. कहाँ रहते हैं. Oh, Lovely beautiful. flick by Babar Azam once again to deep square. That'll be a single. Azhar back on strike against Jimmy. So this is going to be a good contest. 18 for 2 after Mr. 6.4. Mr. Arshad कह रहे हैं he's from Gulshan Ravi. हाँ वो भी जगह है 100% यार. OGs हैं हमारे पास. पक्के लाहौरिये हैं. But speaking of लाहौरिये, Babar and Azhar on strike batting to save their skins and Pakistan's skins against a guy Skinny. nearing 600 wickets. तो यार थोड़ी सी शुक्र है सनलाइट भी निकल आई है. अजीब ही वेदर पैटर्न्स है वैसे यूके में यार. उधर 9 बजे जाके मगरिब होती है at some times. Adil Momin is saying he's from Hyderabad, Pakistan. Shout out to the very Biryanis. nice. James Anderson continuing. Gets the inside edge. Azhar Ali trying to steal a single, but there's none for the taking. Yaar, Zahoor has a comment. I want to address this. He's saying England is the only scene in a country that we managed to do well in. अब वहाँ भी हमारे एल लगे हुए हैं. यार Let me बात be नहीं honest यार. about this. This series, which is likely to end in a 2-0 or 1-0, it's not at the expense of Pakistan being as bad as you think they are. पहला टेस्ट जो था वो एक सेशन की वजह से हारे. दूसरे टेस्ट में बारिश हो गई और तीसरा टेस्ट आई रियली थिंक इट्स गोना बी अ ड्रॉ ख्वाजा. होपफुली यार. और बहुत इनएक्सपीरियंस टीम भी है ना बॉलिंग में यार. आप ये भी तो देखें.
left alone by the experienced Pakistan captain. And Zakaria Khalid कह रहे हैं भगवान पूरा. भगवानपुरा भी मगर है। एक बात याद रखना, दादरा लाहौर टर्न बाहर है. क्या? तो बाहर है. अच्छा शादरा ने कहा शादरा लाहौर तो बाहर है. The home of Abdul Razak, Yeah. the king of Shadra. Killa Gujar Singh. A lot of history there in those parts of Pakistan. 18 for 2 after 7. Pakistan. Play cricket in the streets in Pakistan. Wazim. 18 for 2 after 7. Broad and Anderson bowling a full spell. I think 4-5 over. अब Anderson को विकेट मिली तो extended spell मिल ही जाएगा. But 6 overs में no. Well, if you think you've negotiated, you've negotiated the best 2 bowlers in the history of the game for England. Now here comes Jofra Archer, express pace of 150 clicks and above. कभी कभार ख्वाजा ऐसे comments आते हैं chat पे कि बंदा कहता है यार like this is why we do it. This is why we do it, and this is why the community is so special to us. VK is commenting saying love you guys and love being here. Going through a very tough time in life with no job due to COVID and lost a family member as well. Listening to you guys makes me at least a bit happy and some things to look forward to. Yeah, I hope you recover. I have no words for that, man. Honestly, that means the world to us, and that's incredible. That's incredible that we can have that impact and the game can have that impact. And it gets really poor and it gets really difficult to do this when you guys aren't around. So I've always told Khwaja this as well off here, that it's a partnership. हमारे हाथ में माइक है तो आपके कमेंट्स के बगैर भी जो है वो the snowball doesn't get rolling. And thank you so much for that, yaar. And I hope your circumstances improve as well. Be safe. Of course, with the COVID pandemic, काफ़ी लोगों को जब तक आपको directly impact नहीं करता, लोग कहते हैं यार ऐसे है, overblown है, but it's not. Millions of people, hundreds and thousands of people have lost their lives. So please do practice social distancing and all the SOPs to keep yourself safe. चलो हम तो हट्टे कट्टे हैं, हमें इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जिनके बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स हैं और जिनके सेंसिटिव इम्यून सिस्टम्स हैं उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए. और दैट्स व्हाट आई एम कॉन्स्टेंटली वरीड. मैं न्यूज़ देखता हूँ पाकिस्तान में, स्पेशली कराची के जो आजकल हालात है, स्पेशली विद द फ्लडिंग, इतने सीरियस मेडिकल सिचुएशंस बंदा किस चीज़ पे ध्यान देना. आपके घर में पानी है, आपकी चीजें डूबी हुई हैं यार. मैं क्लिप्स देख रहा था, गाड़ियां पूरे कोस्टल, कारोबार आपका बंद है और फिर ट्विटर पे आपको कोई कह रहा है ओ प्लीज वेयर योर मास्क. भाई आप किस चीज का ध्यान दें, इंसान ही है ना आखिरकार. It's a difficult world out there, and hopefully we can make it just a tad bit easier. Good length there from Jofra, pitched it up and caught Babar Azam on the back foot, but he got there just in time. Good pace as well. Faisal is saying this is going as expected so far, and he'll hang around and suffer through the next 3 days with us. And 5 overs remaining in the day, 5.5 overs remaining in the day. Omer Abdullah is saying, I just do not understand Azhar ko hua kya hai. It's so hard to put bat on ball for him. Everything is taking edges and hitting his body. I am really sad. I think Omer has literally crept into my mind and typed out exactly what I've been thinking for the past couple years, Omer. I echo those thoughts exactly. Maybe he just needs a start, you know. वही मसला हो रहा है. I hope so. 20-30 run cross नहीं हो रहे उससे. Oh! What a delivery from Jofra Archer. It's just spitting fire off that pitch, and Babar Azam just doing well as he could to get his bat out of the way. 90 miles per hour, Khwaja. That is quick. Just kicked. यार बाबर के एक मुझे अगर स्लाइड फॉल देख रही कि ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले एवरी बॉल. थोड़ा सा आपको बॉल लीव भी करना चाहिए, जैसे आपने सेकंड टेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से किया था. यू हैव टू लेट थिंग्स गो. इस लेंथ पे आपका कोई काम नहीं है उधर बैट डालने का. Look at that carry, man. Though, look at that carry. I've hardly seen that on day 2. ये ना टॉल बॉलर्स 6'4", 6'5" हैं, तो they definitely get something extra. Again with the bouncer. This time it'll beat the keeper. Should run down to the boundary, and it'll be. No, it's fielded by fine leg. Wokes भाई ने हमें कोई रन्स नहीं देने मुफ्त के. Abdullah Amin, special shout out to Khwaja Saab. Really, yeah, you are a legend. Legend of the comment box. Thank you so much यार for the kind words. आप लोग वैसे ही इतना टफ डे गया पर आप ऐसे इमोशंस फील्स दे रहे हैं हमें यार. क्या बात है. Mr. Arsenal remembering some great memories. PSL nights with Lahore's firework and kamikaze were lit. यार ओए होए. यार ख्वाजा एक एनेक्डोट है, मैं आपको बताऊं. एनेक्डोट नहीं, पर एक फैक्ट है. एनेक्डोट है. You anecdote. Anecdote. Oh, what a delivery. Jofra Archer, this over has been. ओ भाई इजी हो जा. क्या बॉल डाल रहा है भाई. अब ये हमारा कौमी हीरो है, हमारा कैप्टन है यार. ऐसी बॉलें ना डाल यार. A huge banana, a viper of a ball. Look at the way that is swing. incredible. And thankfully went over the stumps. वरना ये खिल्ली उड़ के जाके सीधा जॉस बटलर के दिमाग में लगनी थी. Look at that ball. Unbelievable bowling. वाकई यार वही पिच वाली बात सारी गले पड़ गई है. अजीब है यार, कितनी अनबिलीवेबल. लुक एट द वे जैग्ड इन. Any bones.
Unbelievable stuff, yeah. Yeah, Adil, I think we discussed this a little earlier. We were not going to name drop the journalist, but I understand the kind of conversations that he has. Nice Well defense played. from Babar Azhar this time. Excellent over there from Jofra. Looks like he's a bit motivated after being dropped from the last test, feeling fresh, feeling charged up, and it's going to be tough going for Pakistan if they're going to make the follow on. Look at that. Khwaja, let me get back bounce. to my anecdote, my story. If you remember, you've been with us from day one, Khwaja, as a member of Change of जी, Pace, जी, as a जी. commentator. हमने पहली जो गेम किया था, there was the opening match of the PSL 2009. नहीं उससे पहले हमने एक प्रैक्टिस रन किया था वो वो South on air नहीं Africa था ना? से। हाँ ऑफिशियली हम PSL में हाँ, आए वो थे। ऑन एयर नहीं था। हाँ तो हमने जो पहला मैच हमारा ऑन एयर था ना, हाँ। वो 2019 का पहला मैच था PSL का। हाँ हमने वो पूरा मैच किया, उसमें जो लिसनर्स थे ना हमारे 15 से 25 लोग थे हाँ पूरे मैच में, ठीक है। उसमें मिस्टर आर्सेनल थे आए, मिस्टर आर्सेनल सबसे हमारे साथ के हैं साथ है, यार। ठीक है। ही इज द ओजी मैच CFC हाँ, मिस्टर आर्सेनल Arsenal FHD हाँ। बहुत सारे हमारे ठीक है। ये पुराने हमारे लोग हैं 15 से 25 लिसनर थे। As Anderson now comes in and a beautiful Oh, drive be on drive. careful, Babar playing across the line, Exactly. but timed it really well. But that front foot was really getting across. थोड़ा देख के हमने जब अपना पहला टेस्ट मैच खत्म किया ना, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, हाँ, 5 days के अंदर 5 days 5 days across the 5 days we had 6,500 people. unbelievable यार, that's quite stunning. आपने स्टैट मुझे पहली दफा बताया। यार मेरे ट्विटर आपने खुद आपने- retweet किया हुआ है यार। नहीं आपने कहा था कुछ 5000 लिसनर थे लेकिन 6500 तो मैं 5,900 हमारे लिसनर्स हाँ, थे, हाँ, हाँ। और उसके अंदर कमेंट्स मैं इंक्लूड नहीं करता। वो तो लाखों कमेंट आए Yeah, होंगे but यार। oh, beautiful delivery. But it Yeah. just shows that honestly, like we It have shows that people are looking for something like this. no, and it's because we've never done any marketing. We have zero budget to do हम this. बस ट्विटर और वही थोड़ा बहुत It's people करते like the Mr. Arsenals and the Masked हाँ। Wise that have actually put us out there. हैं। यार मैं and इतना managed to हैरान हूँ push us कितने लोग out. कहते हैं हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप लोगों को सुनते हैं। मैंने कहा यार अब मैं तो कभी सोचा ही नहीं था इतना कि काबिल ऐसे तो होगा। नहीं है तो 20 for 2 after 8.2. आदिल मोमन, yes of course he's an OG. Yeah, Been yeah. with us right from the start. बहुत सारे लोग हैं यार। Sarosh alluding to a comment from Salman Butt on YouTube saying that चलो Azhar जी। Ali had a knee problem. उसके बाद से he is taping his knee a lot, which is stopping his feet movement maybe. यार दैट्स ट्रू कि उसको उसके गोडे का पानी निकल आया था अजहर अली का, बट इन दिस टूर ही इज लुक्ड वेरी फिट इन द फील्ड। पहले हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि अजहर अली से भागा नहीं जा रहा था, लेकिन इस टूर में तो काफ़ी फिट लग रहा है और कितने महीनों से Yeah. वो फारिग बैठा हुआ है। Yeah. अब कितनी देर ये गोडों के पानी लेके बैठे रहोगे भाई, यार ये उबाल दो उसको। VK Goda pani. VK is finally revealed his identity. अच्छा He was यार देसी cricketer. Do you remember? हाँ ऑफ कोर्स याद He है was यार। देसी cricketer back in the early days. यार कमाल करते हो वीके, कब और वो- नाम भी वीके रखा हुआ है। हाँ। हमने कहा कोई इंडियन होगा, विनोद खन्ना। Couple runs there to point 22 for Lovely 2 after punch. 8.4. Good little cameo here from Babar Azam. He's यार नहीं अब कैमियो नहीं चलेंगे, अब हमें 186 नॉट आउट ही चाहिए 186 not out. कम से कम। ये भी है चलो यार 225 यार। 225 ठीक है यार. क्रॉली भाई तो अभी भी ऐसे लगता है फ्रेश पप्पू, कल सुबह स्कूल जाना है, इनकी क्लास वगैरह कोई नहीं, आपसे बैटिंग नहीं होती, मैं कर देता हूँ फिर से. हाँ Trailing by 561 runs, 4 slips still in place. Babar Azam defends away, falls to the leg side for a single. लेकिन Abdullah Amin keh raha hai, I didn't used to comment, but I was following you guys from the early days. Shout out. Thanks, Abdullah, for that. वैसे Khwaja, there's this discrepancy is increasing. Speaking of statistics, now there's a bunch of people that do comment in, but there's a lot of passive listeners as well. So shout out to them too. I know we don't know your names, we don't know your comments because you're usually driving or at work. But thank you for choosing us to listen into the cricket. अब आप देखें Khwaja, if you look at your life, look at our lives, look at all these fans, how sacred is Pakistan cricket? 100%। It's incredibly important. And keeping that into perspective, if someone chooses to spend that time with you, it's an honor. बहुत बड़ी बात है यार। 23 for 2 after 9 overs. Pakistan hanging in there. And Faizan piling on the comments saying, "Bhai, simple baat aapki success ki hai because you bring fans irrespective without any agenda, like a lot of analysis of Pak TV. 100% Shoaib, यार हमारा agenda है, हमारा agenda Babar Azam." Kidding about that. Your analysis is extremely educated yet We filled are with a Babar emotion. Azam Stan organization। भाई देखिए, जैसे हमारे फवाद आलम आप स्टैन है ना। पाकिस्तान के पासपोर्ट को अगर आप खोलें तो दूसरे तीसरे सफ़े पे लिखा हुआ है कि हम बाबर आजम के फ़ैन हैं. सही बात This है। this passport is only valid for Babar Azam fans. 23 for 2. and cannot visit Israel। And cannot visit Israel. उसके नीचे ना एक addendum ऐड कर देते हैं. This passport is not valid for
anyone that wants to visit Israel and is not a Babar Azam fan. बाबर आजम स्टैन. Speaking of stands, एक और आ गया ये जोफ्रा खौफनाक यार. Left alone again. That's the best course of action right now. And यार इतनी easily बंदा 90 mile touch कर रहा है यार. He is Effortless. truly gifted यार. That is action, his athleticism and his agility yaar, truly remarkable. VK saying And he is the guy who can give them hopes of winning the Ashes in Australia. सिर्फ जोफ्रा on जिता those सकता है, और on those कोई नहीं जिता placid सकता. tracks, he's the one that's going to emulate can do it. He can Mitchell do it. Stark and Pat Cummins. You're right. That's a good. इसलिए इनको भी थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना किड ग्लव्स पहन के इसको ट्रीट करना चाहिए. Yeah. यार वो ये एक मशीन नहीं है, ये एक आपका डायमंड है, आपको डायमंड की तरह यूज करो. Left alone again, Babar. And again, the comment earlier, I don't. 92 भाई. ये बहुत तेज ओ है. भाई क्या हो गया है? तुमने कहा था ना पिछले मैच में, ओ ये 150 पे नहीं करा रहा है, ये 80 पे करा रहा है. चेंज ऑफ पे सुन अब रहे वो हैं ना सुन ये रहे- लोग. अब वो तब गया आज साथ ही 148 मार रहे यार. दूसरे ओवर में. VK is asking, have you ever got any shout-outs or hate mail from Pakistani? No hate mail. नहीं नहीं यार. We've क्या never hate received mail? any hate mail. And to be honest, anybody who's tuned in or listened, it's all been positive. Like whether it's folks from like Basil Khan or SM Hussain from Dawn News or Rehanullah from Islamabad, it's all been a positive feedback so far. Good running there from Babar, quickly getting off strike. That is the best policy against a guy bowling 150 clicks. And a quick single taken to mid-on. This is an interesting one from Relukata. The match at the CPL has been delayed because the ball rolled inside the pitch. Eh? Inside the pitch? Relukata, kya do you have hai? photos of this? Maybe Emma Jr. can pull that up. What's ये क्या हो happening? रहा है? It's all happening in the Oh, Caribbean. goodness gracious. Whoa, whoa, whoa. सरोज कह रहे हैं मैं बॉबी साथ ही देओल फहाश की बातें पूरी शुरू हो गई. सरोज कह रहे हैं मैं बॉबी देओल की पूरी मूवी देख ली कॉप म्यूट करके व्हेन बटलर एंड वोक्स ब्रॉड पैंटी लगा रहे थे. कौन सी मूवी? बॉबी देओल की कौन सी मूवी आई है? पता नहीं यार कौन सी मूवी है. इस गुंजित सक्सेना वर्थ वाचिंग. अच्छा हाँ ये कोई आई है इसकी कोई. अब तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे काफी ज्यादा आ गए ना Right. कंटेंट. Did you manage to get a वैसे hold? कंटेंट की बात की आप में से चुड़ैल्स किसने देखा और अपना रिव्यू हमें बताएं. Did you watch it yet? यार मैंने अभी तक नहीं देखा टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. बट इट लुक्ड प्रॉमिसिंग यार. काफी The लोग production quality was up there. प्रोडक्शन क्वालिटी इज वेरी गुड. और कुछ जो हमारी अच्छा आपने केक देखी थी पाकिस्तान वाली? नहीं मैंने वो भी नहीं That's a देखी. beautiful film. अच्छा I really enjoyed it. चलो फिर वो देखेंगे. And I'll tell you how good it was. Hmm. I went with a couple friends. One of them was an Iraqi girl as well. अच्छा And she didn't understand Urdu, so she was reading the English captions. हाँ. And she was bawling. अच्छा Oh, big appeal here. The umpire's not किस interested. बात की अपील? 91 miles per hour 147. They're asking if it brushed the glove while Azhar Ali left it. रिव्यू तो नहीं लिया उन्होंने या लिया है? No, I don't think they're gonna go upstairs. Mm, Oh, they've gone upstairs. यार, And अजहर- the Pakistan अब captain in हद हो trouble. गई अगर अजहर तुम ऐसे आउट हो गए यार. I don't know man. जोफ्रा तो कह रहा है भाई मुझे तो नहीं पता. हाँ वो तो क्रिस ग्रीन तो बहुत ओजी है उधर की सीपीएल का. Let's see. यार ये क्या हो रहा है अब ये. नहीं यार उसका एल्बो. ओ यार मे बी द बैक ऑफ द बैट. Elbow पे तो out थोड़ी होता है यार. नहीं एल्बो तो कुछ भी नहीं होता. Yeah, it that's hit his fine, that's elbow. fine, that's fine. ठीक है. But that could have been a painful blow, but thankfully. So that's a review also gone for England. That's not bad news for Pakistan. Yeah, Iqbal also saying he really liked Cake. Yeah, Cake was really something. अच्छा, is it on any streaming platform? I think it came on Netflix the. I think there's a dodgy YouTube version of it now. But torrent में तो निकल ही Yeah, exactly. But it's a really tug at your heartstrings kind of film. Yeah. Very good यार. Ray Lukata, I'm not sure why the photo's not being allowed, but you can drop a link. Yeah. Check कर लेंगे बाद में हम भी. Down the leg side. No run. Good pace from Jofra once again. 24 for 2 after 10 overs, 90 miles per regularly. अब Jofra he's bending his back and this is the Jofra we want to see. Yeah. हमें 142 miles line length वाला बंदा नहीं देखना. हमें चाहिए आप full जोर लगाओ. ठीक है थोड़े से erratic को कोई मसला नहीं लेकिन It's a new dimension in Test cricket when Jofra Archer's bowling like this. 100%, yeah. I just hate it that it's happening against us. 148, 147. Ooh, that was very close. आवाज आई थी definitely. Just speaking of Pakistani films, I actually had the pleasure of moderating a panel discussion हाँ. between the actress Mansha Pasha and the producer of Lal Kabutar earlier this year. हाँ लाल कबूतर भी सुना बहुत So अच्छी थी. they did a premiere here at Real Cinemas in Ibn Battuta, and they were like, "Can you come and moderate?" And I was like, "Yes, that's awesome," because I was very interested in the movie because it was about Karachi, and it was like this unadult, like unfiltered version of Karachi because it's a big New Yorkish city. You know, there's crime and there's all this stuff happening. Funny story here. I moderated the conversation, had a really good chat with Mancha, the producer, and the writer. Never watched the film. तो तुम कहाँ गए थे? I had to sit with them
हाँ बैक स्टेज टू पॉइंटर्स वगैरह जो नहीं होते अच्छा सवाल अच्छा जवाब वो करने- जब चल रही थी वो मूवी खत्म हुई मैं आके सवाल जवाब किए and I never got to watch the film because it was never released. So I'm yet to watch it, but everybody that I had invited to the premiere, top class stuff. अच्छी बात है यार दिस Top इज द काइंड class ऑफ stuff. टैलेंट वी वांट टू सी मिस्टर आर्सेनल ने भी एक लंबा चौड़ा कमेंट देखा जल्दी आई हैव बीन फॉलोइंग ख्वाजा कैजुअली फॉर लॉन्ग देन एजी बिकेम वेरी एक्टिव विद यू एंड पाक टीम देन फॉलोड The podcast with Kaleem. बड़े ज़बरदस्त पुराने फ़ैन है यार Yep, अच्छी yep. बात है मिस्टर आर्सेनल थैंक यू फॉर हैंगिंग अराउंड विद अस केक इज़ ऑन नेटफ्लिक्स केक इज़ आल्सो मेड हाँ आसिम ने ये राइट यू आर राइट ही मेड चुड़ैल्स एंड अच्छी बात है यार ऐसे यंग फिल्म मेकर्स आएँ और अपनी विजन और अपने एक एस्थेटिक हमें दिखाएं दैट्स व्हाट वी वांट And when you're watching art, you need to walk हम in. ये सस्ती ARY कॉमेडीज टाइप नहीं हम डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे फिल्म चाहते और शोएब मंसूर तो फिर बहुत ही डीप डाइव पे चले जाता है वो फिर आपको वो मेंटली आप वीडियो ऐसे बन जाता है वो यार, वो तो 24 for बहुत 2. ज़्यादा आप बंदे को ना मेंटली चैलेंज करते हैं लेकिन अच्छी चीज़ें हैं करंट इश्यूज पे बनानी चाहिए यार पाकिस्तान सिर्फ and I वॉर ऑन टेरर और क्रिकेट और ये सिर्फ 2-3 चीज़ें नहीं बहुत पहलू हैं सो मेनी यार पहलूज मैं तो कहूंगा कि हमने क्रिकेट पे भी कौन सी अच्छी मूवी बनाई है यार वो थी ना वो मैं शाहिद आफरीदी हूँ क्या यार आपने क्लास ऑफ इतनी बुरी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट tell me why there's no class of 92 film. वाकई यार होनी चाहिए अब तो ठीक है वो पॉलिटिकली इतनी डिस्टर्ब हो गई होगी हाँ। बट जब नहीं थी पॉलिटिक्स तो क्लास ऑफ इट्स अ स्टोरी मैन डॉक्यूमेंट्री उस तो बन वर्ल्ड कप सकती से है इंजमाम वसीम कोई छोटे लोग हैं यार ये 90s टीम पे डेफिनेटली बन सकती एग्जैक्टली चलो 92 छोड़ दो आप 99 के फेलियर पे मूवी बना लो है यार कोई नहीं हाँ दैट वाज अ OG टीम मैन गोट टीम ये बात तो है। 24 for 2 after 10.4 वो इतना सब्जेक्ट मैटर इतना है यार इतना कंटेंट है उधर सब प्लॉट्स है उसमें हाँ allegations और ये पाकिस्तान cricket is the greatest drama in the world history of sports. अनक्वाइट वंस ऐसे ही थोड़ी कहते Exactly. 24 for 2. Big appeal. This might be given. It is. Yeah. And it's Babar Azam who's going to have to head back before day 2 ends. Pakistan in shambles. And I think this might be a little high. Babar Azam's got to take the review. Please just take the Yeah. review. Oh, he's not taking it. He's going back without taking the review. That is a massive wicket. That is a my God. massive loss for Pakistan. Nipping back in. The movement that Pakistan were just managing not to get for the last day and a half. It's all happened for Anderson. He's got 3 wickets now, Jimmy. 596 पे चले गया भाई आपका Unbelievable. ये यार किसने इतनी- कमेंट दिया था? Jimmy इन स्विंगर नहीं करा था? यार इतनी की विकेट थी आप ले ही लेते रिव्यू यार If this is going high, tremendously. यार Yeah, it still would have been out though. यार अंपायर को आउट ही नहीं देना चाहिए था बाबर आजम खड़ा है यार द फर्स्ट फेलियर ट्रू फेलियर फॉर बाबर आजम ऑन दिस टूर एंड ऑफ कोर्स इट्स हैड टू बी दैट मैन जिमी एंडरसन विद अ ह्यूज विकेट और अब पाकिस्तान तो अभी 180 की भी टीम नहीं रहेगी टू बी क्वाइट फ्रैंक This is a massive L. Stumps at day 2, 24 for 3. They have finally called time on the game. And a very big disappointment for Pakistani fans कि भाई हम चाहते थे बाबर आजम कोई लंबी इनिंग खेले but just been nailed. Good ball there from Jimmy Anderson. It's Zach Crawley's day. It's Joss Butler's day. Yep. 559 Pakistan trail by a massive score just to draw this match and not even win the series. 24 for 3 at the end of the day. And all to do for Azhar and Asad tomorrow on day 3. Disappointment, pain, agony. That's the menu for Pakistan today. And it couldn't have ended worse than losing their premier batsman Babar Azam to another in-swinging delivery from James Anderson. 24 for 3. They're going to be reeling. We'll see you again from ball 1 of day 3. We'll discuss the sports movies that we're talking about now. And I'll tell you now, and you can clip me on this, if there ever was a moment for Asad Shafiq and Azhar Ali to string together a massive partnership for Pakistan cricket, there could be no better time than tomorrow morning. Until then, apna khayal rakhein. Make sure you're adhering to all the COVID-19 laws, and we will be back on Change of Pace Live, the home of Pakistani cricket commentary.